Oh guys, hello, welcome. I'm back. So you are, huh? आज तो मज़ेदार है यार. मैं आज पता जल्दी उठा, सोचा कि पहले 11-12 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा और यू नो लाइक गेम खेलते के समय कोई पूछेगा ओए आर यू नॉट डूइंग वॉच पार्टी एंड सडनली बूम गेम बंद, लेट्स डू वॉच पार्टी. बट देन आई वाज लाइक नहीं यार, ऐसे करते. क्या हाल है गाइस? हेलो हेलो. हाँ तो मैच ही नहीं पता था आज मैच है क्या है यार. आज पहला है DRX वर्सेस 𝙬𝙤 एंड देन जी का T1 के साथ. सो ऑल सेट, एवरीवन इज रेडी फॉर इट आई फील. और यहाँ पे एक सेकेंड ये TND जी का कभी है, जी का इसके बाद है, जो ये फर्स्ट मैच है इसके बाद जी का. ला ला ला. तुम लोग वैसे VLR नहीं देखते क्या? VLR में क्लियरली लिखा होता है, तुम्हें दिखा सकता होगा. सबको सेम जगह से दिखता है ब्रो. T1 कोरिया की टीम है यहाँ. तुम्हें प्लेयर्स अभी हम देखेंगे, सारे प्लेयर्स देखेंगे मैच स्टार्ट होने से पहले पूरा इंफॉर्मेशन के साथ. हाय अनन्या. सोलबेरी के साथ वॉच हम कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आई वाज थिंकिंग कि हम सारे इंडियंस भी बैठेंगे ये सब. तो ऑल्दो आई वाज थिंकिंग दैट मैं उसको अपना प्राइवेट जो डिस्कॉर्ड है उस पर दे दूँ, ताकि अगर उसका मन करे तो आ सके. ऑल्दो वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ करेंगे ना. सो आई हैव नो क्लू मैन. बट अगर हाँ इफ समथिंग इज मैं उसको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी. बट अगेन या फिर पता क्या होगा, लाइक यू नो वॉच पार्टी वी डू इट इंग्लिश में हो जाएगा ज़्यादा, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों रखना है. कौन सी टीम का वॉच पार्टी है अभी देख, पिन कर रखा है DRX वर्सेस 𝙬𝙤. स्टार्ट कब होगा? 2 बजे. सो वी आर सेट फॉर इट. तब तक आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो. बस ये मत पूछना कि यार तुम कब खेल रहे हो इस गेम में, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कब खेल रहा हूँ. या इट्स अ टॉप सीक्रेट. लाइक एक होते हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो इस लेवल पे हैं, एक होते हैं नेक्स्ट लेवल जो लाइक अभी वो लेवल आया नहीं है, इसलिए मैं भी वहाँ तक मैं अकेला हूँ. अब मैं एक अकेला लेवल पे हूँ ऊपर टॉप पे, तो मैं वेट करो कि बाकी सब आएंगे तब फिर होगा. जैसे होता है ना कि इट्स नॉर्मल ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, एंड देन आएगा जनरेशन X, या फिर यू कैन से लाइक फाइटिंग अगेंस्ट द यूनिवर्स. अभी दे आर फाइटिंग अगेंस्ट नेशन, नेक्स्ट आएगा फाइटिंग अगेंस्ट यूनिवर्स. वो वाला मैं आई एम रेडी. अभी बाहर के भी नहीं आए. मज़ा आएगा बिल्कुल भाई. हथौड़ा गंशर को उनको पता, आई थिंक वो डिस्कॉर्ड पे हैं. इफ़ दे आर विलिंग टू दे विल आ जाएंगे. वो डिपेंड करता है. लाइक सी द थिंग इज जो चाहते हैं वो पता है कि भाई पूछेंगे तो हो जाएगा. मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कौन है. जो नहीं है वो चैट पे आके मैं उनको दे दूंगा ना. आई वॉन्ट यू टू प्ले सम Valorant टूर्नामेंट. अभी कल खेल रहा हूँ ना, लैन है, वी आर गोइंग कबाल में, तो आ जाना देखने. अगर उन्होंने बोला कि भाई स्ट्रीम वीम कर सकते हो करेंगे तो कर लेंगे वो भी, जैसे पिछली बार किया था. कैसा लग रहा है वॉच पार्टी का सुबह पे भाई? VCT चैम्पियंस ज़्यादा यू नो उस पर भी इफेक्ट आता अगर वो उस पर होते, बट ठीक है.
ये वाला आया है, धीरे धीरे वो भी आएगा। और आई थिंक ट्विटर का कमाल है वरना सीरियसली वो लैन लाइव होगा कहीं, नहीं वो कहीं लाइव नहीं है। लैन इज जस्ट नॉर्मल, यू नो, लाइक जैसे देख गेमिंग कैफे साल में 3-4 मैचेस ऐसे ही रख लेते हैं, महीने में एक बार सब आ जाते हैं खेलने, क्योंकि पास में जो रहते हैं। लाइनअप क्या है लाइन का? हथौड़ा, गन शॉट, सोलो, यथार्थ, अर्जुन, हम 5 हैं। साहिल मैजिकिन की टीम के साथ खेल रहा है जिसमें जेनो ये सब है, और बाकी तो मुझे भी नहीं पता और कौन कौन है। आई थिंक बकेट हेड की भी टीम आ रही है, वो कह रहा था। सो या मतलब वी गोना प्ले फॉर चिल, इट्स नॉट लाइक मेरे को बस ये करना है कैफे में खेल रहा है, जोर से चलाना मारने पे एडवेंचर ऐसे ऐसे बस बोलना है वहां, बस और कुछ नहीं करना। सोलो गॉड वॉच पार्टी एसेस बट डोंट नो व्हेन विल वी डू सोलो स्मैच वॉच पार्टी, ये भी ठीक है। वैसे सही लिखा ना, वैलोरेंट सोलो वॉच पार्टी, लाइक बेस्ट VCT स्पेसिफिकली। आई थिंक इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है या नहीं करना वो मुझे कुछ नहीं है, डिटेल्स कुछ नहीं बता मेरे को। मैं कहा ठीक है भाई देख लेते, ऐसे ही कर लेंगे। और बंदी का ये कल नहीं करेगा ना वॉच? नहीं कल भी करूँगा, किसने कहा देखो? अच्छा कल मैच है ना, हाँ कल मैच है, परसों करूँगा या फिर रात में करूँगा। वेट, कल की मैचेस की डिटेल्स मैंने निकाली नहीं यार, देखो आई थिंक सेम टाइम ही होगा 2 बजे। अगर 2 बजे तो मुश्किल हो जाएगा। कल एक दिन, अब से एक दिन मतलब 2 बजे ही मैच है यार। पेपर एक्स का मैच है यार, ये तो देखना बनता था, पर इसमें तो पेपर एक्स जीत जाएगी पता है। फिर टीम सीक्रेट टाइलोन ई स्पोर्ट्स, भाई टीम सीक्रेट इसमें जीतेगी। फिर 2-2 मैचेस है, हर दिन 2-2 मैचेस है गाइस। तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे को ढंग से दिखाता हूँ। हाउ टू टेक अ वॉच पार्टी? टेक अ वॉच पार्टी इट्स लाइक, सी मेरे को नहीं पता, मोस्टली पीपल गेट थ्रू कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल। मेरे को बस ये आया कि एक फॉर्म भर दो, मैंने फॉर्म भर दिया एंड उस पर फिर मुझे अगला दिन ईमेल आ गया। जैसे पहले लगा सेम ईमेल आ गया कि आपको मिला नहीं, बाकी को मिल गया ऐसे, बट फिर उसमें देखा ईमेल में लिखा हुआ है कि मेरे को मिल गया। तो दे आर लाइक कि वी आर हैप्पीली क्या दे कुछ ऐसे आया था, मैं भूल गया। मैं ठीक ना, आई एम नॉट वॉचिंग विद स्ट्रीमर्स। आई थिंक यार सब स्ट्रीमर्स अपना अपना करें तो सही है, उसमें अपने अपने दोस्तों को बुला लो। ऐसे सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, हम सारे साथ में बैठ के देखेंगे। अब अगर सारे स्ट्रीमर्स एक ही जगह बैठ जाएंगे तो थोड़ा वो नहीं हो जाएगा, फन नहीं होगा। यू नो लाइक टैरिक की तरह फन करेंगे, बुलाएंगे। इंडिया में यार नहीं, इंडिया में सोलो के अलावा और कौन है जो बहुत पुराना हो ना? हम नॉर्मली ऐसे करेंगे। आई थिंक राइट कॉन्टैक्ट क्रिएटर्स फ्रॉम या काइंड ऑफ यू कैन से, नहीं तो हमें फॉर्म वॉर्म आते कहीं ना कहीं से, तो वैसे हो जाता है। जी का वीज़ा इशू सॉर्ट हो गया भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। I think they see who plays Valo good. No. It's not about who plays Valo good, who is this, who's that. They just give it based on like a long term, or maybe you know कि okay we haven't given this guy a chance, so we will give this guy. If it works, then again ऐसे। और बाकी views के होते हैं। कुछ लोगों को चांस मिलते हैं, कुछ लोगों को ऑलरेडी व्यूज के अकॉर्डिंग मिलते हैं। That's how it works. यार जब मुझे परमिशन नहीं मिला था, मैं भी टैरिक की देख रहा था, इसलिए कह रहा था। हे बाबा व्हाट्स अप मैन। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तब तक, ठीक है? पहले वो देखते हैं हम। ओके सो इधर तुम्हें अगर पता ना हो मैं बता देता हूँ कौन कौन से मैच है। सो VLR के VCT जो मैचेस है टॉप क्या कहते हैं 5 टीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टीम्स। ये क्या है? शो ऑल, अच्छा शो ऑल ऐसे है। ओ भाई साहब ये चलने वाला है मई तक, सारे बेस्ट ऑफ 3 हैं। हाँ डैम दैट्स इनसेन। ओके सो बेसिकली जो आज की टीम का है, पहला हो रहा है जेटा वर्सेस DRX, ठीक है? अब इस टीम में तुम देख लो कौन कौन है। आई थिंक DRX तो सभी जानते हैं क्योंकि VCT में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब जेटा भी गया बट ये भी। सो कोरियन वर्सेस जापानीज, इट इज़ फर्स्ट, ठीक है? और बाकी तुम्हें पता है इस वेबसाइट से तुम्हें पूरी इन्फो मिल जाती है जो भी तुम्हें जानना है। मेरी इन्फो नहीं मिलेगी, आई एम वेरी टॉप सीक्रेट पर्सन, सो दे कैन नॉट, कोई भी नहीं कर सकता इफ़ आई वांट। या हाँ जी का कब है? जी का देखो यहाँ से पता चलता है, ये है तुम्हारे जो आते हैं,
तो जो मैंने मैचेस देखे सारे अपकमिंग, तो अभी अपकमिंग 46 मिनट्स में ये 2:30 स्टार्ट होगा ज़ेटा वर्सेस DRX, 5:30 जो अराउंड 6 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा T1 वर्सेस ग्लोबल, जो हर कोई देखने वाला है, इंडिया की टीम है यार ऑब्वियसली। ठीक है, फिर आएगा संडे को मैचेस हैं, फिर आएगा मंडे को मैचेस हैं। मंडे को एक ही मैच है एक्चुअली, ओके ठीक है। फिर April 1, द थिंग इज मेरे को RRQ का देखना है मैच, क्योंकि ये बहुत पब गेम्स में बहुत बार खेला है इनके साथ, तो मज़ा ही है देखना। और जन जी में भी कोई था यार, ठीक है। तो ये चलता रहेगा मंडे, फिर संडे छुट्टी, सैटरडे वेट एक सेकेंड, ओ मंडे के बाद डायरेक्ट सैटरडे संडे, वाओ। फिर नेक्स्ट मंडे को होगा मैच, ओ भाई DRX वर्सेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, डैम डूड, ये भी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ध्रुव थैंक यू फॉर मेंबरशिप ब्रो। रेफर ना, वो तो कंटेंट क्रिएटर है। डैम डूड, ये एपिक होने वाला है। मंडे April 3 DRX वर्सेस ग्लोबल, ये देखना बनता है, बड़े एक ही मैच होगा ये। फिर T1 वर्सेस पेपर एक्स, ये एक और बढ़िया मैच। ज़ेटा ग्लोबल, ओके। और कितना है, पेपर एक्स, ये भी आ गया भाई। मतलब पूरा मंथ बढ़िया जाने वाले हैं ये सब मैच के कारण। दैट्स ग्रेट, लाइक जी के थोड़ा लेट भी है और ठीक है, आई थिंक एक दिन छोड़ के। अभी इस पूरा सर्कल चलेगा, साइड बाय साइड ये वाला चल रहा है, वो कहाँ गया पन्ना, सी वाला ये रहा। इसमें क्या चल रहा है, इसमें मैच 7 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। यप, अभी तो ये सब या आई गॉट परमिशन विद दिल से। as scared as FG versus DRX, no I think that would be, ये तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि DRX बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ग्लोबल भी कैन डू इट, you never know। जी हारी जरूर थी VCT, बट नोटिस किया कि दे परफॉर्म्ड इट, दे डिड इट। उन्होंने एक छोटा सा भी झलक दिखा दी कि यस दे जस्ट नीड टाइम, और आई एम डैम श्योर अब उन्होंने वापस अब स्ट्रांगली आ जाएंगे वो लोग, राइट। बाय द वे वो कौन है जिससे IG पर स्टोरी लगाई थी, सोलबेरी, ओके वेट होल्ड ऑन आई शो यू, शी इज़ अ ट्विच स्ट्रीमर एक्चुअली। हम अर्ली एक्सेस में मिले थे एंड आई वाज लाइक कि मेरा ही नाम है, लाइक सोल किसी और ने लिख रहा है, उसे सोलो ही रखा था, सोलो बेरी ऐसे कुछ नाम था। I wonder whenever meet her I will ask her again like what's the story behind this। वो ये है, she is the streamer, I'm following it। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, मैं भी हैरान हो गया था, it was really good to see। so yeah, she is the streamer जो Valorant ये सब खेलती है, तुम इसके ट्विच पे जाके देख सकते हो। बेरी, इसने मैंने इसे पूछा था सोलो के लिए यार, आई थिंक इट्स लाइक यूनिक नेम, आई लाइक इट, लाइक 8 से O भी आ रहा है और B भी बन रहा है, सो काइंड ऑफ गुड राइट। भाई स्टोरी दिखाओ, मैं इंस्टा डीएक्टिवेट किया, ओए फक गाना बज रहा था, क्या कॉपीराइट लग जाएगा भाई। शी इज फ्रॉम कोरिया, मैं स्टोरी कैसे दिखाऊंगा, अरे यार अभी ध्यान में आया गाइस, मेरे को अभी गाने का भी डालना था, वो गाना बंदे का देखने थे, मैं स्टोरी कैसे दिखाऊं, तुझे यहाँ से दिखेगा नहीं यार स्टोरी, आई थिंक नहीं दिखेगा भाई, सॉरी, तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। अपने फ्रेंड को बोलना स्क्रीनशॉट भेज दे तेरे को। नहीं VCT गाना नहीं था वो, मैं इसकी स्ट्रीम चलाया था तो उसके पीछे जो गाना चल रहा था वो। इंस्टा लॉगिन करो PC पे, नहीं ये सब मैं नहीं करता, रुको वैसे है क्या लॉगिन मेरा, नहीं है लॉगिन,
Can you play a video without audio? Audio only you can hear like that. समझा नहीं मैं. Blush कर रहा है? बे? हाँ, वाह. ऐसे तो भाई फॉक्सी और अन्य चैट पे इसलिए blush कर रहा हूँ आपको. I'm ready. Only you can hear the audio, not the stream. अच्छा वो सब नहीं करना यार. I want to be basic stream. Basic. Summoner Wars खेल ले तब तक. Summoner Wars नहीं. क्या आपको लगता है कि स्किन्स के बिना बंदा ही नहीं मार रहा? भाई मैंने 5 रीडिंग करे थे एक टाइम पे अलग अलग अकाउंट से. सो उन 3 अकाउंट 4 अकाउंट में तो स्किन्स थी भी नहीं. तो अब तू खुद सोच ले भाई, तू बिना स्किन्स के खेल सकता है? ये बस तुम्हारा वहम है. स्किन्स लाइक थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा देती है. कोई भी गेम हो, एनी गेम, MMO हो, FPS हो, बैटल रॉयल हो, स्किन्स बस थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा देती है. दैट्स इट. एंड अ ट्रू गेमर्स ऑलवेज गोना डू दैट. बस फिर बजेगा 5 रिंग. अबे यार बज स्क्रिबल्स. भाई मेरी स्पेलिंग्स बहुत ख़राब है. स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन तो मैं कहाँ से स्क्रिबल्स खेलूँ? स्क्रिबल्स का तो मेरा थॉट भी नहीं आता. स्नेक खेल लूँगा, कुछ और खेल लूँगा, चलेगा. पर मेरे को खेलना नहीं है, मेरे को बात करनी है यार. बात भी नहीं करूँ मैं. अरे डिस्कॉर्ड पे बैठते हैं. लाइव स्ट्रीम पे बैठते हो, पता चले कोई आके गाली दे दे. वेट होल्ड ऑन. ये सब क्या खुल गया? ये था. मैं इसका ट्विच पे देखूं या यूट्यूब पे देखूं? आई थिंक ट्विच पे देखना बनता है ना. हाँ ट्विच पे है ना. तो ये आ भी गया एक्चुअली. लेट्स सी देयर. ये आ तो गया. I think GE is a little bit better pound for pound overall right now, but that can change really. Sorry. It's destination focused meet. Both teams that I think now need to prove themselves again after their performances of lock-in. Who's winning this one? I think it's got to be Paper X, just given the history of the team, given that they've stayed together. It's still the same 5-man core. DFM, there's a lot of improvement I think that needs to happen. It's saying for the best viewing experience, please go to Valorant Pacific. PRX. But I think it'll be I think that's decently safe. close, I think. Okay. And then it's going to be the 2 of the Southeast Asian teams going up against each other. It's going to be Talon versus Team C. I think a lot of people will favor Talon, and I'm going to take the safe route. I think Talon's winning Which this is one, but I think faster? probably a close match. I think Team Secret. I'm going to go with Team Secret. I think I'm a little bit. Yeah, this is better. Kind of riding the hopium, I guess, with Team Secret. Sure. I'd favor Talon here, just given that they were able to push DRX a little bit harder, and I think that Secret, again, they need to show us a little bit more consistency. No, not habitual. आज habitual पे And नहीं then बैठूँ. on day Solo 3, world the में last day बैठूँ. of week 1, it's going to the 2 teams that haven't played a match yet. Coming into Pacific, it's Genji You took the versus 4K? RQ. And I'll go ahead and say, I do think RQ is going to have a strong fight. Genji probably still wins, but I think RQ is going to shock a lot of people swinging out the gate right off the bat. I think they definitely can, and I think that they put up a slightly stronger performance, especially in their नहीं second बे map 2K है. at lock-in. ये 4K So होता है. तुझे clearly, with 4K the veteran लगता है. presence on this team, there's a lot of hope for them to be able to do well. It's more about how well Oh, can they yeah! build up and guide these 3 rookie players that they have. I agree. I think that there's कभी एक potential for सपना them to था make this competitive, but I would have पॉपकॉर्न्स to लेके ऐसे बैठ के देखना Just और before we wrap up, I mean, स्ट्रीम भी कर रहे हो how साथ do you ही think साथ. Pacific's going to do overall, not just at Masters, but by फिर champions? एक और Do you think सपना है Pacific's really इससे gonna भी बड़ा continue टीवी भी to लगा के everyone साइड में that सब this दोस्त might be the दोस्त यार strongest बैठ region? के. This is our year. I'm on record saying this, that I think is our DRX year. is going to be in the finals at Champions this year. It's an inevitability. and Yeah. Yeah, I Jared's fully going to be the agree. finals, but then it's going to be another Pacific team, and they're going to win. See, that would be the best. That would be the absolute like prime timeline right there. I mean, that'd be man. crazy. Whichever team wins. It's Right? gonna be DRX versus Sentinels in Los Angeles, and everyone's gonna be there wearing their Sentinels jerseys. Go, Yeah, Koreatown's going crazy in LA. And then Buzz is just gonna dash and blade storm all over their faces, and it's just gonna be a slaughter.
Wait. I mean, again, it'd be great to see not just yours, Volume but any कम आ रहा है. Pacific team in a finals. That's the next step, right? We've seen Pacific teams get third place countless times now. So to see them in the finals and actually win, all right, and getting to the finals a second time would be absolutely thrilling, I think, for the entire region and all the teams involved. Imagine Well, cool. one day. Yeah, thanks so much for having Put us your here. face For cam on everyone VCT watching, logo. don't forget to क्यों? tune in. We're going to Left side कुछ है नहीं, so I don't mind if VCT logo is and then we're live over there. every weekend until we finish the top 3 who'll be going to Masters Tokyo. We'll see Okay, you there. that's the thing. Wait, no. Music आ गया. Yeah, so wait, मेरे को I think ऐसा लगता है कि ये मेरे को फेस कैम को थोड़ा वो कर देना चाहिए, या तो इधर सेंड करना चाहिए ऐसे. I feel. Just feel that way. 5 minutes तक DM कर ले वालों में. यार वालों क्यों खेलना है जब देखना है हमें. Screen capture mode with the logo and your face cam. Sorry, I don't get it. टेरिक जैसे कर. टेरिक कैसे करता है अगर ये कर रहा हो? मेरे को आइडिया नहीं है उसका. हाँ, अबे जब अभी VCT जब गेम स्टार्ट होगा तब करूंगा ना ये चीजें. अभी क्यों करना है? बॉटम राइट साइड कर दे फेस कैम, बेस्ट है. और आई कैन डू इट. आई कैन इंस्टेड ऑफ यहाँ सामने रख दूँ, ठीक है, यहाँ सामने रख के. बट नहीं यार, इट्स लाइक थोड़ा सा हुआ है. अभी 5 मिनट है ना. भाई साउथ कोरिया में मैच हो रहा है यार. यार वैलो खेलू करना नहीं यार. 10 सेकंड आगे कर, तू पीछे चल रहा है. कोई नहीं भाई, पीछे भी चल लेंगे. मिडल राइट लुक बेटर. हाँ वही. तो यू नो अगर मेरे को जैसे होता है ना वॉच पार्टी, अभी ये वाला मिला है, अगर मेरे को जैसे मिलता रहेगा ना तो आई विल मेक अनदर स्क्रीन फॉर वॉच पार्टी. फॉर एग्जांपल वेयर यू कैन जस्ट पुट इट राइट हेयर, ऐसे चेंज कर सकते हो जल्दी. वो बेटर होता है. पुट फेस कैम ऑन द राइट साइड और मिड लेफ्ट. अभी जब स्टार्ट होगा ना, आई एम थिंकिंग टू पुट बिलो इधर बिलो द कहते हैं मैप, बिलो द मैप ओवर हेयर इन द सेंटर यहाँ पे. अदरवाइज आई एम थिंकिंग टू पुट ओवर हेयर ऑन टॉप राइट, और मे बी आई कैन गो फॉर टॉप डाउन बॉटम राइट. ना बॉटम राइट में फिर वो जो दोनों साइड का ये आता है ना, इधर दोनों साइड पे नाम वो सब आता है, वो नहीं आएगा. और इस साइड उसका कैमरा आता है एज फार एज आई नो. सो आई विल पुट ओवर हेयर और क्लोज टू दिस साइड हेयर. लैन विदाउट क्राउड है या अपने रूम से खेलेंगे प्लेयर्स? आई थिंक ये लैन है, कोरिया में लैन है. नो वेट, नो आई थिंक ये लैन वैसे होगा, रूम में होगा, बिकॉज सारे हर दिन थोड़ा ना आएंगे 1 महीना मैच देखने. सो इट्स जस्ट बेसिकली फ्रॉम कोरिया आई गेस. और मतलब रूम में, और फिर जब सेमीफाइनल ये सब होगा तब वैसे करेंगे आई गेस. वॉलपेपर क्या देखना है यार? ओवर एनिमे गर्ल हेड. हाँ वही. डिवाइड योर कैम इन 4 पार्ट्स एंड पुट ऑल 4 कॉर्नर्स. ये क्या नशे कर रहा है भाई? हाई लेवल ना, मैं एनालाइज इतना नहीं करूँगा, बट आई वुड से यू कैन आस्क मी दैट ये क्या हुआ अगर मैंने मिस नहीं किया. बट मैं ट्राई कर सकता हूँ कि बीच में जो मैंने नोटिस किया या वाई दे आर डूइंग दिस, वो मैं बोल सकता हूँ. बट वो जरूरत भी नहीं है. जी टॉप 5 पॉसिबिलिटी यार, अभी तो मैच स्टार्ट होंगे सबके. हर टीम से खेलेगी. 10 लोग हैं, 9 मैचेस तो होंगे सबके. सो या लेट्स सी. आई थिंक आज ही पता चल जाएगा विल जी गोना सर्वाइव और नॉट इन दिस वन मैप. हारेगी तो डेफिनेटली दे नो हाउ टू कम अप, दे विल थिंक अबाउट इट. जीतेगी कॉन्फिडेंस में रहेगी तो और मारेगी. नो बट मैंने कौन सी मूवी, मैंने ला ला लैंड देख ली. यप
हेलो चैट। हेलो चैट, इतना लेट आ रहा है बट तू रुक नहीं रहा ना. मैं रुक नहीं रहा, मैं थोड़ा यू हैव अ क्लास. क्लास आई थिंक 10 मिनट। एनालाइज बंदा. Wait, Rossi is not in Korea right now? I thought वो कुछ स्टोरी वोरी मैंने देखी थी. वहीं पे तो है वो. चल आजा थोड़े चल देखते लोग चैट में क्या 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 बातें कर रहे हैं. ये चैट ज्यादा बेटर लगती है. रोज का आ रहा है. आजा देखते लोग चैट में क्या बात कर रहे हैं. अरे क्या क्या बात हुई अभी तक. Guys, stop hating, guys. Just have fun watching. They aren't hating, dude. They are just supporting. It's alright, man. Everything is fair in love, sports, war. Guys, don't care about hate comments. Just enjoy and support whoever you want. At the end of the day, esports win. These guys are hyped. बट हेट कमेंट तो मुझे कहीं नहीं दिखा अभी तक. तो हेट क्यों लिख रहे हैं. अरे वो इंडियंस रहेंगे तो हिट होगा जितना मतलब. ये देख जल्दी चालू करो. हाँ जैसे बैठे हैं तुम्हारे लिए. इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ. GE will win. Not gonna lie. They are now good enough to beat SA team. अबे तो ये तो SA की टीम्स नहीं है ना. पूरी पैसिफिक की बेस्ट टीम है. How was your experience watching La La Land? It was good. उसमें पता नहीं था मुझे Emma Stone है, and Emma Stone is my favorite. If I ever seen somebody like her, I would be like, marry me. Oh, something is happening. हाँ वो मुझे लगा रहा Okay, it's kind of late. यहाँ start हो गया है. The VCT Pacific is here. Obviously, Valorant has been blowing up all over Asia, man, but we had each of the regions siloed before, so we saw a competition that was fierce across all of Asia, but now for the next 2 months, they're going to be down here, battling it out. We're finally going to see who's going to come out on top. Yeah, I mean, this has been a long time coming, right? Especially, obviously, we have 3 regions now, so a lot of grouping up together, but especially for the Pacific region, we've been separated into all the different sub-regions of APAC, and then Korea, and then Japan. So now for all of us to get together and really see who's at the top of Asia, at the top of Pacific, this is an exciting moment. And I think something that's so cool about I think this center is that girl this name is becomes also such Emma, a global like game in now. nickname. I mean, historically we would think of Korea, the big esport hub, but now it's really going to be challenged here. We have teams all the way from India, Indonesia, into Japan even that are going to be competing. And I have to say, what I really love 10 second about वाला VCT button and दबा Valorant शायद is that कुछ we've पीछे. seen the तो rise क्या of 10 second वाला APAC. button Southeast दबा? Asia has really come up and formed these rivalries with Korea, with Japan, and we're going to see some of those Wait, games you this can watch- weekend, which I'm so excited for. But before any of No, that, they let's didn't talk see on about it, Valorant. Let's talk about the patches. There are Yes. some changes that's going to bring a lot of I unexpected think I'm play. forward. Twitch पे ऐसे I नहीं think होता. first and foremost, there's Gecko, the introduction of a brand new agent. Oh yeah, I think इस वाले में Gecko खेलेंगे ना? I think so. It Like might they take can some play. time, right? Just Check it out, because what check it Gecko out. brings Okay, is I wanna so see now, unique, more the way all of his interesting. abilities work. All of them are actually somewhat unique, not just to Valorant, but actually just to traditional FPSs as well. The way, obviously, Wingman, Little Bro, everyone likes to talk about Little Bro. Wingman being able to plant or defuse despite changes, how you have to expect executes or even retakes happening throughout a round. Yeah, Gecko is a really exciting agent to look at here. One thing that I guess He is my very exciting. Why to look people at. don't He's watch got neon VCT hair. ऐसे? He भाई उसकी definitely permission नहीं looks मिली ना? cool. How can we can watch? But beyond that, I mean, the fact that he can recycle his abilities, it's going to be interesting to see just how powerful. The power of Twitter, okay? You guys have power of Twitter. You can go on Twitter, write anything, and everyone is agree they're gonna work on it. मान लो तुम 1000 बंदे एक साथ एक ही चीज पे एग्री कर रहे हो कि VCT ऐसे का हमें वॉच पार्टी चाहिए. मतलब we don't care किसको दो, but we want watch party from a streamer, from other streamers and all this. They will work on it. ठीक है. And then मान लो Valorant का फेस, जैसे एक इंडियन में कोई Valorant का फेस है, उसको वॉच पार्टी नहीं मिला. अगेन पब्लिक इज द थिंग. पब्लिक ने लिखा, हर जगह डालने लग गए, तो ऑब्वियसली उसको मिल ही जाता है एक टाइम. दैट्स हाउ इट वर्क्स इन ट्विटर. दैट्स वाई इंस्टाग्राम से ट्विटर ज़्यादा है.
Instagram पे you can be have entertain and all. Twitter you can fight for each other for even the right thing. Although वहाँ पे wrong thing भी होता है. सब कुछ allowed. Portrait भाई अभी नहीं. ये सब मत कर. Fresh like every 10 seconds. So it changes how you expect the timings of a round to play out. And I think also to point out, you don't have to try to regain it. I mean, I think it makes this kit a little bit weaker, but it's going to be cool to see how each of the different teams and the players on those teams ये पूरा Pokemon है सही में. If they do go and use Gecko right away, we should point out that some regions are more conservative than others on their agent picks. इसके जूते मैं ले सकता हूँ, खरीद सकता They've really been practicing for months and months before coming into this, but I have fingers crossed. Maybe we get a Gecko play today. Listen, Yeah, even I'm thinking Gecko play होगा. On Icebox at lock-in, right? So maybe DRX brings out the Gecko. Yeah, I know. India में कम लोग Twitter use करते हैं, that's why. But अगर जैसे मान लो एक हर कोई use करने लगे, that would be a epic scenario. लोग क्यों मुझे देख, मैं लोगों को कहता हूँ टैग कर दो, चलेगा. मैं लोगों को कहता हूँ कि कुछ भी important है, कुछ भी discuss करना है, just tag me on Twitter and say. मैं जैसा था, अगर पसंद आया तो रीट्वीट कर दूंगा, नहीं तो लाइक कर दूंगा, या फिर आई डोंट इवन, बट देख जरूर लेता हूँ मैं क्योंकि आसान होता है. Oh yeah, साउथ एशिया का आई थिंक लोको पे मिला हुआ है. आई एम नॉट ऑन लोको, सो आई डोंट मच इनटू इट. ओके सो मनन, मैं स्ट्रीम एलिमेंट से कमांड क्रिएट कर रहा हूँ और रजिस्टर नहीं कर रहा है. तो मत कर. करना तो पड़ेगा किसी को. क्यों करना है? कोई कमांड नहीं पड़ता. लोग चिल्लाते रहेंगे. हाँ तो चलाने दे. वो क्या कहते हैं, लोग चलाते हैं, उनको बताने के बाद भी चला रहे हो तो फिर वो कर सकता है. तो करने देना मुझे. मैंने क्या क्या बना के दिखाता हूँ क्या क्या. Yeah, well, I think we're going to see a lot of exciting plays today. We did see a little preview at Lock-In in Brazil, and I think there were some really notable players that we should probably point out, talk about a little bit of unexpected high performance from these guys. I mean, this is already just such an exciting region. It's hard to even pick, who to feature because there are so many good ones. We absolutely had some killer players come into this, no doubt. That's right. So DRX, I mean, it's a very strong team, but instead of our usuals, I want to point out RB. RB was quite surprising in Lock-In. Yeah, I think RB, again, he's had his ups and downs in the past, especially when he used to be the main duelist. But ever since he's switched over to the flex, and then a lot of times, sometimes he was kind of pushed down into the whole spike duty whenever. Dude, RB का headshot percentage 23 now he's really found his ground as a sentinel slash flex, and he's really proven that if he's given the time to learn. मेरा भी ऐसे ही होगा. मेरा headshot बस मुझे चाहिए 40, clutch मेरा 60 और DMG मेरा 200, KD मेरा 1.5 और ACS मेरा 250. I'm starting to feel like he's kind of the flex of Korea itself. And I think that some players, they pick up on games a little bit later than others. Obviously, he was always really good, right? He was on DRX. He is almost the winning. fact that he's been able to play तो ऐसे ही तो करना है. play styles and really innovate on so many different agents, he's definitely somebody you want to watch for here for VCT Pacific. I mean, he's really brought them 31 is very amazing, high. stunning wins in Lock-In that just blew our minds, especially this particular C9 game. This was incredible. But, I want to point another Korean player, King from Gen G. Gen G, we saw their debut, their international debut, so to speak, in Brazil. Dude, let's talk about King. King का clutch Yeah, I mean, look, 10% है. I've had Headshot the opportunity to 34%. cast this guy over the past 2 years. So here basically in he's a Korea, duelist, right? I'm always blown away. KD 1.4? 267 ACS? Damage 170. But yeah, clutch is got 10%, that's it. He's so good at shutting down anybody coming in. And really, I feel like this is one of So my is it favorite like Killjoy players. he kill everybody but still He loses? was able to put up those same performances on those other agents, like the Viper. That's kind of good. It just shows that he's now also had the Duelist ही होगा. नहीं dude, he's not duelist. He's initiator like me. Sky Sports देखा नहीं था तुमने मेरा? He couldn't keep up with the chamber meta, right? Okay. Everyone was playing chamber as a sentinel. He couldn't really pick that up, so he was always kind of pushed down Balbir, into thank tier you. 2 of sentinels just because of the meta. Oh, But ये now मैं that the देखा meta था shifted and he's expanded his agent pool, he's been a great player to watch. Okay, Garnet. ये तो बंदा भाई high sense player है ना? If I'm not wrong, he's a high sense player. 24% headshot, clutch 22%. Damage 152. So it's like an average. जो चला तो चला,
really नहीं चला performed as तो well भी at कुछ ना London. कुछ थोड़ा बहुत कर The दिया. big question for Garnett and kind of the pressure he had to deal with. Oh, I was, like the can he fill bracelet the he is shoes carrying. of the superstar Pat or Patty. On purpose And किसने if anything, he's bracelet outgrown दिखाया that, है. right? I mean, he was putting up so many individual मैं highlights. ये On top दिखाऊंगा. of that, the way he was playing, the awareness he मेरा had ऐसे to रहेगा. buy space, create space for his नहीं. team, he wasn't just popping off getting multi-kills, but he was मेरा ऐसे getting रहेगा. impact kills that affected how the ऐसे rest of his नहीं, team could ये maneuver अजीब around the map, both on देख attack लेंगे and जब आएगा. defense. He's a really exciting player. It's so Play- cool to see that this he player played so played well with just you as a in new rank also, addition. हाँ. Originally Rank में तो Valorant, बहुत सारे खेले हैं यार. we had a lot of pro gamers that were sort of रीना खेला, I know grandfathered into Garnett other tactical still shooters, remember. but now उसने we have a रीना lot of लेके these जो new 32 young kills guys लिए that are थे. here, and it's Still so remember exciting that. to see somebody like this तब player नहीं था, playing so तब well. टीम में नहीं Of थे. course, Thailand, Valorant, esports blowing up there. I think we're gonna have a lot of Thai fans super excited to see this guy playing in this event. Ooh, Yeah, I'm super just like excited me. to see how the type teams play. In fact, मतलब I'm इनमें और मेरे में ज़्यादा anticipated फर्क नहीं है, बस for इनको पिंक कम Pacific आता है, in right? general. It's so I'm Indian. crazy. We have these like long-standing rivalries, as I mentioned, representing 8 different countries. I know we have a lot of Korean players here, but I mean, who are you guys really excited to see? You know, I gotta say, actually, 2 teams that we're gonna see today, Global Esports and T1, those are 2 teams I'm very excited about, 𝙤𝙤𝙤. just because on the roster, I mean, those are 2 teams where the potential's there, but we don't really know how high it goes yet. So maybe Yeah. at the end of Pacific, we're gonna see 2 completely different teams after they've. So they are rooting for Global too, man. Teams that you wouldn't typically. Just I think Global is very hyped in all over the world. No, do you guys think is Global very hyped? More and more global. I really think so. You know, in those countries, there's so And many you great know, players, some there's so people much still promise. say that Cool to see how Rossi they is kind of compare very to regions overhyped. like Korea, which if I mean, historically, somewhere I feel like really it's all right dominated Asia because entirely. he's a I have to tell you, representing He Southeast played good Asia, too. we are all But fans still. of Korea and Sure. Japan. Indian hype? No, not Indian hype. Sports, It's but then worldwide I'm so hype, bro. proud of the Like, boys here today. Okay, obviously India में so, एक टीम है you know, जो this बहुत is इस the लेवल very पे है तभी first, उसकी hype है. But VCT I feel like Pacific, so we wanna पूरे talk world about में it and how it's people gonna know work it, over the the hype. next few So weeks. everyone is Listen to tuning in boys क्योंकि इतनी explain बड़ी this hype हो in चुकी है कि video. tuning in everyone कि like yeah okay let's tune in this like so much hype so you know. Hello, VCT fans. VCT Pacific is finally Okay. here. As we launch this Focus. new layer to Valorant Esports, we're making some very exciting changes to our 2023 format that will bring our competition and entertainment to a whole new level. This thing, listen everybody, listen Let's this, huh? get into it. VCT Pacific 2023 will consist of 10 teams from across जो हो रहा है अभी. Pacific. Global Esports from South Asia. Talon Esports from Thailand. PaperRex from Malaysia and Singapore. RRQ from Indonesia. Team Secret from, From the Philippines. Detonation Focus Me and Zeta Division From Japan. And DRX, Gen G, Dude, and 3 T1 teams from Korea. What the These fuck? teams will battle it out to be the very Oh first god, that's why it's hard. Pacific Trophy in Seoul, South Korea. Dude, I always wanted to go here, Single man. round robin over Korea. 8 weeks. From March 25th, VCT Pacific will be live on every Saturday, Sunday, and Monday. League play will be capped off with a Super Week, where we will have 5 consecutive days of matches to finalize the top teams that will advance to the playoffs. During playoffs, the top 6 teams from League play will compete in a double elimination bracket across 6 days. All matches will be best of 3, except the lower finals and grand finals, which will both be So best lower of 1. final and grand final both will The be top yeah, 3 वो तो teams same from ही चीज है. VCT Pacific playoffs will earn a spot for Masters Tokyo. Sheesh. After Masters, Japanese, VCT Japan Pacific जाइए फिर teams टोक्यो. will once again compete for the final ticket to Champions during the last chance qualifiers. The LCQ will give Pacific teams So this that time have Global not have a qualified lot of chance, okay? one last opportunity to make it to the biggest stage in Valorant Esports. Good luck to all the Pacific teams. We're so excited to bring Make VCT waves. Pacific's Nice aces, song. clutches, and thrifties to your screens. We'll see you there. You can apply for PhD in Korea for free. 9. Super cool. मुझे ऐसे Really जाना looking है. forward to this. You know, I want to talk about the teams now. We've got 10 teams, and even though we're all in the same region, a lot of them still had to travel a ways to set up here. And it's been quite complicated. So, you know, it's been 1 month since Brazil, and that seems like South Asia, because sufficient South time Asia for is these teams to particularly based on practice. every. But India if, में you know, सिर्फ talking India to is these big. teams and Like South finding out, Asia में some of India them is one of the actually big. haven't gotten
a lot of But practice time. South so Asia based on like I wonder how that's including really every gonna play Nepal, out here. I Sri know Lanka, Paper Rex, Bangladesh, Zeta, Pakistan, and Global every Esports, region. you So know, that's why have ऐसे the visa issues, just Whereas- getting here, setting up their. I had to go slowly through the same जैसे thing होता है too. ना I कि can इंडिया में imagine मान what लो the players are doing. बहुत Some ज़्यादा of them लेवल दिख have रहा है जैसे कोरिया में PCs दिखता है वैसे ही for a इंडिया में while. धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा Yeah, so हो here सकता we है go with आई the- डोंट नो with the मे 10 बी चेंज हो teams. सकता है फ्यूचर में Yeah. बट अभी तो It's इतना gonna be है ऐसे interesting सिर्फ to see एक how टीम they निकली है perform. I mean, this is तो it's अब अगर interesting कंपटीशन because ज़्यादा होगा Valorant, तब वो है ना you know, एक it बार came out in a pandemic, right? जैसे Everything फॉर was एग्जांपल online. जापान और It really कोरिया came में down to सबसे just ज़्यादा being in your कंपटीशन लोग element कहते हैं in सबसे that ज़्यादा moment, क्योंकि गेमिंग at को home, बहुत but ज़्यादा now है they're here. तभी कंपटीशन बढ़ा है Travel is a इंडिया में भी major अब धीरे धीरे factor. होगा Getting set up in a new country is a major factor, Oh. and it's gonna be an interesting 2 months to say the least. And on top of that, we can see किंग आ रखा है we've had इको some आ teams रखा है go through some टीएस आ big रखा है changes in rosters, जेटा आ right? रखा है Gen मंच G किंग को बहुत looked बार आ चुका pretty है good against Loud if you really go back and look at the साया VOD, even प्लेयर though they तो lost पता नहीं 2-0. याद But नहीं now they've added कारपे Sylvan शायद आ and रखा gotten है it. Sylvan was one of those यहाँ पे players that a lot of CGRS people thought was तो the कल ही up-and-coming खेला है साथ controller after the discovery समथिंग of है Pop जिंग One आ रहा है DRX. डे And ये then सब got पीआरएक्स से तो perhaps सारे the रहने most आज perfect six-man you could have, a very flexible player. And then T1 and Paper Rex as well. I think obviously Paper Rex's addition was the latest news. Something coming over from the Japanese Challenger League and now joining Paper Rex as another amazing fragger. I mean, he's sometimes putting up like 30, 40 bombs in a best of 3, so that should be insane. Also, Intro coming into T1. T1 is one of those teams that. But I think needed a lot Paper of X is time to really get the strong, chemistry man. work. Something He's is been there added. He's a every great player, but how much time have they all the really pop had? players They like had highest today in the crossing like opening top match. 10 is Yeah, like this is crazy that this is happening today. I mean, something as well from Paper X literal days ago that they just announced it. I also want to just quickly announce happy birthday to Jason from Paper X. Oh. It's his birthday today, so happy birthday. Hope you're watching comfortably Happy at home. birthday, You man. don't have to play today. Yeah, so I'm really excited. Let's talk about the schedule now. So again, today game 1 is going to be a big one. We've got DRX versus Zeta. Yeah, this is going to be a really exciting one. DRX claims they are the strongest in the region. I think it's fair to say they probably are, but if Zeta is able to take them here today, that would be huge. Korea, Japan, there's always a rivalry there. In any anything. game, any Yeah. sport, anything, okay? But DRX, look, they've come into VCT Pacific here claiming that they are going to show that they are still the best, still the most dominant, and still deserve the most respect. But Zeta's looking strong. Yeah. They've been taking this Can't very wait for these seriously. matches. They've been Dude, reflecting a lot on it's- how they can improve you their know, play. and ये it should पूरा be a really मन exciting चलने match. वाला है Yeah, and then and on top of that, seriously again, Global speaking Esports and T1, this two month teams that I think when with you look these at teams it's individual like roster, I'm watching a everyone's pretty series excited about, जैसे but होता है they ना have a lot to prove in terms of कि chemistry. हर But hey, for हर all of our, दिन या APAC हर fans, वीक I में mean, 2-3 tomorrow's the सीरीज APAC आने वाली day, है right? You've नई got नई Paper नई Rex नई playing against the So Epic, that's how it and is then like most of the versus people are not Team interested Secret, in watching trying all to the really matches show who's on top but from honestly coming over speaking from the APAC region. मैं That should C be exciting players as में well. इतना खेला हूँ तो And I last but know not least, I have we have, played all the players our- मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है देखने का स्पेशली पैसिफिक आई माइट नॉट वॉच यू और एन ए दैट मच जितना मैं पैसिफिक का देखूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स के साथ पब में खेल चुका हूँ देख चुका हूँ तो इट्स नो कि हाउ इट गोज माना लोगों को ग्लोबल का ज्यादा देखना है बट मेरे को सबका सबका सेम That's our very first देखना game. मजा We उसमें will go to a short break, so stick around. We'll be right back. Zero distraction. Zero doubt. Zero opposition. Red Bull gets you right. यहाँ क्यों ऐसा दिखा रहा है अच्छा यहाँ भी सेम होगा इधर दिखा क्यों नहीं रहा कि प्लेयर्स suggest Saldam Korean jet known as RRQ में और J में कौन कौन है EJ Flip Lemore Kingmaker Eman so I know EJ a lot खेला है बहुत Flip Lemore ठीक है Okay, so it's very complicated now. Like all the teams are really good. Level है, हर team का level है.
Wait, जी में दो असिस्टेंट कोच। One Canadian, Korean, Singaporean. I think they should have specified like Indian from SA. नहीं फिर पॉइंट क्या रह जाएगा? इंडिया के आर पार बाकी कंट्रीज है तो पॉइंट नहीं रहेगा ना। तो फिर एक बात बता, ये करवा के भी क्या फायदा फिर जो ये हो रहा है? इसमें इंडिया को क्यों मौका दिया? VCL SA का इसमें तुझे कितनी टीम इंडियंस की दिख रही है बता, तू खुद सोच के देखना मेरे भाई। VCL वाले इसमें चैलेंजर लीग साउथ एशिया जो हो रहा है, पॉइंट कुछ होगा ना, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। हु नोस आगे फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो, बट अभी के लिए तो सही है ना। हमारे मुंबई सर्वर में ही ले ले तू, इंडिया के मुंबई सर्वर में ले ले। इमॉर्टल 3 तक आने के बाद या इमॉर्टल 2 के बाद आते आते मैच कितना लेट मिलने लग गया है, कितना लेट ही मिलता है क्योंकि प्लेयर बेस उतना नहीं है। ऊपर से अब CS2 आएगा, ये सब आएगा तो लोग थोड़ा डिफर हो जाएंगे। हाँ, नो डाउट मोस्टली वैलोरेंट लोग खेलेंगे फिर भी, क्योंकि CS2 चाहे आ रहा है वो इतना ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं कर रहा, या कुछ ऐसा नहीं है कि लोग चेंज कर लेंगे या कुछ, क्योंकि वैलोरेंट स्टिल फील्स लाइक एनिमे टाइप एंड फन आता है। CS2 इज़ मोर लाइक फॉर ई स्पोर्ट्स प्लेयर, फॉर हाई बेटरमेंट, और लाइक यू कैन से जिन लोगों ने CSGO पहले खेला उनको पता है, एंड यू नो दैट्स द स्टोरी। अब मेरे जैसे बहुत कम होंगे जो CS और वैलो दोनों ढंग से खेल पा रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहा, ये ट्रू है यार। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कंटेंट बनाने की कि CS शुरू में भी हाईएस्ट रैंक और इसमें भी हाईएस्ट। It should be a really crazy, exciting match. That's right. They had a match back in December. Indian mostly college और स्कूल में रहते हैं most of the time, और एग्जाम्स सीजन भी है। The lineup, you might notice something, like viewers there, something's a little bit different. Time लगेगा। You're gonna see a little debut. Yeah, 𝙤𝙤𝙤𝙤 finally. People have been college के clamoring बाद to see सब an बहुत कुछ official match. Now we have टाइम के seen साथ him सब चेंज हो play जाएगा। in some of these third-party events or these show matches during the off-season, and he looked great mechanically. But you could tell that the team was really just experimenting with different things, trying to give 𝙤𝙤𝙤𝙤 some time on stage. And then at lock-in, I remember when we were casting on the Korean side, we kept hearing from Termi, today I considered again if I should let 𝙤𝙤𝙤𝙤 play or not. Every match, it went down to the wire whether he was playing in the roster or not. But eventually, they finished lock-in without ever putting 𝙤𝙤𝙤𝙤 on stage. Now he's playing in the opening match. And, you know, this is a guy, he's obviously very new, but they're really saying that he might be like the apex predator of the team. I think chat बंद करनी पड़ेगी. Comes out and does what he needs to do. So it's pretty cool that on a day that is honestly so important for DRX against a team that I think really is a threat compared to some of the other teams that they picked. Rossi's not playing today? Yeah. Let's see. Let's talk about 𝙬𝙤 too. Let's see their lineup for today. We got their usual 5-stack. Well, taking a look at DRX's records, I guess, prior to that at lock-in, of course, the highest record they had in terms of the Pacific region, going all the way to the semifinals, where, you know, they did eventually... I think, you know, honestly speaking, I feel DRX is this top, on top. Like, सबसे strong DRX, then I feel like Paper X. Which, on some ways, you could say, yeah... I mean, that's based on my stats, I feel. Like, DRX actually was it's a good point. about like, to win a win VCT. is a win, but also if the win's always really close, you know, that can say something else as well here. So I don't think this is necessarily going to be that close of a match. I do think DRX should be able to take this one-sidedly, but we may be in for a surprise here. Yeah, I mean, again, whenever they got going, you could see the classic DRX color, and then on top of that, one of the biggest questions I have for today's roster 𝙤𝙤𝙤𝙤 is playing is, Buzz has learned whenever he was playing that jet to now create these wildcard moments where he was driving in and getting those kills. Can 𝙤𝙤𝙤𝙤 do the same for the rest of the roster today? Against 𝙬𝙤 Division, we'll have to wait and see. Yeah, I would like to see how much that's actually
actually going to impact How are without you? Buzz. This is the first time Buzz is not playing with them. So yeah, let's go back to 𝙬𝙤. We're a Japanese team, the Japanese #1 team for a long time now, and like you were right, they. Where's chat? I'm offing chat. 𝙬𝙤 is very strong and they perform so well in 𝙬𝙤 division. 𝙬𝙤 has proven their assault in the past. Yeah, I They mean, call Zeta. Let's just hark back, okay? Now, a lot of people seem to forget the last official match between 𝙬𝙤 Division and DRX. 𝙬𝙤 won 2-1. It was 1 year ago. Reaction section normal बनाया था मैंने कुछ वो नहीं किया था. But they did make it happen, and it wasn't a fluke. I mean, they had such an incredible run, and if you go back and watch that match, you could tell why they won. They had some good calls, they had some good counter-stranding, and all 5 players were fragging out. That's got to be the biggest challenge today. They've said they're coming into 2023 very hungry. They mentioned earlier before we had the मैं सोच रहा हूँ मेरे को आइडिया आ गया. they wanted to play against मेरा भी ऐसा कभी होगा तो मैं भी क्या करूँगा मुझे आइडिया है. They're going to play against DRX right away. They do put a lot of pressure on themselves in interviews. They seem to be very reflective and very hungry. I guess you could say somewhat unsatisfied with their performance, and I kind of like that, to be honest. I kind of like pro like teams that hunger that have that. सब लोग best look कर रहे हैं. Yeah, it's just a way of watching it. Yeah, they're definitely अपना perspective change करो. If you see somebody as like they are sad, even if they are happy, you will see them sad. Don't think they are sad. Just think that they are neutral or happy. Here's the thing, and then see, and then meet them accordingly. A lot of people around the world have about 𝙬𝙤 Division is okay. How just spin like Shaktiman. ठीक है यार. It was because they were up against a strong opponent early on in the tournament, right? Like last year, they had to play against Loud in the groups at Champions. Loud ends up winning Champions. This year at Lock-In, even though Leviathan doesn't win, they were considered one of the strongest teams once again throughout scrims and throughout kind of hearsay, and they proved that again. So 𝙬𝙤 was up against a strong opponent. On top of that, we heard that 𝙬𝙤 was now trying as IGLing in this match, and you could tell while he had some good ideas, the communication wasn't perfect. Everyone is using same bundle. The foundation was there. So now, in this 1 month, without any roster changes, how much cleaner does this team look? That's the big question. And I think we should all remind ourselves that, you know, although this is going to be an exciting match, this is not necessarily indicative of how 𝙬𝙤 is going to look in future matches to come. Okay, this is still top dog. And so it's going to be a challenge here for them. Dude, KD, if 2.2. happens, I don't want to be too shocked. Yeah, and again, the biggest thing I think that means every round he killed not one. only because he's going to be trying to IGL, but no, every round he killed against two. Mako, who a lot of analysts and teams are considering perhaps the Maybe most no, that's consistent not at the how very it least works. controller in the world. Yes, some other players have He had die better less, points, kill but more. he's been consistent through and through, no matter KD the तो result मेरा of भी DRX. अच्छा था यार. And now 𝙬𝙤, he has to provide that same level of support and the ability to anchor on a मुझे अपना headshot percentage ज़्यादा देखना he's है. potentially still IGLing for this team, which is 42, 26, 17, 22, 27. मेरा headshot अच्छा जा रहा है धीरे-धीरे, guys. I feel like I'm good. But अभी बहुत दूर हूँ मैं. Obviously, DRX among all the teams is literally going to be the most comfortable in this environment. We're in the same studio they've been playing in for over a year now. When will be Kasser saying here comes the game changer SoloManan? I mean, it's. No. They will be like the only universe player said, in the world right now. The first of no, not in the world. Only player with above everything. 0.93 KD है तेरी. अबे भाई वो मत देख यार, वो अलग है. Don't count it. I'm not a brave तुम्हें guy. काउंट करना है, मेरा esports में काउंट करो, समझे? I would say DRX is probably going to come out on top. Esports में जब आऊँगा तब it won't be the craziest upset to happen here in VCT Pacific. अभी मेरा कोई वो कर नहीं सकता क्योंकि मैंने छुपा के रखा. Really? I'm going to go ahead and say if 𝙬𝙤 does win, it is probably one of the craziest upsets we could have. Tasteless, you're going to look like मैं तुम्हें पता मैं आधी गेम तो तुमसे चैट करते खेलता हूँ. Statistics wise, right? Everything points वो to appreciate करो. चैट करते मतलब ऐसा जैसे मैं खेल रहा हूँ और साइड में पढ़ रहा हूँ. बंदा आ रहा है, शूट करो, ऐसे हो रहा है. to go up against such a strong opponent in week 1. You learn your lessons hard and fast, and then if you grow, See you in 2025. अबे hopefully make it into playoffs and तेरे eventually ये hopefully ego to Masters ही Tokyo. तुझे But for today, डुबाने you वाला gotta है. give it to DRX मेरे को again. ego ही नहीं है, क्या I do डुबाएगा? have to agree, DRX. I mean, if all the other teams themselves are most anticipating their play against DRX, I think that says a यही lot. तो problem है I do actually. think the change ego from होना Buzz to चाहिए. Foxy ego है 9 नहीं. will change जैसे मेरे को visually. बताया था, तू मारता है ना, Scoreline तो ऐसे in the गुस्से end, से I'm मार really के साला curious कि how मतलब वो
gonna play मेरे out. से होता ही नहीं। Yeah, so I'm really excited for this. It's going to be पहले cool होता with था, पहले ऐसा होता था गुस्सा निकालता था मैं गेम में, तो आई थिंक और अच्छा खेलता था। You know, a lot of times when you have a newer सुबह 2 player, साल they से kind of बोल put अरे them in मैं नहीं safe आ रहा भाई moments e-sports just for when they're comfortable and they मेरे को get नहीं in, but I लगता, guess this is मेरे को लगता है जब तक both मैं a challenging moment, but not the most इस लेवल dangerous moment इतना for अच्छा DRX खेल to लो get कि भाई experimental with the तू कर roster, ले, if that समझ makes जाओ। any sense. Yeah, I mean, if we hark back to Challengers Korea, right? They had last year in Split 1, they lost against Onslayers during the round robin stage. If you during the could group join stage, and any then they were org, still which able to org get it first would be? place during the International playoffs and as go well. to Masters confidently Any as org the अपने को representatives सब from चलता Korea. है, So बस again, वो the और fact that we पीठ do पीछे have a बार round वाली ना robin हो, format in या the group stage, या that is a little bit of तुम्हें insurance for लटकाए ना, DRX या to तुम्हें see if they can make lonely this feel ना new करवाए, chemistry बस work with Foxy9. बस And on बाकी top of that, again, I think the opponent they do consider perhaps a little more predictable at the very least. That's right. I mean, I also want to talk a bit about the अच्छे stage. की वो You लिमिट guys नहीं are होती। gonna see it really True. soon. Oh, it's so Really good. soon. बट आई फील लाइक अगर मैं टॉप 10 रीजन में हूँ और मार रहा हूँ उसमें, तो मैं खुद मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं खुद बोलूँगा ट्वीट करके इंडिया की बेस्ट टीम बताओ कौन है, मैं अभी के अभी उनको कह रहा हूँ कि मेरा ट्राई आउट ऑनेस्टली आई विल से। अगर मैं टॉप 10 में आके मार रहा हूँ, टॉप 10 में मार रहा हूँ, you know what I mean, टॉप 10 में आके मारना। But I do think that the truth is, for our Japanese team coming into this, they have had big stage It's gonna be tough experience. for I know that Orga everybody's starting picking to up get a little more bit of a, you know, a emotes. big event experience from just being inside Emotes? their homes or apartments during the Imports. pandemic. But Yeah, but again, that's the thing. Valorant See, being as big as it is in Japan, I don't know why people can't think like that. कि अगर इंडिया की और या कुछ भी बाहर के जने उठा रहे हैं, तो दैट मीन्स इंडियंस को जो अभी नहीं है उनको थोड़ी मेहनत करनी है और उनको उनसे ऊपर लेवल आके दिखाना है। मतलब एक तरह से ये बता दिया कि ओके हमारा लेवल अभी डाउन है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए। लेवल डाउन है, लेवल ऊपर लाएंगे, ऊपर ट्राई करेंगे आने की, सिंपल। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा गेम इतना हो जाए कि मैं टॉप 10 में मार रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे खुद आएगा ऑफर, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं भी आया तो मैं पूछ लूंगा, बट आने तो अगर नहीं आया तो फिर नहीं करना, पॉइंट नहीं है। फिर बाकी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और मेरे में फर्क ही नहीं रहेगा, आऊँगा खेलूंगा, पैसा लूंगा, चला जाऊंगा। सॉरी बेटा। ओ भाई देख मेरा यूनिवर्स, ये अर्थ, बाकी अलग अलग गैलेक्सी के प्लेयर्स आ गए, ये अर्थ पे आ रहे थे हम लोग ऐसे। वो इंडिया टॉप पे आइए। देख मैं ऐसे आया था इस धरती पे। तुम्हें पता है यूनिवर्स में एक और जगह है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं, 5% बॉयज हैं, बाकी 95% गर्ल्स। पता है तुम्हें ये बात? आई कैन नॉट शेयर इट। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं देखना, ये देखना है। देख सकते हैं ना? बात खोटा क्या होता है? मैं वो मेरा नेबरहुड था। Bro, dude, why इन्होंने वो killing switch की वो डाली साउंड? We can watch this, right? अच्छा वो फ्लैश है, अच्छा फ्लैशेस आएंगे। ओ नारुतो।
Foxy9, he looks excited and ready to play. Come on, Foxy! He's looking comfortable and confident. Here come our players now onto the Woi, Naruto stage. लग रहा था इस सीरीज में. We kind of have learned from all the big international tournaments that we've had in the past, and now we're kind of planting these weekly. We get to watch the stage every week, and players. भाई Valorant के stages ना मुझे उससे प्यार हो गया कसम से. Close proximity to each other on such an amazing stage. Dude, look at the way they're showing it behind. I got it. क्या sexy बनाया है यार इस The बार. music, it is so. It gives me goosebumps. That. Do you guys agree? VCT ब्राजील वाला जो स्टेज था और ये स्टेज में बहुत ही फर्क है. ये वाला स्टेज ज़्यादा बढ़िया है. And so this begins it. We have the VCT Pacific first match about to start. I mean, वो stage पे था, वो सब वो था, audience पे था, but this one looks for insane. a really long time. It is packed here. Yeah. Tickets, we said earlier, selling out in seconds. And this is going to be the moment. Will Korea prove themselves to their Korean audience? They've been saying, obviously, to all the Koreans, they are the best. They're going to win this league. But could they face इस स्टेज पे ऐसे जाके इतना कॉन्फिडेंस अंदर से रहना कि यार अरे सामने वाले कुछ नहीं मार देंगे जल्दी जीतेंगे जल्दी से फिर पॉपकॉर्न खाएंगे ये करेंगे वो ऐसे होना चाहिए अंदर से ऐसे जाना है स्पोर्ट्स वरना वैसे नहीं जाता यार आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वी हैव टू डू इट वेरी सीरियसली एंड पहले 4 गेम तो मैं सो रहा हूँगा ड्राइंग बना रहा हूँगा वहाँ पे फिर खेलूंगा ऐसा प्लेयर again for Zeta division. So they've had that switch again. Now that he's off chamber, you know, if he's playing a little bit more of those passive agents, can he bring a little bit more of this clarity to how they want to play each map? I'm excited to see how that happens. Yeah, we've got new IGLs. We've got, you know, over here for Zeta, we've got a new player on the roster, at least in a moment like this, playing right now for DRX. It's going to be a fun and exciting match, and it's really going to set the pace for these two teams going forward here because whoever wins is going to be clearly in the lead. I know we're very, very early on here in the round robin, but this is going to be big for either one. As these are two of the strongest teams right now in the region. I mean, two teams that have gone, you know, and had very high places, right? Two teams that have broken if you're not enjoying the while top playing 4 professional, of an you are always international in event this like race. Masters or Champions in the past, of course, specifically. We also have people we'll see tomorrow who has reached that same, if not higher, because they went to the finals last year at Copenhagen. But those are kind of the 3 teams that have had the reputation to carry with them for each of their regions to say that this is why the Pacific region should be feared. And for them to face off, I mean, listen, yeah, it's a round robin, and we've said that gives you a little bit of margin even if you take a loss. But at the same time, if you kick it off with a 1-0 scoreline, you're in a much better position to enter the playoffs already. Yeah, and a little bit to the maps and see what exactly this best of 3 is going to look like. We've recycled, or I should say cycled through many different types of maps here in Valorant, and a lot of these new ones have been very exciting. Historically, a lot of Generation X, Generation tend to not go for new maps right away. They tend to try to play a little bit more conservative, a little bit more safe. But we could be ready for some surprises here as well. Well, I mean, to your point, Lotus is banned. Lotus is out. No surprise there. Even during lock-in, we saw so many different interpretations about Lotus from different teams. पहला बैन कर दिया लोटस खेलना ही नहीं चाहिए फ्रैक्चर बढ़िया दोनों मैप ही बैन जो खेलने ही नहीं है बिल्कुल then the opponents will have a chance to pick the side, so they're just eliminating that. And then Zeta actually, what do you guys think? Gecko दिखेगा इसमें? That is a map they actually इन 10 प्लेयर में से कोई Gecko खेलेगा तुम्हें क्या लग रहा है? Some good combos, but like जो भी टीम Gecko खेलेगी, perhaps because RB's Neon I feel one of the best. And it could also be because made this something map and their from play it. style Like have already been out there. They could have studied those games ये from the plays past, so बनेंगे maybe ऐसे you want to खेलेंगे you कर discard that सकते and हैं. save whatever else new you have for later on. So पहला पिक है DRX. DRX ने Ascent पिक किया. Ascent as traditional as it gets. Also, whom are you supporting? Dude, obviously DRX जीतेगी. I'm sure DRX जीतेगी. DRX पूरे top 10 टीम में से Pacific की सबसे strongest टीम है DRX. उसके बाद आती है मेरे को Paper X लगती है. फिर Team Secret लगती है. Wait, Team Secret actually top पे लगती है, but नहीं DRX, Team Secret, Paper X. But नहीं DRX, Paper X, then Team Secret. That's what I think by far our most understood map. Maybe DRX saying that they're going to be a little bit stronger just in general going up here against Zeta, and they could probably perform a little bit better. Yeah, Zeta's performance on Pearl, over at lock-in,
कर दे तू jinx कर दे क्या jinx कर दे bro right? You had some good What about ideas, Tyloo? but one of the biggest flaws they had was they were so slow on their execute. They waited for so long, but now I mean उसकी जगह मुझे लग रहा है Gen G team शायद से strong हो सकती है out of the maps इस that बार DRX की played, Pearl wasn't exactly their strongest, so I can see why they picked it. And going back to the next ban here, it's going to be Split is taken out here by DRX. people Definitely really understand no that's what I said Gen G भी कर सकते हैं They always hate play against the. But don't forget about your favorite team, Global Esports. So, no big surprise. A nice box. I mean, DRX showed up. Even if they became last, I still support them. Just saying, we're not prepared for that. Even though they used to enjoy picking this map, they're just going to get rid of it off the board, and that should leave us with another old favorite. Adjust your camera. Haven, I think, is the only one left now. Yeah, I think we're going to have to go back to one of the classics if we do go on to अभी रुको पहले मैप देख लो that map here. As you can see, Haven is going to मैं be उनको that बोलूंगा pick. By the way, this augmented reality is मैं अभी उनको so sick. बोलूंगा कि जब मैच स्टार्ट हो रहा होगा वो टाइम आउट ले लेंगे और फिर मैं उसके बाद ठीक कर दूंगा फिर वो स्टार्ट करेंगे So cool to be here doing VCT Pacific. And to have it all reflected on the floor as well. We're always seeing doubles. रोशनी अबे तो क्या हो गया तुम तो ऐसे करो कि ग्लोबल स्पोर्ट में रोशनी है तो हार जाएंगे भाई 5 के 5 6 के 6 प्लेयर्स बराबर है सच बोलूं तो So we're moments away from getting into starting this best of 3. So much on the line here. And I gotta say, I couldn't be more excited here. DRX going up here against 𝙬𝙤. they can do it man Yes. We're gonna go into these agent selects soon. Oh my gosh. I mean I'm excited to see what's up next. Okay, that's the Yeah, so Gecko come right now, we're on just read it out if you want to say जो भी टीम Gecko these are लेगी हम all उसको kinds of सपोर्ट people. So करेंगे we're यार gonna see सही if में they, in fact, lock in with the agents that we have displayed here. So far, it seems like we are going to अबे follow that Foxy pattern. 9 सुनो क्यों लग रहा है इसको मैंने गाली दी थी क्या Go with what they've submitted as their default picks. नहीं, Just as a कोई note, और of course, होगा। the rosters currently look like they're swapped भाई on screen. log भी But कर if you're दिया familiar, you should be familiar with these two teams as they've been to many international events, and it's going No to Gecko. be a mirror matchup. So no big दोनों टीम surprise. हारेगी। They're going with some very traditional picks. I guess the only big question is It's easy, यार। Foxy 9 playing the Jet, and then Laz actually playing the Silva. Now that he's IGLing, he's going to be taking that initiator role to get some intel, and Ten's been now switched out to that Killjoy. So a little bit of a role swap here for नहीं 𝙬𝙤 यार as well. Gecko is a So really new for both agent so sides, it would we're be not really great gonna to be see in trying to esports because innovate the so much in this people best- or in this first you know map, I should the thing say. is But instead we're going to try to come in as एक पब ग्राइंडर्स जो हम लोग हैं हम लोग ग्राइंड करते हैं Gecko खेलते खेलते पैसे कॉम्पी में ये लोग ग्राइंड करते हैं ई-स्पोर्ट्स में ढंग से infos and all We've got AR on the stage. Whoa. This is the first time Dude! Yeah. This is incredible. For First us, time, to be- seriously. and to the scale over on the stage is pretty sick. My favorite part is that Killjoy's in an action shot. She's like actually installing her alarm bot right now while everyone else is just on standby. sick I gotta set this prediction up for the really countdown as man round starts. But, I mean they It's can't gonna see be it so but we fun. can see I it can't wait to see Gecko up there in AR. That's yeah, what I I want to see what he looks like as well. I want to see what each of these agents look like there in the AR. But, I mean, there's nothing really left to go over at this point in time. Yeah, I mean, we are about to hop into our first map and get the VCT Pacific 2023 started off here. It is indeed 2023. It is looking real इनके good. side में It looks light like क्यों the लगा players रखी है? I are don't ready get to go. Today we have our casters, Paper Thin and Achilles. Light क्यों है side I'm में? going to toss it over to you सबके guys. उस पे Take एक it छोटी सी away. लाइट क्यों लगा रखी है Thank you very much, Des. Yes, I am Achilles here alongside Paper Thin, reunited after so much time been a away. while. Been back. I mean, it's been since the LCQ. LCQ, So, that's right. yeah. भाई Feels हमारी good to be स्किन से back. इन्होंने Feels ये good to be सारा back in the प्रोडक्शन किया studio अच्छा with this audience, with this setup, by the way. 'Cause hot damn, does it look स्किन के gorgeous. पैसे It's been a तो long है time coming. We've been waiting for the regional league to kick off, and here we are. कैमरा on में Thursday फेस Pacific, दिखे leading the फेस कैम में charge शक्ल for दिखे all three regions अबे around तो the world. स्क्रीन Pacific दिखता तो है golf ये तो nicely, वैसी and गुड so far it's looking great. And what a better place ठीक to है start मतलब than where ठीक है esports really began तो in वैसे Seoul, क्या South Korea, Yep. the mecca, the home of all of this. And I'm so excited. We're ready to get into the game. That we are. Let's go ahead इनको and बोलूं jump कॉल into करना map पड़ेगा पॉज कर number दो यार 1. We've got Ascent here in this opening best of 3 नहीं कर रहे DRX पॉज versus मेरे पास 𝙬𝙤. 30 सेकंड्स है You can hear the Wait, audience, hold people on. still filtering in, taking their sold out seats. ओके मैं यहाँ से कर We लूँगा see, मुझे as they क्या were mentioning on the desk, completely mirrored अब बताओ compositions कहाँ पे between these two लगा रहा है squads. It's kind of the loud composition that we've अबे been seeing. and कहाँ It's interesting गया? to see this kind of छोटा shift करना है away, छोटा given that बड़ा कुछ Stacks करना है going to be playing on this KO. Obviously, some adjustments being had here with RB shifting over to the ठीक Killjoy. है Now, guys normally is we it would be perfect seeing him with the KO. Well, and the good news here for DRX is that
you know, RB is such a flexible player. The desk was talking about this earlier. He's so valuable to this team because he's so darn versatile. He can play every role, just about any agent you want to throw him on. He seems to be very competent at. So it's going to be a quick dash in here for Foxy. Not contested at all by the side of 𝙬𝙤. And there's going to be a trade. 2 for 1 there. Yeah, already trading up, finding some nice value here is 𝑑Rx. Spike going to be planted now, handing that one over to RB. Obviously, you want to be able to fast track those lockdowns just a little bit quicker, given that it is 8 charges to get that ultimate online. Mako now just going to be lingering, but Depp does find the headshot. Foxy swing in the corner, does find him. Trades it back, maintains the man advantage, but tagged up are the members here of 𝑑Rx. That dart just leads through that close corner. Is it no one's playing there? अब ठीक है अरे मैं मैच नहीं देख पाऊंगा मैं creeping down, gets the timing. Stack's going to be eliminated. 𝙬𝙤 finds the headshot, and 𝙬𝙤 will be the finisher. अच्छा तुम्हें वो नहीं देखेगा That's going to be 𝙬𝙤 kind of snatching this round away from 𝑑Rx. It's really well thought out here by 𝙬𝙤. I like. तुम्हें kill नहीं देखेगा बस या तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा. Against 𝑑Rx, you either kind of disrupt their executes, right? Everybody knows that 𝑑Rx is so well known for their ability to really well coordinated executes. So you can either disrupt those executes at the point or just give up the site and play for retakes. And sometimes, you know, 𝑑Rx is kind of static. They're kind of predictable sometimes in how they will set up post-plant, and that's what good teams do. They punished it. I saw a lot of lock-in, and I'm seeing it here with 𝙬𝙤. I'm seeing a timer. भाई मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो छोटा करना है कि बड़ा करना है मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है आ गया टेक पास अरे थैंक यू अरे उनको लेट पता चलता है वो कोरिया में they're watching just turn it off right now. No. It's me and Paper Thin. This is we'd have this curse too actually. Yeah, I thought that अरे नहीं मैं अलग करना पड़ेगा यार एमडी का लोगो फिर वो साथ ही ठीक है with Pansy over at Lock-in. That's playing with fire. When I had to छोटा कर देता हूं I really thought that something was going to go awry, but didn't really have any issues during that time. But you know, first time we've just gotten the stage together. We've got the players here, so of course there's going to be a couple kinks that need to be worked out. So hopefully it's nothing too severe. ये क्या कर रहा है? Everything's taken care of, and we'll get back into the action right away. Worth mentioning, looking at Lock-in kind of as our litmus test for how teams are going to perform. Obviously, we didn't get to see. यार मेरे को लग रहा है इसको टॉप पे रख दें. During their series versus 𝙬𝙤, they were only able to pick up a single pistol round. So already this is a good indication for them. रुक अभी इनको गेम में आने दे. 𝙬𝙤 on the other hand, they went 14 and 14. So 50% compared to 𝙬𝙤's 25, but obviously they played pretty much, you know, the maximum. स्क्रीन के सेंटर में रख दे हिमांशु शर्मा. Yeah, I mean for 𝙬𝙤 it was an absolute slog. मैं बता रहा हूँ they mostly came out on the better side of, but yeah, 𝙬𝙤 we didn't get to see a lot of them. We would love to see more of them. A really tough opponent in 𝙬𝙤 to start out for them, of course, a team that is exceptionally strong. So you know that's been a rough go. अब मैं वो भी कर सकता हूँ चाहूँ तो. You know, I kind of want to see here. एमडी का मैं वो दूसरी जगह लगा सकता हूँ. I need to see like for them to really have a shot here, not just in this match, but throughout this season. What really impressed me at Reykjavik last year was their coordination, the way they were playing off of each other. They're taking trades for each other. Everybody was like Johnny on the spot. It was always one fell, somebody else. थोड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा चाहिए तो ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा. ये मत करो छोटा बड़ा छोटा बड़ा. I want to point this out as well. Hello, right? Yeah, you can start now. Everything is fine from my end. A long time ago, back in the yeah. I think he was on reject. No. I will be watching. If somebody is, I think that hacking, I will let you guys know. Especially on this map, I distinctly remember how well he was, what about payment? Hello? To really lock down one side by himself while the other 4 members. Yeah, let's focus. They're about to start. Wait, I'm going to washroom. He kind of sneaky. He used really well. Put that turret ahead, bait you out a little bit, get a quick kill. So I'm really curious when they flip sides here how �10 is going to do. But nobody should be surprised to see �10 on 𝙬𝙤 here. He is a very, very strong 𝙬𝙤 player. Yeah, for sure. I mean, I don't think you're going to be too shocked by much of anything for the most part. This is a fairly standard comp. No one's pulling out anything too overtly wild here. It's a big change-up, I think, overall for the overarching style that we have seen from 𝙬𝙤, where they do go for that super heavy info, you know, integrating things like that fade in as well. But opting to go back over, have that Sova, have that KO without it, and of course the Killjoy always there to go ahead and lock things down on this. 𝙬𝙤, I think that's going to be a bit of a punch in the mouth for him. Maybe send him reeling a little bit. So we'll see how they decide to bottom rebound. left में कर दे. अरे भाई. Going to look like, because it looked like guys, the round basically should have been over from the outset. मैं अब उनकी सुनूंगा जिनके watch hours ज़्यादा हैं. One exchange right off the rip, but then it just starts falling apart. Yeah, it does. But this is, I think, 𝙬𝙤 doing their homework, kind of understanding the tendencies of 𝙬𝙤 to. You know, audience? Wait, we have audience? Often 𝙬𝙤 is going to be. Oh, maybe it's just.
टीम के साथ जो आए हैं वो लोग starts a bit, particularly internationally, but here I think it's just more that 𝙬𝙤 did their homework. They gave up this site somewhat knowingly. They said, okay, if it's going to be a B hit, we're not going to play. I have a better idea. Let's make sure we Wait, I just want one match to start so that मुझे kill switch देखना है. अगर kill का मैं उसके ऊपर रख दूंगा ये. To catch stacks with utility out. Oi, we have audience man, so kitties. So hats off to Dick Chinese में मेरा नाम लिखा हुआ. I mean Korea में, sorry. Kind of planning they come in with. Fuck. Sorry. As you can see though, some Japanese fans, of course, in the audience, or at least one Japanese Korea, for the Japanese oh wait, squad. I thought Korea में है. It was to Korean, especially for the Japanese fans who want to come over. Flights are very cheap. अबे भाई बिना गेम खेले ही हक दिया. Not a big commitment. You can come over, watch the games, and catch a flight back home, all in one single. DRX stack. Oh, अबे Oh, heck yeah. So, you know, at least spend the weekend, catch some of the other matches, and go try some incredible food out on the Dude, is it like he is in the center and like, यार मुझे जबरदस्ती लेके आए ये लोग? Our imagery here for featuring it in the opening. That's right. And so, like, there's all kinds of great things to do here, but you know, dude, they have audience. Great airport hub for this entire region for all Japanese are right में खोरी. यार वैसे कैसे मैं figure out करूँ? मेरे को बोलना आता, पढ़ना नहीं आता. I've done that. Yeah, it's great. It's a lot of fun. I've actually taken that boat before. It's super cool. Like 3.5, 4 hours or something? Takes about 3 hours from Busan to Fukuoka, yeah. Okay, that's not too bad. It's really good. It's actually super cool. You can bring your own like food and drink onto the boat with you, so you don't even have to like worry about you know the normal. I think mostly team gonna support DRX because like it's this thing is happening in Korea, so yeah. How did you arrive? Take plane or boat? Bus, train, like yeah. इनको बोल मास्क निकाल अबे भाई No. I mean, well, maybe mask is really important honestly and साले चाहे लड़का हो लड़की हो अगर they don't want to show it they won't simple. I'm obsessed with K-pop. I'm obsessed with K-drama dude. Japanese drama, K-drama, Chinese drama, these all dramas I'm so I don't know. पर उनके like dramas में कुछ है ऐसा जो काफी addict हो जाता है. Especially the romantic ones. Did you watch the movie Bullet Train? No, I did not. I mean, I feel like the more emotions and the knowing of the person, other person or yourself is I got it from K-drama. Okay. But too much. Terrible. I mean, I'd give it like maybe like a 5.5. साला वो देख के प्यार It's हुआ like when I'm falling asleep, like something to put on and kind of. Yeah, you know, it's just trying to. But again, Indian shows भी कम नहीं है. Indian shows से बहुत अलग take वो मिली. ये देख इसको देख. Yeah. वो भाई गिरेगा चेयर से गिरेगा वो. It's a nice thing to turn your brain off and watch. Okay, I'm in. You know, considering you're talking about how much you love trains. I do love trains, actually. It is a weird thing that. तीन लोग एक बंदे को देख रहे You gotta meet Mimi so you can Naruto. chat with her about. Oh, Full on is she a Naruto. train person too? She's a public transport freak. Public She transport? loves going in about buses and trains. Oh, and whatnot. perfect. I am the same. I refuse to get a car here in Korea because I love the public transport so much. I just refuse. I'm waiting. Start क्यों नहीं हो You're रहा? waiting. पता You're नहीं on the यार. way. 3 weeks, I've been told, after 8 months of waiting effectively, that I will finally have a They are car. focusing on. I'm looking forward to having you as my chauffeur. So. Yeah. Dude, her eyes are I'm gonna charge very you beautiful. some like, you know, peak hour rates or whatever. Okay. for this drive. Well, maybe She's not. keep looking at like okay he will remove. Obviously, some people are probably going to be wondering why are they talking about this instead of What talking is about the tech game? pause? Because there's only अरे वो one मैंने round. pause लिया था ना कि मेरे को We सेट already करना covered what है. happened in the Like pistol round. तो So उसके बाद पता नहीं I'll मुझे. tell you what, I've got some interesting stats I wrote down that I was like saving for maybe this Or moment. This is actually maybe a pretty good they are moment. Why not? waiting We know it till was- और लोग So, आए. some problems here that I saw for 𝙬𝙤. I think overall Hi, Laz played Das. pretty well at lock-in. तेरी आवाज बहुत Obviously, धीरे some आएगी मेरे को volume लग रहा lock-in here. The concern I have for 𝙬𝙤 तो was, जग गया ये. you know, at Reykjavik last year, it's kind of this 1-2 punch. Yes, Laz was a phenomenal chamber player, Twitch. arguably top 3 chamber player in the world last year. Huh? But behind him it was 10, right? Whether he was playing Twitch Raze पे or मैं whatever. सोलबेरी को देख रहा हूँ. Really back things up with that extra punch, that extra firepower. But at lock-in, he was for first deaths. Valorant first Asia kills to first specific deaths, or he was 3 specific first kills versus first deaths. So 10 was really struggling. I need to see Cameraman him, बहुत आरामी really है. pick it up. And their full buy rounds VCT as well Pacific. for 𝙬𝙤 were really lacking. तेरी Overall, तरह हरामी है. 9 नहीं out नहीं of इतना भी 23 नहीं. full buy rounds they won. That's less than 40%. It's about 39%. सब चंगा सी सब They बढ़िया need है. to kind of find again. It this makes all Indian comes drama back to that special. culture that I was एक talking about earlier. That's what I serial really 10 need years. to No. see. I'm not talking They're about that. clicking, it's जैसे because फर्जी everyone आया is confident या in each other इंडियन and back. shows में बहुत सारे shows है और मैं भूल गया नाम. But अभी जो recent में है. a It's really decent good. start.
आईपीएल कैमरा है Taking a look. सही में We'll see if it changes once we actually do get the countdown going again and we get back into the game. But for now, it seems like क्या दिखाना चाह रहे हो भाई क्या दिखाना चाह रहे हो in the second round, so it's really looking to snowball off Remember of to like and that subscribe. initial victory. Just wait and see. Not even like he picked up multiple kills. I think he was only able to get one, if not. Last had at least Korean 2 or girls 3, why yeah. so Yeah, camera I shy remember, you know, होते Depp got that swing. He managed to take कोरियन that गर्ल्स क्या Mongo, इवन but इंडियन गर्ल्स आर आल्सो शाय didn't find a follow-up. जरूरी नहीं होता हर so बहुत सारी लड़के not- शाय होती है बहुत सारी लड़के भी शाय होते तूने देखा नहीं जब मैं एक बार बैठा तो मुझे दिखा रहा Pretty था hefty investment. मैं खुद We'll ब्लश have to कर just रहा था wait या and फिर वो see, हो गया था कि नहीं यार if मत he's gonna दिखा stick दे through with चाहना it once यार we do get into this. Obviously, we're waiting on word to see, you know, what the issue is at the moment. So far, we don't really know what the problem is. Is on stage, and we're working to figure things out so that we can get things underway. We know that you guys have been waiting for this about as much as we've been waiting for इतना this. लंबा टेक And, पॉज obviously, it does suck to find ourselves मैं here. फ्लाइट बुक करके जाऊं क्या उधर Only one round to play, but sucks a lot less for us than it does for the players. Who Oh, yeah. obviously, you know, आई थिंक दे शुड अपडेट कि हुआ क्या है Energy. getting themselves here, and then having that initial energy going like, okay, here's the first round, and then have it come to a screeching halt. It is a real kind of unfortunate thing to happen as a player. You got to find a way to keep that intensity. देखो और कौन-कौन क्या-क्या कर especially रहा for ज़ेडा, who came out swinging, had a Wait, great plan. Soul Berry भी नहीं कर रही first stream. round. You know, you got to find that momentum. यहाँ you gotta कौन कर find रहा that है? firepower YouTube still पे कौन-कौन throughout कर रहा this. है? I think like I'm really curious about, you know, like you said, I wanted to actually touch on this with Depp going T1 for that खड़े हैं। momentum. He's going to be for me a real key part. ओ of मैं this बता मैं team. सेम ये वाला लाने वाला था Last थंबनेल and ये 10 था को are बोल के kind of बट the मैं two फिर लाया players नहीं that मैं मन everybody नहीं thinks करा about. Oftentimes अरे for ये Depp is बावन सर को भी मिल also गया in that conversation as their main बस duelist now. और He's नहीं kind of कर bounced around some different roles here, but so far this year he has been हाँ, ये a भी jet अच्छा है। specialist basically. सब कर रहे हैं अभी तो And a phenomenal Everyone player. is I've waiting seen so many crazy for moments from it. him, particularly last year in their own league. Like he had this, I think it was a 4 or 5K on Haven where they put up a cosmic तो divide. खुना भी कर रही He was होगी like इसमें। playing हाँ around it with खुना an भी कर op रही है and like इसमें। jumping up all over the place. I mean, But his why mechanics are Asians crazy कितने good. कम He's a क्यों कर रहे हैं? multi-esport pro, a extremely talented player. In Japan, his nickname is the Child of God. I mean, that's how much like faith these fans have in this player, like, and how strong कैसे they अच्छा ये भी consider. अच्छा है Sure, I mean, we have seen सोलो we have कैप्शन seen का those ऑप्शन explosive moments. नहीं है क्या ट्विच पे Since that peak, since they Caption. managed to make that run, No. find that top 3 finish over at Reykjavik, it had just kind of started to spiral away from YouTube them. पे भी नहीं हुआ तू मेरे से A पूछ big part of that मैं is- बता is सकता हूँ Depp, क्या he's बात your कर रहे duelist player. You need to be able to rely on him to go in to be able to trade or trade up, not just try to bomb into a site or hold people off and then get picked and then suddenly you have यहाँ भी देख that लेता man हूँ एक बार advantage. So, well, we have high expectations नहीं है of this caption entire squad, but Depp is just as important as anybody else on this team. So we do need to see impact from him. Much, very much the same as we need to see from 𝙤𝙤𝙤𝙤, who's Yes. looking to really cut his teeth in this matchup and prove himself. Yes, thank you so much. So I wanted to talk about Foxy next. I think he's got a ton of potential. Like I've actually gotten to cast ये अब मान लो on मेरी बात हो रही है esports जस्ट series इमेजिन last कि year, मेरी बात कर a रहे हो little bit. I also सुनो। went to the Riot 1 event in Yokohama last year and was able to watch him play. He played Arena on Fracture, kind of a bizarre comp that DRX brought up that Fracture map with Mako playing Phoenix. It was a bit of an unusual comp, we'll call it that. But overall, Foxy, once he got comfortable, once he got into it, Oh, we're signing. Yay, let's go. Let's do it. Let's Not go too bad. let's go Got through that one, and now we can go ahead and get things underway Okay. once more as the timer. मैं रेडी हूँ down एक किल लेने पे मेरे को to पता 0. चल जाएगा Round can begin. You can see it's just going to be a ghost and a frenzy investment here for the side of DRX. 𝙬𝙤, we do have that Phantom stuck to here from the side of Depp. And otherwise, it's going to be Spectres and a Bulldog. Got a lot of utility here. Depp able to find some value हाँ, early with सही that है Phantom. परफेक्ट He is pushing forward. I mean, he just परफेक्ट है भाई ran इससे straight out ज़्यादा of the lobby, परफेक्ट कुछ looked नहीं across मिलेगा and तेरे made को it. Caught RB on the catwalk. Down, a little bit of spam through. Looks like a minor bit of connection coming in as Mako trying to look his way out of his own smoke, ends up falling. Stacks will be able to find Freddy one. ने मार दिया Comes उसको through, Zest taken down by the turret. And it's going to be a fairly swift and easy 2-0 start here for the side of 𝙬𝙤. Yeah, good fallback plans, and again, a pretty decent read here from 𝙬𝙤. The defense is in the place. In tree and short A, 4-10. He's Wait, able is to it lagging? I think it's work still with his lagging. teammates to really lock that down. I think Tommy Turret even snuck in a kill there, so good for him. But yeah, man, I mean, he is a Yeah, again, it's a really lagging. good Killjoy player. So I'm really excited to watch him kind of get to work here on this map. But कास्टर की आवाज़ कम कर standard दो result there, only one kill coming through for the side of DRX. As now finally we get to see the full firepower here. I think one Vandal in there, 4 Phantoms. So kind of the standard DRX stuff you usually Nice, see, right? nice. These days they're running usually 3, भारी maybe production 4, के अंदर maybe कुछ 5 नहीं किया। Phantoms.
and a couple Vandals. And this is all now preference. This is player preference. Dude, it feels like little bit lagging. Like it's not in 360. Like 60 FPS पे नहीं दिखा रहा है ऐसा लग रहा है. Looking to just clear some of that utility, but we can see that the alarm bot's actually set over by Tree through short on A, rather than here. So very कौन है? She is a Korean girl, Twitch streamer. Flash comes through. Oh, oh my God, my eyes! I was like, did we get dizzied? Okay, they're looking for the counter flash. Will end up being a 1-for-1. And able to answer. We were just underwater for a moment. That's all right. I mean, come on, man. This is the VCT थोड़ा Pacific, कम, right? थोड़ा और कम. You know, we're making waves. We should. Oh God. बस. I didn't miss this. I missed the casting aspect, but not the dad jokes. Oh no, I'm sorry. All right, well. Hello? Yeah. Hello? I've got plenty. You know what? मैं चल रहा ना. 8 months weren't that. तेरा अटक गया. Maybe we could have gone for a year. Ooh, that's a really good nano. Yeah. Really good nade thrown down just to stop that counter swing. Knew that they wanted to be able to push out. 30 seconds Zep left. just backing away, doesn't want to. I will refresh after this. Now moved into the site, they can go for this play. तेरे कितने नंबर पे? 44 seconds down to अभी 75. डिफ्यूज हो रहा. Laz at 66. Plant हो रहा है Diffuse street. हो रहा. Trying to get aggressive. अबे मेरा डिफ्यूज हो रहा. Now, the site takes out Zest. Suddenly things are starting to fall apart. RB's But on the defuse wraparound, complete. trying to approach Heaven, catch them off guard, but they're in onto the spike. They do manage to get the execution there before it hits half. The spray not Oh, no. connecting though. He's still sticking to this. They need to clear him Right, off. right. They just don't Oh, have the shoot. lineup ready. Mako can't get it done now. For DRX, but another really Okay, we were very behind. really well thought out round इसमें here for 2x Zeta नहीं होता Division. restart I think करना. you're seeing मगर some ठीक है अभी really ठीक है. interesting things come out. As we have heard today that Laz is now IGLing, that Laz is dialing up. So we saw in the pistol round. Bro, 10 is looking like ninja. They're going to give him enough time to plant to get set up. Giving me ninja vibe more. This time around, it's while the spike is going down that they pull the trigger and they bust everything up. DRX isn't ready for it. Zeta's able to have a nice coordinated close, but Mako. Okay, well, Mako clearly angry that he wasn't able to stop that defuse in the previous No, no, round. no, Does what put that role? rifle and carried forward into good use. Now we'll pass it over to the side of Zest as you get this plant coming through. So the nano swarm already set up here, right at the base of Heaven with the open hand depth. Starting to pull back away, wants to see if he's going to be approaching from mid, but Foxy9 is going to get melted out of hell. Dude, Zeta showing it off, man. Trying to go for the flank, and suddenly they're in with a shout. 10's got the lockdown available. He goes ahead and sends this out, and there's no way to clear this from the side of the RX. They do not have Oh no, he's dead. Spam coming in, looking to take him down somehow. Stacks doesn't take any damage, and in fact, will be able to find 10. A hell of a lot, though, and he manages to get Zep right before the dash completes. Couldn't get the shorty shot out. Oh, उसने 50 HP तो यहीं lose कर ली. Has to wait for it. Sees the operator, wants to pick this up, and now gonna have to just go ahead and make his exit. Will be able to find an additional kill, and he will get away with his life. So operator gonna be recovered, but DRX get themselves on the board. Yeah, this is a great counterpunch here from DRX. I was talking about how Zeta's been kind of having good changes of pace, good changes of strategy, and now it's DRX's turn, right? They come in with a very different round. This time it's just a fast hit. Their economy is pretty bad compared to their opponents, and they're still able to find this round win. And it's off the back of Mako, who is able to keep that gun over from the previous round, puts it to great use right out. I wondered जैसे अभी इन्होंने दिखा रहे हैं ना, imagine global esports का होगा उसमें कैसे बात हो रही होगी. एक कुछ बोले कुछ बोलेगा. मैं तो भाई इंडियंस होते मजा आता है. चल मार के साले. गया गया आ गया आ गया. Actually going to be yeah, gun pop. Go for the blades instead. He's pretty good with the op. Sure. Pro, pretty good with the vandal. Just goes ahead, clips Foxy. Dude, why Foxy is going all alone? Like, the corner there. The rest of the team now looking. There's nobody who can trade him. Like, it's twice now. They're talking about it. Last finds the shot. Now Mako dead, and assaulting these sites without your smokes becomes so. Okay, Killjoy is going back because Sova came to CT and marking. And so much information and space gained on A here for the side of Zeta that they're able He knows that one guy is beaming, so definitely another is pushing behind. Oh, he got 2. And 3. Game over. Third to go ahead and finish that out. Zeta re-stretched the lead now to 3 rounds. We're locked in. And Wait, they need to break the momentum now. Side of DRX, the only player with money, really, it's going to be Zest because he was able to carry over that rifle. So could go for. Foxy overheat कर रहा है. I feel like Foxy is doing okay, but no one is covering him. Yeah, I mean, this is
Maybe it's first game, so he just need little bit time to set it up. मतलब अगर मैं खेल रहा होता तो मैं शुरू के 3-4 राउंड जानबूझ के ऐसे ही खेल रहा होता और फिर मार. I think ये राउंड हम देख सकते हैं फॉक्सी कुछ करेगा. Okay, they're rushing it. Again, see, he's way forward than his teams. अभी रुक रहा देख. Okay. Oh no, Foxy, not like me, man. Strikes him down. He only got a single knife across. RB will find Laz. Just pushing forward, breaks in, does find 10. They still have to deal with depth. It's a good amount of damage there. Try to swing in, but no. Mako manages to get the push in the corner. Takes him down, but now it's Mako just trying to get this defense. Oh, he killed him. Now it is just Mako. Okay, he's low. He's low. He can definitely get 1 this. HP. Oh, nice. A thrifty will come across. Mako. But dude. Again, finding 3. Again, this is third time I see Foxy going all alone and no one can trade him. But okay, this one is not normal one. Like he jumped down maybe a little bit of jitters and there on that entry, just a little bit off with that blade storm, but he creates the space and yeah, he created the kind of gets Step stuck in a bad position where he's right on the stairs and Mako just swings the corner and he's got the op in his hands, right? They transfer. But he had a one bullet. He could have killed close him. quarters there with Mako. Mako able to take him down and find a 2 on the backside. Really nice through the box. Nice. Hello. TRX have कौन to आया? very heavily rely on Mako. Huh? Find either these opening kills or get that clutch at the end. Obviously, we know how good he is in those clutch moments, but want to see more from the rest of the team. क्या? So far, that has been lacking. Foxy, I mean, while we have किधर से आया seen तू? with this team on a stage before, it has not मैं पूरा B को ऐसे होल्ड कर रखा और 2 बंदे बाहर वेट कर रहे हैं. Sorry, mid को. But that's great. Like उसको पता नहीं चल रहा वो walk in करके आ सकता है, but he knows. That's why he's holding this angle. उसको पता है walk in करके आराम से आ सकता है कोई ना कोई. Now they got the info कि A shot पे opping कर रहा है. They're going for that only. What we want to see from Foxy, but I think, you know, he's a very young player. Obviously, if DRX has confidence in him, I do too. Depp here going to get caught. Just misses the shot. Oh, he's still confident. Foxy will be able to pursue deep enough to get that kill. That blind across. Oh, nice. 3 people coming from heaven down and blow RTA. Wait, he got... Okay, Zeta. The man was sniping from market. Ah, 3v2 will go down. 3 members alive with the side of DRX. Stacks down to 31 HP. See, now they know that they don't have any smoker, so one guy can play from mid. हाँ. थोड़ा पीछे. थोड़ा. मैंने reset किया वो हुआ नहीं. नहीं थोड़ा पीछे ठीक ही चल रहा है. I think they will save it. वो ऑफ ले सकते हैं, वो वहीं पे पड़ी हुई थी ऑफ. ना तेरी स्क्रीन ही पीछे चल रही है. मैं तेरी स्क्रीन देख रहा हूँ वही पीछे है भाई. तू बोल रहा है इधर से. हाँ तो 5-10 सेकंड का डिले होगा. क्या oh what? Looking for the ace to try to close this one out. No way. Breaks the door, but yeah, he just doesn't have time. He's gonna have to back away. They will go their separate paths here. As again, DRX finally able to string a second round together consecutively. But still, it's not clean. No, not at all. That is absolutely messy. And I mean, yeah. But guys, they did it. 4-3, come back to catch 11-1 and 4 for Laz right now. Yeah, I was expecting like DRX. तो DRX अपना मेन लाइनअप थोड़ी खेल रहा है अभी. मेन लाइनअप ही है भाई. फॉक्सी का डेब्यू वैसे है. हाँ तो वो उनका बज है ना मेन. फॉक्सी उनका 6th है. I don't remember. I think Buzz right now, and now you can see that even with the Sova utility. Oh, maybe they are trying something. कंट्रोल कितना मस्त है. हाँ but they're trying something. नया ट्राई कर रहे हैं. Unbelievable. It's like sheriffs. अभी तो बहुत मैचेस है ना उनके पास. Was the Sova utility going to be crisp, clean? Every team gonna do that. Absolutely. More of that, please. Yes. जी में भी फायदा होगा. रोस्टिंग नहीं खेलेगा वो. नहीं खेलेगा. 5 के पास है. एक भी इंडियन नहीं है आज. Oh, he gets a second one as well. Yep, there are 2 quick kills for the side of Foxy 9. Maybe. भाई ऐसा नहीं खेला. फॉक्सी पूरा पब गेम खेल रहा है. ये फॉक्सी क्या मारा है. गंदा था. मेरे से मार रहा है. मैं भी मेरे जैसा कर रहा है. बिफ तो तेरे जैसा है. Top mid. Trying to see if someone's going to go for that push through Gelato.
Now we'll start creeping back down और over towards उनके तीनों बंदे पीछे ऐसे खड़े होके देख रहे हैं। अब आया वो आगे। Unusual spot compared to where he normally is. Uh-oh. Dueling with a frenzy there. Definitely in So Wacko can play very behind. He can play easily behind. even more distance to make that frenzy a bit less उसके of a पास threat. TP है। Finds a single kill. 𝙤𝙤𝙤𝙤, not gonna be too much that he can do. Lurking in the smoke for now. Okay, never mind. Jumps out. He will find RP for his troubles. Making use of the judge, so He's a saving. little bit of value is found, but 𝙤𝙤𝙤𝙤 will pick एक up ओडिन और एक शॉट the spike will go off, so DRX are going to be able to फिर tie से this up ओडिन 4 सेव 4. करेंगे। Yeah, this is a nice comeback here for DRX. This is the cleanest round. You saying, you know, it's been really scrappy so far. Well, this one much cleaner. Now, yeah, 𝙬𝙤 had a few off weapons in hand, so this one much more favored. अब उनके पास अल्ट तो आ गई है ना। ये अब अगले के 3 राउंड वो आराम से निकाल सकते हैं। उनके पास अल्ट भी है, फिर इको भी हो जाएगा। पॉइंट अच्छा वो लाइनअप था। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। Phenomenal spray control there with the Vandal. Call coming in, you know he's in the smoke. Happens to get the lucky spray, but He's happy. The opening kills damn good here from the side of 𝙤𝙤𝙤𝙤. You can see him smiling now, feeling a bit more at ease. We'll see if that carries Confidence forward आ रहा है into the future rounds. Wouldn't have minded seeing a timeout here. The good part DRX with अल्ट तो हैं 2। Might end up being the case that it's going to Bring be this easily. Can't break this win streak. That would be DRX finding themselves on a 4-round consecutive streak. So that then might be the time. Drone, not sure if it was able to scout 𝙤𝙤 around the corner there. Asian may never hold back. Always rush. While in it. नहीं ऐसा नहीं है। Mostly one player always push forward. CS:GO में भी ये होता था। ओह उसे पहले हेड दे दिया। One. Nice shot. भाई ये ओडिन क्या चला रहा है लोग। Now looking to clutch this out. I mean, these were two of the biggest clutch players for DRX over at Lock-In. हाँ वो अल्ट लेके बॉम्ब ले लेगा। Be able to get over towards B lobby, but the spike is still going to be stranded in mid. Yeah, this is now really challenging. They're going to have to find at least 2 picks, if not wipe out all of 𝙬𝙤 to win this round at this point. 𝙬𝙤 Why are they holding it? firmly camped around this spike. Okay, of course the ult can grab it and it's out. Wait, I saw on radar it somewhere else. I didn't notice that he had that one available. Yeah, I'm getting used to the new UI. RB, you can see with the lockdown at the ready, can't easily clear this out. If he places it behind the box, I think counter ult करना चाह रहा है। so just waits as much as possible. Expecting that the team is going to be close. Still playing forward into this one. They have their own lockdown. Now dropped in. Mako starts moving forward. Pushes out of his smoke. There's no one covering it. Okay, the bye. chain goes across. Does get the catch there on the 10. So for now, it's just 𝙤𝙤𝙤𝙤 and 𝙤𝙤 trying to go for the retake. And Mako will find the first. Nice shot. You can see the call is coming. Mako actually daring work कर दिया। Mako जिंदा है भाई। DRX Mako are going to be able to मारेगा। take this round as 𝙤𝙤 and 10 go running to the hills. 𝙤𝙤 will bring around a Oh, he missed. the timing. Takes the updraft over the wall. Will manage to make it out to safety. He holds on to the operator for yet another round, but 𝙬𝙤 let another one slip away. Man, that was so close. 𝙤𝙤 plays this early round so well with the pinch in towards क्या टाइम चल रहा है मनन तेरे पे? 0 1 2 0 119 17 perfect hold, the perfect timing. Just gets the spot 17 पे रुक first गया। kill with the op in time, then backs right up. इसका stream Everything देख रहा। looking like it's, you know, going 𝙬𝙤's way, and then हाँ वही अर्ल नहीं करना चाहिए था well, ज़ेटा 10 को। and 4, पता नहीं उसने अर्ल कर comes क्यों through किया with जो his उससे ult, पहले कर grabs दिया। the spike, gets it down, gets up, clears the Pause हो lockdown, गया। which 10, 17 I don't know what exactly happened with the comms there for 𝙬𝙤, हाँ, a bit of a 17 breakdown, but they were able to, you know, DRX was able to push out and get that, and then that makes the round so much more difficult for 𝙬𝙤, because that's a big key towards, you know, giving themselves the space and time to set up. You know, you want everybody in boat, then you know everybody's going to be in boats there, and you could try to push through, or if you're real lucky, you know, everybody's just detained. Looks like we might have another tech pause here, waiting to get confirmation that that is the case rather than, okay, it's a timeout at the end, never mind. Okay, so we'll go ahead and fly that. So 𝙬𝙤, this is the moment. We were talking about it. You know, they give that 4th consecutive round away to DRX. Now this is time for XQ to come in, pump the brakes, and try. मैंने अभी नोटिस किया इतना साउंड नहीं आ रहा। Yeah, it's kind of, you know, find that confidence, find those Another good time moments. But it's been good counter ideas from DRX and of course some heroics from Mako Huh? that have put them back ahead now. ये नहीं पता। So
आई थिंक जेटा का ही होगा क्योंकि वही उन्होंने मोमेंटम लूज किया। Zeta wants to come through here after this time. जेटा का ही है कुछ नहीं इशू तो बोल रहे साउंड नहीं आ रहा, किसका साउंड as well, potentially साउंड वो कास्ट से आया, गेम का इतना नहीं आ ideas to start. They came out. रहा। अच्छा आई थिंक वो कह रहा है जेटा का जो बंदा है वो कह रहा है अब उनको कि मेरे को ऐसे घूर के मत देखो। As we're used to finding good adaptations, and that's kind of the भाई कितना पसीना देख आ रहा रहा है that मैंने I'm घूर के looking भाई। for DRX this season in VCT Pacific is adaptations, mid-rounding. I think DRX, when I watched them at lock-in, I thought they were just a bit too static. I thought they're pretty readable on their post plants. God. You know, you think about Pearl, you know exactly what they're going to be doing, right? You know exactly how they're going to be set up. And we saw this with Zeta, the way that they countered it. You know, clear Mako out of B main, and then you can start working through the rest of the B site here on Ascent. So I like, but that being said, right, we have seen those adaptations. We've seen Mako lurking in mid. We've seen him putting pressure in different parts of the map on those post plants on the B site. So everything that I'm seeing right now Korean from both streamer teams के is साथ really encouraging. And this is a great start. अच्छा सोल अबे यार तुम लोग This is our inaugural match. What a way to kick off the VCT. वो है ही नहीं, वो नहीं कर रही Coming in here and now we're making मे बी waves. शी इज स्ट्रीमिंग I ऑन love it. समवेयर I gotta go with it. Wait. All right, well, we'll see if this timeout is going to work out here for the Nope. side of Zeta, because stopping DRX from getting more rounds on this attacking although मैं side is उसको absolutely दे paramount दूंगा to be able अपना to ये take this map away. मैं सोच रहा था डाल दूंगा बाद में Monumental for Zeta to be able to take this series. बट फिर ये मोहित उसको डिस्टर्ब करेगा। History, we've seen it. DRX, when they shift over to the defending side, that has been where they feel the most dominant on this map of Ascent. ये देख ये मार खोते आगे नहीं, ये देख कितना, अरे he's all alone. No one can trade him again. This is like sixth or fifth time he's doing this thing. Okay, they all rotated B, but what's the point? भाई ऐसे तो मैं भी करता हूँ, मुझे तो गालियाँ पड़ती हैं। मुझे तो अच्छा नहीं खेलता। भाई एक सेकंड, वो कौन सा उसने मारा कुछ किया, उसने दरवाजा बंद किया, वो टूट जाएगा 2 सेकंड में। तू नहीं करता ना दरवाजा बंद, तू पुश कर देता वापस। Oh my god. Not here. The window broke. Yep. Zest just pushed straight through. Depp didn't pay it a second, any amount of attention really, and just get struck down. He had to be the catalyst to turn मोहित this को बैन कर around, दूं? stopping them from getting that सही spike planted, but instead just tunneled in. कौन बोला मुझे staring बैन कर over देने को? towards मैं main. देखता। Doesn't realize that he's getting a flanked. भाई वो अपना ओपिनियन दे रहा है बस। Drone gonna be canceled before he can enter the smoke. Oh, he jumped down. Drop down. Crow trying to check left side, isn't ready for stacks to be hovering behind Jen. He's just Sugar 0 and 10 left. Wait, what? Swing timing. किलजॉय ने इसको मारा कैसे? Still 3 more players to try to अच्छा get वो both उतर guys. गया। Players actually assess will fall. Mako finds one. Mako alive in this position. भाई अगेन इसका क्लच रेट ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। The timeout unfortunately does not deliver a round win here for the side of Zeta. DRX Mako है भाई, Mako। No, I mean he chose the duelist, I get it, and he did something, but again, जैसे कहते हैं esports में mostly I've seen even duelist players also, उनको ट्रेड लेने के लिए कुछ होना चाहिए, so he didn't do that. डेप क्या कर रहा था उसको? अच्छा बहुत जल्दी किया। Like you said, seemingly didn't react to it. I think definitely ये क्या हो a रहा है? shock that they came through tree that quickly. Clearly they were not ready for it. Crow wasn't there to back Depp up, so I Depp don't was know. more just kind of like, you know, play for a one and done position, but Zeta, मतलब excuse तू me, भी Zest कोरिया just didn't even चलेगा। give him the chance. Now, this is an open A site here. Look at this crunch. फिर क्या? And it's going to pay off. They just get 4 players Lo. out of the B lobby. कोरिया में Arby's taken down. Mako अगलेगा। moves forward. Depp now chasing. Gets himself up the top mid. तो The वो? laser coming in. Mako's just got a high tail. He's trying to get it, उसको उनको पता भाई ये हो रहा गेम। Completely and utterly surrounded. Mako डेप ने इसका पुश कर tucked away in line, but only 35 HP to work with to try to hold that position. Where he gonna Like smoke? the change of pace here from Zeta. Let's see if they can convert on it. Okay. They get the pick. Now it's a 5-man. They shot him in both smoke. A monstrous Thrifty if they can get it done. I thought maybe 10 was going to do it again with a smoke entry, but instead Zest manages to hold it down, finds Crow in troubles as well. What? He's just drifting, lands on top of Jen, manages to find He's stacks, but flying still and there, killing it. holding things down. A third kill भाई coming ये through. क्या Sugar था? Zero now on his lonesome. He knows that Sometimes I Mako's feel low, like but he can't get the they shots just to do connect. whatever they Now he's just gotta like run do, away. कुछ भी It's the कुछ भी initial कर तेरा दो। वो है, Zeta तेरा वो is है, तेरा वो absolutely brilliant. फ्लाइंग Zest ऑफ शॉट got याद नहीं तो ये। spike, but हाँ but Mako will still find Sugar Zero, so the अबे वो तो ऐसी पब में अलग होता है, इसमें तो like उसमें रेयर लकीली Yeah, and only one more round to go here. हो जाता है। भाई ले लिया DRX ने पूरा It moment। looks like they're going to लगातार squeeze out, सारे ले लिए। you know, a
decent amount, but they have to, a form of a buy, but they're going to have to cut a little bit of armor and switch to a judge with 4 other rifles here for the side of 𝙬𝙤. So yeah, absolutely not being able to keep that extra rifle, really, really devastating here potentially for 𝙬𝙤. But I like the idea from 𝙬𝙤. I like getting out on the map. I like the crunch they set up. I like the way that they fanned out for the retake, trying to come from multiple different angles. But you know, the way Zest played that up on point inside of the smoke, just caught him off guard, gets 2 big kills, and then the whole thing just unravels. I don't know how _Depp got that kill. I don't know if his, like, you know, his toe barely touched the top of Gen, like he's doing a little ballerina dance. Yeah, you know. It's more about, I'm more impressed that he didn't. Guitar. Guitar भाई एक round देखने के बाद लेसन हो जाएगा ना. But either way, he'll now find himself with a judge in hand. Obviously has the Blade Storm activated. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने मिड बनाने का सोचा, जहाँ पे उनको पता है बी मेन पुश हो सकता है, तो उसने अलार्म और टर्रेट दोनों लगा दिया. जब तक वो मिड कंट्रोल लेंगे तब तक एम इन वाला बस बंदा देख रहा है. ये होती है जो कॉम्स होती है ना रियल में. वो चारों के चारों ए शॉट के लिए जाएंगे, एक एम इन होल्ड करके लेट आएगा. ओह नो. ओके, सोवा को थोड़ा टैग दे दिया उसने. ओके, एम इन गॉन. Wait, he didn't get the sound? उसको साउंड नहीं है कि वो भाग के राइट्स में गया है भाई? नहीं आता. आता है, क्लियरली आता है. बहुत सारे साउंड आ रहे हैं, वाइट साइड. अबे भाई बहुत सारे साउंड में भी आता है. मेरे सामने अगर बंदे भाग रहे हैं, जो क्लोज आएगा उसकी ज्यादा साउंड आती ही आती है, दूर की ना है. अबे तो वाइट साउंड की वजह से थोड़ा होता है. भाई मोहित, तू कस्टम में 011 लेके बैठता है, तू क्या साउंड की बात कर रहा है? That's concerning. I mean, I was really excited about the way भाई क्लियरली साउंड आता है यार. देख वो भाग के आ रहा है, वॉक इन भी नहीं किया, वो भाग के गया है. अरे उसे आवाज आई, उसे लगा कि वो छुपा हुआ है उस पोजीशन से. डूड जरा भाई अर्जुन एंगल तो फिर भी देखता है ना बंदा, वो वाला राइट में. देखा तो था उसने 1 सेकंड के लिए. नहीं देखा. देखा था. देख के अरे जब देखा फिर वापस लेफ्ट गया. लेफ्ट वाला क्या है? ओके, जब वो जो भाग के आ रहा था ना, तब उसको एंगल होल्ड कर रहा था, क्योंकि लेफ्ट से तो कोई मार ही नहीं रहा, वो होल्ड कर रहा है एंगल. वो मतलब ऐसा हो गया कि छुप रहा है, छुपने की वो था ही नहीं. हल्का बॉक्स के पास छुप रहा था, वो तो पता होता बंदा आ रहा. अभी उसके साथ खेल रहे हैं, बस फॉक्सी नहीं खेल रहे हैं. नहीं बस नहीं खेल रहे हैं. बस नहीं खेल रहा. सब बस वो खिला नहीं रहा, खेल नहीं रहा. अभी चूती क्या सवाल हुआ? अभी मतलब खिला नहीं रहे तो मतलब उसे सब निकाल दिया, और खेल नहीं रहा मतलब कुछ वो था पर्सनल रीजन से सिक्योरिटी का है. जरूरी तो ना होता है. देख सबको इतने देख मैचेस हैं. सुन सबके मैचेस हैं, ठीक है? तो इसमें वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं. अब एक को बैठना है, उसको बस को बिठाया होगा. सॉरी फॉर लेट नोटिस, आई विल नॉट अटेंड टुडेस मैच ड्यू टू पर्सनल रीजन. बस ने ट्वीट डाला हुआ है. पर्सनल रीजन कुछ नहीं है. क्या मतलब उसकी बंदी क्या वेट कर रही है उसके लिए? हैं अरे भाई कुछ भी हो सकता है. अबे नहीं, अबे गधे देख मैं बताता हूँ, सिंपल सा है. तुम्हारी टीम में 7 प्लेयर्स या 6 प्लेयर्स हैं, खेल तो 5 ही सकते हैं. तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये टीम के अगेंस्ट हमें कोई इतना कुछ करना नहीं है, हमारे पास बहुत मैचेस हैं, हम इन टीम से जीत सकते हैं चाहे कुछ भी हो, तो क्यों ना वी ट्राई समथिंग न्यू. तो उन्होंने ये सोच के ये किया होगा कि फॉक्सी को एक बार खेल के दिखला के देखते हैं. झूठ थोड़ी बोलेंगे प्लेयर. तो अरे तो वो रीजन थोड़ा देंगे कि भाई ये पर्सनल रीजन, मतलब कि टीम का कोई डिसीजन होगा. अब ये थोड़ा बोलेगा वो सबके सामने कि भाई टीम का डिसीजन है, हम लोगों का डिसीजन है, ये बड़ा चीज है, थोड़ा बोलेंगे बस पर्सनल इशू. अबे कैसी बातें कर रहा है? कल को एक बात बता, कल को मुझे नहीं खिलाया, मैं क्या ये बोलूंगा भाई मुझे नहीं खिला रहे ये लोग, तो देख लेना इन लोगों. अभी VCT लॉकइन में एक दूसरे का सर तोड़ दो. अबे रुक जा भाई, मेरे को एक्सप्लेन करने दे. VCT लॉकइन में भी एक टीम ने ना एक प्लेयर को एक मैच खिलाया, तो कोरियन जेट था, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उसका. उसे एक मैच खिलाया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड मैच में. भाई यार उनके पास प्लान होगा, ये थोड़ा ना करेंगे पर्सनल इशू. यार मेरा गेम नहीं चल रहा, किसी और को खिला लो. अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है. हाँ तो ये थोड़ा वो उनका पर्सनल रीजन ही हो गया ना, टीम का डिसीजन है, उन्होंने सोच समझ के किया होगा. क्या नहीं आया? कोरिया में तो रह रहा है वो. अरे भाई अरे नहीं, मैं तो जहाँ तक ये कह रहा हूँ ये हो सकता है. छोटा सा थोड़ी हाँ हो सकता है, तेरी बात मान रहे हैं. मोस्टली यही होता है कि वो नया कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, वो नया वो कर रहे हैं ट्राई. अब अगर वो पहले रिवील कर देंगे स्ट्रैट्स अपनी कि हम ऐसे खेलने वाले स्ट्रॉन्ग ये सब करके, तो क्या
क्या पता उनके लिए जेटा नॉर्मल टीम है उनके लिए। तो सपोर्ट किसे कर रहे हो? DRX। मैं तो DRX। देख मैं अभी बता रहा हूँ DRX पूरा पैसिफिक में टॉप पे है, फिर आता है तेरा पेपर एक्स, फिर आता है तेरा टीम सीक्रेट, ये 3 टीम्स तो पक्का हाई पे है। बाकी gen.g का पता नहीं, थोड़ा दे आर माइट गुड। अरे मुझे लगा वो .g है शायद उनमें। तो वैसे शॉर्ट फॉर्म है। भाई तालुआन को तू क्या एक्सटेंड का एक्स रोस्टर है वो। अबे चल ऐसा कुछ नहीं होता कि फैंस को बुरा लगा तो नहीं खिलाएंगे। ऐसे तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट में रॉसी को कभी हटाएंगे नहीं क्योंकि रॉसी का ज्यादा फैन बेस है। ऐसे नहीं होता, वो टोटली टीम डिसीजन होता है, ढंग से होता है। और ऐसा नहीं कि दोनों साइड से होता है कि मेरे को अगर कह रहे हैं कि भाई बैठ जाओ तुम्हें बेंच करने सोच रहे हैं ये सब, तो मैं कहूँगा मुझे क्यों कर। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस है तो मैं बोलूंगा हाँ नो आई वांट टू बी, मैं कर लूंगा। फिर भी नहीं हुआ तो मैं कहूँगा ठीक है। ऐसे थोड़ा होता कि फैंस को बुरा लगेगा तो नहीं खेलना तो पड़ेगा, चाहे हार जाएंगे कोई नहीं, खेलने दे इसको। ऐसे नहीं होता। ये क्या कोई कंटेंट क्रिएटर मैच चल रहा है कि एक लड़की आएगी 4 जनों को अच्छा ले आएगी और वो जिता देंगे यार इन लोगों को। भाई देख तो लेने दे तू इतनी। Try to show them some confidence that you get those rifles in hands that you believe that they can get something done, but a spot came through there. 10 tries to play off of it. भाई बहुत एग्रेशन में खेलता है। रॉसी प्ले है इसका भी थोड़ा कि आके जाके पीक्स निकाल के आना है सब। फॉक्सी के अगेंस्ट नहीं खेला तू कभी? खेला हूँ मेरे को पता नहीं ना, याद नहीं रहता यार। फॉक्सी 9 नहीं याद है, फॉक्सी तो याद है, फॉक्सी 9 याद नहीं है। 3 फॉक्सी है अपने सी में। ऐसा हाँ कर ले जंप करके। ओके मैको भाई मैं प्यार से मैको बोलता हूँ। प्रॉब्लम है तेरे को? तेरे को प्यार से हम मोहित की जगह चूतिया लंड सब बोलते हैं, तू तेरे को दिक्कत होती है? होती है दिक्कत? चल कोई नहीं, 0-11 कोई बात नहीं। अबे 12 था वो तो सही बोल। 0-12 नहीं और ज्यादा था, 0-15 था। अबे बोल रही कौन याद दिलाने को बोल रहा है। I mean, he still finds 2, and that's totally fine for Stax to be the one to die. But they clearly knew that they were going to be pushing, up through market, and then once you shut that door, again he's going forward for the peak. They either have to, and he saw one, he came back. भाई 360 हर्ट्ज पे खेल रहा है। Potentially gun down 3 if not 4 of those players. नहीं 240 पे 2 लैंड 240 होता है। नहीं 360 होता है। ट्वीट करा उसने 360 है, एक प्लेयर ने ट्वीट करा है। इंडिया में 360 होता है। सॉरी अभी तक किसी भी लैंड पे 360 नहीं था, ये पहला लैंड है जिस पे 360 कर रहे हैं। हां वही चैंपियंस में भी 240 था। बस वो एक टैरिक इनविटेशनल था जो उसमें था 360। तो फिर फाइनल्स में भी वही तो रखे थे। ब्राजील वाले अबे ऐसा नहीं है जिन्होंने एशिया पैसिफिक वालों ने जिन्होंने होस्ट करा है उन्होंने कर दिया 360। हां ये भी है होस्ट वाले। अबे तो कहां पे दिख रहा है कि आगे किस गेम से? हां बे मैं वही तो मैं पूछ रहा हूं, इसके आगे की चलती है। ट्विच पे देख रहा हूं। हो गया, जीत गए, खत्म भाई। मोमेंटम ही आ गया उनको भाई। मतलब वो शुरू के 4 राउंड जीते वैसे फिर सारे हार रहे। वो था वो सोलोमनन। मैं तो क्या कहा था DRX जीतेगा। वही तो अबे वो एक राउंड पता है, वो एक राउंड जीतने के बाद जो उनका वो आया ना क्या कहते हैं टेक पॉज, उसके बाद उनको थोड़ा सा मिला, फिर उसके बाद वापस तो बोल दे भी जेटा जीत जाएगा। नहीं भाई जीतेगा तो DRX। देखा कर से भाई दिल से जो लग रहा है वही बोल। क्या पता है मैप DRX का है। हाँ DRX का मैप है। अबे भाई तो भी ऐसे मारे पर्ल में भी मारेगी DRX। ज्यादा ही मार रहे हैं। हेवन तक जाएगा ही नहीं मैच। और चला गया तो देख लेंगे। शर्ट भाई वॉच टाइम मिल जाएगा। Suddenly, it is just 10 left standing.
Spectre in hand, no spike भाई round. क्या है, जल्दी करो फिर जल्दी हार भाई, क्या है ये, क्या खेल 1v2 1v3 है. Spotted on right now by RB. Yeah, the com's just great here for DRX. No The way way they he react can to bring this everything's so back. good. You know, they know the space that they've अगर ये given up and they know 10-10 how to अगर ये react to जीत it. गया Once again, तो ये लोग it's जीत जाएंगे. Mako there. ना फिर भी नहीं जीतेंगे, इनका इकोनॉमी नहीं है. Fragment to back him out of that window. Don't even ना ना give Zeta the जीतने पे भी इकोनॉमी उतनी नहीं रहेगी ना. एक कॉन्फिडेंस की बात करूं मैं, कॉन्फिडेंस से भी क्या हो जाएगा देखना. देख मर गया. और वैसे भी अगर देख अगर ये नहीं जीतते तो भी हार गए क्योंकि इकोनॉमी तो जा चुकी है उनकी. जीतने पे भी कितनी इकोनॉमी मिल जाती है उनको. And I am, you know, I'm a little concerned for Zeta. Yeah, I mean, granted, this is, you know, obviously अब क्या बाय करे वो. of DRX. We know how strong they've been on Ascent. Granted, it did look a little bit wishy-washy for them. बस ये है कि वो जेट को और दिला के उसका नाइफ आ जाएगा, ये कर सकते हैं. या फिर नहीं तो क्या कहते हैं केओ को नाइफ दिला के रशियन करेंगे. ये दो चीजें हो सकती हैं. तुम बैठो, मैं तेरी स्क्रीन देख रहा हूँ, तुम लोग बैठो. तो बहुत पीछे चल रहा है. We have seen a decent amount of impact from him. Yeah, it's not their best map, but it's definitely a strong map for DRX. I'd rate Fracture as probably their best map, but I think, you know, still a formidable opponent to anybody, as we have seen time and time again against FPX last year with all those phenomenal games on this map. Soundly. यार. I think he got the tag. He did. Chunk Dep down, 54 HP remaining. He's going to try to get this push across, and it's actually going to be Crow from across the way over in B lobby who's got Dealing that वाले ने cover मार fire. दिया instead of. Good headshot on the stack, so yeah, really nicely done. At least evens it up and avoids. उन्होंने देख कितना सही कंट्रोल ले रखा है. Very much in this round, but you can tell they're still, you know, taking stock in the state of the map right now and figuring out where they want to go. Seems like it is going to be a slow creep over towards the A site. They smoke off Foxy9. He's going to break the window. We'll be able to hear that. The drone starts leading the way. Mako set back, sends out the paranoia. That should tell 𝙤𝙤𝙤𝙤 exactly where he's positioned. Now he knows. He's got visual confirmation. Tonight finding some good value. Let's see. They get this spike down. DRX still holding firm. He's trying to fake it, but well, okay, now he reveals it. Still spring across, takes 𝙤𝙤𝙤𝙤 down to 47. Spike does get planted. हो गया ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया अब तो. This is tough, बस man. उनके केजे को अगर किल मिला To make the first move. Foxy just and might can be for somebody to changed. stick their head out. Oh no यार ये स्पैम नहीं चाहिए था. Damage. They spray up into heaven. Dep, I think, is slightly off angle. Now they spot him. Mako ends up falling. 𝙤𝙤𝙤𝙤 under the kill. There's the drop One down. Foxy9 finds one. Knows that there's another He in got hell. all. Ping's coming Oh across. ये right Gets on the click नहीं right हुआ. click. Last, however, still Howard gets tagged up just a bit. Down to 45 HP. After the spike, the drop down from heaven, and suddenly it's just Zest, and he will end up. यार falling. आरबी अगर मार Zeta, लेता they ना managed to go ahead and get themselves फिर alive आ just जाता a little आराम से. longer. A 5th round victory found, but they need बट ठीक है अब 7 उनको more मिल in a गया. अब row उनके before पास they अल्टी get अल्ट this आ OT. गया. Yeah, Zeta just able to squeeze through the defenses of DRX here. Now, Wait, DRX they have can Zeta can do it again. 1-1-1-1-1 उनके पास भी across अल्ट आ the गया. map. One at kind of B main, A main, and then one at the shorts. One in mid and one towards short A. I mean, Foxy there, that is fast and clean. Really nice shot with the op. But 𝙤𝙤𝙤𝙤 here kind of doing his best Mako impression from A main. Getting some big kills. Laz always good for it. Underneath, he's very clean. As we've seen time and time again. Let's see if they could string together a few more here. Maybe give us a show, give us a bit of a map. Big ults across the board. Oh, And he got Foxy! Woo! Just pushes the corner. Everyone's staring at the mid arches. No one has eyes on Foxy. 2 quick kills to just snatch the wind right out of the sails of Zeta. That's the confidence you want to see out of this player, out of this rookie. That is exactly what you're looking for out of DRX. Dep, while he had just a stinger in hand, he also had those blades, and now they are completely and utterly worthless. Discord plays it dead on the floor. Nice little snipe. Laz again looking to recreate some of that magic we saw earlier, but this time 300's Fury shots go across. He finds nothing. Crow with a nice lurk, however, does find Zest. हुआ क्या था यार मैं ये वाला देख नहीं पाया. कोलैटरल लगा Foxy से. फॉक्सी ने कोलैटरल लिया. हाँ. कहाँ? ओ अच्छा. ए शॉट से हाई मिड. लॉल. Out of Crow there to make sure that he was able to escape safely. Smokes are setting up for a B push potentially, but maybe a fake. 30 seconds left. It's a check actually, I believe, into spawn. 𝙤𝙤𝙤𝙤 trying to see if there's anybody wrapping around from behind.
Instead, they will start approaching on this A site once more. Door broken down. Foxy there. Okay, go for ace, bro. Go for ace, bro. Go for it. Come on. Shot not gonna connect, but there's only 10 seconds remaining. He draws out with the classic. The first right click going across. 36 HP on Sugar Zero. Nice, GG. Lol, nice movement, bro. And Foxy 9 will find an ace in his. देख रहा है जैसे शॉट्स मारता है ना थोड़ा बहुत तो है same. How about that? There you go, young man. Coming out big, coming out strong. I think he's playing on mid sense. The opener for Foxy 9, little slow to start, but everything you wanted to see here at the end from him. पहला मैप ही हुआ है अभी तो. The way he was Debut days, starting yeah. to heat up with that op, those flicks were fast, they were furious, they were confident. भाई तुम रॉसी से बहुत प्यार करते हो ना? क्या रे? ऐसे रॉसी मूवमेंट था. For the side of Zeta, it's okay. Obviously not the result that you're looking for. I think that we could all kind of assess coming into this. Okay, DRX picking a scent, they're going to look very strong. ये क्या कर रहा था ये? कह रहा है मैं नहीं जा रहा बाहर. Absolute bread and butter for them. It is a great start, but only being able to get 5 at the end वो of collateral the देख रहे हैं लोग. picked up on their attack half. It's definitely not what you want to see, but what we now need to see from Zeta is Same against VLD. course correction and cleaning things up कोई from इसका that वो moment we कितना saw है? them show versus Leviathan. They need to have a strong performance here and take this to a third map if they want to hope of winning this out. And even if they can do that, That's still not where you want to play DRX. yeah, it's still obviously a rough position. Yeah, to he's be playing in. on mid Either way, only. I'll take a closer ज़्यादा look mid नहीं है, second low one mid है. to just let me know that Zeta has been working on things, that they have been improving since that peak at Reykjavik. I think Because we certainly. don't want that. We want them to get back to Yes. that point, is what I should say. I think certainly Pearl should be a much closer affair. I mean, they pushed, Leviathan to the limit there, 11-13. Didn't quite get the OT, but it was close. Yeah. They played really well. Here on Ascent, the expected result, of course, we would have liked to have seen Zeta continue that hot streak they started with. But one thing that's concerning for me here is 10 and Laz come out the gate. I think 11 kills in round 4 or 5 between the two of them. 11 and 1 at one point. And now, they end up the whole match, the two of them, 15 kills each. So 4 kills the rest of the way. Yeah, a bit rough there. I mean, a really hot start, really fiery. But clearly, DRX just working to get the gears turning here in this opening map. And now they are. What is high mid low? I think from 200 to 300 is, I feel like 150 से 250 और 300 तक low sense है, 300 से 400 mid sense और 400 plus high sense. That's what I believe. बाकी सबका अपना अपना फंडा होता है वो सभी लोग. What does Pearl look like for me? What does it look like for DRX with इन बच्चों को अबे पागल है क्या? मैं उस वे से ढूंढना खाता है. I was just saying कि पता ना कि रॉसी ऐसा खेला वो सब खेला. So that's not कि भाई even I like रॉसी में. मैं उसका स्ट्रीम बहुत बार देखा हुआ है. So I know it. और बच्चे नहीं. Even age of like 20 also watch. अब वो भाई हाई लेवल दिखा रहा है, दिखता है वो सब, तो फिर why not? आज किसका मैच है? अभी तो ये चला DRX वर्सेस Zeta, फिर उसके बाद 5:30 G वर्सेस T1. एंड इफ यू वांट टू नो T1 में क्या कौन सी टीम है, तो साउथ कोरिया की एक और टीम जिसमें ये सब है. मंच के इन सब का खेला है, कार्पे, मंच, इंट्रो के साथ नहीं खेला, Zeta के साथ खेला. And they are good too. But recently they are losing a lot. What do you guys think? T1 versus G में क्या होने वाला है? I'm kind of thinking G जीत जाएगी. But again, T1 kind of tough हो सकता है game. Will you be playing Valo? I think after G match, I might play Valo. No bro, saying कि ये जैसी मूवमेंट है. Dude, every jet मूवमेंट ऐसी. मैं पब में ऐसे ही खेलता हूँ जैसे इसने भी खेला. सब सेम, सारी मूवमेंट जेट्स की सेम ही होती है almost. So it's not wrong to say कि Rossi ऐसा, but yeah, if you see scene and सबकी जेट का एक ही सिस्टम है, सबका सब सेम ही होता है. When they are open, particularly. अब जैसे बहुत सारे कम जेट्स का है, जैसे मेरा वाला प्ले है कि हम लोग सिर्फ एक शॉट, एक क्लिक करके पीछे हो जाते, डैश मार देते ना, लाइक हम एक तरह से वेस्ट ही करते हैं वो. बट हाँ,
वो कम में चैंपियन 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। मुझे वो देखनी है, क्या पता नहीं क्यों बहुत मजा आता है यार। Okay, so what they are saying, stop spreading Jing military rumors. Jing has to go there. I can smell the burning. Just imagine VCT Pacific with no G. How awesome that would be, huh? Wait, fight कहाँ हो रही है? Top 3 teams will go champions, right? यार इंट्रो अच्छा है। पेपर एक्स में समथिंग है तो इस बार करो। हाँ इस बार तभी कह रहा हूँ, पेपर एक्स भी स्ट्रॉन्ग है, बट even if you have 5 duel doesn't mean you're gonna win. Way to end the very first game. Foxy9 was like, if any of you guys had any doubt about me, let me change that perception right now. Yeah, I mean, he proved why people have been clamoring to see him, right? The fact that he got an ace, very impressive, but also the way he got that ace with his just pure mechanics and game sense at the end to like force the spike plant, just so he can get that easy right click with the classic. This goes to show he fits the main stage. He is ready for the main stage if they ever want to bring him back for more games. I mean, DRX already looked very scary. Now we've got Foxy9 coming out here. And a very important first match here and playing brilliantly. Again, DRX looking more and more like a threat here. But you know what? At the very beginning, it didn't look like it was going that way. 𝙬𝙤 was really showing up. Dude, look at from 6 to 16. Yeah, I mean, we can see it in the scores like as well. I mean, almost 10 rounds they won. 9 in first kills. The overall score should have been closer in theory, right? That means momentum was बहुत गंदा able to कर get some of those first picks, and a lot of them were coming up from Laz. I mean, sometimes he was picking up that operator as well with the Sova. He was fragging out, the casters are talking about it. But at the end of the day, once they got that operator, and then DRX started to strike sites a little faster, they had to always save that operator, meaning they were keep giving up rounds, and they couldn't ever catch back up. Yeah, we see Stacks here playing out of his mind. A lot of times we okay. have these starts to instead of KD उन्होंने kills where he दिखाए does total start out like a dead end 3-1 or a 4-1, and it starts to look more thought वैसा one-sided. But KD it does seem like when you get a team that really knows how to play in all situations, you know, the further the game goes, the more utility you're going to have, the more stuff you have in your kit, which means it's, you know, the more opportunities you can create. Yeah, and again, kills were going both ways in the beginning, and quite frankly, the flow of it, and we even see Foxy, he looked a little shaky. The casters talked about it, the jitters were there, but you give them enough time, right? Yeah, Valorant mode आना चाहिए where you can play any agent twice, thrice. वो कितना मस्त होगा। मतलब 5 के 5 जेट भी खेल सकते हो, 5-4 जेट खेल सकते हो। कितना मजा आएगा। 2 जेट और 2 साइफर, 2 कंट्रोलर, कुछ ऐसा बना के।
DRX is really able to clutch it here. Yeah, 5 Sova players. Oh my god. The twilight of this match here, but The 5 Gecko. completely and totally crushing through. Yeah, and this round was, we're going to skip the Mako part, but that was the round where Mako Replication नहीं वैसे नहीं होता. He's like, I'll let you reload, and I'll still get the kill. वो सिर्फ normal है. That's showing some real confidence in a moment like that when you know it's just one ऐसे shot, one kill. मतलब तुम 3 वो लेके खेल रहे हो. Jet और 2 Initiator. I've never कितना seen सही someone है. look so chill on a Spectre like Mako. Yeah. I mean, honestly, but let's talk about Mako. Actually, Mako's plays, like, I mean, Mako का मुझे kill वो clutch percentage देखना देखना कितना हो. either. He had some amazing Omen plays as well. No, I mean, he had some incredible Omen plays, especially over by Boathouse. I don't know if we're going to have a highlight of that coming up here in a second or not, but I mean, he had this moment, he shroud stepped across through the center of Ascent, getting over to the other side, using his ulti to snag the spike. Then getting that planted, forcing the 2 Killjoys, lockdowns to come in. Of course, let's not forget that's more expensive now. So even forcing that from the opposing side is huge. But it was really incredible. I mean, a lot of the global fans watching as well, they just continue to say the fact that Mako is on this team, DRX will always recover, right? They'll always get back into form. Mako will buy enough time for the rest of the team to get back into prime condition. And that's why a lot of people are saying Mako perhaps the best controller when you just compare them individually, just because of how consistent he is. Whether the team's shaky, whether they're off to a bad start, they're 0-3, he's still able to make these plays happen and bring back the team into a competition. It's important if you're a controller like that. You know, Yeah, I mean, we know. But over, DRX right? is if the whole team team. does get thinned out, and he's so good at being clutch in those situations where it does come And down, guess what? not so April much to 3 how you को set DRX up versus the Global round होने to वाला start with, and you know, did you get your strats executed? But You know, do you have Global, the instinct? Can you whereas learn? Global, Can you I maneuver feel around, and can you they maybe take that actually have a one-on-one global gunfight? team. You know, but One Canadian, one Australian, one Korean, one Indian, 2 Indians. Taking that Odin and just destroying. Like, really just dirty plays. And we know the Odin works on Ascent, but the way he was using it is not what we're used to, right? He was just kind of walking forward ever, kind of just power Odin simulator over here on Ascent. But overall, 𝙬𝙤 looked good in the beginning of the match, right? I mean, we started to see it, I think, at round 3. We had there should be a highlight somewhere. Even we saw it briefly in that replay as well. Paper X is good, no doubt. Kind of retakes ready, but you could see the practice as far as seen in VCT, feels like Paper X is working on something. And we'll be able to see it here, right? So you close off. Yeah, Paper X have 4-second Jing, something are like and so that allows duelist type, you know? Over generate without ever having to worry about anyone peeking out from hell, even if they were there. So things like this is where we see, okay, but again, 𝙬𝙤's prepared how they want to play this defense. The timing DRX is super strong, dude. Repeat this retake several times. It doesn't work after the first one, I will say. DRX kind of learns their lesson, but that just goes to show, okay, they had a plan. It wasn't just relying on defaults and getting frags. They had a plan on how they wanted to do that. That's how they were able to get that lead early on. But once they got that operator, they started to fall back further and further because they couldn't do retakes as easily. And their kind of plan revolved around retakes in the beginning. Definitely. I think round 8 is when we saw that tie come to 4-4, and that's incidentally when Foxy9 got, you know, a solid 3K. Do you think Foxy9 is going to be seen more in this tournament? I would hope so. But if he keep running we did forward. hear, right? Buzz posted on his Twitter that he's out for personal reasons, and of course he is part of the original core. But I think Foxy9's proven that if they ever need to, or maybe it's per opponent, maybe it's per map, I think you can definitely have hopes to watch him again because he's proving that he can shake off the jitters very quickly. And when he got that double kill in round 8, like he had messed up his tailwind, and he still gets a double kill. So the mechanics are there. Yeah, I mean, Foxy9, it's interesting because he looked very confident. He looked very comfortable when he was playing up there. And that's all you need. If he's got the mechanical skills already, and he can go into an overwhelming environment like this and then deliver like that, yeah, he should be playing fine. Which, by the way, that was the biggest reason we didn't see him on the big stage last year in Challengers Korea, was because a lot of coaches had gone through Foxy9 and said, he just can't get over his nerves. Like, the mechanics are there. One of the Korean casters actually worked with him to try to train his mental, just so he could get ready for the stage, and he still couldn't do it. But now he's broken through and said, oh, we're playing against 𝙬Division in the Tier 1, right, tournament of VCT and VCT Pacific opening match. Let me just casually get an ace just to wrap up the match and prove that I belong on the stage. So good for him. Good for him. Yeah, he's just finally shaking it off. I mean, I'm really excited to see how they're going to do. 𝙬𝙤
has their map pick in the next round. Do we expect any different results coming in? I mean, for their sake, I would hope so. I don't. Well, that. I mean, to be honest, when you look at what happened with Zeta, they had a strong start. But let's go back and take a look at this moment that we had here. This is a moment that it looked like they were going to be able to take the match, right? And this is something we were mentioning earlier. We saw Mako here, definitely Shroud step across. This is when they thought they might have had the spike isolated in mid. Omen ulti snags it. They're going to lock in Boathouse. And now we get the Killjoy ulti force down here on both sides. यहाँ सही में गड़बड़ हुई थी उसने अल्ट खोल दिया अपना आगे जाके as far as DRX is concerned, they were so clutch on this side of this of the map, and yeah, it was just one of the best parts of the game here. What delay? They need to go away. Zeta, and what can they possibly do coming into this? They're going to have to show, a healthy play when we get past pistol rounds and we get utility in your kit. Yeah, and again, this is another round where you see Mako is the reason this is possible. I mean, yes, RB does his part as well, but Mako's the one who pushes out, gets the lockdown. He's, of course, using that Omen utility to make that round even salvageable to begin with. But again, just unreliable. I mean, Mako, if he's still alive, you never know how the round's going to end. Yeah, and the scoreline shows it. I mean, sure, Stacks had the highest score in terms of in-game stats, but still a 257 ace, 3.9 KDA. 4 kills to 1 death with some assists sprinkled in there, but he was getting a lot of kills too. Yeah. That's an insane number. You know, some games are won off of just the strat setup, the spike detonates, but others are won based on a one-on-one gunfight. And Mako is so clutch in those moments. He's so comfortable. He really thrives in situations like that, and that's what we saw back there. Yeah. Background I don't know the last time we saw a number like that. You know, so ऐसी जगह gaming of VCT. So oh sorry, gaming. Sure, Zeta, it's their pick on Pearl, but Mako's still there on the other side, so it's going to be a pretty tall wall for them to climb. I think DRX is really making their stance. Like, you know, everyone's afraid to come against their Paul map है Zeta का वो pick है. Their stats are incredible. What do you guys think? I do know that the players are getting ready for their next map right now. I'm so excited to see how this goes on Pearl. What are your? How do you think this is going to go? Let's keep in mind the last map we had a mirror matchup, which I always find fun, right? You get two regions that are have been head-to-head so many times, and they're literally all picking the same agents. It'll be interesting to see what agents exactly they go for. Obviously, a different map requires different play styles. There we go. We are starting, guys. What I want to see from Paul is shit. No, dude. Paul is good. Paul map is really good. Synergy as we go kind of into the mid game, you could call it, of the first round or the first half of the second half. Playing Jer on Paul, it feels so great. Especially playing on my signature move where door it is. Mid door. Kill, run. Kill, run. And their side, but their calls were still quicker. At lock-in, you could see the delay in movement. I will like practice अच्छा Paul लगता है वो. IGLing now once again for this team. It seems to be working Heaven out. से भी अच्छा Paul लगता है. Wait, what are my weakest maps? Was trying to play these other sentinels over at lock-in right after Chamber has been nerfed. Right now my weakest map is like Fracture. Good on the Killjoy on Ascent, so मेरा split Paul Lotus सही जा रहे हैं. Even little bit Heaven, but now I feel like ऐसे ही है. I mean, you also made a really good point about the operator and how that affects Heaven मेरा बहुत बेकार. Their flow state. Do you think Pearl is a great map for an operator? Yes, I mean, it's almost you kind of need an operator, with all, but they have to have मेरा these other breeze plans भी ready. Fracture मेरा बहुत there weak is no है. operator, so we'll have to wait and see. Of course, how come Harbor's Heaven is been becoming a mainstay, so it's no surprise to see Harbor Viper. This is going to be another one of those matches on Pearl where everyone's going to have to keep their eyes peeled because we're going to see so many walls go up from Viper and Harbor on both sides, but last play, that's Sky, so he is going to play not only Intel, but also the only flash for that team. I thought Paid Sky ज़्यादा दिखेगा. They're playing 2 Initiator, no Sentinel. They don't need Sentinel. What the fuck? Other overlaps are going to be Jet here, but that's not a shocker either here for Depp or Foxy9. No Sentinel. Yeah, and again, the big
difference is 𝙬𝙤𝙤's, I guess, understanding is, okay, well, we have Viper still. She can be a semi-sentinel. We can still lock down sites. 𝙬𝙤𝙤 can push out the other side on defense. Whereas 𝙬𝙤 is preferring to have that reliable Killjoy intel and utility to buy time on defense and also make sure they're able to watch out for lurks when they're on the attack. And I'll just say this, based on comp and role and pretty much what he's been doing for the team, Laz is the key here, right? If Laz can put up numbers, if he can really push out and get that intel for his team and make the right calls, we could be going to a map 3. And with that, I think our Agent Select is done. We're going to throw it over to the casters. Take it away, Paper Thin and Achilleos. Thank you very much, guys. And yeah, we'll see if this is going to, in fact, be able to go the distance. Obviously, some pretty heavy differentiation as far as the comps are concerned. Single flasher on the other side, but not going for that Sentinel, as William was just mentioning there on the desk. Going for the Fade instead of the Killjoy. It is really interesting from both of these teams, right? Playing very different comps than what we saw at lock-in. Now, I'm not super surprised that people are leaning into the Harbor Viper combo. This kind of reminds me, you can kind of play it similar to how you're going to play Icebox. You know, the B long side has a little bit of kind of that same flow, that same idea, you know, where you want to cut off multiple angles using both of those big smoke screens that those two agents have. So I think it's really fascinating. The KO is pretty interesting to me here from Stax. It seems like he's really gung-ho on this agent once again. We've seen him kind of flirt around with a few different agents, but we know he's a very solid KO overall. But yeah, no, you know, no Sentinel on the side of ड्रx doesn't surprise me too much. मेरे को एक डाउट हो रहा है, क्या है विदाउट सेंटिनल कैसे कर लेंगे यार ये? You know, Buzz isn't here today. भाई अगर देखते हैं, अगर ड्रx का मुझे देखना है भाई, ऑब्जर्व करना है, पता चले कितना हेल्प हो जाएगा। पब में ऐसे खेल सकते हैं। No sentinel game. When they were playing against Loud, but that was with Either they will go for the infos हर जगह की भाई ये info दो initiator है तो info उसके base पे how this is going to go for the side of 𝙬𝙤, who push करके बैठ जाएंगे fully go for the double control that the Harbor can kind of fit into that role, but it's not the Astra that they have shown us in the past. They played that versus Gen G as well as versus Boom at the Gwangju event, as well as the Champions last year. No, I'm not number one, bro. Position though in mid, everybody getting themselves. Oh, he already pushed. 𝙬𝙤 fairly wary of this, and crucially, they're not going to be able to get that shot across. Realize that we have Zest on the player cam, but it's all right. We'll get that adjusted. Whoa, they're rotating. Oh, bro, look at the rotation, the way they're doing. Just fine. They know what ड्रx is doing, what they're thinking. The defenses are in place here. 4-10. He had some good defense. ऐसा लग रहा है Zeta खेल रही है without sentinel. Oh! Already Foxy9 going to be picking up a kill. They get that long reveal on the one with depth. But he caught one. Out, gets the headshot across. Foxy9 gets taken out. Push in. Spike now going to be stranded down on the floor. Oh no, he's barely dead. missed on the opportunity to get that plant. Oh. Dog comes playing forward, draws attention. And it's significant damage now out onto Zest. Mako trying to find one, manages to get one. Oh, he got it. Zest is the last man standing, will narrowly be able to close out the round. ड्rx winning now their second pistol in the series. It just took a little bit too long to get that kill in front of Zest for 𝙬𝙤. Had they been able to find that a little bit faster, I think they're able to get this round. I saw a lot of the things I wanted to see out of 𝙬𝙤 here. They're playing off of each other. They're playing for trades. You know, one person comes in, another, if one person goes down, another one comes in. So overall, really liked what I saw, but Zest here just a little bit too clean. And 𝙬𝙤 just not clean enough in that crucial end of the round moment. They had a good setup. They were ready for it. They played that round fairly well, but it's the firepower there for ड्rx that's going to carry them through. Now it looks like an A hit here for ड्rx. The knife, 0 point. Allows them the space to get the orb, but they aren't making any aggressive moves. I was kind of curious to see if ड्rx was just going to put the pedal down here, just make a go for a fast play, but I think, you know, with what they saw in the previous round, with how aggressive 𝙬𝙤 pushed out early, especially with them being on the eco again, you know, we see this a couple times with 𝙬𝙤 today and also previously at lock-in, that when they're on those ecos, they're not afraid to start pushing space. Just looking to go ahead, grab the orb here for RB. I mean, speaking of RB, one of the biggest praises that has, you know, been surrounding him as of late has been his flexibility and how much, you know, the roles that he's able to shift into. We've now seen him play so many different agents. This is his 12th, I believe, agent that he has played this uniquely of all time. Of all time. And
I was gonna say, like, this year he's played at least. It feels like it's been 7. Like, it feels like it's been 12 this year. But yeah, it's just amazing to see him go from, you know, this inconsistent player. What is his future looking like for the squad to now being one of the most consistent and valuable players on the side of DRX. So we'll see how this fares, obviously, as we go deeper into this matchup. You're showing wrong face with wrong names. For now, fairly clean and easy plant down from the side of DRX. As Foxy9's not sure which way to look. The flash doesn't come in, and he's going to manage to find his second. Can he get the third? No, he cannot. Last guns him down, but Sax will swing on the corner through the back hall. Close it out for, again, but you are confusing me now. 0 beginning. They'll take the anti-eco. Foxy9 the only casualty, but the Bulldog is recovered. Yeah. No, I mean, this is everything you want to see here from DRX. Very quintessential hits. Take their time, get everything set up, start pushing this angle deep here in the back site. You know, they look for those picks coming out of heaven, coming out of that doorway underneath heaven from hell. And this is, you know, Buzz usually is the guy we're seeing in this position, right? But now Foxy able to fill in just as well. नहीं, accurate नहीं कह सकते, but दिखाता है कुछ ना कुछ. Incredible. Absolutely incredible. And you can see a little bit of what seems like miscommunication there in that last highlight as 𝙬𝙤𝙤 is getting ready to push his way in the back hall. That's why you see initially that Hawk, that flash is going to go deep, and then they say, no, I'm going to push this, swings it back to try to flash behind so that he can get in front of it. And unfortunately, they just don't read that Foxy is going to be in that forward position. It's the danger of that flash. Mako's reading this beautifully, but still does get struck down. Nice response there. 𝙬𝙤𝙤 obviously going to get healed back up very swiftly there from Laz. I will say one kind of point of you know, bright spot here for Zeta, if you want to take away some good things. 𝙬𝙤𝙤 was 4-2 on first kills versus first deaths, so you know, for what that is as one-sided as that map ended up being, not bad at all. And 𝙬𝙤𝙤, in fact, another thing I want to point out here, he has been pretty good with the early trades, with his first kills versus first deaths, and even duelist v duelist at lock-in. He won his duels with Tacolia, 6-5. So, you know, for what it is, 𝙬𝙤𝙤 plays pretty well at point. He does. Well, 10 just spraying through. Harbor wall beat damned. Flats Foxy9. तो ना सानी से तो ये लोग वो ले लेते हैं. Down to a 5v3. Spike will still be planted. They concede the site, just looking to play for the retake. It's ये अभी भी नहीं रुक रहे आगे कंट्रोल ले लेके. You know, pushing secret. It's a very aggressive position to take here. Certainly one that could be surprising. Shot. The follow-up on the 𝙬𝙤𝙤, absolutely gorgeous. Bulldog से. Last man standing. See if the IGL can get it done. Double push coming through. The spraying. So close to connecting onto him. And nice shot. Crow swings around the wall. The defuse can come through. 3 rifles going to be held on to here as 𝙬𝙤𝙤 get themselves. Oh, Bulldog se wo the shot out. 𝙬𝙤𝙤 playing really well. Anti-flash there. Comes around the corner at the perfect moment. Replay. Show us the replay, man. At least do some economic damage here to 𝙬𝙤𝙤, and then Sugar0 pops right in and comes up with 2 big kills of his own. But yeah, I mean, 𝙬𝙤𝙤 here really clean out the rip. Just a very swift kill onto Mako. C10 just spraying it down there as KJ just finds it with that last little spray. Oh, he turns the flash. Oh my God. He could have killed that the third one also, I guess. Back and just was able to play off the flash. No, he just turned it. No, that's just a quick adjustment to catch him right on the back end of the tailwind. Not enough to get them the round victory, so they had to put one up. Oh lol. Look at the walls. Winning here and knocking DRX back economically. Now that would be a major turning point for them to start streaking some round wins in. I mean, I'd really like to see DRX continue. Nah, that wasn't aim-lapse find flicks. success on the A site, because again, It's like you play game more and more, and then that's how you down on their attacker side, getting learn and make a muscle they tend memory. to drift into this now, particularly with the Harbor Viper comp. Now I feel like this is definitely a side that they're going to want to lean into even more. They're going to pop the KO wall, the Reckoning down as well. So the site very much left abandoned by the side of 𝙬𝙤𝙤. No reason to be messing with this. Just let them have it. Invest all this utility, right? They're going to use so much to get through here. The Cove was already put down, so now that my question for 𝙬𝙤𝙤 is have you been doing homework? Are you going to be able to clear backside here? Are you going to be able to clear these 2 players out of there and start making your way through to get a successful round in your hands? And clearing that 0 point. Clutch is coming out. Foxy9 again playing forward. Spots 1 and is in a rough spot. Can't find the second, but Stax picks up 3 for himself. And in the blink of an eye, just Crow left standing. And yeah, as he gets revealed, not ready for the haunt placement, will go down. DRX again clean.
get the attack here onto the B site. It's only Foxy9 who falls. They will go ahead and deny that momentum build away from 𝙬𝙤. Yeah, and you can see that 𝙬𝙤 tries to go for the clear here towards Foxy, but Foxy sets up a one-way. It makes things really difficult, and then, you know, even though his spray was a little bit off, Stax just starts going absolutely nuts off of those pings. Right through the smoke. नहीं हो रही On मुझे there at memory the end, तो बहुत गिर गया reveal the वो player, and फर्क नहीं Stax पड़ता is भाई grooving, he's jiving, he's feeling it, having a good time. what a frame to freeze on as we go for our nice little new profile picture incoming. Yeah. Like a little transition where the Pacific logo swirls. Reminds me of like an old Batman. Oh God! The old Adam West Batman. Yeah. And you call me the boomer. I like it. All right. Dude, हैबर की बॉल इतना सीख नहीं है यार सही में बहुत काम आ सकता है. A lot of us है grew up watching that at our grandparents' house in America. All right, so Kovin. Were they able to get that nano close? Wait, how he's not dying? Shorted it. Yep. Well, actually, no. Okay, RP does get. वो मॉली गलत थी. Okay, so he just decided to stick it. So obviously, not having this guy, can't go ahead and get any heals out. Wall's going to go across to get a tap onto the spike. That's going to force the fragment out from Stax. Just looking to zone. Someone mark the bomb. Still holding on to 2 snake bites. Did use all the things they could. Stax finds the first. Cove goes up, but the bites are already in. They still can't get themselves over onto the spike. The Cove is instantly broken down. Not saving. Oh my God, 4 people saving together. Are you kidding me? This is absolutely beautiful for me. I mean, it's a pretty simple entry. Not a bad idea here from 10 to. Oh, have they heard him? Oh. I think they may have. Oh, Stax. Try to go get some punch, get some kills. And the rest of the side of 𝙬𝙤 sacrificing themselves over to the spike. They will get one for the trouble. As Stax really wanted to get some extra ult charge, I suppose. Looks to run them down. Ends up with a bit of egg on his face. But all the same, the round victory is still found for DRX. Yeah, and what I want to say here is for DRX is, you know, you don't have to commit a ton of utility on the entry this time. 𝙬𝙤 is already playing back. You know, with the economic situation being not so good, they are going to be able to grab an op. It's only a half armor here for 𝙬𝙤 and 𝙬𝙤 on the back of that. But that being said, like DRX knows they don't have to invest a lot, and they show them a different look on the post plant, right? They're all playing by pillar. Everyone's playing back. It's a deep kind of traditional DRX post plant where they want to just smother you with utility, just kind of drag the round out as much as possible, force you off, and that's exactly what they did. And you know, 𝙬𝙤. Imagine आगे तुम्हें एक मौका मिले कि तुम जिसको स्पेक करना चाहते हो उसको कर सकते हो by clicking it, clicking it. Adaptation is the key for me for them throughout this year. If they're going to really challenge for a Masters or Champions title, they're going to have to find better ways to adapt to adversity, to go through the mid-round, to use information against their opponents. I think one other thing that I think DRX is really good at is getting information. What I don't think they're good at is toying with their opponent. What? He's good, man. I mean, through the smokes, he just doesn't care. He just somehow manages to have these bullets magnetized. Oh, he was going for turret. Swings back up to Art, finds 𝙬𝙤 for his trouble as well. Mako will be able to pick up one. I know that dead man. Spike in the meantime has been turret को तोड़ते मरना या फिर turret को तोड़ देने के कर रहे हो और suddenly. Post plant utility already fairly limited. I'll Get one spectate. bite, one fragment. Mako's out, looking for the backstab here. He's trying for it, but they got it. 𝙬𝙤. Very wary of this. Ends up finding it. Cloud burst down. Wait, he killed it. The spike diffuser killed. Diffuser now falling. Spray he's dead too. Finding it, holds it but down. They don't know. Was that a no scope? That dash! No. I would love to see that dash. नहीं करना था. Either way, it's so damn close, but DRX just continue. Definitely by mistake dash हुआ आगे. Like mostly people do dash and left हो जाते हैं, पीछे होते हैं. पीछे होना बहुत मुश्किल होता है dash, you know, kill and dash back. तो dash left हो सकता है, right कर सकता है. उसको left करता तो बच जाता, but did it in front. I mean, RB here, just phenomenal work off of this. And that, I don't know if you scoped it or not, that he got RB right as he stuck his face out through that cascade. That was good try by 𝙬𝙤 यार. Oh boy, try. What a round there. RB, they're sacking A, they're going B. What a read. He plays that so well. Now you see this gamble stack here from the side of 𝙬𝙤 trying to get a sense of what DRX is going to do. They go for that A push, but unfortunately it's going to be a full send here from DRX. They're just now figuring out that the site is completely unoccupied. The spike will come down, and we'll see if 𝙬𝙤... Have you played the finals? No. I mean, the game is still not out. For now, it's looking like 3 mana. But I would love to shops, play. maybe even
4, as all 5 of them are going to be working their way into long. Wait, don't tell me they. Start trying to pick them off. This is gonna be fun. Just imagine if Zed died and it. Oh no, they got it. Finds the first one. Suddenly, if you're Zeta, this becomes so much more unassailable. They can't do anything. Either they just have to go in and die. They just only off. Wait, they do. You don't want to give over extra ult charge. You need to be able to get something done here. Depp will find stacks as he once again tries to go and punish. As they're gonna die for sure. Mako draws down a bit faster. They will in fact be able to get the sacrifice across. Yeah, I think Valorant should do it. कि अगर आप जिंदा भी हो आपको पैसा मिल जाएगा यार. Yeah, it could have gone a lot worse. CS:GO जैसा थोड़ा वो करना है यार. DRX there with the Prowler, Mako around the corner. He's got the Poison Cloud to put up to make it oh so difficult. Oh, 6-1. And this Pearl map is picked by Zeta. Once again on the B side against these ecos. I'm learning a more. Oh, okay. I was about to learn a lineup. This has to come through. Molly lineup. This is a must-win round. Yes, and this is leading into my concern, which is so far we have not seen a timeout. DRX have been, they pick up the first 2 rounds, they drop the bonus, okay, whatever. They have been now on a 4-round winning streak. Depp taking a shot. Here comes the Reckoning once again. Foxy going for the deep entry, gets himself tucked away back in the hall. And again, Zeta just have to completely and utterly concede the site. Reckoning is still committed here. He planted. He will die. Themselves into the site to make this work. The spike has already been planted. They get a bit of damage down on RP. He killed one. Finds Sugar Zero, and there's no one there to If he killed 2, the round is secured. Yeah, the round is secured. He's so good right now. He can do no wrong. Dude, he planted the bomb. He killed 2. Out of pansies. What else do you want to do? It will eventually get picked off after the initial damage, but now you have that Nightfall coming across, clips onto 2. So you get the decay out. They're again saving. Depp is working with an operator. He needs to hold on to this. They do not. Oh man, they're trolling, man. DRX is trolling them, man. They can't do anything. 4 people again save. Mako now on the hunt. Oh, if he gets that op. Had he made the decision to actually push the connector over towards water, would have been able to find him. हाँ, legend, but legend, but होता है यार. Like, थोड़ा money. I'm not saying full money. थोड़ा money मिलना चाहिए. I mean, the scary part about this round for DRX. But again, they use the rounds कम होते तो money इतना देना भी worth it नहीं. Valorant is fun. Mako is super deep. Oh man, this is irritating, man. Thank God it's not like we are watching any didn't even come through this time for our region team. Everything here looking really good for DRX. I'm liking the different looks that I'm seeing. These different post plants, these different ideas, बहुत save होता है, the amount of utility they even. And there you go, timeout for the momentum to the break, but it won't. Everything in the kitchen sink, it kind of There's no point you can beat DRX. And it's making it really tough for Zeta to adapt. Beating DRX is like you need 5 players who are better with aim, better with game sense, played so much this game, like 12 hours. Oh, like me, yeah. You need 5 solo. But this time around, it wasn't to be for Zeta. Yeah. Oh, but that's really amazing. Needs to instill a change in the way that Zeta is approaching this defending side at the moment. DRX is super strong. Like you mentioned, I mean, putting up a fight. I'm fan too. Overall, I'm becoming fan. Every time I watch DRX, one step forward, I become a fan. Like, yeah, okay, great, or good, more great, more great. I was thinking कि बाहर जाके कुछ chips ले आऊँ, but उतने में match ही खत्म जाएगा. I think they went with something that. Welcome back. देख रहा DRX भाई super strong. Normally feel comfortable on, which is Icebox, right? Bro, it's a very similar composition, and so they're able to adapt it here onto this map. I think top 3 teams that I think is super strong in Pacific region is DRX first, then PaperX, then Team Secret. That's what I feel. But yeah, we don't know other teams too. Nah, yeah, talent, like I feel they can do it, but somewhere they are lacking a lot.
I think the और अभी जेनजी आएगी फिर देख उसका भी अच्छा प्ले निकलेगा, वो भी अच्छी टीम बन रही है। Of course, और T1 भी लेके आ रही है पूरे वर्ष टीम। ना T1 अभी देखते हैं ना ग्लोबल वर्सेस T1 से पता चल जाएगा। If global win, then definitely I'm counting कि global would be top 5 easily. They get the Prowler out I from, will tell you something about T1. Not Prowler, but they get the dog T1 out के there जो maximum from बंदे Flowers, हैं, they come managed to from spot Overwatch. one over towards Wait, Arc. let me increase your voice. रुक जा। And I don't mind this as long as the retake executions can be So, clean, but so far that has बढ़ा लिया? not been the case. Stacks So will find T1 one, के spraying maximum across बंदे हैं, they pitches. come from Overwatch. But one of their best players, let's say, 𝙬𝙤𝙤𝙬𝙤. 𝙬𝙤𝙤𝙤 recently left Overwatch last year. Of course, like he had a lot of downtime between Overwatch 1 and 2. But I just want to see how he's going to perform on the things he can. He did not have enough time as, let's say, other Overwatch players, such as 𝙤𝙤 player, who was his #1 rival in Overwatch team. उसको उतना time नहीं था। 𝙤𝙤 player best Widowmaker player था brother। और Foxy is playing DRX में Foxy का आज मतलब पहला दिन है खेलने। हाँ debut है Foxy। And he's doing well, like pop games जैसे हम लोग करते हैं ना, से वैसे ही कर रहा है। Yeah, I mean, भाई क्रैक वही है जो कस्टम में ब्रेन डेड होके खेल रहा था। हाँ उस दिन मैंने ब्रेन डेड कर लिया था, तो मैं काम करके आया था रात के 12 बज रहे थे। I was like, fuck it, brain off। But yeah, at least he played better than Mohit। आपसे भाई मोहित बता देंगे। अभी मोहित से बेटा खेलने की कुछ लगता नहीं है। Hey, by the way, Craig, in Paul map, DRX is playing without Sentinel. Just man, without Sentinel they're playing 2 initiator, 1 duelist and 2 controller. Alright. So how will I doubt that they what do we call it? Their defend would be great or not. Like attacking वो कितना भी कर ले, defend में कैसे करेंगे? I will tell you something about Sentinels हम लोग किसके लिए यूज करते हैं बताओ? Sentinel ताकि साइड कंट्रोल रहे और बैक स्टेप, दो चीजें मेन होती हैं। और मैप कंट्रोल करने के लिए कौन से एजेंट्स बेटर होते हैं? मैप कंट्रोल पे तेरे ये कंट्रोलर भी हो गए और तेरे इनिशिएटर भी हो गए। Usually to कोई स्पेस लेने के लिए you will use put out some smokes and then you will clear the area with either duelist या फिर just information से। If you have double controller, you can just put them on each side। डिफेंड में तो थोड़ा वो चाहिए होता ना, like 2 सिंगल हो गया। Viper is crazy। No, look at the plan. DRX thought कि अटैक पे हम लोग ऐसा खेलेंगे कि हमें उनको राउंड्स ही ना दे, and it's working। वो उनका प्लान नहीं है, they're just that good। Obviously अब क्या करें, they are nailing it। like ज़ेटा को बहुत बुरा कर रही है कि भाई no, you don't even stand here in front of us। DRX is fucking scary with this place। So I was right। I was telling people that अगर सामने 5 सोलो होंगे तो DRX को मुश्किल हो सकती है। I mean, they are not going to fight you on aim, तो उनको मुश्किल नहीं होने वाली है। What do you mean कि मेरा गेम सेंस कम है? मैं आया दोस्त को कैरी करके। ब्रदर तेरा गेम सेंस खराब नहीं, उनका बेटर है, that's all। There is machine, well trained। मैं अभी आऊँगा ना टॉप 10 में, अगर मारूंगा ना तब देखियो एक टीम ज्वाइन करके सबका चेंज। तो सेंसी का क्या हाल है? बिना सेंसी के पहुंचूंगा टॉप 10 देख तू। Counter Strike, no tick rate, SoloManan no sensi, let's go। Oh, he got it। ये that's good कि वो दूसरे के लिए नहीं जा रहा। Wait, dude, how they gonna get it? Viper is lurking, and the worst part, उनको aiming control नहीं, उनको CT control है, पीछे से एक बंदा घूम के आएगा और Killjoy wait कर रहा है, उसको पता है एक जना lurk कर रहा है, and he's dead। उन्होंने वापस सीक्रेट को पूरा कंट्रोल में लेके खेल रहे हैं। हाँ, वो बहुत पावरफुल पोजीशन है इस मैप पे। वो एमिन बिल्कुल नहीं देख रहे और यहाँ मरा एक। देख उसको उम्मीद भी नहीं थी कि सीक्रेट कोई हो सकता है। There you go। Fuck man। Better positioning। Basically wait, Foxy killed Viper how? Like Viper आ गया था बाहर। We need replay that। We need replay please। Right। What away for DRX Thank to you। kick Hello off observers। Pacific.
I mean, they look great, and even swapping in Foxy, it doesn't look like they missed too many beats. A few stumbles early in this match. Since then, it has been all DRX. Nah, Viper came out. Oh, dude, Foxy got another kill like that. पता है, Ascent पे भी इसको lineup मिल रहा है ऐसा. दो बंदे, एक बंदे को मारता है, दूसरा बंदा उसके crosshair में आ जाता है. Hacker है. Dude, doing great. Foxy is doing great. मुझे लग रहा है ऐसा मेरा भी ऐसा ही डेब्यूट होने वाला है शायद. Wait, no? I thought right click किया उसने. Wait, how? Right click लगा था पूरा. उसने क्या one tap मारा? I think one tap मारा उसने. Again, Depp is often good for these first kills, for these trades early. It's just later in the rounds he doesn't seem to have that same presence when things, when they're playing for retake, when he's deeper in kind of the formation, maybe because he's got the opposite. Last round, even if they lose, they don't mind. Success in front of him, and then he tries to do too much. We've seen it too many times where he's getting up close and personal with those ops. Sometimes he's the first one trying to push. They're trying their best. Pehla match hai. Bye. Oh, the harbor it is broken. Harbor it is broken. वो भाग के रहना पड़ेगा. Spike planted within the cove. You can see the creep up triggers there, trying to get in there, but Zest is covering. They're down. Everything. 3v2, 3v5, 4. Playing together, and that's what we have not been seeing. But I think Depp can make it. Yeah. Oh, okay, nice. Like once Zeta yeah, kind Depp has made it in the past. Started to struggle, it just snowballed, and now it seems like they're just one by one, just walking. One up draft, then swing, right, he's not swinging, and he's dead. Spotted. Stacks counter swing 4v2. Does end up getting taken down. Spot one. Nah, they can't win. Shot across, trying to get some wallbang damage on the Mako. They will chip what away the fuck? RB taking a quick jump. They find the kill. Crow good for one, but oh, GG. Laz now gets himself onto the spike. So it's 11-1. Now they will lose 2 rounds. So basically it would be 11-3. Then they try. If they win, it's GG. If they don't, 11-5 or 11-6. Then 12, 13, 7 or 13-6. I thought for sure this would be. But I think 13-3 would. That is right now. That is no one on Zeta is really finding much success. I mean, there isn't many bright spots. So Viper, they use like a Sentinel all the time. They're sprinkled in amongst an avalanche of DRX. Okay? I mean, they're just you have 2 mollies. You can delay for very long. Good plays, of course, Mako is playing. मेरा match कब है? 2023 December. Guys, solo next Valorant circuit के circuit में मैं सीधा VCT खेल रहा हूँ. ठीक है भाई, माफ करना, कोई सर्किट नहीं है वो. नहीं, VCT डायरेक्ट चैंपियंस. एकदम ट्वीट डालूंगा. Hey guys, I won't be streaming for the next 1 month because I have to go VCT champions and they are calling me and champions कब है? हाँ? कब है champions? मैं नहीं बता सकता. ये तुझे पता नहीं है? नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग प्लान चलेगा और चीजें बहुत इशू में आ सकती. हाँ, मतलब वही दिसंबर सितंबर. नहीं, सितंबर में डिले होकर अक्टूबर में स्टार्ट होगा. भाई नॉट विन गेमिंग नहीं तो डिले हो जाएगा. मत बोल भाई ऐसा. क्या लेकिन जो भी भाई शेड्यूल का अच्छा खासा निकाला वो. Desk and us is that obviously is the difficult opponent to go up against. The best. Yeah, Salis Cop कह रहा है स्टेज साफ करने के लिए इनविटेशन आया. Nobody's going to deny that. Unless you're, Yeah, you guys gonna win. So obviously but something is cooking up. They need to wait. Something is cooking up. Just wait and watch. Important for them. Let them cook. Let them cook. To get to the playoffs, to get to Masters Tokyo, to fight on their home. No. There's no way they can come back. No. Zeta won't be able to come back, dude. No. भाई ये comeback सिर्फ 100 teams ने निकाला था. वो एक वाला उनके पास सारे CS के players थे. They had the mental composure to just sit there and साहिल कम से कम तू ही आ जाए यहाँ पे. ये था ताकि चुपचाप बैठा हुआ है, बस बात तो करने लग. बड़ा WhatsApp पे लिख रहा है भाई वॉच पार्टी कब कर रहा है, मैं आऊंगा. You have Evil Dead references. That makes me happy. Army of Darkness in this case, but yes. तुझे नया UI पसंद आया? Well, UI going in now.
second They half, changed Zeta how the stats are displayed. need to find themselves a second pistol round win in this set. Otherwise, they're going to be repeating the record that they set versus Lev over at Lock-In. Knife to check here, but Zeta only reveals one. They just show 10 to try to bait DRX देखो into DRX not मान जाओ rotating to this. बेसिकली साइड छोड़ दो हाँ रीटेक पे खेल लो पूरा साइड दे दिया अब वो बस ऊपर फाइट लेगा ऐसे नॉर्मली ट्राई करेगा 1-2 किल निकालने की वो बस वॉल का गैप यूज कर रहा है goes down fragment, zones him away, delays for a little bit longer. Angle is worse. Just chipped away, but the heal is there. All right, they're full HP. Laz picking that up. Only though, no flashes left available. Great presence here from 10 not to repeat that. Got the Prowler to check close. G as a VLT. Nice headshot. दो लेगी वो देख Foxy 9. Jet duel 1. I think अब सारी और को पता है कि बहुत टाइम लगा DRX money is not a main case here. The talent it is. Like अब उनको दिख जाएगा कि talent is more important than just picking anybody. VCL के बाद जो अभी हो रहा है ना. Zest with 3 HP, Mako at 93. They're looking for the covering fire, but Sugar Zero will find 4. Will bit Sugar Zero was basically playing backside और हार्बर के स्मोक के पीछे. भाई वो डिफेंस में कैसे करेंगे? I just wondering कि बस so nicely. It's such a great little setup. Even if they come back, भी retake है पूरा. Spots the first. और बार-बार B retake पे छोड़ नहीं सकते ना या तो रेड पे खेलना पड़ेगा. I mean they have enough rounds to do that. उनका कॉल क्या होता देखते थे. Yeah, just one good read and fight win. Yes, Zest eventually breaks it down, but not before taking a ton of damage. That's when Sugar Zero DRX बहुत अच्छा pushes खेला the अपने button smoke to के go, पीछे. and they start piling into He the had a lot of वाले T1 हो because जाएंगे VCL के it took so long because नहीं Zeta was able इंडिया में T1 तो सारी हो जाएगी ना. इंडिया में कोई T1 T3 T2 कुछ नहीं है. इंडिया का देखो करंट T1 जो इंडिया का वैलोरेंट के लिए T2 है. टूर्नामेंट वाइज T2 है और वाइज यू हैव लाइक हाई स्पेंडिंग ऑर्ग्स तो वो T1 है. सिंपल बात. और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से तो इंडिया में T1 T2 ऐसे है कि जो फेमस है वो T1 है, जो फेमस नहीं है अंडरडॉग्स हैं वो T2 है. That's what I think. Honestly. I mean वो अंडरडॉग्स इसलिए क्योंकि they cannot afford coaching staff. Protocol's looking decent right now on the approach. If you're just playing you okay. Can't afford. Guys, बहुत clear some definition. Tier 1 team, you have sponsors, you have coaching staff, you have analysts, and you are paying your players well. Tier 2, you don't have many coaching staff. You have one coach, you are paying your players. DRX doing the same thing. Tier 3, you are just bunch of players paid or unpaid. DRX wants to dial up potentially to try to get, in here, maybe get a kill or two, and then try to. If not, okay, they don't like this. Something's wrong, and of course, you either want to die to the spike if you can. Venka, okay, so lethal sports में classify कर सकता हूँ Tier 2 में, but they are playing national level Tier 1 tournaments. Internationally Tier 2, of course. Well, I don't know if that's going to work out for them as they go ahead and push up. So, yeah, Zest correct. will be able to find one. Mako gets another. That does do damage. Well, that's going to be one of the weapons lost now. A Bulldog left on the ground as well as a Spectre. But Zeta crucially hold on to the Vandals, hold on to one of those Bulldogs. And that's a good amount of firepower. I like that buy overall because they have such a severe run back that they need to accomplish to keep themselves in this map. Yeah, having that extra firepower as you go into the bonus, as you know DRX are going to have rifles across the board, can be pivotal. But economically, it's still not great. Yeah, no, I think you make a great point. I mean, you got to take risks. You got to start cutting corners here as Zeta to get further into this match, to try to make a map of it, try to make a match of it. Here. But, it pays off pretty decently. I would call that not bad for Zeta, not bad for DRX. Like, nobody's walking away from that round feeling super great, super terrible. Best players in India right now, apart from 𝙬𝙤𝙤𝙤 and Lightning Fast. If you're not looking for flashy plays, 𝙬𝙤𝙤𝙤 has the most amount of initiator reach, especially played like in the southern Asia region. Sugar Zero. ले भाई यार अब ये मत कहना यार कमबैक हो रहा है यार ये एक प्लेयर चल रहा है 2-3 बार हो गया अब. I mean, अगर तुम सबको मार ही दोगे तो कुछ नहीं कर सकते. कोई ना ये देख बहन 4 मार गया दोबारा. कोई ना
टाइम आउट लेगी, टाइम आउट लेगी। अबे एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और टूटना मुश्किल हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। और पता है क्या सबसे गंदी चीज है, कंट्रोलर का कॉन्फिडेंस, क्योंकि कंट्रोलर बेट भी कर सकता है, लर्ट भी कर सकता है, सब अलाउड होता है। और अगर कंट्रोलर चल जाता है और 2-3 राउंड जिताता है तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है। कंट्रोलर अगर बेसिकली कंट्रोलर अगर जिता रहा है मींस ही हैज काट दे बेंचो, इसको काट 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 दे सारा, काट दे बेंचो, काट दे भाई। अरे और देख लिया दोस्तों, दिया ऐसे मुंटल पास का ट्रू भाई अभी क्या, अभी कॉन्फिडेंस उड़ता उसका। वो लोग इको करेंगे, टाइम आउट लेंगे, डीआरएक्स विल कम बैक। Wait, he turned around when Killjoy said, "Oh, behind you." Wait, ये सुनना है, ये बोला होगा शायद। These long flankers from the side of DRX, just great heady play here from 𝙤𝙤𝙤𝙤. This is the play that वो देख स्टैक की शक्ल देख भाई, कह रहा ये क्या देख रहा है पीछे साला। just never change. भाई ये पिक चिल्ला रहे होंगे। So funny. Having a bit too much fun, it seems. He's been dancing today. I mean, Headmaker aim is quite good. Yeah, can be, but again मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी जेट देखे हैं ना मैंने, आधे से ज्यादा जेट का ये है कि उनको सपोर्ट मिलता है इसलिए वो वैसे हैं। इनका डिफॉल्ट देखो वेट कर रहा है एकदम। तो क्या ऐसा सीन होता है जैसे तुम्हें सोवा का रिकॉन, स्मोक सब और ओमन का स्मोक सब कुछ मिलने के बाद, फ्लैश मिलने के बाद यू किल 3 4 5, you know, that's I feel like वो टीम वर्क वाला प्ले है। एम चाहे कितना भी अच्छा कोशिश कर रहे कि कहां स्टार्ट एम इज समथिंग लाइक जैसे फॉरसेकन हो गया, जिंग हो गया, ये विदाउट टीम भी कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स में इनका एम फिर वैसा दिखता है अलग से। तुझे पता है ना कि समथिंग जॉइंट फॉर सॉरी पीआरएक्स। हाँ भाई प्रिंस मिला हुआ तो बहुत बार मिला तुझसे। Yeah, they got the fake correct on it. 3 लोग मास रोटेट करेंगे। वो बस इक्वल राउंड के लिए भाप रहे थे कहाँ पे बंदे बैठे हैं। And so far, it's working a treat. Fax left alone here on the site, ends up falling down. 𝙤𝙤𝙤, the first one to arrive to try to turn the tides of battle. He'll get cut down as well. How did he get? Okay, never mind. They have enough money. Across with the sheriff. Won't be a disadvantage. So many more than that if they want to steal this round away. Take this to match point. Russian FPX was legendary. Of course, they won the entire thing. उनका PRX और जब finals हुआ था, oh my god, it was fun. और DRX versus FPX was such a good Valorant match. No cap. And now they have the cash built up that pretty much this is either, you know, going the distance or they're going to go home. So I really like this moment here, by the way, on the backside from Laz onto Foxy9. That's the only way that really this round probably could have gone real wrong outside of some miracle shots on the site. Laz was way comeback Israel. तुम्हें से कितने लोगों को लग रहा है कमबैक हो जाएगा? नहीं होगा। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे ट्रस्ट है DRX में। इन DRX I trust. कमबैक नहीं होगा। इन DRX I trust. चैट पढ़ रहे हो क्या मतलब? Odd man push out like we've seen on those eco rounds from 𝙤𝙤 and on Ascent and others. So yeah. नहीं होगा ना comeback? Yeah, you guys are with me. We need from 𝙤𝙤 clean rounds like that. Need to Hello Sahil. Especially when DRX is on ecos. Sahil bhai. And so far, things continue to look excellent on this attack. I mean, look at the कौन सा Sahil? they have. Should they be able to get onto the site once again? The reckoning is there. The pit as well for 𝙤𝙤𝙤. कौन सा हिल? कौन सा हिल आ सकता है यहाँ पे? अच्छा मैजिकिंग की टीम वाला अच्छा। ले ले भाई। इतना डर रहा है कि माइक भी नहीं खोल रहा। Mako is dead? No. वो क्या ये फ्लैश क्या था? Cross into Art. Mako going to be able to find one before getting taken down. Stacks Oh, continues 1 to for 1, push. so it's Will find Laz. Now the Nightfall cuts across as well. Stacks hiding up behind the box, sends out the bomb nice flash. catches 𝙤𝙤𝙤 in the face, and he's going to have to back away. Pit now going to be invested. Trade in favor of DRX. He's go flying. The spike gets planted. हो गया? हेलो हाँ हेलो आ गए बस। मैं यार डीसी पर था। मेरा पीसी का ना मैं नहीं गया था पीसी में अब ऐसा यूज़ होता है। हाँ तो बेसिकली तो CPU से बहुत हाई था तो क्या हाँ अभी भी है भाई ये नहीं करना था। Not quite registering the depth is up close, but Stacks comes swooping in and finds himself now in a 1v1 versus 𝙤𝙤. I don't think he saw him.
Time dwindling, taps on the spike, reads that he's coming with the flank, and Crow runs out of bullets. क्या कहा था? CPU is high होगा तो 12-5 कहा था ना 13-6 होगा max to max. I mean, Crow had an opportunity there to continue. कल तुम्हारा मैच कब है साहिल? Stax was just a bit off on his aim. कल भी आया नहीं बच्चे. आया नहीं आया. उनको करना ही पड़ेगा. नहीं. I was so close. Sugar Zero there as well as he steps out of his smoke at the wrong time, right into the open off of 𝙬𝙤𝙤𝙤 and gets taken down. So a good entry here under some pressure from DRX. You know, 𝙬𝙤 able to stabilize, get the plant down, get their ults down. You know, had a really good win condition set. Guys, Sugar Zero को पता नहीं था कि वहाँ पे है. ओ उसके पे बुलेट खत्म हो गई थी. Initial spray off, but had enough time to get it done because Crow couldn't get it under control fast enough. अगर Sugar Zero वहाँ पे अल्ट से बाहर नहीं निकलता. But पता है DRX पे डिफिकल्ट तो है सेंट बिना सेंटिनल के वो होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है. Rules are nothing in this game. Rules are nothing. It's more about what utility you have. No. Putting out in the up battle. वो ज़्यादा अग्रेसिव था. ये ज़्यादा अग्रेसिव था. फॉक्सी खेलता ही अग्रेसिव है. वो एसएन पे भी यही खेला था. ओ भाई ये इतना कॉन्फिडेंस चाहिए. नाइफ उसके नाइफ से तोड़ दिया आपने. मुझे सुगर जीरो को डिफेंड करना एक मिनट. गाइस सुगर जीरो वहाँ पे अग्रेसिव प्ले बनाया. ठीक है. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था उसको. वो कॉन्फिडेंट होके बाहर गया कि शायद अगर बंदा मार ले 3v3 की जगह 3v2 हो जाए. तो भी फुल टाइम कर दे स्पोर्ट्स. हां बिल्कुल. यार मुझे खुद नहीं पता. Confirmation that someone's there with the utility, but yeah, I mean, just that wide swing from depth. You know, Foxy just was not ready at all for. किसी महापुरुष का कहना है कोई भी प्ले घटिया नहीं होता. बस चूतिया होता है अगर काम ना करे तो. On the location, Foxy there, so big opening kill once again for depth. Yep. Inside of 𝙬𝙤. Wait, he won't check it. No, he could. Main controller क्या उनका? Oh! Track him! Sniped out of the sky. Oh, no. Light comes in, does stack, come on, stack. One more. Done, dude. Jeet गए. 13-5 it is. Stax will gun him down. First match won by DRX. VCT Pacific over 𝙬𝙤. It was so easy. They're not even excited. Here. I think we would have all liked to have seen 𝙬𝙤 put up a would have loved to have seen a third map. Was not meant to be. 𝙬𝙤 just not quite as crisp and clean as they needed to be. Just too many rounds in a row there dropped. You know, on multiple maps. G-match next है 5:30. Streaks of wins able It to should be be 5:30, but DRX, I'm expecting a little what a earlier. showing here for 𝙬𝙤9, his first time at an official VCT बस कहाँ गया भाई बैठा match, हुआ and it bench was पे. spectacular. It was. I mean, less impact found ये here. था सबसे मुझे डर भाई. Goes 13, 0 assists, whatnot. Doesn't really matter. Stax clearly looking much more at home here on this stage. भाई जल्दी होए वेंडर भाई मैं फिर से अजीब सा तो रखी है. 2 seasons of VCT. And on KO as well. Yeah, I mean, seems to be really keyed in on this agent. Yeah, right back into comfort for BO3 him. हाँ. Depth अब आएगा main match. 5 first bloods for him. Yes. Global versus P1. It's pretty much, I would surmise, almost certainly 5 first bloods found in the 5 rounds that they're able to accrue. It was probably something like that. You wouldn't probably be too far off, but I think like. Again, there are sprinkles of things that are good here for 𝙬𝙤, and it's now you got to start building off of those. If Depp is still able to be efficient with those first kills, you've got to find ways to punish these other opponents. You know, you can't just be a one and done. You can't just be a pick. मेरी सोसाइटी में भी बनने लग गया कि जिनको जो सा ग्रुप ज्वाइन करना कर सकता है व्हाट्सएप ग्रुप. टेबल टेनिस का हो गया है. टेनिस क्लब कौन सा है? अच्छा टेनिस है तो हाँ. क्रिकेट टेनिस बॉल प्लेयर्स. क्रिकेट टेनिस बॉल. फुटबॉल मंडे टू संडे 6 बजे से लेके रात के अभी ये क्या है भाई? इसका फुटबॉल का कोई ग्रुप नहीं है. कैरम प्लेयर्स का भी ग्रुप है. वॉलीबॉल कहाँ आया? अभी तक प्लेस नहीं डिसाइड हुई. वॉलीबॉल होगा बट प्लेस डिसाइड नहीं हुई. लॉल. Where's the Vamos? I know he's not in a new national, but I want to see some more of that energy. तू कल कितने जाएगा वहाँ पे? I mean, हाँ? unfortunately, just feels like ये तो 12 बजे कह रहा है. It is still कौन? obviously early days. क्या ऐसे मैच स्टार्ट 9 क्या क्या के? 9 weeks of 12 to go through here, including. भाई अच्छा हाँ. So for 𝙬𝙤, 11 बजे से मैच स्टार्ट है मतलब 8:30 की. This is the toughest match in theory that we know of, based on history, based on what we've seen,
This is the toughest match they could possibly have in this tournament. So Okay, just ping in on the particular group when you want to play. I'm sure someone will respond as per his or her convenience ability. So as you get partners to play or play along with residents who are already playing and post on group regularly, I request all kids, women, my fellow brothers and senior citizens to join please. मेरा नाम तो बोला नहीं इसने, गेमर्स। तू बना ले अब। बोले अबे ऐड कर दे गेमर्स। या मेरा मन कर रहा है ज्वाइन करने का बट नहीं कर रहा मैं ज्वाइन। बहुत बीटी होती है। पता है सबसे गंदी चीज क्या होती है साहिल? अब मैं बताता हूँ सबसे गंदी चीज क्या होती है सोसाइटी के ग्रुप में ज्वाइन करने की। तुमने जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, एक बार खेल लिया, अच्छा खेला, तो वो बार बार बोलने लग गए। उस दिन क्या हुआ, फुटबॉल में प्लेयर्स नहीं आए तो बैडमिंटन खेला, बैडमिंटन अच्छा खेला तो वहाँ के प्लेयर्स बार बार भाई आ जाए करो यार, खेल लिया करो, क्या बार बार स्ट्रीम करते रहे, तो ऐसे बोलते हो। तो इसलिए अब वो मेरा भी वहाँ पे भी मन नहीं करता। अब टेबल टेनिस नहीं खेला अभी, टेबल टेनिस जबकि मेरा बैडमिंटन से भी अच्छा है, क्योंकि उसमें तो मैंने खेल भी रखा है टीम वीम में, तो इसलिए अब मेरे को पता है स्पिन विन करूँगा ये सब, वो अपने आप कहेंगे भाई भैया तगड़ा खेलते हैं, इनको खिलाओ। या फिर उस दिन बैडमिंटन में वो बड़े भैया कोई थे पता नहीं कौन, मेरे को कह रहे हैं छोटू रोज खेलने आया कर। मैं कहा तेरी माँ का छोटू, वैसे इतना गुस्सा आया ना मेरे को, ये बोला हो छोटू, उनको 13-0 से हरा दिया मैंने। मैं कहा अब बुलाओ। मनन क्वेश्चन पढ़, लास्ट क्वेश्चन पढ़। क्या लास्ट क्वेश्चन? Who you think will win, DRX versus PRX? I think that would be interesting to see because this time like PRX is also strong, but I feel DRX is top, so yeah. But yeah, it would be very interesting to watch DRX versus PRX. DRX anti start कर लेगी, मैं बता रहा हूँ DRX को। But again, देखने में just because लोगों की start, लोगों की yeah, but Paper X का aim ज़्यादा better होगा DRX से I feel. हाँ. So might be you see aggressiveness crazy होने वाला है। Yeah. देख, हाँ, क्योंकि PRX भी बहुत एग्रो खेलती है और इसमें DRX भी एग्रो खेलेगी, तो वही बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। बट देखना बात है कौन जीतेगा। भाई पीसी भाई जल्दी हो ये। नहीं, मुझे लगता है DRX एंटी स्टार्ट कर लेगी। पहले ही मैच हो चुका है DRX PRX एंड DRX नो हाउ टू फकिंग रिस्पॉन्ड टू PRX, दे आर नॉट स्केयर्ड। अभी वॉलीबॉल नया बन रहा है, अगर वॉलीबॉल बन गया तो मैं खेलने जरूर जाऊंगा। ब्रो वॉलीबॉल में मेरा उंगली टूट गया था बिकॉज़ बॉल वाज सो हेवी। उंगली भाई वॉलीबॉल में पता है लोग मेरे को कितना वो कर देते हैं, कहते हैं डाइव अच्छी मारता है, इतनी बार डाइव मार के भाई मजा आता है भाई वॉलीबॉल में डाइव मार के सेव करना ना, लोगों की तारीफ सुनो। ओके क्या, चलो देखते हैं क्या कह रही है अब। G530 का मैच, जी फैंस बताओ BLT का नाम यूज करूं? BLT क्या है? Of course DRX fan. Imagine Rossi hops on in the end movement. हाँ भाई बना दे, इससे तो वो बना दिया एने में। मैं बताए हेलो इंडिया, इंडिया। मैं बता क्या देखना है आनंद? हाँ आनंद वो देखना है रॉसी को जेट खेलते हुए, ठीक है, किसी अच्छे मैच में। किसी अच्छे मैच में मतलब लाइक ऐसे पैसिफिक VCT पैसिफिक मैच में किसी अच्छी टीम का अगेंस्ट जेट खेलते हुए देखता हूँ रॉसी को। और सोलो को ऐसे को देखता है तो देखो क्या ही है। बेटा जितना बोल रहा है ना, कल लाइन पे ना उतना पिटेगा मेरे से, उतना खाएगा। देखते हैं। अभी यथार्थ नहीं है ना, पता है अर्जुन ने क्या कहा, भाई थोड़ा मैच वैच खेल लेते हैं पहले। हाँ। तो मैंने पता व्हाट्सएप पे एक पैराग्राफ लिखा कि अर्जुन तेरे को ये काम करना है, यथार्थ ऐसा करेगा, गन शॉट का इसी ने हथौड़ा ये और मैं ऐसे, ठीक है। उसने पता है क्या लिखा आगे, भाई तुझे सब कुछ पहले से कैसे पता है? मैं बता रहा हूँ ना, तुम लोगों का गेम पता है मुझे सब, तो मैं पूरा एनालाइज करके लिख दिया मैंने कि ये होगा ऐसे होगा, ये सब प्लान। और यहाँ उल्टा हुआ है। यही होता है भाई, जब सोलो टीम में होता है उसको सब पता है उसके प्लेयर्स के बारे में और वो कर देता है। तो एक चीज भूल है क्या? भाई मैं तो यही हूँ,
तो क्या हो गया? तो तुझे कितना आइडिया होगा कि भाई हमारे में कौन कैसा होगा, क्या करेगा? हथौड़ा का, गन शॉट का, किसी का तेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ भाई। पक्का पक्का। तू क्या सोचा है? मुझे सबसे अच्छा चल एक हिंट देता हूँ। तुझे क्या लग रहा है कल के मैच में आईजीएल कौन करेगा गन शॉट? हाँ नहीं, फिर सोच। देख अगर मैं अगेंस्ट मैच मोस्टली तू कहेगा कौन सी होगी। तेरे को क्या लगता है कि मैं किलजॉय खेलूंगा? अरे साले इतना नहीं बोल यार, शांत हो जा, चुप रहियो। कैसे खेलेगा नेट मोस्ट प्रोबब्ली। हेलो शांत हो। हेलो हम अपनी स्टैट्स नहीं बता रहे ना तेरे को अभी। बताओ भाई। बात शायद की नहीं है जो बताया ना। ये था, तूने मैसेज वैसे देख लिया था ना अपना? अपना कौन सा? हाँ वो व्हाट्सएप पे मैसेज देख के शांत रहियो अभी। हाँ ठीक। हम आज चिल के लिए हैं खेलने, बट मेरे को बस एक चीज करना है, जिसके भी अगेंस्ट खेलो जोर जोर से चिल्लाना है बस। हाँ वो तो करना है। And the casters are mentioning it as well. I mean, 𝙤𝙤𝙤𝙤, he's back in form where he's able to make some of these clutches happen. He's able to make some of these turnarounds happen now that the 𝙤𝙤𝙤𝙤 has moved back onto Laz's shoulders, but it just wasn't enough to take on DRX. It was definitely a game where there was a second half, but it was nowhere near as important as the first. The first half, बेचारा ये था, so many of the rounds were gobbled up by DRX. It's a very वो भी नहीं ले पा रहा, पैसे भी नहीं ले पा रहा जब तक साहिल ऐसे रोक के रखेगा। वैसे तेरे को अगली बार से साहिल मैं सोच समझ के दूंगा। अबे तेरे को पता उसको दे दूंगा, उसकी जगह आयुष को दे दूंगा। तू कम से कम मेरे को ये तो बोल कि मंथ लगेगा, मंथ भी मैं मान जाऊंगा। तेरे को पता है मुझे वो होता है एंजाइटी। बाबा I mean, well, tell us about that. भाई वो पैसे ना वो तो बता दो दोस्त का एक्शन उसको दिए हुए ना वो आज आएंगे अभी। DRX trying to attack as well, right? तू एक साथ देगा या टुकड़ों में देगा? Interpreting Pearl. तब तो कब हो मैं? Right? When we first saw Harbor show up, it was all about main control. और दोस्त देगा कोई सबसे A couple times तो मेरे को तो तू के साथ में साइड को once we get past a couple rounds and then एक you कहां go से into हुई the है? last couple rounds, we would see like Mako really able to just sweep mid, and that happens because of how DRX is able to use their Harbor play to take control of mid. Instead of always pushing out mid, they'll always use these cascades. यस सही बोला। Cascades and then another skill to push it to mid. व्हाट्सएप पे लिखता है भाई तेरा लाइव ये कब होगा, मैं आऊंगा देखने, और फिर एंड में लिखता है नीचे। And that's just excellent maneuvering from DRX. अबे मेरी क्लास थी, मैं क्लास में नहीं गया। I think there were also a couple moments where we really thought आज आखिरी क्लास थी, क्लासेस खत्म। भाई बंदी को सुनने दे, वो कुछ कह रही है। Oh sure, well I mean there were these moments, you know, not all rounds are created evenly or equally I should say. If you were to join a team, which team would you join, PRX or DRX? We see the Viper ult to use, so they have Which role you play in duel? भाई मुझे क्या पता भाई? They've tried to secure A. उनके साथ में रेगुलर टूर्ना खेलो, उनके साथ खेल के मुझे पता चलेगा कि यार इनमें ये अच्छा है, इनमें ये बुरा है, मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, ये करना। आई एम फ्लेक्ट, ग्राइंड करके मैं सीख जाऊंगा। Killjoy ulti, and with just precision, they're able to come through and shut this down. अब जैसे हम कल मैच खेल रहे हैं, जरूरी नहीं है मैं जेटी खेलूं। क्या पता मैं किलजॉय खेलूं, किलजॉय मिसिंग है, अच्छा चाहिए कि was just brutal because then they've spent all their income on all their guns, they've spent all their ultis, and it's back to square one. And I love that you brought up the fact that they were saving so often. Again, we saw this on Ascent too, but we saw it on Pearl. You buy the operator, either you drop it and you have to rebuy it, or you have the operator, you're like, okay, well maybe we should save, because in theory you should, right? And then you're just constantly on your back foot saving. And it happens because of plays like this. If you lose control of mid, right? I mean, look at just how free Mako is. But the reason that area was opened up on the map was because of how DRX was attacking with those cascades, with the Harbor utility. And the fact that he actually goes through B-Link to come back into Art, I mean, there's no way 10 has any idea. That's not even 10's fault. It's just the way that Zeta was playing the map versus DRX. Eventually, we see him actually just wrapping all the way back Para DRX, obviously. and is able to clean up this entire thing. But after rounds like these, you can't blame Zeta, right? They go back and say, okay, well, let's play more passively, right? We got to hang a little bit further back. And then they give up the site. And then they have to, you know, save, again, a couple guns.
and it just does not open up a chance. So first game won by 16 plus is going again, really an all-star here. now T1, another Korean team gonna be playing against an Indian team, Global Esports, in which Global Esports, they have one Canadian, one Korean, another guy with Korean and one Australian and one Singapore player. Will this team gonna win upcoming matches, or they need players like other guys? You guys can watch SoloManan on Watch. Buzz used to be Mako used to be a jet main. But Foxy can how much do you earn every month? These other players There's have so many different agents. If you ever have to sub someone out or you want to change your, kind of your strategy, you have so many options, and people aren't going to know what to expect moving forward. It's a really good point. You can make any combination that you can think of at that point in time. I mean, especially earlier on in Valorant, a lot of these players will get locked into their specific roles, okay? Maybe I'm a controller, maybe an initiator. But as they're going to add more agents in, there's more possible team combinations, and that can only make you stronger and stronger as the game develops more and more. I mean, 𝙬𝙤𝙤 just continues to prove they're the kings of controlling the map, and they really demonstrated that on Pearl today. All the players really well. With that, I know we have Jen ready to introduce ye Korean hai, Japanese hai? The man himself. So this over girl, to you, Jen. this woman, I mean, jo bhi hai, her English is very good. Wait, mera PC. Well, thank you very much. Wait, mera PC, deख. That's right. I'm standing here with allegedly and possibly the best world smoker. Well, ये देख कैसे बोला best smoker. Today was insane, especially from. Oh, she's wearing heels. Scarier than the last time we saw you in Brazil. So. Dude, मैं नहीं देख रहा यार. मुझे मोहब्बत. चलेगा भाई, हेलो. 오늘 승리 축하드립니다. 이렇게 개막전 승리를 가져가게 됐는데. हेलो. 브라질 때보다 확실히 더 무서워진 모습이거든요. 특별한 계기가 있었을까요? 일단은 축하해 정말 감사드리고 일단 제 개인적으로는 브라질 때보다 조금 더 못한 느낌이어가지고 개인적으로는 좀 그래요. 네. 개인적으로 못한다고요? 오늘 활약에 그럼 만족하지 못하시는 건가요? 평소에도 그렇고 약간 락인 끝나고 이후로 제가 좀 별로 좋지 않은 상황이었어가지고 근데 오늘 대회만 보고 생각하면은 이제 좀 평소 기량대로 온 것 같긴 한데 아직은 좀 부족한 것 같아요. हाँ सही कह रहा है. Well, to be But honest, it's alright, yeah. Personally, after Brazil, I think I've been underperforming both in ranked and scrims as well. But in match settings, I guess I kind of came online, so I'm satisfied with how I performed today. Well, today was also Foxy9's first day at work at VCT. What did you make of his performance? And what did you make of his teamwork overall? हाँ. 그러면 마코 선수, भाई तू सुनने नहीं दे रहा. वो ब्यूटी कुछ कह रही है और वो प्लेयर भी कुछ कह रहे हैं. सुन ले. 팀을 맞춰보니까 팀업을 맞춰보니까. मेरे को लग रहा है K ड्रामा देख रहा है. 일단은 폭시9 선수가 스크림 때는 생각보다 좀 많이 भाई 힘들었던 कितना 것 soft spoken 같은데 बोलते हैं. 오늘 대회에서는 좀 침착하게 잘한 것 같고 대처도 잘한 것 같고 스크림 때보다 더 잘한 것 같아요. 약간 He's not even looking into her eyes. Now he's. 그러면은 이제 특별히 폭시9 선수에게 경기 전에 해준 말이 있었을까요? 그냥 스크림 때 기죽지 말고 그냥 이대로 쭉 해줬으면 좋겠어요. Well, Foxy9, he was struggling in scrims, so he was having a tough time. But I guess he suits the stage. Stage is just made for him, and I think he's done pretty well today. 그러면 이제 어차피 우승은 𝙬𝙤𝙤라는 말이 있었잖아요. 올해도 그런 흐름을 이어갈 자신감 어느 정도인지도. Subtitles मैं बताऊँ क्या बोल रहे हैं? So yeah, everyone just has high expectations for you. So how मुझसे बहुत high expectations हैं हैं सबको कि इस बार वो करेगा. So that's what he's saying, and he's saying then. 저희는 일단 저희를 낮게 보면서 이제 방심하지 않는 선에서. तो कह रहा है वो तो होती है सबको. 그냥 방심 안 하고 끝까지 또 달려보도록 하겠습니다. But वो फिर भी करके और अच्छा करने की try करें. Having high expectations for us and also supporting us all the time. But we always try to stay humble and also keep our guards up all the time. And we promise you that we'll deliver every single time. One more question brought to you by our gaming PC partner HP. For any advice? Someone who's looking to purchase a new gaming laptop or desktop. 그러면 이제 마지막 스폰서 질문인데요. 이제 새로운 게이밍 장비를 게이밍 컴퓨터를 I am the number one man. 조언이 있을까요? And people say me that मेरे को नहीं आता. 일단은
장비는 저도 잘 모르겠어요. 저도 많이 바꾸질 않아봐가지고. 근데 이거 하나는 말씀드릴 수 있는 게 वो होता इसके लिए तो लड़की था मैं तो पहले बोलता 모니터랑 이제 Oh I forgot your 몬스터라고 question I was 제일 so into 중요한 your 게 eyes 모니터라고 생각해요. ठीक है भाई रोमांटिक हो लो 차이가 되게 심하더라고요. शिनचैन बैंग है उसके पास शिनहान है वो HDOM भाई ये नहीं अबे चूतिया मैं चैट वाला पढ़ रहा हूँ जो चैट पे जो बंदा लिख रहा है उसका पढ़ रहा हूँ देख ले उसे शिनचैन लिखा especially it's important when it comes to ऐसे तो भाई शशांक अपना playing नाम भी games, शिनचैन ही पढ़ता especially होगा Valorant. So I can tell you that anything from HP Omen will be good for you. Well, you heard it from the men. Get something from HP Omen if you want to play Omen like him. Well, thank you so much, Mako. Congratulations once again, and thank you for your time. Well, I'm actually gonna throw it over to a short break here, but when we come back, it'll be T1 versus Global Esports. We'll see you on the other side. मॉडर्न प्रॉब्लम्स का मॉडर्न सॉल्यूशन भी है मेरे पास हाँ वही तो कर रहा था बेडशीट जला दे नो भाई जितनी बार देखूँ ना मेरा मन और करता है देखने में क्या ये ट्रेलर हाँ इसका गाना बहुत सही है यार वेरी वेल एनिमेटेड यस लेट्स गो आजा यूट्यूब चैट देखे क्या कहती है कहाँ थे हम हाँ skip ad all these are fake account do not fall for it chat wait is it real क्या हो रहा है उधर देख रहा हूँ G fighting Rossi is greater than Mako when racing towards the airport who the fuck are impressing GEVLD yo what अबे क्या है लोग फाइट दे रहे हैं और ले भी रहे हैं Let's go T1 has same issue. Their team is new, so less coordination. The one to control their nerves and do better comps will win. तो ये तो हर टीम में होता है. Tier 1 क्या है इसमें? Every Indian player CEO. SK Rossi is verified anyways. Is that real Rossi? कोई Rossi बन के आया बक्का. ये रहा SK Rossi. दिमाग के अच्छा देख ये देख SK Rossi दूसरा कह रहा है फेक है गाइस ठीक है और फिर दूसरा बंदा उसको एक बंदा एसके रॉसी बन के एक बंदे को टैग कर रहा है दिमाग के अंधे मैं खेल रहा होता तो इधर चैट थोड़ी करता एसके रॉसी वेरीफाइड है कोई बताओ व्हाट द फक मैन लोग भी अजीब है भाई दिल तो पागल है दिल दीवाना है लेट्स गो जीई रॉसी विल नेवर कॉल यू दिमाग का अंधा बट भाई क्या so many fake accounts ओए मैं भी लिखूं fake account रुक G fighting fake as fuck भाई वो छोड़ hello India एक तो क्या था प्रसाना thank you for membership हाँ क्या कह रहे हैं वो नहीं चैनल वैल्व का जो सिर्फ के बनी है क्रिएटर्स वैल्व हाँ तो उनका चैनल है ठीक है यूट्यूब पे अब उनके दो चैनल है एक है जो वेरीफाइड है एक जो फेक है ठीक है अच्छा ये सुन तिरले व्हाट विल जी एक्सक्यूज टुडे इफ दे लूज ये ले एक और आया फाइट करने लास्ट टाइम इट वाज पिंग एंड देन जेट लैग ये भी फेक है ऑल बेस्ट गाइस जैक हिम अपने स्ट्रीम पे सर्च करें वैल्व ठीक है क्या वैल्व VALVE VE वो छोड़ लाइव पे सीधा लाइव पे जा नहीं मैं नहीं जा रहा जो ऊपर होता ना टैब्स अबे जाते हैं तायो तू पहले स्कैम करते हैं लोग तू पहले भाई इमॉर्टल आ जा तब से वेट कर रहे हैं हर कोई भाई मैं आजकल 5 खुद ही कर रहा हूं सीम बॉक्स नहीं कर तू रहा निर्वाणा मैं स्क्रीम निवेरा अरे निर्वाणा मतलब पागल मैं ऐसे बोल नहीं सकता ना स्क्रीम तो मेरा दोस्त है निर्वाणा गुस्सा हो जाएगा इससे कहेगा भाई ये क्या है इसको मेरे से कंपेयर कर नो यू नीड सम निर्वाणा इन योर लाइफ not talking about your friend what do you all say guys ये VLT Sentinel VLT is greater than DRX ये देख VLT Sentinel भाई फेक अकाउंट बना के भी आ रहे तो ऐसे थोड़ा ना करते हैं is this a stream dying please Indians don't spam the chat क्या है ये क्या हो रहा है भाई ये क्या चैट है पता नहीं क्या फाइट कर रहे चैट में अपने ही लग रहे पड़े हैं These idiots don't spam the No, you know, I think now here you need verified account so that you can just put one dot and everyone will be like, okay, he's real one.
But again, people would be like now. ये देख गोल्डी भाई आ रहे हैं अच्छा जैसे उनके पास वो है ही नहीं. The best version of G is playing today. Hopefully. अबे ये क्या है सेम? ये मुझे डेजावू हो रहा है थोड़ा. डेजावू क्या ये सेम चीज कहाँ हुआ था? अच्छा हाँ, हम उस दिन डिस्कॉर्ड पे बैठे थे और सेम थिंग हैपन. वहां पे मैच चल रहा है और यहाँ हम डिस्कॉर्ड पे ये चैट्स पढ़ रहे थे और सेम चीज बोला था. द बेस्ट वर्जन ऑफ जी. ये सेम सब कुछ सेम हो रहा है. फाइनल डेस्टिनी 2 जैसा. Time to recon skills, making it a nightmare to strike without proper preparation. Mid becomes a crucial area for the attackers, as it opens up rotations, mind games, and eventually a two-pronged attack into either site. And defenders will favor utility or an operator in pizza to control. One normal. Okay, back guys, back. कहाँ थे हम लोग? India need new Forsaken. Rossi is better than Bazi, trust me. Soul is greater than DRX. VCT अबे साले भाई यार मेरे को मत डालो यार, मेरे को मत घसीटो इधर प्लीज यार. मैं तो ऐसी मजाक में लिखा था, ऐसे मत करो, ये कांड हो जाएगा फिर. मतलब पता क्या, एक टारगेट हो जाता ना, उनको टारगेट मिलेगा वो मेरे पे टारगेट कर देंगे. मैं बेकार में वो फट जाऊंगा. मैं ऐसा हुआ, मेरे को क्यों तोड़ा. Rossi should not allowed to touch a operator. Easy win for G. ये देख. अच्छा भाई क्यों भाई? और फिर कहता है भाई फाइट मत करो. फिर दूसरे आपने लोग इग्नोर कर सकते हैं ये चीज, है ना. ये देख वो फेक अकाउंट से गोल्डी भाई बन के आ रहा है और कहते हैं सेंटिनल को टैग कर रहा है फेक वाले को. हाउ आर यू? इतना वेले होते भाई. व्हाट You didn't see his. अब ये देख एलेक आ गया. What? You didn't see his Sage operator in Brazil? Man was playing with screen now. ये तारीफ था, ये वो था. भाई कितने वेले हैं हमारे लोग, सबके फेक अकाउंट बना के ट्रोल कर रहे हैं. अब एक बात बताओ, पहली बात, अगर गोल्डी भैया ना आएंगे, ठीक है, तो उनके नाम के आगे टिक आएगा पहली बात, ठीक है, वेरीफाइड है. अबे तू किसको बोल रहा है? वहां चैट पे लिख, जा चैट पे लिख. मैं नहीं दिखा. क्यों? तो फिर यहाँ मत बोल, चैट पे लिख, ज्यादा बढ़िया है. लिख ना डरपोक. क्या देख रहा हूँ? 5 मिनट बाद देख पाऊंगा भाई. तूने सब्सक्राइब भी नहीं किया? शेम ऑन यू. Sway, man, these fake accounts being sneaking attentions. True. T1NA org, right? Why did they move regions? भाई उनकी मर्जी, तुझे क्या हो रहा है? ये ट्विटर पे डालना, यहाँ क्यों पूछ रहा है? So many fake profiles in the chat. ये क्या ड्रैग्स क्यों कर रहा है? डॉट. They move to all Korean with Saya player IIRC. हैं? बोले उसको टाइम आउट दे दिया. T1 was NA. Now they APAC. साहिल तू डाल, जेता तू या तुम में से एक जना डालो. T1 win और GE. किस पे? इस पे चैट पे डाल. हाँ तो जब वो देख भाई टाइम खत्म करता हूँ. ये देखियो, ये अपना बंदा एक अलग ही नशे में होता है. दूसरा डाल रहा है SRK फार्मेसी. मैं SRK को कैसे फैन भाई, क्या चल रहा है? मैं फेक आईडी से आया हूँ. अरे भाई क्या लोग है भाई? अभी फाइट बंद होगी लोगों की. या इट्स शोइंग टाइमर आफ्टर टाइमर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. यार लोगों ने फाइट बंद कर दी, मेरा मन करे डालने का एक बार. साया प्लेयर वर्सेस टेक्सचर विल बी फाइट टू वॉच. इंडियन वैलो इज लाइक पू. आ गया, चलो बढ़िया, अब फाइट करेगा कोई. Pajit so bad. 16k subs, more to go. I'm real. GE fighting. GE secret is typing. T1 really depends on Saya player. Where is godlike? No Johnny, no fun. I am Escarossi.
साया प्लेयर देखना है मेरे को, क्या है जो लोग इतना वो कर रहे हैं। Say no to toxicity. सारे फेक अकाउंट को टाइम आउट दे दिया लगता है। नहीं नहीं देख, आई डोंट थिंक सो। साया गार्ड का प्लेयर था इसलिए लोग इतना कर रहे हैं। अबे साले तो यहाँ ये बंदे ने मुझे टैग किया था ना प्रणव, यहाँ पे लिखना, वहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? Just block and stop giving attention to toxic player. किसी ने पूछा, इसको लिखता हूँ। ओके ओके, G owns them. किसको? G win, G owns them. वाह, win or lose I will support G. Nice, that's good. T1 26 G नो क्या, ये इंडिया का फ्लैग बना के ऐसे बोल रहा है, बताओ। SK Rossi will play, anybody know? इसको लिखता हूँ yes. Yes, no, I don't know. भाई ये क्या है यार, ये कौन है अब भाई? ऐसे भाई एक्सिस कहाँ से डाल दिया? Aya was not it. Should have bought, yeah. ओहो भाई ये बंदा तो अलग ही नशे में है भाई। क्या एरिन को हटा के ये को ले लेना चाहिए था। ये पता है कितना महंगा बिकेगा वैसे। G until the end, no matter if Rossi or Lightning Fast can't play. Can't play क्या होता है? क्वेश्चन मार्क मैंने क्या डाला? No Indians kidnap, oh wait, no Indians kidnap Rossi Gulu so that without them G क्या लिखता है भाई? अच्छा ये सुनो, G will win actually as G team is better than T1 due to their aim and mechanical skills. They needed time to prepare their team, 5 centuries and they got it. हाँ, क्योंकि ब्राजील में मतलब उनका प्लान था कि वो हार जाएंगे और जीत जाएंगे। सेज और सोलो दोनों को जी में ले लेते हैं। फिर सेज कौन होगी? सेज कौन होगी? अरे वो कौन सा होता है वो? हाँ ये वॉच कहाँ गया मैं कहाँ पढ़ रहा था? हाँ सीधा, अच्छा लिटरली नो वे टू आइडेंटिफाई अ रियल और फेक अकाउंट। अबे एक सेकंड, मैं इसको लिखना चाहता था। अबे रियल और फेक हो वो थोड़ा ना आके कुछ ज़्यादा बकवास करेगी। I won't be surprised if sometime in the future some team pulls out a 5 duelist comp and started dominating. अच्छा शादी में ये बंदा कौन है? क्या ये कौन है? साहिल चैट में देख क्या लिखा उसने? शादी में सिद्धि से मिला और भूल गया उसको। चैट पे? हाँ अरे ये अपने मेन चैट पे तो लॉल तुम कौन हो भाई? एलिसियस का बात कर रहा है। हाँ वो तो समझ गया, बट ये कौन है? इसको कैसे पता? अबे कहाँ लिखा है? कौन चैट पे? तेरी चैट पे? किस चैट पे? वो अरे ग्लोबल वाली चैट जो उसकी है, क्या कहते हैं, यूट्यूब वाली चैट। भाई ये तो बहुत खतरनाक निकला। ये कौन है? कैन वी चेक? नो वी कांट। हाय आई एम सोलोमन। ठीक है भाई, ठीक है। फिर मैं देव्यांश आर्या। फेक अकाउंट बनने वाला है। हाँ तेरा फेक अकाउंट बनने वाला है थोड़ी देर में। चल बे, चैट मेरे को नहीं मिलेगी। मैं इतना फेमस नहीं कि मेरा फेक अकाउंट बना के। हाँ मतलब चैट मेरे को नहीं दिखाई। अरे यार भाई यार
साहिल भाई मैंने चैट बंद छोड़ दे असेंडेंट प्लेयर शांत एक्स एक्सिस आर्ट डायरेक्टर नाउ जी मैं भाई कंफ्यूज हो गया मेरे भाई मैं कंफ्यूज हो गया आई एम कंफ्यूज तेरा कोई सीनियर था एक्सटीसी में आर्ट डायरेक्टर एक्सटीसी में मैं रहा ही कितना 2 महीने दो महीने तो रहा नहीं मिला नहीं पैसा मिला भाई पैसा बराबर में मिला एक्सटीसी ने हमेशा पैसा बराबर दिया वो 100 था ऑलराइट नो सांगवाशेस भी आ गया ये रियल वाला होगा पुरानी सांगवाल डाउट है मेरे को अब देख इसको मैं क्या लिखूंगा हाय सिंग वोंग शॉन चल भाई अब स्टार्ट हो रहा है भाई रेसिस्ट मत करना कुछ रेसिस्ट क्या दिया मैंने बस वो लिखा भाई वो ऑटो करेक्ट ने गलत लिख दिया कोई नहीं भाई आपके मैनेजर का नाम भूल गया मस्त आदमी था कौन था मेरा यथार्थ को ही बोल रहा होगा यथार्थ तू क्या मुझे ले गया इसके साथ मैंने क्या किया पता नहीं बंदा कह रहा है कोई नहीं भाई आपका मैनेजर का नाम भूल गया मस्त आदमी था कौन है भाई मेरे को नहीं पता बस अरे सीक्रेट है भाई चुतिया यार ये बंदा ओ आपको कह रहा वो कि आप मस्त आदमी थे यथार्थ अच्छा आदमी था वो यहाँ आ गया आप चैट पे अरे वो है ये भाई सीक्रेट देख लो आपको क्या कह रहा है आप मेरे को मस्त आदमी कहते मैं आपकी रिस्पेक्ट करता इज्जत करता ये बंदा कह रहा है चूतिया आदमी था बट हाउ कम यू नो इट लाइक यू नो सेज सिद्धि को जानते हो तुम you're competing against. Yeah, definitely. And like you guys said, that's sort of the beauty of VCT and Valorant. You really don't know what the Shubham ka dost hai PS. You excited? Excited for what? We're going to go into our second game, which G versus T1. I'm super excited. Obviously, bro. You are a kid. That's why. We have like global esports that's going to be here. I hope they guys enjoy. Dude, I'm in a mood of roast, I think, today. I'm not doing it. I feel like I saw like one or two like yeah, they're starting to pop up a little early here for Korea, but yeah, like you said, I mean, global esports, literally global, right? I mean, they have players from all different countries. They're the most global of all the teams. We've got some multinational teams, but I mean, there's 6 or 7 different nationalities at times represented on this team. Yeah, and you can see it if you're familiar with the players, of course, from Korea. It's Texture and Bazi, but then Aaron from XSET fame, right? And Solo! And then also went to some of the international tournaments last year. Then you got Manye representing the APAC. So funny. Ari, I'm just kidding, bro. You know, wait, you are a kid, man. But now he's Kid always get excited. And I'm just curious, how does this team look with this iteration? Okay, so Rossi and Lightning Fast both are not playing. Of course, currently, dude, look at the tattoos. Lightning Fast here in Seoul yet. I mean, नहीं वो लोग पहुंच चुके कोरिया, but they like. But I think it's a good decision because वो कल ही पहुंचे हैं, so थोड़ा issue हो सकता है if they play. And they actually global. Honestly speaking, global needs to win almost half of the matches. तो वो कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे मे बी डेफिनेटली टीम का डिसीजन होगा यार such a powerhouse name when it comes to global esports. I mean, it is representing an Indian team, and when you know he's also the Indian rep for the team. बहुत पंगा होगा यार पता नहीं क्यों अंदर से बहुत खुशी मिलती है जब बाहर के लोग चाहे अपने इंडियन की बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारी बात हो रही है. Yeah, with the swaps, I mean, I am curious, right? With Ronsky, does he just fill slot into? They have not reached to Korea yet. वो अगर देख एक बार मैंने नोटिस किया जैसे रॉस्की इन ऐसे मतलब ऐसे नाम हो रहे. अगर मैं अपना नाम सोलो चेंज करे सोलिन्स या फिर ऐसे कुछ रख लूँ तो सोलाइसी नहीं यार सब्जी लगेगी. सब्जी नहीं, that basically means curb of the sun. One of their flaws is maybe they were trying to Soski.
सोस्की सोलोस्की नहीं सोलोस्की नहीं सोलंकी ज़्यादा है सोलंसी सोसी अच्छा सब्जी लोमो मानसन ये क्या नाम है ज़ेलेंस्की मेरा अच्छा नाम है सोलो आगे सोलो के आप बहुत कुछ डाल सकते हो जैसे अब हमें अब एक सोलो बेरी भी है ठीक है एक सोलो है और सोलो मॉन भी है कोई बहुत कुछ हो अब कल को साहिल मेरा और बड़ा फैन हो गया तो सोलो K9 रख देगा वो नाम ऐसा कभी नहीं होगा सोलो क्रीड भी अच्छा है सोलो लन भी है लन हाँ सोलो भी है right? It's doable. It's going to be an uphill battle. Let's just say it like it is, right? Global esports is not predicted to be like in the top 2 for now. But again, we have a couple weeks. We have a round robin. Yeah. We have a lot of iteration that they can learn from. And Aaron कुछ गलत मत बोलियो ग्लोबल का सीधा एंड structure into global esports. If he can rein in some of this talent that this team has. You know, I think मेरे को लग रहा है मैं आजकल बहुत controversial वैसे कहने लग गया क्योंकि मुझे इतना पता चल गया कि the only way I can be end is by my game is not going great. If my game is going great, then definitely there's no way I can. Look, this is a really exciting team. So, we were talking about how lower अबे साले. Obviously, an Indian org here, but सबने it's delete going to be करो. interesting to see how these guys communicate and how this team grows and continues to develop here. Yeah, that's always been the question, right? What language do they speak to each अबे यार मैंने वो other? chat बंद कर दी. I want to see how they communicate, like just literally, and how they gel and what their chemistry is like. Now we have the other team, which is another Korean team. Racist हो रहा है आजकल. Well-known org. भाई लोग भी हो रहे यार. T1. मैं गेम में जाता हूँ बोलते टिंगलिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग ऐसे बोलते हैं. When I was like super young, सारे के सारे प्लेयर ने अपने अपने अलग अलग अंदाज से वो कर रहे हैं. ये पीला वाला रेड बुल कैसा है? Let's just point out that intro is जो तू पी रहा है अभी. How's it? नॉर्मल है रेड बुल नॉर्मल वाला ज्यादा बढ़िया है. no problem. That's coming. ओके सो ज़ेटा मंचिन दोनों आ रखे हैं टीम बहुत बार खेला हुआ है. साया प्लेयर को इतना हाइप में क्यों रखा है मुझे देखना है. साया प्लेयर बेसिकली ओवरवॉच का बेस्ट ऑफर्स ओवरवॉच का. They are not the powerhouse Korea team, right? They've been playing second fiddle to DRX and plenty of other orgs. That's why he's the hype. Very good with the god. भाई गेमिंग कर रहे हैं बॉक्सिंग. Then they try to build a squad over in North ओए America. तो वाह. Doesn't work out, and now with the partner league, they're back in Pacific. ये लोग ये सब तो NS उठा के लाए लोग. हैं? You know, some people were even questioning बैन भी है ना. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि C9 को छोड़ के ये लोग T1 में आ गए. But now they even bring in intro as this addition, and now Zeta ट्रांसफर हुआ था. Zeta और ऑटम ट्रांसफर हुए थे C9 से. और साया प्लेयर गार्ड में था. गार्ड ट्रांसफर. मैं कब ट्रांसफर होऊंगा? Make an all-Korean roster and see how far वाले we can गवर्नमेंट go. जॉब तो And लगता the है biggest बस push फिर market ट्रांसफर lock-in करते तेरे को. was Carpe, right? He's coming over from a different title where he is. इमेजिन मैंने गेमिंग छोड़ दी और मैं 1 साल के बाद कनाडा में शिफ्ट हो गया या फिर कहीं पे वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ. और एक दिन मेरे को किसी ने बोला मेरे पास टाइम है वैलो खेला ठीक है. और मुझे किसी टीम में लैंड के लिए बोल दिया और खेला और वहाँ पे मैंने 50 किल 40 किल मारा. फिर मेरे को सीधा वहाँ से डायरेक्ट किसी और टीम में किया. Tier 1 में मैं मार रहा हूँ 30-40. फिर मेरे को सीधा VCT में. और लोग घर पे बैठ के अपने बच्चों को सिला रहे होंगे 5 साल के बाद देखे वो एक सोलो ये नाम सुनो क्यों लग रहा है. ओह तू कल बेंच साइल सॉरी ये था तू बेंच पे बैठेगा किस दूसरा प्लेयर खेलेगा. बंद हो गया मेरा. हाँ बंद हो गई. स्ट्रीम बंद नहीं हुई. नहीं बंद हुई ना. मैं कुछ क्या हुआ. उनका स्ट्रीम बंद हो गया. मुझे लगा बैन लग गया. मैंने कहा मैंने क्या किया था. भाई क्या ओवरथिंक करता है ब्रदर. दैट्स नॉर्मल. भाई मैं बहुत ओवरथिंक कर जाता हूँ. दैट्स नॉर्मल. मैं तो ये भी ओवरथिंक कर दिया कि एक दिन कास्ट मैं यहाँ बैठा हूँ मैच देख रहा हूँ तुम लोगों के साथ तो वहाँ पे मेरा नाम आ रहा है कह रहे इसको बुलाओ यहाँ पे.
अबे कह रहा हूँ भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ जाऊंगा कैसे ये तू जो बोल रहा है ना ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग है ऐसा कुछ नहीं होता रियल में दिस इज एन रियल ब्लेड रनर अच्छी बात है भाई भाई अगर अगर तू खुद सोच मैंने तो ये भी सोचा था मैं 5 रेटिंग करूंगा और एक बहुत बड़ा नाम आ जाएगा सोचा था बस और हो गया सोचो सोचना बुरा नहीं है अच्छा सोचो जितना अच्छा सोच सकते हो सोच लो यू नेवर नो द मिडिल कास्टर क्यूट मैंने तो ये भी सोच रखा है कि मैं छोड़ दिया We all know. मैं नहीं बोलूंगा क्या चला था सब जो भी जानता है सोलो को अच्छे से उसको पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा क्या जो भी तुझे जानता है अच्छे से उसको पता है उसके दिमाग में क्या चला प्यार की खातिर लोगों ने ये वेरोनिका is like very cute commentary is Veronica Ching over in Lock-in, and quite frankly, he was one of the more Really? consistent players here for Global Esports. Yeah, I mean, the big question is going to be, He's you know, racist, can, man, he's got big shoes to fill here with Ross Hey, not Chad. here, and obviously this is a totally new environment to be out here. You know, in this crazy stadium that we're casting from here. 50% headshot rate what साहब Yeah. भाई मेरे हिसाब से ना पता है क्या इंस्टाग्राम पे अगर ये लोग ऐसे डालते हैं ना दे शुड डाल ऐसे भी डालना चाहिए कि जो कास्टर है कौन कास्ट करने वाले हैं इस बार मेरे हिसाब से वो डालते नहीं डाला इंस्टाग्राम पे नहीं है बट दे हैड an entire video for Beat the Talent so they basically introduced everyone all casters all observers and like background producers everyone And another thing to note for Munyet and Global Esports in general, this is another team that has brought नहीं मेरे दिमाग में a कुछ ऐसा नहीं lot of चलता good duelists, right? And now they're trying to slot them into different जीएफ के बारे में नहीं मैं ये सोच रहा था कि एक दिन मैं बॉडी वॉडी बना लूंगा और मेरे को एक्टिंग का वो दे देंगे कि भाई आप एक्ट करना चाहेंगे मगर मेरे से नहीं होता कर फिर भी करेंगे फिर मेरे को मैं एक्ट करूंगा एक मूवी रिलीज होगी और बस लोग पागल मूवी के लिए पागल नॉट एक्टिंग के लिए मूवी के लिए पागल फिर एक्टिंग भी अच्छी है सब है और फिर बूम नेक्स्ट मूवी बनेगी फिर नेक्स्ट और फिर मैं 10 साल के बाद कर देते ये सोचा पर्दे के पीछे क्या है ब्रदर फिर मैंने बॉडी अभी बॉडी नहीं बना रहा तो वेट करोगे साहिल कब बना with the starting lineups for both teams having some slight changes, right? Ronski coming in for Global Esports. वैसे प्लान तो हमारा यही है coming in at least for the first map. प्लान हमारा यही है कि यथार्थ मैं साहिल जब जून में 1 साल रहेंगे तो यथार्थ और मैं जिम जाएंगे साहिल का पता नहीं साहिल तू अपनी बंदी के साथ रहेगा या जिम चलेगा हमारे साथ बंदी कौन सी बंदी भाई हेलो अबे जून तक तो तू बना ही लेगा ना तू बना ही लेता है किसी ना किसी को ठीक है तू गलत हो जाए साथ माता बंदी मैं नहीं मैं हो तो गया चल तीनों जिम जाएंगे जिम वो कहना और वो सब करेंगे डन बाय डन बस जिम बंद मत करवाना जिम बंद क्यों करवाएंगे नहीं वो मना है हम नहीं I think it's going to be close, and like I said, it's really hard to call for this one. I do think Global Esports is a bit of a wild card right now, just because there's so much unpredictability. Do you really think I'm high? And if there's anything I've seen in Valorant, it's like unpredictable. Usually, somehow gets ahead. Yes, he is high reserve on Red Bull. The reason why I decided to go with We are Global asking Esports for Red Bull also a sponsorship, bit please. of you know, Southeast Asia love as well. Okay, let's listen what they are saying. Right? And that's another region. We talked about English Japan in the भी previous match while we saw Zeta Division, but South Asia has been just huge for Valorant. They've really been growing. They've been running their own like tournaments and leagues constantly, having different teams win as well. Of course, Global Esports has always been at the top there, but they've had several other competitors and rivalries. And so to build these stories, and then to have a star player like SK Rossi, and now
want to bring that brand and that player to a broader stage, to an international stage, to start competing at VCT Pacific. It's very exciting times. And one of the other things I'll give an edge to Global Esports is, quite frankly, the IGLing. I think 𝙬𝙤𝙤 just has a little bit more experience, a little more stability in his IGLing compared to 𝙬𝙤𝙡𝙡, who also has been IGLing for a while, but the stylistic difference, I think 𝙬𝙤𝙤 perhaps being a little more open to flexibility and the mid-round calling than what we saw from T1 over at Lock-In. Yeah, I mean, it would be, again, exciting to see Global Esports take a big upset. I do think T1, if they don't take this, I'd be worried for them. I think that's better. #India fight. Because I think there are these expectations for them, and the fact that they do need to actually produce some results when you have, you know, an org that's Korean as big as this, you know, repping them. So fingers crossed for them. Let's see how they do. Yeah, #G fighting, #solo watching. Wow. No, bro, solo also fight. One day. I've only seen videos. You haven't been there? You're only the old. Why did they let me do this? Yeah, you're the boomer esports. You haven't even been to the T1 HQ. No, I haven't. I only had the phone plan, but no, it's because Taste he spends all his time in studios actually casting, so he doesn't have any free time. भाई मुझे पता है विक्टोरिया का फ्यूचर दिख रहा है आगे. She might be in VCT Master somewhere. I feel. One of the best catering I've had at different facilities. It's very good. Like Korean food, or it's mostly Korean food, but they actually have a chef that's there at all times to really just cater different menus and different dishes per day. So they have the menu set up and everything. When I visited, it was a couple of years ago. They were like working on their roof garden and everything. Place कहाँ पे? ये रहा तेरे सामने एक बैठा है bro. Get some fresh air in the middle of Seoul, where you have a little more, you know, gardening, trees. मुझे कुछ snacks मंगवाने recommend करो कुछ. तुम लोग के पास 300 रुपए. मैं बताऊँ? Vegetables that they're eating. I think it's probably like a couple plants they water up there, but. Snacks में मैं बताऊँ? We do know that Faker likes to you know, garden at home as well. वो मंगवा ले dragon food. So maybe he's the gardener. Who knows? That's his retirement plan. Gardening on the top. नहीं तो वो ले ले. You could be a pro gamer for a long time. क्या कहते हैं? तेरा 300 का बजट है ना? Gems ले ले, खा ले. Be surprised if they are either working on or अबे तो 300 रुपए के जेम्स लेगा तो पेट भर जाएगा. It's gonna be catered to what the players need, right? That's one of the advantages of being a अबे खा के देख, पता चलेगा. You already know how to set all this up. It's not gonna take you long, right? You know where you want to go. You know what's important for the players. You know what the environment's like, the traffic's like here in Seoul, and in some ways that is a slight edge to some of these Korean orgs where you can set up a more तू क्या शेफ बन रहा है? I gotta say, I'm really happy that we now have all the teams. तू चुप बैठे रहे थे. अपने गंदे आइडिया तो सिक्योरिटी के. Really does level the playing field. तुम खाने की बात करो. I'm trying to learn English, okay? Let me just listen to them what they are saying. Very simple. Just get definite and learn around the city and get integrated a little bit. Listen to everybody's on a really good internet connection. They can all practice kind of in the same environment. भाई उससे बोल 5 रुपए का 60 बालाजी चिप्स ले ले. Tournaments like this that can go on. Well, that's the biggest thing, right? Is that we have them in the studio on stage every weekend, facing off against other teams that they used to not be able to play. भाई अगर मेरे पास 300 रुपए होते ना, मैं 100 रुपए का खाना खाता, like रोटी वोटी लेके वो सब तो कैसे भी, ठीक है? और 200 रुपए मैं गरीबों में बांट देता. We're going to see tomorrow, like Paper Rex, they had that video showcasing their schedule where they were traveling around their neighborhood. और अगर ज्यादा होते मेरे यहाँ पे गरीब तो मैं 300 रुपए बांट देता और नेबर से खाना देता. With Hype Boy, where he wanted to challenge Boaster, who's not even playing in VCT Pacific, but he wants to meet him later. He was talking about how some of the Korean people in their neighborhood. Honestly, bro, this is the best. But you know, he did मैं गरीब हूँ, chat में है मतलब तू अमीर है. Well, so I'm excited for how the rest of this tournament pans out. I mean, honestly, 20 वाली बिस्लेरी की पानी पी ले बस हो गया तेरा. I mean, it's so technologically driven. The Wi-Fi. वैसे 20 की आती है बिस्लेरी. I think 28 की आती है. And you know how unstable. There's a little rainstorm in the Philippines, for example, and then like the whole team can't play. So to be here on like the ultimate, like esports Wi-Fi place. I mean, well, this is kind of why it all started and worked here to begin with, right? Is Koreans are always like technology focused, and you know the internet's very fast and quick, and so just to break the fantasy just a little bit, my apartment for whatever reason, once a week my internet dies on different days at 2 to 3 p.m. So it's not all perfect, but it's generally pretty good here in Korea. Very specific. I feel like we've got the worst internet I've heard in Korea. I probably am unlucky. That's rough, man. You gotta move, man.
I'm working on it. Yeah, that's crazy. Just making excuses for your gameplays already. My gosh. Oh man, we're starting that today on day one. We're gonna start to target each other about our fired right away. games. I know we just met. Wow. Yeah, I mean, I'm just kidding. I'm sword. sort of. I don't know. I'm yet to play against these guys, so Yeah, but we'll I've seen some sick clips of yours, Victoria. I won't name any of them, but there were some sick moments from Victoria's stream when she was playing Valorant. I'll just let that sit out there on the internet. I've been fully inspired by the VCT players. I just watch and get the inspiration. Thank you, chat. Yeah, you just gotta soak it in. You just gotta soak it in. I mean, okay, with that, I know you guys want to see game 2. We are No, they're getting good ready talks, for that, you know? so we're going to have more coming up for you right after this break. जैसे So see you बैटरी guys भी in उस a पे bit. आधे लोग फिट हैं Ta-da-da! अबे YouTube chat YouTube chat. Okay. We informed Riot about all the fake accounts in the chat and we will get more S's on the real ones or find another way to identify. Do not engage with fake accounts in chat and the real ones won't be here. Wow. Wow. फेक अकाउंट बना के खुद ही बोल रहा दूसरों को. देख लो रूसी सर नहीं है वो रूसी सर है क्या? पता नहीं उनको मिल रखा है, क्या कहते हैं उसको. Of course they have NFTs of हाँ तो फिर वो नहीं है ना ये. तो भाई मेरे को भाई मत कर भाई प्लीज भाई, मैं नहीं चाह रहा. थोड़ा दूर रहिए. They are getting ready, man. Chill the fuck out and wait. The unlikable Demon King. No one is talking about the caster stuff, you know. भाई इंडिया में तो बहुत आड़ होता है. I hate it. Like the only day people talk about caster is like, noob caster, they don't know how to cast. Yeah, like मुझे एकदम पसंद नहीं आता. Even gonna slap. ठीक है भाई. No Rossi is equal to G even. Yeah. Some people hate Rossi. Why? इंडिया का कॉन्सेप्ट वही है कि इंडिया का पापर्स तो ज्यादा है ना. We are not represented. They already had a schedule, bro. If you just put your attention to read it. True. T1 for advertisement team. G for views. Right games. और इनमें से आधे साथ अपने होंगे. Even Riot का बहुत पुराना पार्टनर है. Because why was Rossi getting hit? Mama, look at it. Okay. This Rusindra is not real. देखियो क्या लिखा है उसने. I have tweeted about it. Do not believe anyone here in chat. ये thanks bye. भाई ठीक है भाई. अब तो मुझे क्रिंज हो रहा है. जिसने जी के बारे में बुरा लिखा वो 10 बार. फेक है वो. हाँ वो फेक है. अबे सबको पता भाई, वो ऐसे क्यों लिखेंगे भाई. रूसी सर cannot lose his chill that easily. वो बार लिखे जा रहा है. तो obviously does anyone have the best data structures course? Data structure course. Each and every Indian player CEO or is fake here in the chat. Trust no one. अब तो बजना है. Not everyone. Hey! Did you see? ये क्या है भाई? मैंने क्या? अरे इमोजी वो हट गया, इमोजी आ गया. हाँ वो होता है बहुत होता है वो. अगर तुम इसे टैग करोगे ना, अगर तुम इसे टैग करके वो लिखे ना मुझे डालेगा एक्सी हो गया ऐसे इमोजी तो नहीं आता वो. नेक्स्ट डे आएगा इमोजी आएगा. If T1 loses to G with a sub, just to click. हाँ भाई शांति भाई, इतना टॉक्सिक मत हो भाई. मेरी साइड पे मत हो. मैं यहाँ पे मॉड हूँ. मैं टाइम आउट दे दूंगा. अगर यहाँ मॉड होता अभी तक मैं बहुतों को टाइम आउट दे देता यहाँ पे. Proud black of India. हैं? जय श्री राम. G lost so bad in Brazil, but still look at these.
पढ़ाई कर ले सूरज। किसको मैच होगा अभी, किसका मैच होगा अभी? देख यहाँ लिखा है, यहाँ दिख भी रहा है वीडियो पे सब कुछ, फिर भी यहाँ आके पूछ रहा है किसका मैच होगा। लाइक दे लव व्हेन पीपल रिप्लाई देम। बंदी रिप्लाई नहीं करती, चलो यहाँ पे रिप्लाई ले लेता हूँ। बंदी सेंटेंसर नहीं मैं भी यही करता वैसे। स्पैमर्स से ले लो। यू आर रीडिंग हुज चैट? VCT वैलोरेंट पैसिफिक। भाई सब इंडियन ही है यार। ये देख गोल्ड भाई के अकाउंट से आके उसको कह रहा है अकाउंट डिलीट कर केस कर दूंगा। Escar is only good at aiming but game sense mediocre. हाँ तभी वो ब्राजील गया ना खेलने। Why the fuck only cheated country here? हैं? Dude, cheated तो इतनी सारी countries में, then why people just blame on one? Brother, Steel is still playing. सोचा था कोर्स देगा कोई यहाँ पे, अब वैल्यू देखना पड़ रहेगा। भाई यहाँ पे क्यों पूछ रहे डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स? मुझसे पूछ लेता कम से कम। नेवर माइंड, यहाँ आता तो बता देता, लेकिन मैं तो उसको बताएगा क्या? दूं क्या कोर्स तुझे? Okay, it's starting guys, it's starting guys, it's starting. Oh my god! ओए किसी ने ये रूसी सर का गाड़ी की बड़ी में पत्थर फेंका। भाई शांत हो जा, मैच देख ले। एंट्री हो रही है, बस एंट्री देखनी है। कूल वॉक-इन्स मुझे दिख गया एक बॉडीगार्ड लग रहा है। टना एक किल, 2 किल, 3 किल। वो पहले आ गया, बहुत जल्दी है तेरे को। It's so good. It's just so epic, and man, I just wonder what it'd be like to be a player to enter with that intro, right, and to stand on that stage. आजा बाजा। Intros, it's intro on T1. Man, William, oh man, I am on point today. कोरियन, अरे वो दोनों कोरियन है ना। Intro, it's great to see him back on this stage. I'm curious how he's going to play, and then 𝙬𝙤 is going to be the one who's really going to have to bring up a lot of, or भाई मैं तो था हाथ मिला था। from T1 because he's IGLing now. It's not Munchkin who was IGLing over at Lock-In, so he's going to have kind of that brain power battle against 𝙬𝙤. Now let's not forget, even though DRX is kind of the big name out here in Korea, and it's पता है लोग क्या कह रहे थे उस दिन? मेरे को जो थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि ट्रू भी हो सकता है कि जी ने, जैसे पता है कि जी की टीम में वो प्लेयर्स हैं जो आउटडेटेड, लाइक जो जिन किसी और ने लिया नहीं, ऐसा लोग कह रहे थे। आई डोंट नो रियली व्हाट द केस, या फिर जो लाइक खेल चुके हैं CS:GO एक टाइम पे इस सब पे, वो लोग आए, और जो नए प्लेयर्स हैं जो हर टीम में अभी पैसिफिक के, वो प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली नए हैं, यंगर हैं, एंड ऑल वो वैसे। सो आई रियली डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट सुना था बस ऐसे मैंने। It's going to be an uphill battle for T1 and Global Esports as well. But Global Esports, I think their biggest thing, like you said, Tasteless, earlier, is perhaps their biggest enemy are themselves, right? Maybe they play a little too loose. Maybe it is a comms thing. Maybe it's the fact that they have to bring up all these players who are playing in different regions with different metas and different styles. They have to bring that together. But if they can just get past that boulder, the skill on this team, it has a very high ceiling. We've got so many different stories with the different teams out here, but a good amount of the teams, and not even just the Korean ones, are that they are almost like a brotherhood, right? They've been around each other for a long time. Occasionally there's 1 or 2 new additions to the teams, but this time around, I'd say, especially with Global Esports, I'm excited to see what they can possibly do and what they can deliver. But as you were saying, William, it is so important that they don't टेरिक की तरह मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। Not just a matter of can they execute their strats, their comms, and do what they need to do. It's going to be a matter of self mastery here going up against. सिर्फ यही तो डालना, और क्या करना है? T1, and one thing we do know about T1 in every game they've ever had. G roster has good chances of winning. They scream together more than roster.
वो ऐसे तो स्क्रीम की बात होती तो फिर तो मुझे ले लेते। मैं तो बहुत जोर से चलाता हूँ, सामने वाले भी वो डर जाएगी, पागल है ये। लगता है मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं कल को लैन हुआ ना और खेलने लगा तो मेरा नया नाम आएगा, सोलो द मेंटल। जैसे रॉकी मेंटल वैसी सोलो मेंटल। इतना जोर जोर से चलाऊंगा ना मैं। और हाँ, किसी को मारा तो फिर तो एक डायलॉग तो आएगा, चल बॉस श्री साहिल हुआ तो मैं कहूंगा अभी बेटा बच्चे हो तुम, बच्चे। कोई नहीं, कल देख लेंगे तो। अबे कल देख लो, कल लड़ाई तो होगी, देख लेंगे तो कल। यार पता है तुम्हारे में सिर्फ एक दिक्कत है, मैजिकीन खेल रही है। तुम अगर 5 लड़के होते ना सबकी लगाता बुरी वाली। वैसे हमारा पता आमना सामना शायद हो ही ना, तुम पहली हार जाओ। ना वो तो नहीं होगा, पक्का मिलेंगे तो पक्का। अरे मनन पता है ये अभी 2 दिन से लगातार स्क्रीम्स कर रहा है दूसरे टीम को। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चिल है भाई, इनको जरूरत है। मैजिक का वो था उसका मैच टूर्नामेंट का। अब तू यथार्थ ये भी तो देख, इनकी टीम में कौन सा वो प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम में है। मैं कसम की ये भी नहीं है, सच में है। फालतू में खुद कहे कसम। Like they had a tough time against Vitality, so curious to see that T1 still bans it out, knowing that Global Esports at least feels comfortable on that map enough to pick it. It's also possible there are mind games going on we can't even quite follow because there's so many matches that have to be played here. It's possible they have certain strats or plays they're saving for other teams that maybe they feel like they can, you know, get away with this this best of 3, or maybe on another map they want to try something else out here. First pick is going to be going to Pearl. All right, I mean, this was the map they had a win on, right, for Global Esports. They were able to win that second set, and they looked good on it. And this was another, and I'll even say, I mean, this was something that 𝙬𝙤𝙤 and his teammates continued to look comfortable prior when he was on X set as well. So I think there's just some comfort in terms of set plays and in terms of calling. And then Haven going to be T1's pick. Again, it seems like T1, they want to stick to kind of the more traditional maps that have been around a while, where even if they haven't had as much time to work on set plays, every player is kind of used to their own position here on this map. Yeah, a lot of times Koreans will go for kind of more of a comfort opening instead of maybe trying to be creative, and maybe playing some of that more experimental stuff, whether that even be with maps or even with agents, to save that for later on. So, you know, the Haven pick, not shocking. I think T1's going to be a tough opponent on that as well. Lotus is still left open, right? Yeah. Hasn't been banned yet. We'll see if it comes through on the second ban, but I think both teams might be playing a little bit of chicken, looking at Global Esports wanting to ban out Ascent. Let's go GE, let's go GE. Also one that, you know, does rely. This third hold-up is so cool. अभी आएगा, अभी देख agents का आएगा और बढ़िया। So Global Esports going to be taking that away from T1 and Icebox ban. Okay, well. Bro, this chat is better than chat in Valorant stream, not gonna lie. Really? Yeah, क्योंकि यहाँ पे लोग ban हो जाते हैं because no, the thing is, I don't like to hear negative comments regarding anything. That's the thing. अगर आप एक टीम के बारे में अच्छा बोल नहीं सकते तो आप अच्छा बुरा भी मत बोलो, खत्म। और अगर आपको लगता है कि जी हारेगी तो इस तरह से बोलो कि हर्ट ना हो किसी और को। मेरे को चिल है, बट दूसरों को दिक्कत होता है तो मेरे को होता है। Lotus, I would say, is even more attacker-sided. Does lead to a bit more of a chaotic playstyle, just given the entry points for each site. They're a little bit tighter than they are in Haven. So I'm curious to see how each team has really broken down their own. That's true. Like mostly people chat for fun. जान के उल्टे ही लिखते हैं। Going into the agent selection, so we, you know, got to see. Are we going to have anything crazy? जो तुझे देखते हैं वो e-sport scene समझते हैं। Earlier on in the last best of ये तो one, भाई we बहुत had अच्छा वो pretty बोला vanilla आपने। stuff coming here. So I've got my fingers crossed. भाई डबल ड्यूलिस्ट होगा भी कहीं पे? A Gecko. Yeah, I almost forgot the Gecko's in this patch right now. It's like, who's that? Who's the guy with the short hair? What's क्या? साहिल की टीम कितनी बुरी हारेगी? पता नहीं भाई, मैं ये क्यों बोलूँ बुरी हारेगी? मैं तो चाहूँगा जीते भी। So they're going with बड़ा जितना तू बज रहा है ना उतना याद रखियो, वहाँ पे ना एक किल पे तेरे को इतनी जोर जोर से चलाएंगे ना, डिमोटिवेट हो जाएगी। ये था, देख काम कर, कल एक टेडी बियर ले आई।
And then the Astra, so a bit of a kind of previous patch meta here. Because उसको तो But पढ़ने देता तू को लगा है. theory, double initiator, there's nothing wrong with that. भाई बेस्ट मोमेंट होता है Picture on Jet again, something if you've been watching the cast here. बंदियों के साथ आओ, अपनी बंदियों के साथ आओ, हारे तो उसके साथ रहो, जीते हाँ तो जीते जीते तो बस उसकी आंखों में देखो तुम्हारे लिए प्राउड फीलिंग. इन्होंने दोनों ही टीम्स को लाल लाल कर रखा है, एक टीम का ग्रीन, एक सब टीम कुछ का लाल है, रेड सब होना कुछ चाहिए लाल है, सब कुछ लाल लाल ऑल they love it. लालिमा छाई हुई है एकदम मेरे वैलोरेंट के करियर जैसा. रोशनी खेला नहीं, रोशनी और लाइटनिंग वो अभी लेट आए थे ना, तो दे वांट कि रिलैक्स करे या फिर वैसे करे नेक्स्ट, क्योंकि मैच तो अभी 9 मैचेस खेलेंगे हर टीम. Everybody lock. You've got Carpa, you've got Saya player, you've got Munchkin. These guys have been on this stage before. They have played in front of incredible crowds. अभी न्यूज़ में आया था कि इसको ये किलजॉय को नर्फ करेंगे और क्योंकि किलजॉय का हाँ तूने कहाँ देखा? जी न्यूज़ पे? नहीं फिर प्ले वैलोरेंट न्यूज़. ट्विटर पे तो ये भी न्यूज़ आया था कि everybody needs somebody. वो न्यूज़ नहीं है, उसको कोड बोलते हैं किसी का. अब तेली है. जो भी किसी ने बैठे बोलते होगा. पर अभी साहिल तूने बहुत कुछ मिस कर दिया एक्चुअली. क्या बताऊंगा, मिलेंगे ना कल बताऊंगा. ऐसा क्या हुआ? कब हुआ भाई? अबे बहुत मेन चीज इसमें बस ये था, बहुत खुश होगा जब उसको पता चलेगा ना. मैंने क्या कर दिया? नहीं बस तू खुश होगा क्योंकि तू, मेरे को पता तेरी वर्डिंग क्या होगी. अब मैं तो पहले ही से कह रहा था भाई यार अच्छा हुआ भाई. अच्छा समझ गया तू? वो तो पता ही था मेरे को. किससे रेड है? बता तो दिया मेरे को. हाँ वही ना डिटेक्टिव्स वाली बात ही तो बोल रहा है. नहीं वो नहीं. हाँ तुझे पता है? तुझे नहीं पता? मुझे पता है, मुझे ध्यान नहीं है. तूने कब प्रेंग से बात की? कब की? मैं उस टाइम से रोज बैठने डिस्कॉर्ड पे रात को. प्रेंग को बोलूंगा रुक. भाई इज्जत नहीं प्राइवेसी की. कल आ रहा हूँ. नहीं प्रेंग भी था ना साथ में, इसलिए तो बताने वाला है मुझे. फर्स्ट स्क्वाड किसकी टीम से? भाई ये खड़े होके मैच देखने में मजा आ रहा है. एक फ्लैंक आ रहा है. एक किल पे पुश अप. कम ऑन, नाइस. One down. Come on, kill him too, man. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh भाई. Oh no. Oh no, it's gone. It's gone. It's gone. Intro is just going to hold for this one, and 𝙬𝙤 will find a third. देबू है क्या शॉट पे? Off with a pistol round victory. भाई देबू तो क्या भाई कैसे क्या स्कैम कर रहा है यार? अरे नहीं देख रहा था तब. भाई वो चीजें फेक मत किया कर भाई. और अगर तू कह देते हैं पूरा अकाउंट भाग हो जाएगा चोरी. अकाउंट है बता देगा. Players have trust in you to push through even when the situation is bad. A lot of players are going to turn around when that Nova Pulse comes down, stuns you up. Munchkin's like, nope, I'm going to do the dirty job here, and I'm just. मतलब मैं भी करने वाला था उस पे. मैंने उस पे करने वाला था क्या कहते हैं लॉगिन. मैंने कहा ये इस चीज दे तो फेल लगा है मुझे. तो ध्यान दीजिए, अच्छी बात है. नहीं तो भाई काम होता. मैंने तो स्किन्स देख के बोला. पता है इतना जिम गाइस, इतना जिम करना है कि हर एक विन पे 10 पुशअप्स या 20 हर एक विन पे, मतलब हर एक विन राउंड विन पे. I mean, again, okay. It's a flat circle. These players are back on the stage they began with. Come on, अब पता क्या होगा अगर ये जी हारी, रॉसी नहीं था ना इसलिए हार गए. और अगर जीते तो क्या दो चीज होंगी. एक है कि भाई रॉसी होता तो और आसानी से जीतते, लाइटनिंग होता तो और आसानी से जीतते. भाई वो नहीं जीत गए. जी की स्ट्रिक उन्होंने पिछले वाले में 6 पिस्टल निकाले थे. नहीं इस बार ये 2 पिस्टल हारेंगे और जीतेंगे. अभी तो देख टेक्सचर पे मुझे थोड़ा बिलीव है. और आई थिंक क्या नाम है इसका, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रॉन्स्की. हाँ उसकी रॉन्स्की मेरे को लग रहा है कि खेलेगा. वो चुस्की नहीं यार, अरे पागल है. रॉन्स्की शायद से करेगा.
भाई अगर पीछे ऐसे ब्यूटीफुल लेडी खड़ी होगी तो भाई इस पे वो देख रही है कौन bird.exe चला रहा है। चल बे भाई ऐसा यार ऐसा नहीं हो सकता। अब मान ले, सुन इमेजिन कर तू खेल रहा है और फिर तुम चले गए, लाइक एक मैच हो गया तुम गए और यहाँ पीछे से किसी ने तो वो डाल दिया, क्या कहते हैं, तुम्हारे में हैक डाली तुम्हें बिना बताए, तो ऐसे तो तुम फंस नहीं गए, ट्रिक हो गए। पूरा टाइम रिकॉर्डिंग ऑन रहती है ना यहाँ पे। मॉनिटरिंग ऑन है ना, पक्का रिकॉर्ड करे, कौन सा प्रोसेस रनिंग है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग। हां वो सब कुछ चेक कर रहे हैं। नहीं बट एक तरह से ट्रिक कर दिया तुम्हें कि कहते हैं तुम खेल रहे हो और उनकी चालाकी निकली कि उन्होंने जानबूझ के वो डाल दिया। वो लोग प्रोसेस तक रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस चल रहा है तुम्हारे सिस्टम में, जैसे ही चलेगा वो चेक कर लेंगे ना क्या हुआ। हाँ बट मान ले चालाकी से उसने डाल दिया, तू आया अपनी सीट पे बैठा और तूने देखा, तो चलेगा, प्रोसेस तो चलेगा। तो पकड़ा कैसे जाएगा किसने डाला है? इसमें है क्या वो चीज? रिकॉर्डिंग हर जगह। हाँ भाई करके दिखा दे आदर्श को। मैं तो बस वैसे देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मैं बहुत भयंकर खेलने वाला हूँ, तो कोई मेरे को ट्रिक कर सकता है ऐसा, तो मैं पहले से रेडी रहूँ कि भाई किसी ने मेरे इस पे हैक डाल दिया, मैंने नहीं डाला। पहले तो पहुंच यार इसमें टीम में तब बात सोचियो। हाँ भाई टीम में इसलिए नहीं जा रहा ना, कोई रीजन है क्या? भाई सोचो कोई आए, वो पहला मतलब पिस्टल राउंड हो जाए, उसके बाद टेक पॉज ले और कोई बंदा दिख रहा भागता जा रहा सुसुगान में। क्या भाई? Valorant or tech pause, name a better pair. First day, kind of normal. I would say things happen. You know, it's the first day with so many things going on here. So, of course, the inaugural day of the VCT Pacific League. So many new players here in Korea. A lot of similar faces, but a lot of new faces from Korea that had journeyed abroad previously and are now tech pause is super exciting. ओए पिछली गेम में भी टेक पॉज हुआ था और फिर दूसरी टीम जीती थी, तो बेसिकली ये लोग हारे हैं टेक पॉज के बाद, अब ये जीतेंगे। This caliber of team and player OPM देख लो guys। for Valorant in Asia is just stellar. I think you know the thing we all are. भाई हर प्लेयर के पीछे एक खड़ा है जो लफा पड़ेगा अगर हैक किया तो। अच्छा, every click has its log entry in system solo. I'm not saying that, मगर मान लो in case कुछ ऐसा हुआ तब मेरी टीम तो ये हो जाएगी भाई, तेरे पे तो वैसे ही ट्रस्ट नहीं था, ऐसे हो गई, बुरा लगेगा भाई, दिल से बुरा लगेगा। The rest of the region has had its ups and downs, so now we want to see these guys all start really playing against each other more, starting to improve. Why need hacks when you have when you can just be something else or something big? They want to get better. So all of this is just so CS2 का वो you're never tested, you're never really going to. वैसे एक बात बोलूं, लोग फॉर्सिंग को बहुत बोलते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया में जो मतलब फॉर्सिंग ने जो सीन किया, उस चूतिए मतलब बच्चे वाली थिंकिंग कितनी होगी उसको खुद नहीं पता था कि मतलब पता होना चाहिए था कि भाई तेरे हैक्स तो वहां पकड़े ही जाएंगे ना, लोग देख रहे हैं, तू कर ही क्यों रहा है, तू वहां तक अगर ऐसे भी आ गया तो हैक वहां पे क्यों करेगा? कुछ दिमाग खराब था, नहीं तो कम से कम चल तूने हैक करके यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पे आके तो साले सेंस लगा। ये देख सो गया, ये जियान है भाई, ये भी सो गया, ये भी सो गया भाई। क्या सुनता, मार्जिन ने बोला था कि मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, द फैक्ट कि उसकी मेहनत से वो निकाल लिया रिजल्ट इज द रीजन ही हैड। कुछ समझ नहीं आया, बोलता था कि लैपटॉप भाई से कितना ऊपर नहीं रखा अपना सारा, वो ऐसे खेलता है। हाँ सारा प्लेयर लैपटॉप में खेलता था। Like Vision Strikers into DRX, like very few teams are going to have sort of that set history. तेरा टॉय भी स्ट्रीम देख रहा है, आई नो टॉय नहीं है वो, सकुरा है, ठीक है। नियॉन क्लब ऑक्टोपस तेरा फ्रेंड है क्या सकिन? नहीं फ्रेंड नहीं, learning experience because we get to see so many different iterations of these teams and players. You know, I love the way the desk was talking about it with global esports because they are global. We get to see so many interesting kind of players and strategies and ideas, and you can see the talent on this team at Lock-In. I mean, you know, Texture, maybe the Korean Jet, you know, quote unquote him or Meteor in my book.
maybe 𝙤𝙠 player, who knows? You know, 𝙤𝙠 player, unbelievable at times with the guard. Yeah. So I'm really keen on this global esports team. I think there could be a real G caught cheating. That's the why. नहीं. esports as well if they succeed. No way. Right? That we can have truly global teams. No, I think अब लोग बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि everyone knows कि भाई बहुत मेजर केसेस हो सकते हैं, सीन हो सकते हैं, आपका करियर भी जाएगा, साथ ही साथ आप जिसमें हो वहां पे भी, ऊपर से हेट अलग, सो एक तरह से आप पूरा गेमिंग से दूर हो जाओगे। गेम साफ कर देंगे वो पूरा सोशल मीडिया से। नहीं मैं वो नहीं कह रहा। अबे देख सबसे सिंपल है, अपना सोशल मीडिया हटाओ, ठीक है, एक नई दुनिया में चले जाओ, गेमिंग छोड़ दो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। और अगर आपका गेमिंग कभी कभी मन करता है आप किसी और अकाउंट का लेके चुपचाप से किसी और नाम से और चुपचाप खेल रहे हो, ये लोग कर सकते हैं। बट द थिंग इज व्हाट आई एम सेइंग कि तुमने खुद सोच के देखो कि इसमें सबको पता करियर है, ठीक है, चाहे तुम अच्छा नहीं खेल रहे स्टिल देयर विल बी सम करियर। अब मान लो अगर मैं एज अ गेमर हूँ, मैं अच्छा खेलता हूँ, मुझे पता है कि यार अब मेरा इसमें ई स्पोर्ट्स में नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं कोई ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स या कुछ कर लूंगा एंड आई विल गेट इनटू राइट और मे बी वैल और समथिंग समवेयर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये चीजें हैं। बट अगर आप ई स्पोर्ट्स आके या फिर कुछ ऐसी हरकतें की जो हर जगह से, तो आपका लाइफ टाइम के लिए हट गया ना वो चीज। व्हाई वुड पीपल गोना बिलीव यू, यू नो, वो मैं चीज कह रहा हूँ। मतलब मान लो तुम VCT ब्राजील गए, वहां चीट कर रहा है कुछ भी करके, तुम इंडिया तक जब तक आओगे ना तब तक तुम आधे वहीं मर चुके होगे, मर इन द सेंस मेंटली, फिजिकली तो लोग इंडिया में करेंगे हरकतें और फिर मान लो अगर तुम्हारा पेरेंट्स का सपोर्ट है और हर जगह का पूरी जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ का सपोर्ट है और उनको ये पता चलेगा, उनको कितना दुख होगा, और तुम वहां से भी निकल गए, लाइक नो वन गोना बी लाइक you're almost like just living now. So इसलिए आई थिंक लोग वैसे ही इतना है कि अब नहीं करते, क्या पता आगे रूल भी बन जाए, पर इफ यू गॉट हैकिंग इन ऑनलाइन टूर्नामेंट और नॉट ऑनलाइन इन ऑफलाइन और लैंड बिग टूर्नामेंट, यू माइट गेट जेल, ये भी हो सकता है आगे फ्यूचर में। और आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन भी करने चाहिए, अब से होना चाहिए कि इफ यू कॉट हैकिंग और समथिंग देन दिस वुड बी योर पेनल्टी एंड प्लस दिस इज ये सारा सिनेरियो होना चाहिए। इट इज मोर लाइक कि वो लोग साइन करवाते हैं कि यू मस्ट वो ऑब्वियसली होता होगा, स्पोर्ट्समैन से मेंटेन करना को किसी कीमत पर, चीटिंग नहीं करना है, अच्छा बिहेवियर रखना है, बी अ गुड एग्जांपल। बट यार मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज करूंगा, स्पोर्ट्समैन का पता नहीं, बट भाई मैं लैन पे चिल्लाऊंगा जरूर और वो सब रिस्पेक्ट टोटली दूंगा, बट जब खेल रहा हूँ तब नहीं दे पाऊंगा, तब तो पूरा मेंटल बार आया। मेरी टीम मेरे को चिल्लाएगी, अबे कितना चिल्लाएगा, कॉल दे दे। हाँ ऐसे कॉल नहीं आएगी, लगा गई यहाँ वहाँ। जो बंदे हमारे लॉन्च पे टीम को कॉल नहीं किया कि बंदे बी पे खाली है, जो चिल्लाएगा नहीं अगर 2v1 हुआ ना और मेरे बंदे को मारा तो मैं हाथ कैसे लगाया उसको। कितना मस्त होगा भाई। या फिर 1v1 हो रहा होगा, तू गया भाई, अब तू गया। PRX 4 सेकंड नहीं था भैया, ऑप्टिक 4 सेकंड था। Don't forget to add need new mouse in the contract. ना यार अब सही में तुम भी ऐसी रो कर रही हो, टॉन मार रही हो। अनन्या कंटिन्यू योर फैक्ट्स। हाँ वो फैक्ट है भाई। भाई मेरे को तो लगा, मेरे को लेके कभी टॉन नहीं मारती थी, ऑलवेज दे सपोर्ट मी। अच्छा हाँ सपोर्ट ही तो कर रही है, उसको पता है मुझे माउस चाहिए। नहीं चाहिए ना माउस, आई हैव दिस वेरी गुड ब्यूटीफुल माउस, आई डोंट नीड एनी मोर। वो अभी 2 महीनों के लिए अभी हो गए भाई, महीना हो गया। अबे भाई मैं अब चेंज करूंगा ही क्यों? नहीं तेरा क्वेश्चन गलत नहीं तो भाई सैम भाई आप तो सपोर्ट करो। तू कौन सी टीम में जा रहा है? मार्केट में अभी नई टीम आ रही है गोलगप्पे। I'm pretty sure only friends. Only friends. CS:GO वाले का क्या हुआ? क्या CS:GO का? हमें क्या पूछ रहे हैं? Coming in through art underneath this is GE. Try to sneak underneath the
कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया टेक पॉज? स्टार्ट हो गया। हाँ बट still. I like this. I love this. Dude, 8 से यहाँ चले गए। इनको को निकलना पड़ेगा। इंट्रो एक निकालेगा। 2 निकाल देगा ये। ले सारी निकाल दिए लॉल। Oh God! No! बहुत पतला चौक था। Come on man. You also said the dialogue. Go with team to provide me a new mouse, which was possibly then I will play further and no for you said on stream. On stream I say a lot, lady. I say all the time, so it won't that much matter. But yeah, I think I was saying that when I was not having this, and now I have it. So yeah. I forget, who did you predict here? Who did you out of this match? T1 or GE? But I think if in future, if I'm looking for tier 1 team, I want that team should be in Bangalore, Chennai or Mumbai. These 3 is better for the better ping. You're a big intro fan. Yes, I have been for quite some तेरा time. कितना पिंग है हांगकांग का? I am not as much 110. but not as big as you. I mean, I was a big fan in 2020. यहाँ से हांगकांग में 70 पिंग आता है, so that will be very nice. So that's what I'm saying, no? I think Bangalore is best because Mumbai, Hong Kong, you can play 3 plays. Chennai is like Singapore, Hong Kong more, and even Tokyo. नहीं, मुंबई में decent पिंग है वहाँ पे भी. It's 40, like same as. I think Bangalore is best to live on. Like हाँ, living के लिए best है Bangalore. Bangalore is living no doubt better. नहीं, मेरी बहन भी बता रही थी कि वहाँ पे है सही, और कुछ फ्रेंड्स भी बता रहे थे आज। बैंगलोर तो बड़ी जगह है मोस्टली, जैसे हम है ना यंगस्टर्स हो गया, हमें तो बैंगलोर बेस्ट जगह है। हाँ, कह रहे थे कि बैंगलोर जाए, वहाँ पे बहुत सारे गेमर्स भी और लोग भी है, तो देवर गेमर्स भी हैं प्लस वही जैसे यंगस्टर्स हो गया काफी है। No way, dude, no way. Again, same first round. Oh no. Oh, गया आधा। Okay, Saya player is better. Dude, Paul map is. Oh, नहीं, Paul map इनका है यार। बैंगलोर ट्रैफिक इतना है कि कभी मैं पैदल चला जाऊंगा। हाँ, बैंगलोर वहाँ पे ट्रैफिक। मैं स्केट्स में चलूंगा, स्केट्स में। ट्रैफिक हर जगह है, ऐसी बात नहीं, ट्रैफिक सिर्फ बैंगलोर में अलग ही है भाई। मेरे को तो ये कह रहे थे कि बैंगलोर में गर्ल्स आर आल्सो गुड देन मुंबई, है कैसा? नो, ज्यादा मॉडर्न है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। मुंबई से भी ज्यादा? तो क्या? हाँ, फिर तो मैं वहाँ लुट जाऊंगा भाई। तू लड़की मिलेगी यहाँ पे, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो नहीं होगा, उसको लड़की मिलेगी नहीं। वहाँ पे बैंगलोर में मिल जाएगी, मिल जाएगी। मुंबई में मिल गई थी, बैंगलोर में क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ मैं ना, मिल जाएगी। मानी नहीं है, अभी लिख के दे रहा हूँ मैं। अगर मैं 2-3 महीने या 4 महीने बैंगलोर में रह गया तो कोई ना कोई हो जाएगा प्यार। हाँ, हो जाएगा। मेरे को तो सबसे हो जाएगा, उसको मेरे से हो जाएगा, ये वाला क्या। बैंगलोर में और मुंबई दोनों में। दिल्ली का नहीं पता, दिल्ली का थोड़ा वो है कि लाइक फर्स्ट कम क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट कम एक्सप्रेशन, फर्स्ट कम अपीयरेंस एंड देन सेकंड कम इमोशंस। दैट्स व्हाट आई थिंक। लाइक बहुत लेस है जिसमें इमोशंस दिखते हैं, जैसे अब लड़के में भी है, साहिल अपीयरेंस दिखता है, मैं इमोशन दिखता है। भाई मैं क्यों तोड़ता है वैसे तू? सॉरी, यथार्थ का नाम लिया था। मैंने क्या किया है भाई? हर बात पे मैं हेलो। तू ही लूटेगा, तेरी लव लाइफ इज लाइक योर ई-स्पोर्ट्स लाइफ। यार मत बोल भाई यार, क्या नॉट एग्जिस्टेंट। ये मैंने लाइन बोली थी, ई स्पोर्ट्स और मेरी लाइफ में 2 ही चीज है, ई स्पोर्ट्स और ये कहते हैं लव लाइफ, दोनों ही नहीं है हाथ में। आई लिव इन बैंगलोर, ओनली कम टू यूबी सिटी, यू विल गेट स्टन्ड। यूबी सिटी क्या है? क्रैक? यूबी सिटी जगह का नाम है। तो क्या है वहाँ पे? अनन्या कह रही है क्या है? वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अपर बेसमेंट। अबे तेरी मम्मी का बेसमेंट नहीं है, शॉपिंग सेंटर है। हमें सबसे हो जाता है ना? यस, यू एग्री ना? हम लड़के, हमें सबसे प्यार हो जाता है, बट हमें जो हिट कर जाए वो अलग हो जाए, अलग। ब्रदर मुझे फुल फॉर्म नहीं मिला।
मैंने पीछे जाने वाला है, ठीक है? रीडिन बोलेगी फिर आराम से मैनेजमेंट यूनाइटेड ब्रूवरीज, ओके यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड बेसिकली छोटा सा मोहल्ला है अमीर लोगों का। भाई कितने टेक पॉज हो रहे हैं? यूबीसीटी इज एरिया कॉलोनी काइंड। अच्छा भाई पूरा अमीरों वाला एरिया है, पूरा अमीर वाला। अच्छा ना ना, फिर आई थिंक अनन्या आई वोंट बी स्टैंड, आई डोंट वांट इट either. I like something like mediocre or maybe emotional only. Vibe is the main thing for me. मेरा तो पक्का शादी करवा देते हैं उसका। आजा मेरा ठाजा बताता हूँ मैं तेरे को। वहाँ पे कट्टे निकलेंगे। क्यों? हाँ भाई। निकलेगी, वहाँ तेरी वाइब निकालेंगे। एक बार मैं इतना प्यार हो गया कि तक देखो से तू चल आप मेरे साथ पे आके तो मेरे साथ लग्जरी मॉल। ओके साक्ष। अरे कोरमांगला में इतने पब्स है कि एक पान दिन विजय माल जैसे एरिया यूबीसीटी। भाई वो ड्रिंक करने वालों को ना, मैं मेरा ऑफिस कोरमांगला में ही है 80 फीट रोड। Oh, here you go. Ah man, the audience is really shy, man. A lot. Okay, something is happening. हाँ मेरा अलार्म था। वर्ड एक सी पकड़ा गया। नहीं अबे वो बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यू हो रहा है। उसके FPS ड्रॉप हो रहे होंगे या कुछ हो रहा होगा इशू। Solo be like Bangalore sponsored by YouTube. No, YouTube no. cannot afford Bangalore that easily. No, I had a chance to come Bangalore, but I didn't. मेरा साथ। भाई फाइनली आज मैंने वाइट की वीडियो एडिट कर ली अपनी। भाई एक वो वाली की अभी ब्रोकन मेटा ली और लॉग भी हो गया, लॉग भी आए। भाई फाइनली मैं आज आदत निकाल कर ही लिया था यार। You know, one of the reason I'd never go to east side, like कोरिया ये सब जाना ना बहुत खतरनाक है मेरे लिए। भाई वहाँ पे बहुत क्यूट होते हैं यार। क्या कह हर मोड पे आ जाएगा? हर मोड पे नहीं कहूँगा, मैं नीचे झुक के चलूंगा वहाँ पे। मतलब मैं देखूंगा, मैं जूते ऐसे पहन लूंगा कि जूतों को ही देखूंगा बस। ठीक है। और वहाँ अगर कोरिया में अगर कोई इंग्लिश में बात कर गई बस। भाई CS2 में आया ना, वो पता पैर दे सकते हो, नीचे लेके चलेगा। कोरिया, जापान, भूटान, नेपाल, अपना पूरा इंडियन ईस्ट साइड। गाइस हमें पता चल चुका है कि अनन्या पाटिल बहुत रिच नेबरहुड से। कैसे? माय होम इज इन बहुत रिच नेबरहुड। कूल, गुड फॉर यू अनन्या। But again, it's, you know, if you are rich, it's really hard to make friends. It's really hard to have real friends or real. नेक्स्ट बनाते हैं इस साइड की। और मैं नहीं जा रहा इस साइड। ना मैं नहीं जा रहा। अभी बोलो मैं नहीं जा रहा भाई। एक ट्रिप ना करते हैं अप्रैल में, अप्रैल गए हो नेक्स्ट मंथ या कभी भी चलते हैं इस साइड। मैं तो बताइए तो बताइए हम चलेंगे। तुम चले जाना भाई, मैं नहीं जा रहा। हाँ ठीक है। इस साइड तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा अभी। देख लेंगे वो, देखते हैं आगे भाई। कॉलेज टाइम तू उनको जानता होगा, साहिल, केन है ना, केन और सब वो सारे इस साइड के तो थे, उनसे कितनी बनती थी। क्या है वो, देख अभी भी याद है मुझे उनका नाम, संजय बॉन, केन, वो क्या नाम था इसका यार, एक तो अपना ये मी बॉम ही था, यहाँ का भी था। ठीक है, एक और नाम भूल गया मैं। वो था सीनियर ना शायद से। सीनियर, हाँ मतलब 2 साल बड़ा था। बट उसी ने कहा था कि दिल्ली यूनाइटेड में आए सब ना, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। और वो पता है क्या, वो सारे यू नो व्हाट वर्स्ट पार्ट, वो वर्स्ट नहीं बेस्ट पार्ट, वो सारे ईस्ट साइड के थे, मैं अकेला उनके उसमें था। तो मेरे को पहले अजीब लगता था, बट वो इसलिए मेरे को अपने साथ रखते क्योंकि गेम अच्छा था ये सब, तो और मजे आते थे उनके साथ, मैं कनेक्ट हो जाता। उन्होंने सिखाई थी मेरे को थोड़ी लैंग्वेज एंड ऑल वो सब। So you will get arrested if you see female feet in Japan and Korea. If you see female feet in Japan and Korea countries, it's offensive. Really? Wait. If लड़कियों के पैर नहीं देख सकते। Public space. Oh, thank God. Actually, thank God. I don't watch legs that much. सऊदी में भी सेम है। हाँ। सब कुछ है। मैं तो बुर्का पहन के घूमते हैं ना, इसलिए। वही तो।
But I see I moreover see face, hairs, eyes. These are the main things. अदा एक होती है ना. कहाँ के बाल देखता तू? यार इसको क्यों बिठाया हुआ हमने VCT यार? Calm down. Oh man. और फिर कहता भाई मुझे बंदी नहीं मिलती. ये वो. मनन एक बंदा है निशांत बोल रहा है Bangalore has the best weather in whole India. Bangalore has the best weather in the whole India. If you like boring weather, same weather throughout the year. All right. Or in seasons just random fucking rain. भाई टेक बॉस बहुत ज्यादा हो रहा है यार. दिल्ली में होता है. Bangalore is the place. और दिल्ली में भी होती है. दिल्ली में बरसात होती है. ना कश्मीर भी another place I don't want to bro. कश्मीर भी वो. गर्मी का मौसम है. ठंडी होती है शाम को और बारिश होती है. No, I'm happy. I think I'm happy with where I am and कश्मीर क्यों नहीं? हर कंट्री से. भाई कश्मीर तू गया कभी? हाँ तो तेरे को पता नहीं है कश्मीर क्यों? हाँ. Okay, कोई नहीं. अबे अपने इंडिया में बहुत ब्यूटीज है भाई. ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. तू ईस्ट वाले लड़कियों के फेस नहीं देखता. अबे चल हट. मेरे ऐसे ही थोड़ा ना ईस्ट के फ्रेंड्स थे बने. कनाडा यूएस से आ जाओ. Do you mind if I remove Octogon's last comment? हाँ मर्जी है. मैं पढ़ लिया वैसे. वर्ड्स खत्म हो रहे हैं कास्टर पे. हाँ वही ना. बट ये इतना टेक पॉज क्यों हो रहा है? I don't get it. मतलब क्यों? Indian girls in Indian dress more anything. Yeah, true. A man of culture. Narendra bhai, man of culture. We'll guide you through it as usual. More episodes for the. Okay, it's starting. Just gonna start clipping things from our broadcast when we have these, and then upload them to Spotify and SoundCloud. Jeez, like उनके साथ क्यों होता है ऐसा? That's the name of our podcast. Something like I don't know. Ooh, well, that's a good shot. Bronski knows what hit him. Oh, I don't think many people would be expecting that. Munchkin was just ready. Nice angle, I guess. Brutalized. Granted, again, this is going to be an eco, dropping the bonus. Blades are picked up here by Texture. Was able to get some orbs and charges, but he gets stunned as he tries to leap up over the top. Munchkin, just go ahead, snipe him in the face. उसको फ्लैश कर दिया. Combo there, so good from T1. Trailblazer to follow up. ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें अभी भी इनका कोई कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं रहा? The Texture was going to get any value out of those blade storms. Intro here, he's good for it. Clean against Aaron. Waiting on that lurk. Scoops up the kill again. Push is wrapping around into Art, but once more there is that alarm bot. So at this point you suspect that they are both going to be playing together. So as soon as they destroy or trigger this thing, going to know exactly where both players from the side of GE are at. Rocks भाई high settings से बढ़ा. Game sound में मैंने नहीं बढ़ा सकता. Jump out and Dude, honestly speaking, भाई मेरे को दुख हो रहा है जितना मैं देख रहा हूँ. अरे कोई ना चिल कर. अबे सही में भाई बहुत रेयर में होता है ऐसा. मेरे को बहुत दुख हो रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे जमीन खिसक रही है पैडों के नीचे से. जैसे नहीं, जैसे you are one of the org part, you know, like मैं इस टीम में हूँ या मैं इस टीम का पार्ट हूँ और मुझे ऐसा दिख हो रहा है यार. प्लस इंडिया की एक ही टीम है ना. वांट कि ये हो ये ऐसे नहीं यार. मुझे इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा अभी भी. क्या हो रहा है? What's happening? कोई बात नहीं. पहला मैच. And there you go, time out. पहला मैच क्या है यार? लोग पता है ये लोग ना एक एक पिक दे हैं. वो है नहीं है इनका कुछ. अरे वहाँ पे यार तू ये देख ए साइड पे जब जा रहे हैं जेड ऐसे वो केओ आगे गया तो मतलब वो रीजन क्या है आगे जाने का मुझे वो समझ नहीं आया. लाइक केओ दूर से फ्लैश कर रहा है या उससे कोना पकड़ रहा है. क्या कर रहा है? जेट अगर आगे है क्योंकि केओ के पास सारी यूटिल्स हैं. बट अगेन इट वाज इको और आई डोंट नो क्या सीन था. या फिर वो बेट बना रहा है कि केओ इज लाइक कि मेरे को बेट कर और जेट एक किल निकाल ले. ऐसा कर रहा था क्या मुझे समझ नहीं आ रहा. कम्युनिकेशन मुझे वही प्ले लग रहा है एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इन्होंने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के नीचे इंडिया की स्पेलिंग गलत लिखी है. इंडोनेशिया लग रहा है. एनीवे अरे गाली तेरे को वो क्या पड़ी है?
was, he was talking about when your IGL. हाँ, just South ही लिखना, ऐसे लिखना था When the IGL is The problem is 4 duelist players हैं. inspire confidence. Dude, but practice तो की है. अरे यार एक बात बता, मैं duelist हूँ. अगर मैं एक महीने से grind करके कोई और agents कर रहा हूँ तो मेरा game play तो change होगा ही ना. That's not even a problem. Dude, they are esports players. High level players can play anything. उनको बस grind करने का होता है. और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ कि स्काई स्पोर्ट्स में मेरे को साय ने बोला था कि भाई सोवा खेलना है. मैंने एक वीक सोवा खेला, मैं सीख गया और मेरे को लोग बोलने लग गए कि भाई उसका इनिशिएटर सोवा भी बहुत अच्छा है. तो it's just normal thing on Sova. You won the entire thing on Sova. Your highlights are on Sova. हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सीखा ना. मेरे को अभी भी सोवा वैसा है बट मैं नहीं खेलता. मेरे को ड्यूलिस्ट खेलता हूँ, मेरे को वो सही लगता है. और मैं एज ए टीम में भी जाऊँ तो मेरे को अगर टीम ने बोला कि भाई तुम्हें जैसे फॉर्सिकन अनदर प्लेयर जो ड्यूलिस्ट की जगह सोवा खेला, इनिशिएटर खेला, तो वो कर सकता है. वो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 5 ड्यूलिस्ट हैं या फिर 3 ड्यूलिस्ट हैं, कुछ है ऐसा कुछ सीन नहीं है. He was all over the map, hitting Intro का पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है. Of course they have no info. Okay, intro निकाले वहाँ से. They have no info. और वैसे भी हम कौन होते बोलने वाले, but we are watching. So हमें वैसा बुरा लगता है यार. This is not good. उनका रीड गलत हो रहा है. उनका रीड गलत हो रहा है, वही ना. बट अगेन उसमें उनकी रीड की कोई गलती नहीं होती यार. रीड तो ठीक है यार, ये हो गया अब जो हो गया, उसमें क्या कर सकते हो. Now they are running, they know 4 versus सीधा सबके सब ए पूरा छोड़ा हुआ है. 4v5. Like ये पिछली बार भी हुआ था. रीड इतना आसान हो रहा था जी को करना. अब प्रॉब्लम ये है कि they don't have better positioning. Oh, he's there. Player waiting for the push out. Will get that shot. Falls up for a second one. Nitro's got covering fire. He gets taken down. And the advantage completely falls apart. I still believe कि they will come back, but ऐसे तो होगा ही नहीं यार जरा से भी. देखो ये कॉल गलत था and they will realize that. ए इस क्लियर उनको पता नहीं ना एक क्लियर है. उनको इन्फो ही नहीं थी ना. उनको किसी प्लेयर की इन्फो भी तो हो. Try, me too man. Let's try together. मुझे इन्फो नहीं आ रही है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक ही बंदा होगा. चलो Dude, उन्होंने एक पीक निकाला, 5 versus 4 हो गया और ये सीन हो गया. अब देख yes, iron है. तो टाइम लगेगा but I think he will get used to. Bro, यही तो प्रॉब्लम है. इतना टाइम नहीं. They need to इस लीग के अंदर ही उनको करना पड़ेगा. चाहिए मैच ये बुरा सा हार जाए चलेगा बट अगले फिर वो प्रॉमिस करेगा यार we are gonna do it. कमबैक करना जरूरी है. एक बार हो चुका है ब्राजील में, दूसरी बार ऐसे नहीं चाहिए. ब्राजील में they played nice enough. फर्स्ट गेम अच्छा नहीं खेला बट सेकंड तो ठीक है. हार गए इनमें और क्या कर सकते हैं. ओए अरे ऐड आ गया iPhone 14 का. ठीक है भाई. I'm not going to be counting them out of this one. Should they drop this? नहीं भाई. Texture with a nice timing does coming off the flank. Still though, kill him. In the hands of T1. प्राइम लेना पड़ेगा मुझे. नहीं वहाँ पे उससे काम नहीं करता. Twitch पे you have to prime sub. Plan on the other side of this. 3v4. Zeta के पास अगर पिक मिला तो अल्ट आ जाएगा, which can be dangerous. Otherwise it's aim duel. कौन जीत रहा है aim अपना? Flash out texture tucked away in the corner. Carpe finds one. Yay! The push out. Carpe gets another one. Yep. The cove comes They up. perfectly cleared everything. Carpe's got the finisher. Quick snap shots coming across. Carpe हाँ Carpe ने Carpe का aim अच्छा है. मुझे बस ability देखना है. Because Sky flashes like they haven't been very bright or good value yet. इन्होंने प्ले भी दिखाया नहीं उसका. No, but somewhere I'm feeling कि अगर I know कि रॉसी का एम है, अगर वो इसमें उसको खिलाएं वो बिना डरे निकलता है, वो करता है, तो मे बी यहाँ पे रॉसी भी कर सकता है अगर उसको बुला लो सेकंड मैप. Before the flash gets ahead of it, catches Aaron trying to cross through. Prowler follows it up, but it's a little late. पर मेरे को इन प्लेयर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं जितना एक इंडियन प्लेयर खेले. लाइक इंडियन का और क्या, तो इंडियन का एक प्लेयर खेला उस पर ट्रस्ट होता है मेरे को. वैसे ऐसे ट्रस्ट नहीं आ रहा मेरे को थोड़ा. मुझे पता है ना कि ग्लोबल स्पोर्ट्स हेल्ड
Singapore super watch team. We play the highlight reel for Cyber. Like, look at these off shots. His timings are perfect. मैं कुछ और कह रहा हूँ. An easy one there. हाँ समझ गया. Jiggle peek still coming out. Knife try to force him off his position. यहाँ मुझे पता है अगर lightning fast या Rossi में से एक को भी खिलाओ तो कुछ तो हो सकता है ना. Don't pick this. But again वही हो रहा है, अंदर से वही thought आ रहा है. जी बहुत अबे किस बात का प्रेशर में? Oh no. Oh no. Now an operator in hand. A-site मिल गई ना इसको. ये यहाँ से कमबैक हो जाएगा अगर ये मार. Pace here from the side of GE, recognizing that space was being left open by double doors. Nanya Patil, उनका post plant they basically don't have any util left. Now the lockdown, trying to set this up, you got to know that the back alley there is going to be open. They're playing. Yeah, I think Ananya, you should join our VC. मजा आएगा. As much game, what is that? All right, I'm Munchkin भाई. What? What? देख तो. The gun is gone. And देख Munch तो gives up for ले. the ace. He's pushing for it as well. No way. See Intro trying to set it up. Munchkin will fall and Intro will just इसको आने दे. मंचन को पब में आने दे. इसको पब में आने दे, मैं बता. So impressed with जब का player है भाई वो पब में. यार come on. If the alarm bot was outside of रोना आ जाएगा, सही में आंसू निकल जाएंगे मेरे. मुझे ऐसा लग रहा है. identifying that space, that texture took to get that backstab ये execute कितना अच्छा चल रहा Or maybe it's a plan. It's a G plan. Maybe who knows? Like G gonna lose first map and then second map, boom, just like before. The updraft, I think that there had been maybe a shot Which coming country versus across as which? It well. is entire Either way, Pacific they plus just one knew the Canadian texture was gonna be positioned there. versus Korea, I guess. Granted, yes, it's a 4K in an Which country was it? matter which Munchkin did it. Korean versus Very India. impressive. Might not be the kill. India कौन है यहाँ पे? Pazzi, great answer kill back. Punishes Saya before he can dash to Huh? safety. I was gonna say Ronsky does get tagged up, knocked down to Damn, 30. nice By shot. that clip shot through the wall. They at least still have the player alive. Texture now moving in, finds one. Carpe Nice trade. finish off Nice the week trade, nice KO. trade. ये वॉल ऐसी बनाई है इसने. Tries to get himself into a decent spot. कम स्पेस लिया उन्होंने. बोला कि बाकी स्पेस Evolve करेगा. Also a little bit trying to see if he can find any quick picks. Hope now down, instantly broken. All right. Still have to be They wary have about this good fight. post. There you go, one down. They start getting the read on this and Another down. Taken down, but do No they way. attack? Aaron is No also way. in this position. They need to be watching for it. Munchkin gets at the half, tries to take Nice, a fight. 7-1. Aaron Finally, will shut it finally, down. finally. Golden Nice, Sports nice, now nice. on the Come on. board. बहुत Oh. महंगा पड़ा but nice. There's We also that got Aaron the flank Harbor ult out, which is cool. इनको देख के ब्रोंज कहाँ से तू बोल रहा है ब्रोंज प्लेयर ने मॉडल लॉबी चल. Still making it really challenging was T1. ऐसा कुछ नहीं है. Pushing it to a 2v2 there. Brother, bronze में you don't aim on the fucking head. You aim in the Crack को grass. अच्छे से पता है. Feeling like they had the confidence. they मुझे had the बहुत अच्छे से ability पता है. मैं potentially iron, bronze, to silver, win GE. gold, platinum सब Really जीत के nailed आया the हूँ. coffin, but just barely. GE's able to hold on there with a really nice flank from Aaron, but man. All right. Now let's see if that slowness is They out of will G. be Let's see there if in they've kinda Pacific League. But I think found their लोग तो कह रहे हैं वो कोरिया में groove, है. picked up some steam. You know, Batsy getting that early kill, really setting उनका the flight tempo है. here for आज ही them. था. Couple कुछ ults. जो तो रास्ते में हो पहुंच गया हूँ. So good. Texture taken down, no command out. Oh, nice shot, bro. He gets himself on Nice the board. shot, Ronsky. 0-8 prior to that, but what a great shot. Lockdown just going to be waited out as they continue to encroach upon this A site. Alrighty. Still have 𝙬𝙤, still have Intro. Back over अभी towards उनके पास B. util बचा What you था. didn't hear They properly. got a free plant. Flash out confirms presence. दोनों का जेट गायब है. Yeah, caught एक Ronsky meaningful there. लड़का भी Seeing मिल जाए some ना pings they will coming out. win. I think maybe there might be worry about a flank coming through mid as I see a couple players pushing that way. Meanwhile, Munyat just trying to hold things down, looking for a aggressive Alright, push out of AV T1, भाई maybe भाई ब्रॉन्ज वाले को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं. हम हेड पर एम करते भैया आप ब्राउन्स हो. looks like they're going to set up for either a full 4-man push. A little bit of utility here. You do have the Nightfall for Batsy. Looks like he might be dialing that up. 30 seconds left. Nightfall across. That's all the information that T1 Only need. one mark as they know the info. Sat back over at dugout as Carpe just pushes the smoke. Does Oh, find no. Ronsky. Carpe got a Jumps timing. instantly in to the Trailblazer. Jump on the corner. Trying to Ek get that minute. stun across. Can't make it happen. Okay. Intro now going to Holy. fall. Sprays out through the smoke. Bazzi managing to find two. Finds a third. Carpe Alright, will that shut is him something I'm down. going to use. Now needs so much Carpe, more. 1v3. The 1v2. Both players 1v2. damn near full HP.
Carpe down to 42, goes for the tap. He knows this isn't a commitment. They get the right read. Oh, timing, nice. Timing a bit off. Oh. 𝙬𝙤𝙤𝙤 will go ahead, be the finishing blow. GE put a second round 7-2, 7-2. Yeah, just phenomenal discipline from the side of GE on this. No Mars. Ross is Holding back, even though Carpe has a really nice cheeky little play, trying to pick out the smoke. Backstab here finds great timing onto 𝙤𝙤𝙤𝙤. 𝙤𝙤𝙤𝙤 kind of having to act as that entry. Carpe अच्छा टाइम था पहला तो पहला वो. Still though, 𝙤𝙤𝙤𝙤, oh crisp, really nice shooting here from 𝙤𝙤𝙤𝙤. Is it like everyone is talking in the team? One back, another player, one back, another back, one back, Finding some momentum. Texture back with the blade storm. Gonna go up and over. Oh. I mean, 𝙤𝙤 was swinging back out to try to. He saw it that there is an offer. So probably 3 people playing it. And that's suddenly they're rotating. See more impact. Oh, they know they get him 4, they do fast, and they don't get picked, they rotate, and so they're rotating too. Lock in where we saw some. Now उसने 8 clear किया, वो सीधा B भागेंगे. A lot of impact found, and then after they had gotten past that first map, it's when they really started to jive. And obviously, you don't want to have to rely on a map 2 all the time. You know, putting yourself down at match point. You need to be able to pick up those first maps. Already 3 player B पे आ गए. Kills and they do convert. Munchkin finds one. C is going to be burned. Munchkin cuts back 4v4, across the opposite side of Hall. 3v3. Munchkin coming in and snaps on the textures. भाई इनका aim चल रहा है Munchkin का. We'll start backing away. Aaron still rotating in to try प्योर to मतलब कोरिया. Time नहीं है. make this a winnable situation. What are your thoughts on Marcel? Spotted. It's not even Good. Munchkin who finds the Experienced kill. He will player. get the third and final of the round. I think Marcel is like a calm and experienced player. But rest, I don't know anything. I never met, I never know, I man. love the protocols in place here from Munchkin. He misses, Indian he मतलब dodges the Indian. 0 point that goes just And I outside feel like backside. that is what I like to Immediately after I it's don't know, I get vibe from Brazil, like little get vibe that they don't and they lie. have no idea. GE's not ready for it at Like all. And Munchkin's playing able to with find new great players or kills. like players like again, me, you can like see pub GE gamers, wasn't you know. looking as in his And that's direction. just They a thought feel, it was I don't clean. know. They thought it was clear because their Neither. 0 point had just touched it, but he found a perfect timing to sneak in there undetected, and that changed the कौन आया? round for T1. Well played by them. कट लुटता है करो. कौन? Making their way forward. थोड़ा भैया. Heavy presence आवाज नहीं आ रही इसकी. towards A. At least want to grab the ult. है भाई. हाँ. His third nightfall in the half. Oh la 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 la. That's a lot. He's playing really good right now. They have it now. Texture dashing forward. They're prepared for this. एक मिनट रुक फोन आ रहा है. Swing potential, but he still gets in there up in front of the Oh, walls. nice. He didn't Nice pick, necessarily nice pick. expecting that position. Does end up Can being they clipped. push, Munchkin, however, looking to anchor around the Munchkin back out of Secret. though. Good Okay, for they're one trying to texture. push Who's ahead trade. Nice pick, nice double pick. Okay, they got the trade. 4v3 post Spike plant. now planted 4v3. Nice dodge. Away from the flash, but just can't steady the I game. don't like the Carpe position. swings around, I don't finds like the one. positioning Shot at goes all. wide, side dashes out. निकलो निकलो Himself निकलो. safe as the nightfall is Cool. going to be committed. Nice ult. Manages to प्लांट find कहाँ two. का है भाई? 𝙤𝙤, देख however, तो आठ बहुत वाले पीछे का. का, बहुत clipped पीछे का. by this, still has his audio, but Aaron comes up with two. Oh, he now, missed third it. Saya elimination. missed it. And again, that's what you want to Iron see out of your covered. IGL. Iron covered. वो angle बहुत पतला है. That's the only thing. But उसके अलावा it's a Valorant able to squad. win 2 huge trades off the rip that give GE the Iron sight. is This is the Indonesian, texture we're that's looking why. for. This is the guy Last who has business been की चल रही है so भाई. consistent in Korea as a Jet player for so long. Watch party. Previously for 𝙤𝙤𝙤𝙤 Wow, Kia, pretty professional. D+ Kia. क्या? Official. This is just huge here. You know, outdoing Official watch Munchkin. party for Helps Official the watch rest. party I got from VCT Side player, another nice Pacific. shot, but Aaron हाँ वो from तेरी story range. देखी मैंने. Oh, what a tap. So good Ladies में तेरी story. We got two match. Gets the क्या save. बोला तू? Saya. Beautifully done there. वो ladies ने तेरी story डाली थी. Yeah. क्या डाली थी? GE. देख ले जाके. पता नहीं एक साथ खेले अब एक साथ उसमें नाम में है. सोलो भाई पूरे नहीं हमारे. अरे तू कल कितने बजे आ रहा है? Aaron spotting everybody. Oh boy. Bro, Expecting the rush. entire fighting Takes out at squad least is one there. nano. As the second, and they should know exactly where he's तो ये at. थाट के साथ आएगा या दोनों Very अलग-अलग despite होगा? the fact that he Iron opens मरने up वाला है. damage on the carpet, यार, takes him to फाटेंगे यार, 1 क्या बात HP. होगी? तुम कैसे आओगे गाड़ी से? Be able to finish it off. In the पैदल. meantime, though, B-side अगर has मैं been मेट्रो से आ रहे हो तो बता दो, दोनों को very पिक much कर लूंगा, नहीं तो फिर कार से आ रहे मेट्रो हो से no नहीं आ one रहा भाई fanning मैं. out over towards main. They're all pushing towards spawn. तेरे को उठा लूंगा ना, कहाँ का है तू? हाँ, Clash पटेल completely लगे. against कैसे पूछ रहा कहाँ का तू? कहाँ का? And instead they're going to be Oh, no. challenged for it. उठा लूंगा भाई तेरे को. 2 बार तो घर छोड़ के आया तू मेरे को. वो प्ले वो अंदर नहीं आऊंगा बट थोड़ा बाहर आ जाइए यार. finds वो that play kill. Texture बनाने could be गए good थे, for play one, pushes करने back स्टेशन पे out, आता but मैं चल. हाँ trade वहाँ तक up आ जाइए. comes through.
Now it's just Bazzi. I mean, flies down committed, जल्दी पहुंच जाएंगे, एक साथ रेट होंगे एक would have साथ. flushed him out, but they finally kill all the same. T1 going to close out the Guys, first 9-3 half cards, on the let's defending go. side. 9 चल बे 9-3 कर्स एक राउंड इंपॉर्टेंट है यार. The IGLing for Zeta so far in this half. थोड़ा I mean, obviously- कोपियम दे दे भैया. भाई ये चीज थोड़ा सा अच्छी कोपियम दे दे. है. पता है ये हारी ना मेरे अंदर के जो आग जोला सब जागेगा कि अब मैं और अच्छा खेल के जाऊं. equation for any team is having that थोड़ा सा lockdown, right? कोपियम One of the होपियम biggest देते ults in the भाई. कल game. लैंप पे As मार soon दूंगा as they know सबको. that they've got Aaron likely isolated because a lot of बस तू Killjoy खेल players रहा है. like to play हाँ. off kind of holding down the flanks. They दिख just नहीं रहा. push. अबे कल खेल तो रहा हूँ लैंड पे. Aaron does everything he can to try to delay it with those nanoswarms, but it's वो just not लैंड enough. सियोल में Commit is there for नहीं T1, वो and they're अपने फरीदाबाद में है. Fortunately, gambled with Hey, coming baby back in steps. spawn rather than committing in towards mid. Wasn't sure if there was going to be that extra alert coming out of Art, so kind of felt like he was in a rough position. Had to just maybe cut across over towards B, get himself into shops, but there's just far too many people encroaching on his position. He just can't get away. So a very solid defending side here for T1. But this is also, historically, Aaron's strong suit. So now we'll have to see how the shot calling is going to look as they swap this side. Yeah, absolutely. And I think a key here for GE is Just like baby steps. The defender side. क्या हो गया? It's kind of सुना कितने बजे है? like to lean वो तो क्या 12 बजे के अराउंड ही आ जाओ और क्या. 12 बजे पहुंचना. नहीं 12 मतलब अब मेरे को भी नहीं पता कब है अपना. extremely consistent. He may अभी not be अभी वो नहीं आया, pictures नहीं आए he may not be a guy who's उन्हें दिखा कि updrafted 11 all बजे over से the स्टार्ट place है. and doing wild तो फिर stuff तो with 1-2 it. बजे He's पहुंचो super और consistent. He's 2 या super 3. clean with it. अगर पहले में ही अपना हो He गया has तो always really impressed me भाई. with his तो 11 बजे sturdiness पहुंचना होगा. as an offer. So, the sooner you शायद get तो that कैसे into जाएगा? his hands, the better. लगता है शायद बाइक से होगा मैं. And they definitely But need that impact. नहीं भाई, रिपीटर नहीं है भाई. So plays on Great land moments daily local area. in that first half to be able to net them those 3 rounds. Texture as well, joining him right near the top. आओ तुम कभी आओ Here Valorant. we go. रोस्ट करेंगे. ए मनन मानव रचना वाला खेलेगा. At this point, I can do nothing. भाई वो पता नहीं अभी 30 को है. पहले उनको हो करने तो दे. कल डालनी है ना. We're just destined to have this happen. कल तू आ रहा है ना. One of those days. हाँ Just one of those days. मेरे को ले ले भाई, मेरे को ले क्या ले. इसको क्या हो गया? अब So हाँ we'll जा wait for an मैजिक के update साथ है and ना. see what the issue is. Seems like it may be on the क्या GE भाई? side. हाँ दगाबाज है साहिल तो. हाँ. भोसड़ी वालों. अरे उसने मुझसे खाली पूछा भागे कि मैंने पूछा गिरा था है. बस भाग्य छोड़ के. समझ नहीं आती तेरे को ऑफिशियल बॉस पार्टी चल रही है. राइट वाले सुन लेंगे तेरी गाली तो अच्छा लगेगा. हाँ. It is worth क्या हो क्या रहा है? This is first official, VCT. तो फिर से कोई दिक्कत आ गई. उसको भी स्टार्टर हो रहे होंगे. Technical International, pause. because Wait, this is चाय बता very क्या international. We have an extremely international league. Right, he's given played its, other stuff before, but yeah, ए वो जो all तेरा of Asia टॉय है involved वो in उल्टा this. भी होता है क्या? And granted, उल्टा मतलब? wasn't, दूसरा ऑक्टोपस भी बाहर निकलता है क्या करियो नीचे से? on that stage. नहीं भाई Rossi नहीं in नहीं. his position. उससे वाला. Now that Rossi can't ओए. hear, we see him Instagram reel stepping देख के up. आया So था. this is a bit of a debut for him. So टिप्स के पैकेट तो there's गुस्सा ठीक हो obviously जाता. a lot of added pressures that are going to be coming in with that. We'll go ahead and take a look back at some of the replays. Come on. From this first half, though. They're able to close out this last round. I do ये want to देख give ग्लिच GE पॉपमेंट डाल some credit डिमांड है here. भाई. Yes, the first अबे बेकार है. rounds, whatever it was, they lost in a row. जेन्युइन चीज है. Not ideal. तेरे not पास what है we इसलिए want, ना. but in the नहीं मैंने end, लिया it's बहुत टाइम वेट किया मैंने इसका second भाई quarter सुनाने all का. that, right? ग्लिच But पॉप I के think लिए. the first half is 2 quarters, right? हाँ. Two halves of a half. The second half of the first half. Yeah, exactly. I'd rather say second quarter. In the टाइम second पड़ी है quarter, मेरे पे मैं I thought छूटा they भी made नहीं good था. adaptations again, playing off. Even when they lost rounds, playing off that alarm bot positioning, trying to rotate in and around that, even though it didn't go their way. The ideas are solid, I think, fundamentally. And then I really like the way that Batsy, like you mentioned, he कितना was वेट really करना पड़ रहा है. cycling through those nightfalls really quickly. क्या रहा भाई इतना तो स्टेज टाइम पे हमने नहीं लिया इन्होंने. Threw it out as part of their execute, and then he saved कौन it सी भाई की another तरह है? time for part of their टेक्सचर हमेशा गुस्से में क्यों दिखता है? So, Dustin. little things like that actually make a huge difference because it throws your opponents off and it makes their बस सही में नहीं रहा उसी भाई. नहीं है सही में नहीं है. रास्ते में much more difficult to follow through with. So there are some good things to take away here for GE, but right now Lightning में नहीं है. looks really good. हेलो इंडिया जे फाइट भाई क्या रास्ते है में. ध्यान. They're being IGL'd by Zeta. अच्छा. Round नहीं है. some really good टिकट लगाई है. in the moment decisions. Everybody seems to be on board. The इसी के तो टूट communication पड़ी seems थी to be मैंने. great. I'm seeing मुझे समझ नहीं आ रहा इंडियन टीम बोल के सारे ओवरसी प्लेयर्स क्यों खेल रहे. सत्यम भाई खेलेंगे वो भी खेलेंगे. well, but also when he's making good calls. उनका कुछ प्लान होगा. Success, ट्रस्ट इन देयर प्लान. Yeah. कौन है We're talking about pressures, for both of these squads. Play Let's अच्छा. talk about,
ये देख मेरे को टेक्सचर ऐसा लगता है जैसे इसको खाना नहीं दिया और ये सारा गुस्सा होके बैठा हुआ कि भाई मारूंगा सबको मारूंगा रुको They find themselves on this team back. मैं लास्ट 2 घंटे में इतना स्लीप पड़ चुका हूँ इतना भाई ये मैच 1 घंटे से ऊपर हो गया ऑनेस्टली। हाँ भाई वो सा हो गया not been playing Valorant. There was a lot of eyebrows raised at this. क्या? There's an immense amount of pressure on these players to deliver. जो तू बोल भाई is not only one of the most successful कह रहा है आयुष कह रहा है बैंगलोर के ट्रैफिक में शायद ऐसे निकल रहा होगा suddenly come out and you're representing that. रॉसी अभी पहुंचा नहीं है कोरिया। बैंगलोर का ट्रैफिक इज वेरी टाइमिंग हेवी। अगर आप 9 to 5 वाले जॉब वाले हो यार fucked every day. Okay, starting guys. I hope they just come back man please. तेरी आवाज नहीं आ रही है आएगा खिलाएगा क्या? वैसे पता है आयुष का गेम इम्प्रूव तो हो गया। आयुष कौन है? वायरस आयुष कल आ रहा है तू? अरे काम था भाई 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ गई ना बीमारी की। ठीक है भाई मतलब मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा। हाँ तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए मना भी कर दिया। छोड़ दिया है मैंने लोगों को। And killing यार फिर डैश में मर गया। Ronsky! Oh, they got it. No, they got it. बच गया। All right. Show me the kill board. Tap the ball. दिखाओ। Nice. Global will go ahead and start things off with a pistol win. गाइस मेरा एक्सपीरियंस सुनो मेरा ऑफिस टाइमिंग है 11 से 7। मैं एकदम चिल जाता हूँ खाली सर। अरे तू भाई कोई भालू तू एक काम कर स्केट्स ले स्केट्स में जा जल्दी पहुंचेगा। भाई देख बैंगलोर इंडिया का ही पार्ट है। रोड वैसे ही है। स्केट्स में जाना स्केट्स ले और हाथ में वो मैग्नेट भी लगा ले वो जो कहते हैं धूम की तरह था डूम 2 में। हां भाई इससे अच्छा रॉकेटमैन लिख ले वो। We have to flip that around. Looks like we've realized it. It's having a little minor issue and Texture with a nice early kill. Catches Saya player pushing out into B main. अरे दीदी ओह कैसी how old are you? Hopefully we'll get that साहिल रात को आ जी। rebooted and reset for you guys here shortly. क्या? In the meantime, रात को आ जी। ओए ये वॉल देख। on A, you can see all of that. KJ Util just jumped in front. See how they fare against it. वो अंदर घुस नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली। इस अच्छा ड्रोन लगा ले एरो में उड़। ये भी अच्छा They managed to clear it all out, so Nano not going to be able to slow them up. The star not going to be used. Aaron swinging around the corner of the seas. Does get nice. Someone else have to plant. Nice. Very nice. Swings in. Now going to fall and suddenly it's No, just okay. Carpe left. They will get it. 3v1. They will get it. 2v1. Knocked onto the ground. Not going to feel too bad and see Carpe definitely going to be Is he slow? feeling a bit more confident with his Spectre in his hand, but Texture does swing out and finds that elimination. Yeah, this is a pretty decent round for Smack power. considered. By the way, it's 5-9 the other way around, but yes. वो तो पहले डिग्री स्मैक पावे तो। T1 is still ahead. Oh, okay. Texture gets the opening kill there at range on the B long. Batsy again being really solid here so far in this match. भाई पहला मैच तेरी टीम से होगा कल। मजा आएगा भाई। कितनी टीम है वैसे? नो आईडिया भाई कुछ नहीं पता। तू कर क्या रहा है हमारा तेरा जुगाड़ नहीं है तू। I should have mentioned it at the start of the map. But मैं बात नहीं की ना अभी किसी से। बात क्या करनी है? मैं उन्हें कोई पैड कर दिया है जहाँ पे वो आएंगे। every single pissed around versus Vitality. क्या आएंगे वहाँ पे? क्या आएंगे वहाँ पे? Pictures. हिंदी में समझाना। Coming out
सालिन को पता चल गया है क्या फिर भी मजे ले रहे हैं। हाँ समझ गया क्या गाली पे गाली दे रहा तू। Where are your etiquettes, brother? ये क्या था? ये क्या डॉज फ्लैश था टेक्सचर? ये हो क्या रहा है? बेच के फूफू कर गया। What? बोलूं क्या? Bro, they are in defend, right? इतना ज़्यादा aggressive push कर गया वो लोग। Oh yeah. I mean, he struggled a bit at lock-in, right? And here he is looked. 60 minutes for 5 minutes तो भैया पैदल चले जाओ। ये क्या नाम लेके आई? ड्रंगल गेमिंग। कौन है? चैट पे किसी का नाम है। I mean, you will get a TOS notice if you do that, but कुछ नहीं है, वही ना मेरे को समझ नहीं आ रहे लोग कर क्या रहे हैं। I like it. मेरी टीम में last play was definitely. You know, I like with stream like उसपे ना लोग एक दूसरे से connect हो जाते हैं, mostly South people and मर्जी भाई North आयरन side वाले बस people. आयरन वाले नहीं जानते। ठीक है bro, कर लो आप। क्या? मर्जी का पढ़ तो comment. मैं I lost some brain cells reading that, but cool. I love how you use this dog. No. They're going back. They're going back. T1's just kind of, they're not liking this. They're not liking this. They're thinking कि वो push करेंगे। A little bit of utility. पता है क्या? कार्ड पे I think जंकराट बहुत खेला लाइफ में अपने, तो वो स्काई का कुत्ता यूज कर रहा है जंकराट के अल्ट की तरह। So he's saving it. That's cool actually. Real deep, you can get into the back of the site. We want to see how this goes. Wrongski. A lot of pressure on him. Brewski. He's able to buy a little bit of time. There goes that lockdown in that cubby I was talking about, right, Nice right in the corner. It looks like that is going to force GE back. Yeah. छोड़ना पड़ेगा। Nade goes in. Munchkin just setting up the turret. They can move in for the plant. No one's going to be detained, but they're going to start swarming in back. हिल जाएगा, अल्टा कुछ करना पड़ेगा उनको। This plant down ASAP. It's way too Going to powerful be now. broken. Zeta taken down. The spike now not planted. Just 10 seconds remaining. Carby able to find one, and I think the T1 overcooked this. They waited far too long. Oh my God, that was just us. अभी कुछ मत बोलो, अभी बस देखो। जब तक 10-9 नहीं होता। Grab onto the victory and do not let go. Just gunfight था, pure gunfight. कोई अपनी सीट से हिलेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, बस रहो ऐसे चिल। After they got the orb, they शांत। still played it extremely cautiously. Like they were still super nervous that somebody was going to make a playoff. थोड़ा भाई मत करो, मत जाओ उठ के। मैंने तो कुछ करा ही नहीं। Post plant, let's wait and वही रहो। see if we could we got the opportunity to disrupt the plant. अरे यार टाइम आउट ले लो। To feel comfortable to get आने के लिए लिया भाई। अब उठ जाओ। कितना लंबा मैच है भाई ये। अब जा सकते हैं भाई। आइस तू तो चला है, तेरा तो कोई रोल ही नहीं है। Personal attack. थोड़ा? कोई आवाज आ रही है कुछ? Yeah, you guys can just, send a couple players ahead there and make sure it's clean. Yeah, it's just far too delayed. Yeah, the Cove is not reliable. Could be not East Indian side. प्रोडक्शन का आवाज आया था क्या अभी? हाँ वही सेम। When they have rifles. प्रोडक्शन का आवाज। Go around it, they have pistols, sure. The Cove, it will last a bit longer. Even then, still incredibly risky. कैसी control? No time left on the clock. It's pretty Land में local area network। Yep. It did not take long for teams to just be like, Cove down. Congratulations, you learned something new. नहीं? Oh yeah, I mean we saw it. We saw it from one match to the next. एस्केरोसी कहाँ है प्लेन में? Exactly. इन्हें वैसे ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा मजे इसमें आ रहे हैं। All of a sudden they go and they play up against Talon. Talon's like, oh, Cool. you're doing that same. Cool. They're just planting on the corner at Icebox B site. They have a Cove. We'll spam through it. We'll kill stacks, and suddenly we'll win the round. Yeah, who would have thought? It just, it does not last that long. I mean, the Cove is, really powerful in when there's not, a full क्या? team, 3 rifles pointing at नहाया भाई आज तू? one rifle it नहाया? hold up against. नहाया? नहाया क्या नहाया? अच्छा यू मीन बात? सॉरी बात? मेरी गलती है। अरे तू क्या मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ये कोई पूछता है? हमारे दिल्ली में नहीं बोलते। आपने बात की है क्या? हाँ। ये क्या पूछ रहा है नहाया? मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मुझे लगा कुछ पूछ रहा है।
कैजुअल बात पूछी थे। अरे कोई पूछता नहीं है ना, नहाया नहीं ना नहीं नहाया, मतलब चाटे का वो होता ना, वो सीन लग रहा था मेरे को। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कॉलेज में जाओ लड़के पीछे नहा के आए, नहीं मत चाटना आज मुझे। अरे वो अभिषेक, अरे अभिषेक मन्यू का मारा यार डायलॉग। क्या बातें करता है तू देखता नहीं ना स्टैंड अप कॉमेडी अभिषेक वाला, वो तो उसमें था। पर तेरे मुझसे उम्मीद नहीं करता भाई थोड़ा को क्यों डीसी में है, वो तो खेलता भी नहीं वेलो। प्रैंक बोल रहा है। क्या रैंक है उसकी भाई? उसकी सिल्वर 3। अभी बहुत लंबी जर्नी है मेरे दोस्त। अरे कल आ रहे हैं वहाँ पे लाइन पे। अभी बहुत लंबी जर्नी है प्रियांक भाई। अगर जटा ने ये क्लच कर लिया, तू भी आ जा। जटा ने ये क्लच कर लिया अगर, तो मैं दोनों को समोसा खिलाऊंगा। ओके and she means the player Saya player. The ult for the next round here as GE keep themselves alive. Yeah, pretty good round here for T1. Get a decent amount of value, get the plant down. You know, for an eco, so pan भी होता है। it all starts with Carpe here. I mean, again, the mechanics for this guy are absolutely otherworldly. Catches Texture off guard. Texture not ready for Carpe to be that far pushed. मैं इधर ही ठीक हूँ, मुझे नहीं करवानी बेइज्जती। लॉल। Clean enough with his. He's able to get it done with Batsy, man. He's looking. आप भी तो क्यूट हो, हाँ बिल्कुल। You know, at times. अबे ऑली स्काई आयुष है। Absolutely start taking games. कौन? अच्छा आयुष ने लिखा सेम चीज। अच्छा उसे भी सेम चीज। हाँ खुद से पहुंचा है। और खुद से पहुंचा हूँ। मतलब आयुष नहीं पहुंचा खुद से। पहुंचा है। बाकी लोग कुछ लोग नहीं पहुंचते ना। निधात तेरे को टारगेट क्यों कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है। भाई मैंने तो बोला ही नहीं था तकराम। इंट्रो का क्या होगा? यार अच्छा खेलता है भाई, इसकी फट जाती है बट। Cutting off angles here. This is a pretty interesting harbor wall. They used it to check two corners, right outside of mid doors and right outside of art, to know how much space they had. Now they're going to use the cascade to try to push through. But I did see, I was going to say Monyet had pushed up right towards the doors. Gets that pick. Finds that kill. I mean, he's expecting some pressure coming out of. Come on, G! Backs away, but now we'll know. वो बेटा चेयर पे कैसे हिल रहा है? हमें वो ट्राई कर रहा था जूम में वो। ऑलराइट, अगर अभी वो लोग भी गए अल्ट के साथ तो टेक्सचर जिंदा नहीं बचेगा। ओह नाइस अल्ट, सॉरी नाइस परफेक्ट टाइमिंग ऑन नाइफ। सारा हिट लाने वाला था अभी। They're gonna peak together. It lasts a bit. Of course. Flash now burns. बहुत दूर है। It's going to be just enough time for this. For the blind spray, Texture going to be taken down. That's Hall's. Oh no. मैंने बोला था कि अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो टेक्सचर बचना लगेगा। That positioning was not safe itself. Reckoning now invested. So, just having built that up off the plant. yeah, Much can spot him, make but it yet difficult. spams him down through the box. Alright. Cosmic Divide. No one is in front of this. No one is. पता ये आर्ट सबसे बेस्ट लगती है यार। Carpe has to be the difference maker. He finds one. कार्पे ने लोकेशन दे दिया। कार्पे इस तो बच गया भाई। In his hands, Carpe. ये दोनों डबल स्विंग करना। आ जाएगा। No. टाइमिंग। वो स्मोक बचा लिया, स्मोक ने एंगल्स काट लिए। Again, pick up a round win. See the good part next map heaven है जो जी के चांसेस बहुत ज्यादा जीतने के। But the worst part लोटस है जिसपे कम्युनिकेशन बहुत। ये देख इंट्रूडर क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या करूं मैं इस बंदे का? जाके देख के। भाई ने इग्नोर कर दे और क्या कर। और तू मेरे को क्या कहता है साले? इग्नोर कर दे यार, टाइमर दे दे। मेरे को और बढ़वा रहा है। आयुष कह दिया हाइड दे दिया लो। मैं लूज करने वाला था। आयुष ने हाइड किया। हाइड की भी जरूरत नहीं थी यार। वो उसका ओपिनियन था, उसको बस वैसी रिस्पेक्ट मिलेगा। ज्यादा हो रहा है, ओवरहीट हो गया। हाँ प्लेयर की आवाज आती है।
वो लोग इसलिए पहने हुए हैं ना लाइक नॉइस कैंसलिंग Same could be हेडफोन्स. said for GE not having those defensive smokes. I like the idea here from GE to try to push out a little bit, to try to take some space. But has been also kind of keen on taking a lot of these early pushes in towards art, in towards mid. So this time GE is going to come out on the better side of it. A duel coming forward. He needs to win this. He's good for one. Oh, they already taken a lot of time out, and so they don't want to. Millimeters away from Munchkin's head. Mhm. That leaves Aaron. मिड में ओवरहीट हो गया था. दैट इज रॉन्ग. जब उनके पास 4v4 था तब ओवरहीट नहीं करना था टेक्सचर को. उसने किया. अगर ही वन वुड हैव बीन नाइस. ही डिड नॉट. Clearly not expecting it. T1 will close out the round and now take this 12-7. हाँ IND हो गया. हाँ क्योंकि IDN इंडोनेशिया का है. क्योंकि इंडोनेशिया IDN. Really damn good this map. And continues to be so. But this round just really comes down to this mid push from Global Esports that just didn't quite convert. So now they're on not great money here for this round. A Guardian, a Spectre, a Stinger, they invested completely in that previous round. So the economy here, very, very slim. I'm curious if it's a let's move on, you know, we do start slow type situation, but we're not seeing that timeout call coming in. Yeah, that's true. We just had, what, one apiece, I believe. I believe you're right. I wonder if it's just a IND है ना. नहीं इंडोनेशिया का IDN है ब्रो. really try to overcook something that's already D वो करते हैं ना इंडोनेशिया, तो इसलिए IDN उसका होता है. IND इंडिया का है. Then you're getting into. You're still going to start a fire. Yeah, exactly. Which is what you don't want to do. You're going to burn your house down. That's not ideal. Spray. Yeah. इंडिया में कोई नहीं है जिसका एम टॉप लेवल वाला हो. Dude, are you kidding me? Brother. Have you watched me? Huh? Without muscle memory, without having one aim, one sense, I play from other sense, bro. Oh, just wait and watch. India में मेरे जैसे 10 और हैं. Okay, guys, we are alive. Still in there. Very far to go to exit from this lockdown, so they go ahead and pull away. It was used so deep back towards the spawn. They get themselves out. They check the flank. एक मॉली उनके पास. A single bite available from intro. The flank. Is it enough? Yeah, this lockdown gave them enough room to push this angle. So now they got to get there, but that spike is pretty deep on the edge. Cease connects. Bite. Being waited out. Tap on. Monnier holding for it. Gets it at least to happen. He's just going to be holding this. They have to spray him up. Intro's going to be good to find. हो गया. They cannot do anything about it. Comes through just as Jokes over. भाई joke क्या है यार तुम लोग? I wasn't sure for a moment if he was. अगर मैंने 2 साल पहले कुछ चेंज नहीं किया होता ना, did it go? तब Did it not? अभी भी चेंज करके भी मैं read in लूँ ना तो barely देखो. holds on, and now they can at least somewhat stabilize the economy here, but Texture just absolutely filthy. ये VCT देख के मैं और बढ़िया खेलूँगा. One fewer kill. This map is over. Yes. मैं without initiator, without किसी चीज के जाता हूँ अकेला खेलता. T1. और Intro looks disappointed. Victory quite just yet. Still need to work for it. Weapons though, obviously, still not great. Still not great. Ronsky for now. बार-बार ये लेके अब अल्ट करके निकलेंगे ये लोग. No ults to speak of, whereas there are 3, now 4 available. इसका dog तो काट पेगा. T1 likely to invest all of his to end this. Yeah, absolutely. You got everything to play with here. Clear नहीं की ना? कर दी. साले साइड क्लियर तो करी थी. बैक नहीं किया था. हाँ तो बैक तो वही क्लियर ही हुआ ना. राइट लेफ्ट 8 खत्म सब कुछ. ओ भाई. They have to go secret for sure. Fade is going, but not everyone is going. Already खत्म होने वाला है. They don't have enough. अरे ये क्या किया? जी. That's 3v4.
Pit still up, the spike ticking away. You go map 2 guys. Nah, they can't. Saya hai na. And yeah, with an nano ticking, that's just gonna do it. Intro will spray down the final 2 players as T1 take Pearl 13-8. A really good showing here for T1. Again, a lot of changes in a lot of different areas for this team. And Let's hope they play next map very good. मैं निकल रहा हूँ कुछ काम से आना है At least so far, at least one. बैठा रहे. Not a ton to go by, but अरे कुछ सामान कुछ काम से आना है नहीं बैठा रहे. चल शाबाश जल्दी निकल. Initially be working. That's a good sign. GE, I thought this was going to be a tough, first map no matter what. Even though it's their pick, it's coming into again a team has made a lot of changes, so it's tough to get a read on exactly what they're going to be bringing at you. You have to assume that Pearl's going to be the map they're going to be gunning for. So, as T1, you could float that map and practice some stuff, and you can see that they absolutely did. Really nicely done here from the side. आ जाओ. देखते लोग क्या कह रहे हैं. वो देख उसको बता दो नो नेम को. Global Esports as a team hasn't practiced much. It's okay. G it's still in its earlier phase. ठीक है भाई. Thank you. Shame on. ये देखिए velocity is better than G. Shame on Global. L or Global. Texture like why the fuck did I join? Easy. The referee is cute. वाह भाई. मनन प्लीज म्यूट कर ये या तो म्यूट कर दे तो पढ़ मत कुछ ज्यादा टॉक्सिक है. तो क्या अबे ये लोग पढ़ रहे हैं ना मैं वैसा बोल रहा हूँ देख रहा हूँ बस. मुझे पता तू नहीं बोलेगा. It feels like a waste of time every time watching it and hoping them to improve, to be honest. Stop hyping G this much, guys. Please, you guys are just so dumb. These guys are not ready for international. लोग भाई कितना hate कर रहे हैं सही में भाई. अभी अगर अगला मैच जीता फिर पढ़ूंगा फिर देखेंगे. I agree with you. I think it could happen. I mean, again, you can छोड़ो see नहीं that पढ़ रहे GE हम after भी. those initial 6 rounds where they kind of slid. These guys don't even know how. Chat analyst, chat expert. They only ठीक है वो लोग देखते रहता है मैप में क्या चल रहा है बोलता है भाई ये अरे it's क्यों like नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है. dude ये भाई उनको नहीं पता. Chat is like वो चीज है कि उनको जो दिख रहा है वो बोलते हैं और उसके बेस पे ही जज करते हैं बस. भाई तो भाई देख हमें पता है कि कौन कहाँ पे हमें पता यूट्यूब कितना है. अबे पता उनको भी है वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं उनको मजा आता है. अरे नहीं उन लोग के पास अभी मैं बता रहा हूँ इतने. अब देख चैट में ऐसे भी लोग हैं जैसे देख जी शुड हायर सोलो फॉर नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे शायद. अब मैं इनको कैसे पता क्या पता कुछ आइडिया नहीं होता. दे जस्ट से चैट में इसका क्या करूं. चाहे वो बात कितनी भी सच हो कितनी भी झूठ हो या कुछ भी हो दे जस्ट वांट टू से. हाँ जल्दी रंग बदलते हैं. हाँ T1 बहुत दिनों साथ में खेल रही है तो T1 फर्स्ट जीती फर्स्ट DRX जीती अब ये वाला में T1 जीत रही है. DRX dominated. यहाँ पे domination नहीं हुआ कम से कम. When match start they hype G and after loss is like G is right. Yeah exactly. G में coordination नहीं है. Yeah G is like rather new. They have been practicing for a while now. Yeah coordination अभी तक नहीं बैठा. That's like थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनको. I will say like it will take like a while to get everything dialed in. Or who knows? Yeah I think अगर पांचों एक ही कंट्री के हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठता है. थोड़ा टफ होता है अलग अलग कंट्री के. लैंग्वेज बैरियर बहुत है इधर. नो लैंग्वेज बैरियर कैन नॉट बी अ रीजन बिकॉज इंग्लिश में बात कर सकते हैं. बट आई वुड से अलग अलग कंट्री के हैं अलग अलग गेम प्ले होता है अलग स्टाइल होता है अलग लिविंग होता है सब कुछ मैटर कर जाता है. हाँ वो ये जरा काम है लेकिन अभी they are switching up players too fast. That's why it's getting hard for the players to adapt each other. They are together for the first time. I will say let's give them some time and I'm sure they will have some results for us. But कोई बात नहीं यार. As per my opinion, negative commenters are having half knowledge about what they know. Dude, not even half knowledge. They don't even have a knowledge. They just say it because they want to say. You know. See some shit and they're like,
bro, what the fuck? I could have done better. I'm in bronze. It feels good when, for example, in our case, if someone is fan of me and they type anything and I read it, they feels good, right? And if they are someone who Solo should be rage, I wanna see it, वो वैसा type करते हैं और मैं जब rage होता हूँ उनको अच्छा लगता है. So that's how it works. Everywhere, in every chat, everything. मज़ा आता है लोगों को वो करके, तो ठीक है ना, अब उसमें क्या कर सकते हैं. They don't know. The moment they become streamer or maybe they know the value, तब तक बहुत late हो जाता है, I feel. But ठीक है, it's just opinion. See, this is totally a social media platform like YouTube. Yeah, and social media का सबसे main चीज़ है कि everyone have a right to have opinion. किसी को बुरा लगा कि आप किसी की बेस पे ओपिनियन दे रहे हो या क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उस दूसरे पर्सन पे पूरा राइट है, वो आपको भी कर सकता है या फिर आपको टाइम आउट या फिर आपको बैन कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, उसको पूरा हक है. तो दैट्स हाउ इट इज यार. मेरी चैट पे आके कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, पहले मुझे बहुत क्रिटिसिज्म से इशू होता था. मैं अगर कोई मैच देख रहा हूँ, इंडिया के बारे में कुछ बोलते मैं वो करता था, बट नाउ आई फील लाइक ओपिनियन है, लेट इट बी. मुझे पढ़ना है मैं पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ूंगा. अब अगर चैट में, जैसे मैंने एक रूल बनाया था, चैट में अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, जैसे एक बंदे ने कुछ लिखा और 10 बंदे उसको रिप्लाई दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको हाइड कर दूंगा. दैट्स हाउ इट गोस. ऐसे मैंने कहा था. तो अगेन इट्स ऑल ओवर. हथौड़ा भाई है, हथौड़ा को भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए. थोड़े हथौड़े मार अपने बंदों पे, मेरे मतलब बंदों पे, मतलब चैट पे जो ऐसा करते. Very end. Yeah. I mean, कुछ मिस कर दिया, अरे नहीं यार, चिल है for सब. sure, T1 looks way different than they did at Lock-In, right? I think global esports, the pros and cons we saw at Lock-In, they kind of showed up the same way again today. But T1, I mean, their trades are cleaner, their executes are cleaner, their comms seem to be better too. They just look much more improved today. It was a really funny first yeah, map pressure is another thing. The way the rhythm of the rounds played out, it seemed like T1 was almost. But don't you guys think it's a high time that after this VCT Pacific and VCL all start taking the talent ones instead of they going for the low price, cheaper players or maybe hype up players very high, you know? I feel कि अब time है कि अब they go for the tryouts, the main part कि tryouts होते हैं instead of connections, instead of talking and all, they go for tryouts. You don't know, you will never know कौन best निकल जाए. Guard has been doing this, right? So they just sign hyped up players as CC. Popin को sign किया, उससे पहले Prod था. So they are doing this thing. Of course, अभी तक Guard का नाम और निशान नहीं है. As an entire org, just lost 30 minutes. Yeah, absolutely. I mean, Nick, tell us more about what you were talking about, these well-coordinated movements that we're talking about. They should bring the underrated players. So here's the thing. Starting में Valorant preferred experienced players from Overwatch and CSGO, mostly CSGO, because similar shooting mechanics. But अभी हम लोग at this like 2023, we are preferring more and more ingrown talent who has proven themselves in Valorant itself. But earlier That's on, how things have changed. And you could see they actually managed to basically bait out global esports. They closed that in there, had an excellent round, and got TRX something, yeah, something is excited. Yeah, Exciting, and yes. you can see the deaths there on the map as well. Man, No, it's not about, see, they नहीं एक second, ये नहीं कि underrated players. You never know underrated. See, there is a reason why there are some people who are underrated. Like people, लोगों को लगता है कि जो underrated है, उस like free sympathy है एक तरह से कि like underrated है यार, होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि अगर कोई underrated है और वो famous हो गया तो वो अच्छी हो जाए. नहीं, जरूरी नहीं होता. Underrated players कोई reason से हैं वो. Even अगर मेरे को भी तुम कहो कि I am underrated player या I am not that, like मेरे को और ऊपर होना चाहिए. It's just a thought. उस पर तुम कुछ कह नहीं सकते. कुछ भी हो सकता है ब्रो. तुझे पर्याप्त e-sport एक्सपोजर नहीं है, तुझे किसी ने ट्राई आउट नहीं दिया, तो लोगों को पता नहीं तो कैसा खेलता है e-sports में. No. See, there is a difference. अभी इंडिया, अगर मैं कहूँ बाहर NA और EU में, अगर आप टॉप 10 प्लेयर्स में, आप अगर टॉप 100 में हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज वैसी वाली नहीं मिलेगी जो इंडिया में है. इंडिया में टॉप 10 या टॉप 100 होना इज वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल हुआ नहीं है. इसलिए तो इंडिया के अगर टॉप 10 प्लेयर्स हम लीडर बोर्ड से निकाल के टीम बनाएं तो बहुत असर हो सकता है, इंडिया की बेस्ट टीम मानी जा सकती है. बट वहीं पे ये भी कह सकते हो कि
अगर मान लो एक टाइम पे आ गया, सी ले लो, सी के प्लेयर्स जो टॉप 10 के ले लो, ज़रूरी नहीं है अब DRX से कौन से हमें टॉप 10 में दिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ का लेवल हो चुका है वो, तो डजेंट मैटर टॉप 10, इट मैटर्स दे। अब इंडिया में अगर मैं कहूँ तो टीम वर्क तो चाहिए, बट हमें एम वाला भी चाहिए, हमें गेम सेंस सब कुछ ऑल इन वन चाहिए, ठीक है, और जब तक वो नहीं आएगा, जब वो आएगा तो इंडिया के कुछ प्लेयर्स ही इस लेवल को इतना ऊपर कर रहे हैं कि जो बाकी इंडियन के प्लेयर्स हैं उनको वो लेवल कैच करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि वो टाइम लगेगा बट वो ऊपर धीरे धीरे आएगा। बट अगर लोग ऐसे ही करने लग गए कि भाई एंटरटेनर्स कोई वो कर रहे हैं ऐसे अप्रिशिएट एंड ऑल, तो वो चीज़ तो किसी के अंदर आग उगलेगी ना। मेरे में अंदर आग लगती है मेरे को कि भाई मैं अच्छा खेलता हूँ, लोग मुझे कहते हैं अच्छा खेलता हूँ, मैं और अच्छा खेल सकता हूँ, तो मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कि यार ग्राइंडिंग को कौन ज़्यादा देखता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग देख रहे हैं और देखने से बस मेरे को तो एंटरटेन बनना, कंटेंट क्रिएटर करना, ये सब करना, 500,000 वॉचिंग करना है, मैं क्या करूँगा उसको, मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है एंड में मैं गेमर क्यों बनूँ, मैं गेमर क्यों हूँ, वो चीज़ है। अब अगर मैंने लेवल सेट कर दिया टॉप 100, मैं मान लो अगले 3 सीजन में टॉप 10 में आ रहा हूँ, दिख रहा हूँ, मुझे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट लोगों को अंदर से आएगा कि भाई अगर ये टॉप 10 जा सकता है तो बाकी प्लेयर्स भी जा सकते हैं, और मैं क्यों नहीं जा सकता, ये क्यों नहीं, सब ऐसे होंगे और फिर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब अगर मान लो इंडिया में सब जानते हैं कि भाई ये ग्राइंडर है, इसको लोग सारे लोग देखते हैं भर के, देखे जा रहे, मतलब कुछ तो बात है ग्राइंडिंग करने में, कुछ तो बात है टॉप 10 में होने में, तो मैं भी हूँ, तब बनेगा, लेवल ऊपर आता रहेगा, हर कोई लेवल उसमें जाएगा। दिस इज ओनली रैंक बेस, दिस इज ओनली रैंक बेस। अभी तुम्हारा आ गया फिर उसमें ई स्पोर्ट्स में नॉर्मली वैसे खेलने वाले कि खेल रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं, ये टीम बहुत अच्छा कर रही है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक हाइप बना रहा है, ये सब बना रहा है, वो टीम एक्चुअली वर्क कर रही है किसी एक लेवल के आने के लिए। बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती हैं, आई डोंट नो, इट्स लाइक एंडलेस टॉपिक टू टॉक। अब अगर मैं स्पोर्ट्स में हूँ तभी मैं इनर इन्फॉर्मेशन जो आएगी तभी मैं उसके बेस पे बता सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली अगर मुझे कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है मैं तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें नाम जुड़े होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो राइट नहीं है, इट्स लाइक अ डीफेमिंग और समथिंग। बट अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं तुम लोगों को इस तरीके से बताता हूँ कि यू गेट इट, और तुम सबको पता है मैं बता देता हूँ, तो वो चीज़ है। अब मेरे को खुद सुनने में आता है अपने बारे में रूमर्स, कितने अजीब अजीब से रूमर्स, ऐसे रूमर्स जो मैं लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे बारे में, कभी है कहीं से आ रहे, तो जब लोगों से बात होती है देन दे टेल मी, हाँ पब्लिक इज वियर्ड, पब्लिक इज नॉट वियर्ड यार। पता क्या होता है, मैंने किसी नए स्ट्रीमर्स को देखा या किसी एक नए प्लेयर को देखा या किसी एक पर्सन को देखा, मेरा वो पर्सपेक्टिव बना या जजमेंट बनी और मैंने दूसरों को बता दिया। अब दूसरे मेरे को सीरियसली वैसा ले गए, चाहे मैंने मजाक में बोल दिया, वो सीरियसली तो वैसा ले गया, अब वो आगे और फैल गया और वो चीजें चेंज होती रही। सेम गोस फॉर दिस ना, सीएसगो में क्या हुआ था, मुझे हैकर बोलने के चक्कर में इतना कुछ फैल गया, चाहे मजाक में बोला हो कि मुझे कोई टीम लेना ही नहीं चाह रही थी यार, सबको डर लग रहा था, फिर वो सीन्स आने लग गए कुछ ना कुछ, तो उससे और इशू हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा चल यार स्ट्रीमर बन जाते हैं, कम से कम मैं लोगों को कह सकता हूँ कि मेरी वीडियो देख लो, ये देख लो। और फिर एक आया लाइन, और जो पबजी मोबाइल में बहुत हुआ था, कुछ हुआ था सीन की इवन बीइंग अ स्ट्रीमर वो हाइड हो जाता है, ये हो जाता है, वो सारा वो होने लग गया, तो ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा मेन होता है। द प्रॉब्लम इज 3 साल में मेरा ट्रस्ट तो लोगों को गेन हो गया, बट एक चुटकी लगेगी और वो ट्रस्ट भी टूट जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ। दैट्स व्हाई लाइक थोड़ा स्केयर रहता है। मनन एक क्वेश्चन तेरे लिए, ठीक है, अभी हमारे पास जो करंट इंडियन वीसीएल सीन है उसमें सीन ये रहा है कि we are getting a lot of imports mostly from Philippines, Russia, Indonesia। मैं एक चीज बोलूं, हाँ एक सेकंड, तेरा ये खोलने दे मेरे को, जो तू कह रहा है ना, इसमें मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है इससे बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सब खेल भी रहे हैं, बट I just want to know कि तेरा क्या विचार है on, like of course they are here to like give us more variety in the skills we have, ठीक है, उनका खेलने का स्टाइल अलग है, जैसे तू बोला अभी खेलने का स्टाइल अलग है, सो दे आर हियर टू गिव अस अ मसाला इन देयर प्ले। हाँ, अब मैं यही चीज में बोलने वाला था। देयर ओपोनेंट्स, हाँ बोल। ये तुम पहले देख लो, और ये सारी जितनी भी टीम्स है इसके अंदर प्लेयर्स देख लो, ठीक है, इनमें से मैं अभी मुंह पे सबके सामने कह सकता हूँ, इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिजर्व ही नहीं करते थे। आई डोंट नो हाउ दे गॉट इन, उन्होंने या तो कनेक्शंस के थ्रू हुआ है, क्या हुआ है, आई डोंट नो, बस मैं वैसे बता रहा हूँ। और मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, देयर आर सम फॉरनर्स टू इसके अंदर, टीम के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं दूंगा किसी को, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सही में ऐसा सीन है, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा सीन है। और डेफिनेटली
ये शायद से उनके लिए अच्छा है, चाहे कनेक्शंस के थ्रू उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल रहा है, उनका करियर भी बन रहा है, वो कोई इशू नहीं है। बट ये मेजर इशू तब बनेगा जब इनमें से वो टीम यहाँ तक आएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, तो आगे वो कैसे करेंगे, वो कोप अप करेंगे ही कैसे? क्या वो स्पून की फीडिंग होता है कि क्या होता है, हमें बचपन से ये बोल दिया गया कि अगर आप बच्चों को ऐसा खासकर होता है, फर्स्ट से लेके आप 10 जने हो, लास्ट वाले को भी प्राइज मिल रहा है, तो एक जस्टिफिकेशन या फिर वो क्या होता है, वो होता है ना कि तुम लास्ट, उसको फील ही नहीं करवा रहे कि तुम लास्ट हो, अरे उसको फील करवाना भी जरूरी है। तो सेम गोस हियर, तुम में से आधे से ज्यादा प्लेयर्स जो डिजर्व नहीं करते हो, तो कम से कम अगर तुम ट्राई करके हार गए तो पब्लिकली आओ कि यार आई एम नॉट, मैं और अच्छा करूंगा। तुम्हें वो आग आनी चाहिए, वो आग आती नहीं है, पैसा मिला सब मिला और गायब। अभी तुम देखना, मैं अभी लिख के बता रहा हूँ, इनमें से आधे से ज्यादा जो प्लेयर्स तुम देख रहे हो ना, गायब हो जाएंगे आफ्टर दिस। तुम देख लेना, इनके नाम नोट कर लो सबके, इनमें से देखना आधे से ज्यादा प्लेयर्स गायब हो जाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। उन्होंने देखा VCL आ रहा है यार, जल्दी इसको ये सब करते हैं। इस दौरान इनको ये भी नहीं पता चलेगा कि कुछ ऐसे प्लेयर्स, नॉट इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे प्लेयर्स जो एक्चुअली इस लेवल पे होने चाहिए थे, वो है ही नहीं, और उनके पास टाइम ही नहीं रहा, वो सब नहीं हुआ। मैं लकीली स्ट्रीमिंग से आ गया तो इसलिए मेरा चल रहा है, नहीं तो 2 साल बाद तो मैं भी छोड़ चुका होता। हाँ मनन, ये लिटरली द बेस्ट चैम्बर प्लेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चैम्बर मेटा को डोमिनेट किया, 67% फर्स्ट ब्लड, वो वाज क्रेजी। वो किसी भी रोस्टर में नहीं है, ही इज प्लेइंग रैंक्ड। नहीं, मैं अगर सच बताऊं, मेरे पास पावर हो हाथ में इतनी, तो मैं सीधा मुंह पे बोल दूंगा। मैं ऐसी चीजों में डरता नहीं, चाहे मेरे को लोग 10 लोग आके उनके या फिर उनके फैन आके हेट करे, ये करे वो करे, आई डोंट माइंड। बट मेरा मकसद ये है कि मुझे चाहिए मेरी, अगर मैं किसी कम्युनिटी के अंदर हूँ, मैं किसी सराउंडिंग के अंदर हूँ, मेरे को वो चीज़ क्लीन चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फिर ऐसा हो जाएगा यार, इधर गेट मी आउट फ्रॉम हेयर, नहीं तो मैं चाहता हूँ मेरा एरिया क्लीन रहे, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये की बात देख लो, बहुत सारे लोग कहते हैं इज गुड एंड ऑल, but I'm damn sure even ye be like, I want to be more improved. That's the best part about a esports player, or not even esports player, a best human. हार्ड वर्क है किसी पे भी। Best human यही है कि भाई you are better, you know, and everybody know, and you still wanna be better. वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे, और लोगों में ये बहुत कम है। अब स्पेशली esports player, अभी इंडिया में इतना है नहीं ना, अगले 2-3 साल 4 साल में देखना कितना फर्क आ जाएगा। You will be like surprised, and I will be more proud कि यार देख इंडिया का 10 टीम इंडिया की ऐसे, वो चीज़ अंदर से फील आती है। That's it is। और रही बात, तुम में से आधे से ज़्यादा लोग जो गेमिंग कम्युनिटी में होंगे, जो 5 साल से पहले होंगे, they know it कि भाई पहले तो वो क्या सीन था और अब क्या सीन है, कितना फर्क सीन आ चुका है। पहले तो कुछ था ही नहीं, आप देखो अब जो लोग इस दौरान आए हैं, लाइक लॉकडाउन के बाद गेमिंग, PC गेमिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, लॉकडाउन के बाद आए, दे उनके लिए कुछ नया ही है, नॉर्मल ही है। बट जो उससे पहले से है ना, दे नो कि भाई एक टाइम था हमें कोई पूछता भी नहीं था गेमर्स को, कुछ नहीं, कि हम मुंह से बोल भी नहीं सकते थे कि वी आर गेमर रियल लाइफ में। अब फर्क आ गया काफी, अब खुल के बोल सकते हो, ये सब होता है। सो सिनेरियोस चेंज हैं। ओके, पहले अगर तुम किसी लड़की को बोलते कि आई प्ले गेम्स या आई वॉच एनिमे, इंस्टेंट रिजेक्शन मिलता था, ठीक है। अभी इट इज कूल, अभी तुझे रिजेक्शन मिलेगा कि तू एनिमे। अभी पता है क्या हो गया है क्रैक, अब ये हो गया, अरे तू गेमर है, मतलब यार क्या लक है, मतलब बैठे बैठे कमा रहा है पैसे, ये वो, ये लोगों की थिंकिंग हो रही है धीरे धीरे, और उस थिंकिंग की वजह से लोग और गेम में जा रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को डाल भी रहे हैं, मैंने खुद देखा है ये, सही में पेरेंट्स डाल भी रहे, तू अगर अच्छा खेलता तो खेल देख, और बच्चा वो खुद हो रहा है कि ठीक है खेलते दे। अब बच्चों को क्या लगता है, बच्चे छोड़, बहुतों को लगता है कि वो अच्छा खेलते हैं और अच्छा हो सकता है अगर उनको टीम मिल जाए, उनको कोच मिल जाए, ये मिल जाए। अरे भाई पहले लेवल तो बनाओ, वो लेवल बनाने के लिए तो करना पड़ेगा। वहां पे तुम सिल्वर हो या एसेंडेंट हो, इमॉर्टल हो, तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम्हें अगर लगता है तुम इमॉर्टल पे हो, दैट डजंट मीन तुम्हारा वो लेवल है जहाँ पे तुम्हें ये मांगनी चाहिए। तुम कुछ करके दिखाओ, तब तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हें खुद आएंगे या फिर कुछ होगा। जैसे मैं कहता हूँ, टीम मुझे मिलेगी, कोच मुझे मिलेगा, मुझे मौके मिलेंगे, बट मुझे उस लेवल को दिखाना होगा कि मैं उससे भी ऊपर हूँ। जैसे कैसे बोलूँ, जैसे मान लो कोई मूवी होती है ना, मूवीज में जैसे क्लियरली होता है, एक होता है जो ऊपर है, एक होता है जो नहीं है बट टैलेंट है, वो दिखाता है, करता है, बाकी लक पे डिपेंड है। हाँ बैन है वो, बैन नहीं है, बैन है, उसको बोलेंगे बन। It's kind of a became a doctor by giving and forget cigarettes.
इनसाइड बॉडी ड्यूरिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ। गेमिंग में तो बहुत ही ज़्यादा अभी है, टाइम लगेगा। गेमिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कम्युनिटी सेट बैठेगा, मीटिंग होगी, एक काउंसिल होगा, टोटल काउंसिल, सीरियसली एक काउंसिल वेयर की बात ऐसी होंगी ई स्पोर्ट्स की जो ऑर्ग्स हैं उनसे। नहीं वैसी नहीं है ना, काउंसिल वैसा बड़ा नहीं है, वो वाला है। वो काउंसिल मैं कहूँ ना तो वैसा है कि जो बड़े हैं, जो ऊपर हैं, फेमस हैं, उन्होंने एक काउंसिल वैसा रखा हुआ है और उस काउंसिल के अंदर ही एक दूसरे की लगा रहे हैं, मरवा रहे हैं, कर रहे हैं। वो अलग सिनेरियो। आई एम टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर, यस, एक वो ना, जैसे क्रिकेट काउंसिल हो गया, फुटबॉल काउंसिल हो गया, वैसे आई मीन सारे ई स्पोर्ट्स टीम को पहले फिगर आउट करना पड़ेगा हाउ टू रिमेन। अरे पहले एक साथ हो जाए कनेक्ट कि भाई तू बढ़ मैं बढ़ेंगे साथ में। वो हो ही नहीं पाएगा। वो लोगों की नियत ही वैसी हो जाती है, वो इशू है। आई स्वेयर अभी का जितना भी बड़े ई स्पोर्ट ऑर्ग्स हैं, दे फील लाइक दे आर लाइक सम रिच पर्सनस हॉबी। I'm not saying like this is a very crude way to say it. Of course, they have passion. That's why they're investing in this field, and they know that they're going to lose money as well. और ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, इंडिया में जितनी भी ऑर्ग है, लोग चाहे एक बोलते हैं ये सब करते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव अ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एवरी ऑर्ग, क्योंकि इंडिया की अगर कोई ऑर्ग है, उनको पता है अभी इतना पैसा लगा नहीं सकते इस सब में, ये सब, और वो फिर भी लगा के टीम बना के ये सब करते हैं, और बदले में लोग क्या कर देते हैं उनको, क्रिटिज्म, हेट, ये सब, वो चीज़ और हर्ट करता है। कल को अगर मैं बनाना चाहूँगा कोई और का टीम, मैं ये मेरे दिमाग में ये पहले ही आएगा, यार मैं टीम बना दूंगा, ये कर दूंगा। मैं तो अभी सिर्फ गेमिंग कैफे सोचता हूँ। गेमिंग कैफे सोच और सोच कितना फ़र्क आ जाता है। और का बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, गेमिंग कैफे में तो फिर भी चल जाता है, और का बहुत लगता है। और ऐसे फिर और कोई और गाना भी नहीं चाहेगी कभी। तुम लोग खुद बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि भाई इंडिया की ही अंदर से ही ऑर्ग आ रही है और ऐसा हो रहा है, या कोई बाहर की ऑर्ग इंडिया की ऑर्ग बना के आ रही है? इंडिया की ऑर्ग से ज़्यादा मज़ा आएगा ना, कि भाई यार अपने दिल की ऑर्ग पास में तुम ये टीम खेल रही है, हमें अच्छा लगता है, तो सोच कितना वो चीज़ होगा। वो अब पता है मनन, हाँ, दुनिया में अभी एक ही ऑर्ग है दैट इज लाइक परफेक्टली प्रॉफिटेबल। अरे वो यार वो वैसे मत, वो पता है क्या, वो सामने है, यू नेवर नो पीछे से क्या चलता है, कितना वो सब हो सकता है, उनको मिलता है, वो सब भी होता है, बहुत सारा सिनेरियो है। आई मीन किसी को देखना है तो उसका देख लो, फेस तो पब्लिक कंपनी है, सो एवरी एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर यू। हाँ, और अगर मान ले जैसे ये डोटा में अभी इंडिया की टीम जीतता है, ऐसे अगर ऐसे टूर्नामेंट्स में अगर कोई इंडिया का प्लेयर ही या इंडिया की टीम ही जीतती है, लोगों को जब दिखता है कि भाई इतना कमाया या फिर इतना ये हुआ, कहानी बनती है, देन सी क्या फ़र्क आएगा, और बड़ी चीज़ें हो जाती है। इट्स टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, और डिफरेंट वर्ल्ड को उसमें लाना वो चीज़ होता है। बाहर की और गेम प्ले लेने सोच इंडिया में ऐसे मैच होगा, ऐसे पोस्टर लगा के लोग वेट करेंगे, बाहर की और प्लेस लेंगे। क्या कह रहा तू? हाँ, सो चैट किस को पता है कि कड़ी कौन है? Of course you guys know FNS, कड़ी कौन है, किसको पता है? C9 कड़ी, yes. So कड़ी, हाँ कड़ी नहीं एक्सेप्ट में नहीं था, मे बी था, आई डोंट नो इवन नाउ। T1 में था, यस, वो T1 में था, T1 से C9 में ट्रांसफर हुआ। दे जस्ट ट्रेडेड फॉर ज़ेटा एंड ऑटम। एक कड़ी तू खा ले भाई। तो बेसिकली ही इज इंडियन एंड ही वाज ड्रॉप्ड बिकॉज अल्टीमेटली समथिंग का परफॉर्मेंस, वो रैंक पे नंबर 1 था। रैंक में आई थिंक स्टिल, लेट मी जस्ट पुल आउट द एनालिटिक कोड, एनए वैलोरेंट leaderboard. He is number 5 right now and he was number 1. Okay, so entire point is ये बंदा इतना बढ़िया खेलता था। VCT है नॉट विन का टूर्नामेंट। थैंक यू फॉर सुपर चैट। This is Valorant behavior. Normal Valorant behavior. देखिए तूने करी हुआ, कह रहा चिकन करी, हाँ करी राइस है ना। Yes. So राहुल भाई को बेसिकली ऑर्ग्स ने उधर फेंका,
and now he's dropped from everything, even though he's like top 5 best player. Of course, Wardell भी वहाँ पे है. Just so you know, Wardell is also there. Wardell was fucking scary. He's still scary. बहुत अच्छे ऑप बट स्किल्स है तू उसके ये पास. देखना, एंड मैं वही तो बता रहा हूँ, NAU में अगर तुम लीडर बोर्ड में हो, दैट डजंट मैटर दैट मच, क्योंकि वहाँ पे सिनेरियो अलग है. बट अगर हम ऐसे का लेके चले तो उसमें भाई लीडर उसमें आना भी तो टॉप पे है, ज़रूरी है. क्योंकि अगर तुम एम पे कैसे, क्योंकि हमारा लेवल काफ़ी डाउन है, तो अगर हम लोग अगर सिर्फ पब गेम खेलने वाले, दैट इज लाइक तुझे चाहिए पब गेम वाले स्किल्स देन. नहीं पब से वो जब टीम में जाते हैं तो स्क्रिम्स होते हैं, सब कुछ होता है, उनको महीना मिलता है पूरा, कम से कम वो चीज़ आएगा ना. अब जैसे VCT लेके आ रहा है नया ये चीज़ अपना, क्या कहते हैं, जो थर्ड एक्ट में आ रहा है कि आप टीम बना के ये सब, उसमें देखना कितना असर होगा, उसमें कितना फ़र्क होगा, तू देखियो पता चलेगा. टीम अंदर ही अंदर बनाओ, वो सब करो, खेलो. और ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे CS2 आ रहा है, एंड आई एम हाईली गोना प्ले इट, बट मैं वैलोरेंट छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो शायद से ट्राई करूंगा यार. एक बार ट्राई करना तो बनता है उसमें, देखते उसमें क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. बट अगेन, अगर लीडर बोर्ड में तुम ऊपर जा रहे हो, मान लो तुमने 5 प्लेयर ऐसे लिए जो सेम लीडर बोर्ड के, बूम, कैन वर्क. ये भी यस कैन वर्क या. अगर नहीं, बात वही पैराडॉक्स. तू बोल ही रहा, तू तो बोल ही रहा है कि हाउ वी प्ले, दैट्स द थिंग. मैं उसी बोल रहा था कि हमारा प्ले स्टाइल इज वेरी फगी, वेरी. भाई पहले तो इंडियन इंटरनेशनल पे जा भी नहीं पाता था, अब तो वहां पे भी जा रहा है. यस, चाहे परफॉर्म नहीं हो रहा, जा रहा है, अब परफॉर्म होगा धीरे धीरे. It's gonna work. Let's see. Some people say कि CS2 जा रहा है तो ये होगा, वैलो नहीं हो पाया. अबे ऐसा कुछ नहीं है, वैलो CS दोनों चल जाता है. इवन ओवरवॉच और वैलो भी हो रहा था मेरा, बट द थिंग इज सेंस चेंज करने की वजह से मैं दोनों को कोप अप नहीं कर सकता, या तो मुझे एक रख के खेलना पड़ेगा, ज़रूरी है. और सेम गोज फॉर CSGO और वैलो. No, dude, that I cannot promise. आई थिंक मेरे को जहाँ तक लगता है अभी स्ट्रीमर इन्विटेशन ये सब आने वाले, क्योंकि नया गेम में हाइप होगी, तो इसलिए शायद से आए. और अगेन सेम स्टोरी, अगर मुझे नहीं मिला मैं तो फिर खेल लूँगा, मैं तो अपना वैसे ही खेल लूँगा, खेल ही रहा हूँ. पर मुझे लग रहा है शायद मिले, या पता नहीं. We never know, man. Nothing can work. I'm a work. देखा CSGO का मूवमेंट का वगैरह. CSGO का मूवमेंट इज लाइक देयर, इवन यू काउंटर स्ट्रेफ ना, तुम्हारा मॉडल ऊपर नीचे होगा, बिकॉज यू आर लाइक देयर इज समथिंग एंगुलर वेलोसिटी they are applying as physics, and people are very annoyed. Solo कब से बोल रहा, I mean he was speaking the entire time, we were just talking. हाँ, देबू कुछ पूछ रहा है. देबू तो यहाँ पे है ना, यहीं पे बैठा है भाई. Eating. Cool. What's the topics? Global elite, but that does not matter. Usually if you are playing in circuits like FPL, so you need like G rank. स्ट्रीमर के लिए वैलो ही अच्छा रहेगा इधर उधर. भाई मेरे को सही में इतना नहीं है कि वैलो, आई एम अ ग्राइंडर, मेरे लिए गेम आएगा इम्पोर्टेंट. What you are observing in these two guys who are discussing from so long? कौन दोनों? ये अलग बात कर रहे, मैं अलग कर रहा हूँ. हम सम्यक, वो मेरा डेफिनेशन नहीं था, वो कोई स्ट्रीमर ने बोला, मेरा डेफिनेशन नहीं था. I think it was Raul or someone. I have learned to never listen to commentary for any broadcast. Watching lose करने की निंजा थी. But Zanson, Patna yes, this is a Railway. watch party. Oh no. Oh no. क्या हुआ? पटना रेलवे. Oh no. तो ट्विटर सर्च कर ले, ऑफ स्क्रीन सर्च करना पटना रेलवे, समझ में आ जाएगा. ऑफ स्क्रीन, नॉट ऑन स्क्रीन. कमेंटर्स. मैं 2 दिन पहले हुआ था. अरे 1 हफ्ता हो गया ब्रदर. हाँ. वही लोगों ने ट्वीट भी तो किए होंगे, देखें. एक्सप्लोर.
People forget I played. Oh yeah. Oh yeah. Hmm. अभी भाई मैंने किसी वजह से बोला था कि ऑफ स्क्रीन देखना, ठीक है? ये क्या हो रहा है? ये क्या लिख दिया भाई? मैंने क्या किया? We can't choose. ऑलराइट, कौन है दरअसल चौहान? सामने आओ। ओए शांत रहने दे देखने दे क्या क्या। Said they will start encroaching on this A site once more. Door broken down. Fox. अरे मेरे भाई, अभी मैंने ये अच्छा इसका बात, अभी मैं यही तो कह रहा था कि भाई हर जेट मूवमेंट्स ऐसी ही होती हैं, ऐसे ही खेलते हैं सारी जेट्स का। अगर तुम देखो तो नोट करना, सेम मूवमेंट, सेम ऑपिंग, सेम एवरीथिंग वर्क्स, नो डाउट। यहाँ पे चल मैं तो ये भी कहूँगा, अगर रॉसी होता यहाँ पे वो शॉट मिस नहीं करता, ये वाला। वेट, ये रॉसी है? ये रॉसी है। मैं वही कह रहा था, प्रॉक्सी मिस नहीं करता। प्रॉक्सी ने ओमन पे मिस किया था जहाँ यहाँ पे ओमन था। क्या भाई, लोग लोग मतलब लेना, ये पूरा बात नहीं सुनते। आधा सुना उस सोनू ने कोई बात नहीं। ट्विटर सही में मैं ओपन करना ही वो है। तो हिंदी कास्ट से बन जा, हमें भी टेक पॉज देखने में मजा आएगा। अच्छा भाई मैं हर दिन एंड हो जाऊंगा। वीडियो तो देख, ट्रांजिशन देख उसमें ना। रॉसी आई थिंक अभी पहुंचा नहीं कोरिया। अरे दर्शल तुम यहीं पे हो? अरे वो तो मैंने भी देख रखा है दर्शल भाई, वो जो तुमने दिखाया ना मेरे को, वो मैं पहले भी देख चुका हूँ। मतलब देखा है, दोनों सेम है, ठीक है समझ गया। बट अगेन मैं भी पब खेल चुका हूँ, मैं भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स देख चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैटर है वो सेम, बट मैं मूवमेंट्स की, हम बात कर रहे थे मूवमेंट्स की। जब किसी ने कहा ना रॉसी का ये वाला सीन, मैं वो कहता हूँ, मैंने उसके बाद मैंने यही लिखा था, मुझे पता है कि उसके बाद कोई ना कोई आके ऐसे बोल देगा। बट मैं जो कह रहा था कुछ और वेज से कह रहा था कि हर मूवमेंट जेट की विद ऑफ इज सेम थिंग, अगर हम नोट करना, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। बट द प्रॉब्लम इज कि ई स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, लाइक पब में इतना नहीं नॉर्मल होता है या फिर हाईलाइट्स में इतना कम होता है। ई स्पोर्ट्स में लाइक 7,000 10,000 पीपल हैव सीन द थिंग, दैट्स व्हाई दे रिलेटेड कि यार ये वाला तो रॉसी ने भी किया था सेम। तो वो चीज़ की वजह से आई थिंक यू माइट गेट कहते हैं कंफ्यूज, जो मैंने कहा था। जो लोगों ने मेरे को देखते हैं मुझे, या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने बेस्ट ऑफ प्लेस देखे, जैसे मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं जैसे हर सुबह उठ के कभी कभी ये देखता हूँ, बेस्ट प्लेस इन वैलोरेंट, तो ये डेली आते हैं, ये डेली आते हैं, बेस्ट लीग वीक एपिसोड, ये सब मैं देखा है। तो मेरे को पता है कि यार ये प्लेस निकलते हैं, वो निकलता है, तो उस बेस पे मैंने बात कर दी थी। तो अब हर कोई ये देखता नहीं है ऑब्वियसली, तो इसलिए वैसा हो गया होगा। नहीं तो मेरे को अगर तुम बेस्ट प्लेस में देखो, अब उनमें से कहीं ना कहीं पे सेम क्लिप निकल जाएगी, या फिर जेट का सेम होगा, सारी ऑलमोस्ट जेट सेम प्लेस निकाल देती है, इसलिए दैट्स व्हाट आई सेड। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ ट्विच चैट नॉर्मल है। रॉसी एंड LF नॉट इन कोरिया येट। पहुंच जाएंगे, वीजा क्लियर हो चुका है उनका। पैराडॉक्स तो जी बेंच प्लेयर्स आर आल्सो इंपोर्ट्स, सो दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके, सो दो तीन रीजन है। ऑफ कोर्स रूसी सर ने लाइक he did an entire video on it. I will prefer if you watch that, otherwise I will give you till year. India का passport is not very strong, we cannot be there at that times. We like हम लोग का passport strong नहीं है, that is something we had issues with in the past as well.
especially in like let's say very strong passport countries like Korea or Japan, even if you have like slight issue in your passport, they won't allow any visa. Okay, so हम लोग को वहाँ तक पहुँचाने के लिए GE has to register as a company in Korea, and that will allow everything in Korea to happen. That they did like already. Now they so उसके clear करने के बाद they're just waiting for everything to clear for our Indian players. उसके अलावा 5 इसलिए कि in future कोई issue होता है तभी GE does not go off. It still stays in Korea playing with other country players because India का लफड़ा होने वाला है. Just bad. गलत देख रहा हूँ मैं फ्यूचर मैं वैसे मैंने सोचा था कि लाइक इंडियन टीम्स इंडियन और शायद से 1 या 2 प्लेयर्स बाहर के लेंगे इंस्टेड ऑफ कि 3-4 ले ले. बढ़िया फ्यूचर में इंप्रूव होगा आई सपोज इफ वी डू बेटर. ठीक है, एंड लाइक वी आर एबल नो आई थिंक फ्यूचर में तो ऑब्वियसली 5 ये भी हो सकता है कि 5 के 5-6 इंडियंस ही हों. वो तो वैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट या दोनों साइड अपना अपना है भाई. अगर पैसिफिक असेंशन लीग हुआ आपका लैंड पे, यू नो व्हाटएवर ऑर्ग मेक्स इट टू द असेंशन लीग, उनको ये स्ट्रगल फिर से करना पड़ेगा. दे विल नीड पासपोर्ट्स, दे विल नीड कंपनी रजिस्ट्रेशन, दे विल नीड एवरीथिंग. ये देख आ गया एक का इंडियन रोस्टर वाज डैम गुड देन दिस मैन दिस ओल्ड जी. ब्रदर पीपल भाई 12 मिनट हो गया. 8 मिनट से 2 मिनट से 12 कर दिया. अच्छा हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हम सब तो चूतिए हैं भाई. पीपल को रेग्रेट करना बहुत पसंद है. Hello, I am still waiting for you. 1 a.m. in Australia, you delay. Oh lol, man. Feel sad for you, bro. But you gotta watch Ronsky, right? Or you can talk to us. Talk to in the chat all the time. More people talk, lesser time will go. बात करते करते टाइम चला जाएगा. 2 घंटे हो गए, एक मैप खत्म हुआ अभी. अरे भाई अभी पता क्या हुआ, 2 मिनट दिखा रहा था, उन्होंने 2 के आगे एक डंडी लगा दी, 12 मिनट हो गया. लोगों सोचा लोगों को पता नहीं चलेगा, सबने फिगर आउट कर लिया. द गेम 30 मिनट तक पॉज 2 घंटे. भाई अभी एक गेम भाई क्या हो क्या गया था, वो इशू कुछ हेडफोन्स या उसका कुछ इशू हो गया था. ये लोग पाकिस्तान प्रोडक्शन क्यों वो कर रहे हैं. अरे मीम है ना वो, any production EU production. Oh shit, yeah, why I read it. Unexpected labor for official tournament to have more than a break. 40 minutes is like okay, कोई बात नहीं. पहला दिन है guys, let's just Govi's is a trash team. अगर आज ठीक नहीं होगा तो फ्यूचर में हो सकता है. आज ही ठीक हो जाने दो इसीलिए. मनन क्या फायदा ये चैट पढ़ के. भाई ऐसी बोर हो रहा हूँ. तू मेरी चैट इतना वो नहीं कर रहा ना. I mean अगर तू बोर हो रहा है, these guys are laughing stock anyway. Genshin Impact खेल ले. I mean Valorant that is entirely laughing stock. No, I feel G next match जीतेगी. हेवन है ना. पर्ल उनके लिए थोड़ा काफी नया हो गया. पर्ल और ये कहते हैं फ्रैक्चर लोटस. I mean पर्ल में स्कोर लाइन क्या था? स्कोर लाइन 13-8. क्या बे मैंने क्या किया, मुझे क्या. तू कर कांगे कर रोज कर. चल मैं भी देखता हूँ, सब डाल दो. ओके guys chat Octo 1 versus Solo roast battle. क्या भाई मैं जानता भी नहीं, वो तो इतना सारा रोस्ट ला सकता. मैं तो उसको जानता भी नहीं. करने तो दो फिर देखते हैं. उसका नाम ही रोस्ट है, देख ले ऑक्टोबॉन. क्या बोलूं. पैराडॉक्स मैं पढ़ रहा हूँ, चिंता मत करो. नॉट रीडिंग ओन चैट. 1 point for Solo. क्या इसने क्या चैट लिखा. आई थॉट PGL वाज ओनली विद लॉन्ग पॉज. क्या ये देख भाई, इससे अच्छा तो तू कॉम्पिटिटिव खेलता. क्या गरीब लोग हैं तेरे. स्ट्रीम 8 घंटे सही चलता है इनका.
सही से 2 मैच नहीं हो रहा। अरे तो भाई क्या फर्क है भाई दोनों में? मैं तो 8 घंटे में जल्दी जल्दी खेलता हूँ, वरना अगर मैं मुंबई क्यों करूँ तो फिर ऐसे ही लगेगा मुझे भी टाइम। सोलो इज सो सोलो कि उसको वैलेंटाइन पे भी उसका डुओ नहीं मिलता। ये तो कुछ नहीं हुआ भाई स्पर्श भाई। वैलेंटाइन के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, फैमिली के साथ कर सकता हूँ, खुद अकेला स्पेंड कर मैं आया तो सकता था इस हूँ। बार वैलेंटाइंस मैं पे। नहीं, तू नहीं हाँ आया था, हाँ मैंने स्ट्रीम किया था। आया तो था, मुझे याद है। अच्छा आई आया नहीं डोंट था सी रात को। सी मैं इतना होता, मुझको खुद याद नहीं होता मैंने शायद क्या तू किया। मैं हर्षित घूमने नहीं गए थे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। मोमोज खा गए थे भाई रात में। वो बात अलग है, मेरे को फ्लैट से बाहर निकाल दिया था ना। हाँ हाँ, समथिंग हैपेंड गाइस स्ट्रीम दैट का नाइट, वी डोंट टॉक दिक्कत अबाउट इट। नहीं है, उनका टेक्निकल ग्लिच थोड़ा डिले हो रहा था। Girls be like Solo is like our son. He's million of kilometers away from us. ये अब बता, ये रोस्ट कर रहा है कि ये मेरी तारीफ हो रही है? मुझे खुद पता नहीं नहीं पता भाई चल ब्रो। रहा। Okay, Octoborn भाई, थैंक you are यू। making things so obvious. You are making things so obvious. आपका नाम ही Octoborn है, so people will just assume you were born in October. दक्ष भाई आई डोंट नो, मानव रचना का वैलोरेंट कंपटीशन में आएगा पता नहीं भाई। वो कह तो रहे बुलाने को, कि बुलाना भी चाह रहे, जज भी करना चाह रहे, ऐसे कुछ बोल रहे, तो मैं अगर देखते हैं। वैलोरेंट का नहीं, मेरा जर्नलिज्म का कुछ है उसमें, तो मैं अगर उसके लिए आऊँगा तो फिर वैलोरेंट भी देखने आ जाऊँगा। ठीक, तो हम ये टीम तुझे बना रोस्ट लेते कर हैं, रहा हम है कि खेलेंगे। अपने आप को? खुद ही रोस्ट हो गया भाई। मुझे रोस्ट सिर्फ लड़कियां कर सकती है आई गेस। आर यू अ गर्ल इनसाइड? तुझे वीसीटी वॉच पार्टी का लोगो नहीं मिला? मिला मेरे को, बट उन्होंने लेट भेजा, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम से लगा लूंगा मैं। चैट, डू यू गाइस नो व्हाई सोलो चेंज हिज नेम टू सोलो मनन? क्योंकि सोलो डुओ सर्च करते करते थक गया। ये देखिए मेरे को भाई, मेरे को वैसे पता था तू यही बोलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ गुड रोस्ट, अनदर लाइक नॉर्मल भाई। भाई ये तू रोस्ट है, टीम बना उसको तकलीफ हो गई सिंगल। भाई, उसको तकलीफ हो गई, रोस्ट नहीं हुआ वो। नहीं, मैं सोलो मनन मतलब मैं नाम हो गया, अब कल को तू भी रख सकता है, सोलो डीजी, सोलो अतुल, सोलो अवी, सोलो माजी। किसके नाम माकी हुआ तो? सोलो माकी, I mean उजुमा के तो है ही। इतना सिंगल नहीं होना मुझे, मतलब भाई साहब ये हुआ ना रोस्ट थोड़ा। ये रोस्ट हुआ। सोलो गॉट्स ना, आई डोंट गेट इट। भाई चैट, ट्विच का चैट, ट्विच अच्छा फक मैन। बंद कर। रुक रुक। Dude, these people have no life. बस बैन भी नहीं दिया। सो मनन इज सोलो बिकॉज उसके डुओ ने टीम किल करके खुद का अबेंडन करवा दिया। क्या हो गया है? ये देख, सो सेंसी। अबे यहाँ लिखना, वहां कहाँ लिख रहा है भाई? मेरा रैंक क्या है मुझे खुद नहीं पता। 110 था। मैं लॉकडाउन में मोबाइल से पीसी शिफ्ट हुआ, वैलोरेंट मेरा फर्स्ट पीसी के एफपीएस गए ग्राइंड करके आयरन से सिंडन आ गया। अभी यहाँ पे 120। 90 पिंग आता है, क्या करूँ? खेलूँ तो क्या करेगा, खेलता रहे। क्या मतलब सोलो वीसीटी खेलेगा तो वहां भी वॉच पार्टी करेगा? फोन ले जाऊंगा, चैट पढ़ता रहूंगा। Do you know, sir, you're born with singleness is like that only.
वो बोल रहे तेरा अकेलापन किससे तुझे प्यार है. You love your soloness. I Solo like. तेरा brand name है. I feel like solitude more. Instead of loneliness. There's two different things. Wait. एक second. क्या लिखा था? वही तो sensi fix. Yeah, you can. Please monitor. I can delete it anytime. No, only Kuzu, loneliness calm down, buddy. Calm down. versus solitude. दे फर्क है. नहीं यार पता नहीं दोनों है क्या है. Baby, calm down. Calm down. Are you that juicy brimstone I saw you in Jing stream? क्या वो shadow? Alright, Demon pets. Oh yes. Oh, do you like it? Do you like it? सुजुबीरो तोजी मारी देखने जाओगे क्या ये? नया वो आ रहा है ये नया जो मूवी है किनका माकाटो सेंसेई का है ना. वेट Only in chat. पता नहीं भाई. ओ अच्छा बेटा. अबे यार छोड़ा मैंने लिख रहा कुछ. या माकाटो सेंसेई का ही नया मूवी है. ये क्या था? ये क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं. क्या है ये? क्यों लिख रहा है भाई? ऐसे मत कर यार, फिर सारे हेटर इधर घुस के आ जाएंगे. एबी मत कर भाई. चल ओके. शैडो आउट. चलो शैडो come on. Alright, just sit like this. सेकुजू, मैं तुझे टाइम आउट देने वाला हूँ. कुछ और बोला तू. Look at the mother. How much money to boost my account so I can get picked by? ये देख ये भाई साहब. You need to improve yourself to get into game, not by getting boost. वरना कौन सी टीम है जो बेकार खेलती है? We don't talk about those things, okay? भाई मैं हेटर बन जाऊं? मैं मारूंगा तुझे. वरना इस टीम का देख लो आप. बंदी दिला दे. कौन है ये? चलो स्टार्ट. अभी स्टार्ट हुआ था ना आई गेस. नहीं. हाँ मोह माया है, सब मोह माया है. कुछ स्टार्ट नहीं हुआ भाई. 5 मिनट देख सब लिख रहे हैं अभी स्टार्ट हुआ था. देख अनिल ने भी लिखा कि इन 5 मिनट टाइमर. देखा? हाँ 1 से 5. When I asked how to get more, someone told me that I have to do एक के साथ. चल नहीं ऐसा कुछ नहीं है. वो मीम कर रहा है भाई. तू मीम हो गया. लाइक ट्रोल कर रहा था वो. अब भाई दी आपको क्या मोस्टली मेंबर्स को भी मिल जाता है जो इमॉर्टल बैच ऐसे ऊपर आ जाते हैं. Senthil, I feel you, man. It is just sad. All right. देख लड़कियों को मॉड मिल जाता है बट नहीं. देख अनन्या को मॉड नहीं मिला. अनन्या को मॉड नहीं मिला. What is the reason, Manan? हाँ अबे give us reason. Explain. Explain yourselves, Manan. अभी अनन्या को मॉड क्यों नहीं है? अभी
बिकॉज जितनी लड़कियों को मॉन मिला उनसे मेरी बात हो रखी है कि आर दे रियल, बस। अब मैं ऐसे थोड़ा ना कि भाई हर किसी जाके पूछ के आ जाओ, बात हो गई हो गया। और बट अगेन आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि जिन लड़कियों को मॉन मिला वो आज तक मेरे चैट पे दिखी नहीं। अभी भी आती है कभी कभी। T1 की होगी अबे, वो तो कभी कभी आती है, बट सभी ऐसे जितने भी मॉड है, अपने दास को भी देख ले, एक टाइम पे ये भी गायब हो गया था। सिर्फ आई वुड से आदर्श तू ही था जो पूरा टाइम था, बाकी टाइम मोहित भी चला गया था जब वो कहते हैं। मैं सो रहा था। अच्छा, so right, I have given you core streaming rights like ECL does. Yeah. Dude. गाइस जस्ट सो यू नो, मुझे मॉड मिल गया था 3 महीने में। यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे। मुझे पता है अनन्या को भी जल्दी मॉड मिल जाएगा, बस लड़कों को 5 साल बाद अच्छा ले तू तो ले, तेरे को 5 साल के बाद ही मॉड लियो अनुभव अब। साला इसको 1 साल में मॉड मिला था। चाक दिया इसने बेचारा। F in the chat for Anubhav. F in the chat. भाई गेम में एम होता है, दूसरे में एम नहीं चल रहा, उसको कैसे ठीक? भाई खेलते खेलते ही आएगा, ऐसे नहीं आ सकता, टेक टाइम। भाई मुझे दे दे मॉड 1 साल में। भाई मोस्टली मॉड मैं बेसिकली देता हूँ, जैसे अनुभव को भी मॉड इसलिए मिला था क्योंकि चैट पे दूसरों को रिप्लाई दे देता था या बात कर लेता था, तो लोग एक दूसरे वैसे कर जाते हैं। तो जो नए होते हैं, मोस्टली मेरी चैट में ना 18 से 24 है, तो इसलिए कोई इशू नहीं होती, तो बच्चों को हैंडल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मॉड्स रहते हैं। तो यहाँ मॉड से वैसे भी सच बताओ जरूरत नहीं है। तेरी जब शादी होगी तो बच्चे रखे कि नहीं? I mean, तू बता चुका है क्या? तू बता चुका है कि you wanted to keep like entire Valorant roster under you. भाई ऐसी बोल, भाई मैं ऐसा बहुत कुछ बोल जाता हूँ यार, तुम क्या मान जाओगे? बता दे भाई। ख्वाहिश होती है लोगों की। ना आई वांट किड्स ऑब्वियसली, बट रियल लाइफ के मेरे को क्या ये वाले किड्स नहीं चाहिए भाई, चैट वाले बच्चे नहीं चाहिए, चैट वाले बच्चे नहीं चाहिए। यहाँ से हाँ 500 एंड ये देख क्या लिख रहा है यहाँ पे। भाई इधर आ जाए, अच्छे से इसे सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा, इसलिए इसको यहाँ पे वो मौका नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ चैट कर रहा है। भाई बताओ भाई। 520 मेरा पता है कितना है, मैंने नोटिस किया, मेरा 60% सब्सक्राइब है, 40% जब भी गेम में जैसे खेल रहा हूँ ना मैं, तो बता रहा हूँ, इसलिए आधे से लोग चैट नहीं करते, क्योंकि मेरा 40% वो है, नहीं 40 नहीं, आई थिंक 43 या 44% नॉन सब्सक्राइबर्स है, बाकी सब्सक्राइब्ड है, ऐसे है सिनेरियो। ये क्या सोलो लालालन। ओके स्टार्टिंग आई गेस। अच्छा ओके, जो चैट्स हम लोगों को हाइड करना शो करना पड़ता है वो तेरे को नहीं दिखता, मतलब सोलो को नहीं दिखता वो चैट, वो नहीं दिखता है। वो नहीं, जैसे मान ले अगर कोई चैट हाइड, जैसे ये हाइड है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ अगर खोल के ऐसे देख। 5 मिनट नहीं, अब 5 मिनट भाई। नहीं ये वाला नहीं, दूसरा जो आता है ना, सो एंड हाइड, 2 ऑप्शन। I'm so done. I am so done with that. सोलो एक स्ट्रीमर मिला है, देखेगा? मिला है मतलब क्या है, क्या उसमें? रुक पहले बताना है ऐसे क्या है। नहीं टाइम पास करने के लिए अच्छा है। नहीं भाई नहीं चाहिए। Eternal तेरा whatever. I want forever. Tell them to put 1 hour. नहीं He ये will directly देखने come से back. तो अच्छा होगा True. अनन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रोडक्शन जाओ यार, राइट के प्रोडक्शन जाओ प्लीज, वर्क देयर। हेल्प करो वहाँ पे। भाई हम क्या मंदिर का घंटा
ये ले नहीं किया रिप्लाई, देख तो लिया मैसेज। थैंक यू गेमर्स। चलो डिस्कॉर्ड देख ले। नहीं देख रहा, तू ऐसे बता पहले। अब ये जो पक्का आ जाएगा। इधर वेट कर रहा हूँ ना, उससे अच्छा दूसरा कुछ देख लो। नहीं देखना मुझे चैट पढ़नी है। देख लो गाइस, ये मॉड है दास भाई, जो चाहते ही नहीं कि मैं चैट पढ़ूँ आप लोगों की और कुछ और देखूँ और आप लोगों को इग्नोर कर दूँ। वो लड़की का नंबर दे रहा, चैट देख लो। हाँ भाई तुम खेलो वैलो वॉच पार्टी हो गया। नहीं भाई ये तो देखना है भाई, चाहे ऊपर वाला मिस करता है ये वाला तो देखना है भाई। ये कैसे मिस करते 40 हैं? मिनट हो चुका है, ये तो मिस ही नहीं कर 40 सकते। मिनट हो चुका है। आई एम फैन ऑफ टेक्नो गेमर्स। अरे वाह, मिला था मैं। अच्छा एक बात बताओ, टेक्नो तो पैराट्रूपर्स टेक्नो में गेमर्स कौन? इज डिफरेंट। टेक्नो नहीं गेमर्स नहीं इज नहीं, जीटीए वाला। टेक्नो गेमर्स नहीं, टेक्नो जो खेलता मैं था ना। पहले तुझे रोज देखता था, फिर पता चला मैंने सब्सक्राइब बट रिकमेंड ट्रू रोज रीपर्स में करता था था ना। जैसे सब्सक्राइब। हाँ टेक्नो टीआर में तो हाँ आई गेस। हाँ, उसके बाद उसको उसका अनाउंसमेंट तो नहीं आया। शाम भाई आप भूल गए ऊपर इतने मैसेज पड़े। एरन ने अपना पीसी ब्रोक कर दिया। Angle snapping is bad. VCT explain, I am watching for the first time. So basically तुम मेरे को देखते हो पब में, बस फ़र्क ये है अब यहाँ पे 10 लोग मेरे से भी ऊपर वाले लेवल पे साथ में खेल रहे हैं और जो जीता उसको बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए जीतने के लिए। That's one way to say it. मेंबर गेम हो जाता। हाँ बस जैसे ही तेरा मेंबर डाउन खत्म हो जाएगा मैं मेंबर गेम करूँगा। वैसे पता है जिन लोगों के पास मेंबर बहुत टाइम से है ना, तो कल को उनके पास मेंबर ना भी रहे ना तो भी मुझे याद रहता है नाम, अगर तुमने नाम सेम रखा या डीपी सेम रखी, मोस्टली नाम। सैम भाई मत बोल, मैं 17 साल का हूँ। ओके सैम सर, व्हाट वुड यू कॉल अ वुमन हु ऑलवेज न्यू वेयर हर हस्बैंड इज? हाँ, who always knew where her husband is? I mean, आज के दिन में सबके आर्यर शेयर करते हैं। रुक जा इसको बोलूँगा। बदलूंगा ट्रू लवर। विडो? Who always knew where her husband is? अच्छा लॉल, मतलब समझ He's गया। dead. ओ भाई खतरनाक बंदा है भाई ये। बहुत खतरनाक है। ट्रू लवर, मैंने बस उसको अच्छे वे में बोला। आज के समय में Bye bye. people share So, the location. शीशी ठीक है शीशी। See ही। देखो VLR पे फ्लेम कर रहे थे लोग बंदे। फ्लेम मतलब समझा नहीं। करने दे। VLR का भी मत जाना। Don't worry about it. क्या मेरे को तो एक्सप्लेन कर। VLR is a place where Valorant people, 24-year-old Valorant people who live in their mom's basement, are film pro players. क्यों कह रहे? VLR का फोरम एक जगह है जहाँ 24 साल के बच्चे जो अपनी माता श्री के बेसमेंट में रहते हैं, वो प्रो प्लेयर्स को बारे में कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन बॉक्स बेसिकली या 1 minute अगेन जस्ट फॉर रीसेट। प्लीज मुझे लाइफ टाइम बैन दे भाई। चाइल्ड अब्यूज लिटरली, अरे मजाक कर रहा था। फेस रिवील प्लीज। सच में दे दिया। तेरे को तो होना चाहिए VCT में भाई। अगर मेरे को सही में होना है तो मैं हो जाता, बट मेरे को खुद नहीं पता। I'm trusting God plans. Maybe God have better plan for me, or maybe God doesn't want me there. He is like, wait kid, not now. Or maybe if you go, you might be in big trouble. I'm saving you. कुछ भी हो सकता है. So I leave on God. And till then I किसी play को अगर good. UPI डालना है, I'm giving the link. ये Valorant का provided link है. Okay. You can use this link to add. बंदे नहीं दिख रहे मुझे।
मैं चालू भाई वहाँ ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लोग जाए ना इसलिए ऐसा बना दिया। Hello, welcome back. I'm sure that it's got to be a good feeling to not see a ticking timer on your screen anymore. You get our hopefully pleasant faces, I suppose, to fill the rest of the time, because yes, we are still waiting with bated breath for everything to be taken care of. So we've been told that there's at least progression on the issues. Guys, down you can on use stage, this link but, to buy. at the moment, the players With are making UPI. the premises. So I think that we're still Can they exchange working through a player? couple different things Fine. to be able to actually get back in and properly start this second map of the series, which is unfortunate. हाँ मे भी वो But, रॉसी का वेट again, कर रहे much like we were kind of talking about earlier, as much as this sucks for you guys, as much as this sucks for us, it is far worse for the players. So we're hoping that things can get underway so they can get back in, because obviously you don't want that momentum break in the action. You want to be able to still have the juices flow and get back on that stage, have that mouse in hand, and start मेरा stream देख Imagine if Rossi is playing in this one. तेरा message Just imagine. So Link है। hopefully it'll be resolved हाँ soon. नहीं I think दिखा रहा they're, having a tough नहीं time पता with क्यों some of the बहुत 2 equipment, दिन से हो so रहा है ये hopefully it'll chat get मतलब fixed pretty quickly alright. here. We're still waiting for ये all link that to क्यों? go, but, So I Riot mean, provides it this link. should be नहीं कोई भी लिंक pretty नहीं soon, दिखा I रहा think, और ये जो seems like they're ये देखना they're डॉन getting there is what we've टूटा been सा है told. ना So I saw ये a few people can confident see बताए faces क्या when I walked down there during one of the breaks, That's sad. but That's sad. we'll see if that's actually the case. These are the fun parts about live खरीदने वाला broadcasting. है? That's for damn sure. But तो क्या ही मांग रहा yeah, है? we'll, Anyway. we'll see what happens. Obviously, Keep we it- want to get Just- as good just games as much as you imagine, guys do, but ये for जो those who have been emotes sticking है ना वो around भी for नहीं all दिखता this, thank you. We hope that you've at least been enjoying the कौन सा music, browser है? because Firefox we've got some good selections try for some the Chromium games based floating around, browser. so that's nice. Should So work better. hopefully you guys have been enjoying that, and waiting. We're getting some more It's like a production. club right Keyboard there. giveaway होगा Yeah, guys, where we don't are. Don't tell me Right by they are those putting speakers, time so out I mean, again. it's Yeah, I like- feel like I'm in some private no. booth right now up at the top of the club. You see some bottle service or That's something right, like yeah, that. yeah, So maybe Connect that'll me happen. with Who Rai, knows? Depending on how late so I this can goes, talk to them might be and time to crack entertain some people. brews open. We'll find Just out by though. saying one But word. we are going to go back to yet another Production. delay. I'm sorry that I have Production. to let go Production. and release you once again onto the timer screen, but that's just the एक way that बंदा है it's going फ्रांस to का happen, at least for a CS:GO little का bit समय longer. को So hold उस fast. बंदे का Be नाम है strong. Start the game. Hopefully on the other side of this break with everything ready to go so we can jump into the second map. गाइस क्या नाम है उसका होनून यानी है ना Let me just get it out. इससे क्यों भाई 10 मिनट उसका ये नाम है होनून यानी है प्रो प्लेयर है people basically call him Jeff. Why no 10 minutes? Guys, try saying Hunyun Yani. Okay, मैं फिर submit कर रहा हूँ. उनियानी है Hunyun Yani. Guys, another time break. और वो भी 10 मिनट का। तो ये आए क्यों थे हैं? मजे करने आए थे ये लोग। मैं कॉम पे खेला था। जा भाई एक और अनरेटेड खेल के आ जाओ। या जाके कोऑर्डिनेटेड खेल के। Pacific is a joke now. मैं सोने जाता हूँ फिर से। भाई ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे वो लोग कुछ कर रहे हो। Shadow. No, not right now. Right now. बाद में. बड़ी बात में. भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ मेजर, या तो ऐसा हो रहा होगा वो सारे अंदर जा रहे होंगे कि मनन तू बोल तू पढ़ वो नाम क्या मैंने जो नाम लिखा है वो पढ़ चैनल पे बैन क्यों दिया ब्रो, मैं तो कुछ बोला ही नहीं है। इसको कहाँ बैन दिया? इसको मैंने दिया था, कुछ बोल रहा था, ये कुछ बोल रहा था अजीब सा, उसको वार्निंग में था। तू पढ़ ना, ये क्या लिखा है मैंने, पढ़। हाँ पढ़, मैंने जो लिखा है वो पढ़। नहीं ब्रो, मैं रेसिस्ट नहीं बन सकता। अबे नाम है प्लेयर का, प्लेयर का नाम है, प्रो प्लेयर का नाम है। होंगजू, पता नहीं भाई क्या नाम है। सो बेसिकली आई थिंक व्हाट हैपेंड, ये लोग आई थिंक 10 जने थे, 10 के 10 इतना टाइमर लेके 1-2 घंटे गेम खेला और पानी वानी पिया जो भी था, और फिर ये वॉशरूम जा रहे होंगे और वहाँ पे लड़ाई होगी कि मैं पहले जाऊँगा, तू कैसे जा रहा है। फिर
उस दूसरे ने बोला होगा भाई ये कोरिया है, ये मेरा इलाका है, यहाँ से दूर हो, ठीक है, और दूसरे ने बोला होगा तो भाई मैं भी जापान का हूँ, तमीज में, और फिर अच्छा दोनों में इसको भिड़ गए इसको होंगे आयुष ने किया था। और फाइट होगी तो अब वो फाइट छुपाने के लिए एवरीवन इज वर्किंग, तो किसी को निशान लग गए होंगे तो दे आर मेकअपिंग अप, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। द गुड पार्ट इज वहां कोई इंडियन नहीं है, नहीं तो फिर सबकी लग जाती है ना। व्हाट डू यू गाइस थिंक? स्टिल वेटिंग आउटसाइड द थिएटर है। कायरा मूवी देख रही हो? बिल्कुल चूतिया थ्योरी है, ठीक है, कोई देखना लिस्ट है रियलिस्टिक, आई एम टोटली, है ना, मुझे भी लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है यार। अरे इंट्रूडर को उसने बैन किया था, आयुष ने सीधा बैन कर दिया था, वो बिहार का जोक मार रहा था। मैं उसको रोस्ट करने वाला था बट क्या करें। अरे भाई मैं नहीं लिखना। 5 अकाउंट रीड इन हो गए। No, don't talk to me. I don't talk to people who don't meet me. इस स्टोरी में रॉसी की एंट्री मिसिंग है, तो वही ना, रॉसी आ रहा होगा एंड देन एकदम आएगा सामने, देखेगा टीम को मार रहे, चश्मा हटाया और सीधा धपाधक आंखें बंद और धपाधक। वहां पे कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा, उससे वीडियो निकालनी पड़ेगी। मैं अगर पता है इतना टाइम होता ना, मैं लिजिट ट्विटर पे लिखता या इंस्टाग्राम लाइव आ जाता। कब बोला मिलने तू, कब बोला मिलने को? टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही, आ गए तू, नाराज हूँ। भाई यहाँ पे चैट कर रहा बेचारा यार, इसको अनबैन कैसे दूं मैं? भाई तू एक काम कर, इंट्रूडर तू 20 रुपीज की सुपर चैट दे, मैं तेरे को अनबैन करता हूं। भाई तू जा अपने उसमें मैनेजर में जा, लाइक सेटिंग्स में, कंटेंट मैनेजर से, और वहां पे होगा बाय द वे गाइस, डू यू नो कायरा वीसीएल गई है देखने, ये जो यहाँ पे मेरे पास में ही हो रहा है। हाँ दिल्ली में ही हो रहा है। हाँ दैट्स कूल। तुझे पता है एकदम स्टेज के बीच में दे हैव अ i20। हाँ तो अरे दैट्स कूल। एक तो भाई ये देख दो इसका, भाई क्या बोले भाई। अरे दैट्स कूल, वी आर एप्रिशिएटिंग यू गर्ल, यू आर अ गर्ल। भाई सक्सेस होता भाई। इसमें फ्लेक्स क्या है? ऑलराइटी, उम्मीद छोड़ दिया मैंने उम्मीद छोड़ दिया, चलो खत्म कहानी। गई क्या? Guys, no sexist memes here. Please. अब तो बस 4 मिनट ही रह गए इंक्रीज होने से पहले। वेट करो यार, वेट करो, इंतजार हो गई। तुम्हें वैसे पता है पठान के अंदर ये वर्ड, जब उसने वुमेन का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया, जब वो कहते हैं पठान में दीपिका उसको हेल्प कर रही थी एंड जब उसने मारा था तो उसने उस लड़की को देख के ऐसे बोला था, ये ना वो मैंने ऐसे बोल के पूरा चेंज कर दिया मीनिंग। बट आई थिंक इट डिडंट वर्कड वेल, लाइक लोगों को समझ नहीं आया, जस्ट लाइक फन के लिए बोल दिया उसने। व्हाई दिस मैच नॉट स्टार्टिंग डूड, मैंने बताया ना अभी माती, आई थिंक दे फोर्ड। यस आइसक्रीम दे दे। हाँ दे दो, खा ले यार, खा ले। Bro just gave up. Bro did not fight for his ice cream. कुछ नहीं।
ये देखो गाइस, मेरी बहन दूसरी वो बन रही है, कह रही है लड़कियों से सीख आएगा ही। अब मैं क्या करूं, मैं पला ही बड़ा लड़कियों के बीच में हूं। मैं तो नहीं करती ऐसे ही। कायरा मेरी बहन तेरी साइड ले रही है। क्या हुआ? गई 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 वो भी गई। हाय कायरा। आई डोंट, क्या हुआ क्या? मेरे को समझा नहीं। मैं थोड़ा चैट मिस कर दिया था। यार तुम पहले तो ऐसे ऐसे बात मत किया आई करो, वांट टू बहुत आस्क। क्या? बहुत क्यूट लगती हो कैसे बात था करो? ऐसे। हाँ बस सेम। हाँ? हाँ क्या? क्या मस्ती ऐसे कर हंसो रहा मत करो यार। अरे बहुत हाँ, तो मैं पूछ रही थी। I was scared when Kyra laughed. अरे ठीक है भाई। I have a Reina laugh if you guys don't know. हाँ यहीं पे बैठा है देबू। Yeah, I have अच्छा a Reina अच्छा है, मेरे पास दिल नहीं है, नहीं तो आ जाता। Start. तो मैं स्टार्ट क्या हो बोल रहा है रही guys। थी? हाँ क्या मतलब उसमें फ्लेक्स क्या है? उधर जाके देख के आए। कुछ फ्लेक्स नहीं है यार, कुछ नहीं है। That is just cool. मतलब मैं ये हैरान था, मैंने ये लोगों को बता रहा था कि लाइक गाइस देखो, इवन लाइक ब्यूटीफुल लेडीज आल्सो गो देयर इन वीसीएल एंड वॉच इट, सो दैट्स वेयर। Obviously, I have to. I have my friends playing there. I have to support them. Who else is going to support? कौन है तुम्हारे फ्रेंड? God, Jace है। मस्त। मतलब जो हार गए वही तुम्हारे फ्रेंड है? कौन हारा? रेटिंग हारी है क्या? पता कभी नहीं। मैच के ये 4 आंखें किसके लेते? 4 आंखें गाइस देख लो, जितने भी लोग हैं चश्मे जो पहनते हैं सब देख लो। फिर लोग बोलेंगे, फिर कुछ हो जाएगा। छोड़, मैच चालू हुआ क्या? हाँ तुम पहले नहीं आ सकती थी? It took so long. One of the crucial things that we Okay. didn't really discuss too much. पहले आ जाती तो मैच जल्दी After स्टार्ट हो the जाता। side of GE, they're going into this map. They don't have that breach, which is typically ever so present here on Haven. Yeah, मैंने it's कॉम पे नहीं a देखा। very different comp between these two teams because Okay, the देख लिया। initiators are vastly different now. A spot here, one ping. I just wish G gonna win. Okay, nice production, man. Where's we can see anything, man. Did you put वो? Are we playing? तुम लोगों ने प्रोडिक्शन में वो किया क्या? क्या? जी को वोट किया क्या? ना। Yes, मैंने किया। मैंने 110 वो लगाए हैं। इतना यूज करती नहीं मैं ट्विच। Hey, production, can I have some right left things? I mean, Valorant Pacific, I have 0 points. They're not even giving me the points. Oh, मैं login ही नहीं, never mind. Come on, मैं login नहीं. All right. 20 HP. It's still up here in heaven. Nice Yes, we do realize Sunday that the UI लोग not there देख at क्या है the ban को moment. ना? We will have it up in just What? a little bit. Aye, nice. No hope here. And Saya player भाई falls. हाँ, कायरा Nice T1 के iron साइड है। But two नहीं, players मैं left standing G on की the side side of क्या बात? GE. We'll go ahead and claim नहीं? it. G top 12. Yeah, to me it feels like there was all just the enough way. misinformation at the beginning of this Really? round by GE, expecting that recon हाँ, dart. obvious. ये लोग हार क्यों? Revealing one player's position, kind of इसको player left camp it भी wide पड़ी है। open. And देखो, then Batsy here, with तुम the कहना क्या position चाहते हो behind the कि box, जिसको मैं able to find सपोर्ट some big करती हूँ kills, वो almost got हारते a हैं? third with that dink. Zeta trying to do everything he can, did a lot of damage, नहीं, got a few kills, कह but नहीं रहा है। not मैंने good उल्टा enough. कहा था, बट ठीक है। The energy बरोबर। is there, and उल्टा it कहा था, बट remains ठीक for है। GE, I even think during that long tech pause, they're हाँ able to वही keep their spirits high, keep the समझ energy नहीं पा going, रही so है। see if they can continue to convert that. But another क्लियर interesting क्लियर point that I didn't शब्दों get में to talk बोले, to here, अगर कोई talk समझ about नहीं here. वैसे वो पा रहा व्लॉग तो अच्छा लगा लोगों को। We haven't seen कायरा। either of these teams play this map yet. So there's a Really, lot of big Chad? question marks Yep. on how they're going to approach it. तो Like, फिर why aren't what you kind making more vlogs? हाँ तुम मिली कहाँ? Oh no! Oh no! Oh no! Dude! Stop! I have my Joker moment. Oh no! Take pause. Just tell us what the fuck is going on so that we can be relaxed. By default, Valorant तूने देखा texture लगा दे टेक्सचर के भाई। मुंह पे थोड़ा सा सॉस लगा रखा है? dude, yeah, that would actually be pretty fun. My Korean's really फाइट हुई है? I was saying seriously. उसके हाथ में नाइफ रह गया। I'm good at that. ओमन भी कह रहा मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ। The real question is do I have the proper Korean pronunciation? हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? Good point. हाँ तो जरूरी थोड़े ना कि मेरे होने से ही तेरा व्लॉग होगा। People want to see more of you. हाँ तो
या चैट बताओ वो व्लॉग किसने देखा एक बार चैट में चैट बताने दे रहा है कि गाइस मैं ऐसे दिखा देता हूँ, रुको वहाँ रख दे। अरे नहीं मैं चैट में जवाब तो देंगे उनको। रुक जा रहे हो गाइस ये बताओ, ये जो व्लॉग है ये वाला, ठीक है, इसमें से तुम्हें कितने लोगों को पसंद आया था कि हम दोनों जब कर रहे थे, ठीक है? सो तभी मेरे को जहाँ तक लगता है 16K में से 10K तो कायरा की वजह से ही हुआ है ना। हाँ, तभी तुम्हें चाहिए ना कि नेक्स्ट टाइम भी कायरा के साथ एक और व्लॉग बने। हाँ, दैट्स व्हाट दे मेंट। मेरा कमेंट पर इस व्लॉग का ऐसे बता दे, या फिर ढूंढना पड़ेगा। नहीं लड़की नहीं, ब्यूटीफुल लड़की के साथ है वो भी जाना। I think it was more because I roasted मेरे को तो you. आधी लड़कियों के तो यूं ही मैसेज आ गए कि तूने बताया नहीं। तो मैं कहा क्या कह रहे, ये है ऐसे सीन है। मैं कहा नहीं, शी इज फ्रेंड, ऐसे बातें हुई थी। मैं तो ऐसी सीन है, कौन सा सीन है? क्या मिलके है? बताऊंगा, मिलके बताऊंगा। हंस रही है। हाँ, तू VCL गई, तू व्लॉग कहाँ है तेरा? Don't even ask. भाई क्या हो रहा है प्रोडक्शन को? I started vlogging and मेरा पूरे फोन का स्टोरेज भर गया। भाई सारे जितने भी तूने लड़कों की फोटो वीडियो डाली है वो हटा देना। कितना डाला मैंने, देख जरा, वो फोन में सेव भी नहीं है, वो उसी में सीधा डाल दिया मैंने। मेरे फोन में बहुत टाइम से स्टोरेज का प्रॉब्लम होने से We want to see more solo but want to see you more too। देखा? कौन किधर लिखा है? किधर लिखा है? मैसेज डिलीट मार दिया किसी ने इसका। ये बेंजीन लिखा था दास ने। भाई दास जल रहा है हरामी। नहीं मैं मॉड हूं, मैं मैसेज देख। नहीं इसने नहीं लिखा। अरे डिलीट मार दिया, डिलीट क्यों मार दिया? अननेचुरल है, मार्जिन में से किसने डाला? अननेचुरल नहीं था भाई, बोल देता दूसरे अकाउंट से लिख देता हूं। नहीं भाई, आई वांट रियल, अननेचुरल लिख, रियलिस्टिक। मुझे बता तूने क्या लिखा? No, you guys love my vlogs that much. No, they don't love your vlogs. They love when we both do नहीं, it. उससे मेरे व्लॉग के लिए भी शायद से एक बार स्ट्रीम कर ली, तभी मैंने पूछा। बट हाँ, अगर ऐसा सीन है तो फिर एक बार और मिल के ट्राई कर सकते हैं। मतलब अच्छा मिल, इसलिए व्लॉग अगर हो रहा है तो भी मिलोगे, ठीक है? तेरे को मैंने ना सब बता रखा है सोलो। क्या बता? तो अगर तू मेरे को ऐसा, हाँ चुप रह अभी तू। नेक्स्ट माफ करे। कुछ नहीं, ये लड़का भूल जाता है चीजें। हाँ तो एक बार कोई मिलेगा उससे याद थोड़ा रहेगा हमेशा मेरे को। मिला क्या? मैंने जैसे व्हाट्सएप पे बात किया उसके बारे में। भाई मेरे को टेक्सटिंग चैटिंग तो मैं 90s का हूँ, मेरे को तो समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। तो लिटरली मेरे एज का है। हाँ तो क्या हो गया, हमारी अपब्रिंगिंग अलग हुई है। जिस टाइम पे तुम लोग ये कहते स्कूल में नोटबुक्स ये सब करते थे, मैं फुटबॉल से अपना नाम बना रहा था। ये लड़का पागल है क्या? ये हम दोनों सेम एज के हैं। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, मेरा आधा सा स्कूल करियर तो फुटबॉल में ही चला गया। बात कैसे करना है क्या करना मेरे को पता नहीं। कॉलेज जब तक आया तब तक पता चला कि व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम कुछ चीज होती है। तब तक सीखते सीखते कहते हैं किसी और चीज में कुछ नहीं है। he is just giving bullshit reasons और कुछ नहीं। सामे यू नो वेरी वेल ना, तुम तो मेंबर हो। हाँ वही। गेम देख लो। हाँ ये ना यार, शी डिस्ट्रैक्ट कर देती है यार। ये अब मेरी गलती नहीं है यार, बट आई डोंट माइंड। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये है ना तो देख जीत रही है, तो बेसिकली शी शुड स्टे। पहले हार रही थी। पढ़ने का क्या है कॉलेज में हाउस पार्टी शुरू। क्योंकि ये अटैकिंग मैप है, वी हैव टू सी कि जब T1 अटैकिंग में जाती है तो उनका मोमेंटम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो। अभी तो डिफेंस पे है। अरे नई टेक्सचर का एम चल रहा है, हेवन पे कर लेगी जी। डजंट मैटर। नहीं रॉसी अभी पहुंचा नहीं।
कभी भी मोमेंटम जा सकता है, मोमेंटम आ सकता है. on the sky versus a breach normally, right? The breach flashes are pretty easy to turn. Kind of know the angles they're more likely to come from, whereas it's a little bit more difficult with the guiding light, you know, because you can cut it whenever you want, you can send it so much further. उसको देख क्या कर रहा है राइट में. It depends, but in some ways you can send it different, more interesting angles. So I think they're just shoot able it, to get shoot it. a deep flash. He know. The back of Plat set They know. texture up nicely and Hacking. He knows. just, put a vandal in his hands and you can see he can do some pretty explosive. अरे तोड़ा क्यों नहीं? Dog goes out. Zeta pushes up in front of his Oh. legs देख नहीं रहा है too. ना उधर, तो वो क्यों इसके लिए तोड़ेगा? नहीं जब वो No, इतना I was shot like, नहीं कर सकता, no, तो I वो was like कि वो पीक भी नहीं करेगा ना. उसने पीक करके 2 मार दिए. The first one I अगर वो Unexpectedly. तोड़ता just तो gonna वो get ऐसा traded, and then पोजीशन he में just था like जो एंगल होल्डिंग कर रहा था ना वो. slowly, वो you know, पता है, slowly मैं to the दूसरे side की while बात still कर रहा हूँ. spraying and got another. जो राइट पे बैठा था. जो सोवा था ना, वो या तो तोड़ेगा बाद में, नहीं तो वो पीक कर दिया. लाइक उसको अगर लग जाता तो वो वहीं पे मरता. पर उसने 2 किल ले लिए उस चक्कर में और फिर सेव भी हो गया. Like that was unexpected play totally. मेरे को लगा कि उसका अल्टीमेटली तोड़ा किसी ने डॉगो और फिर पीक लिया. The timing nearly Oi. there. Zeta managing to find a third. Dude, he got 4. नहीं नहीं. Nope, this is bad. This is bad. For a big play, but Time being. yes, while Aaron will be able to get this kill, the Nice, two Aaron. rifles That's that were good, bought in man. are going to be the ones surviving. वो स्प्रे में अगर लग जाता ना, लो था. अगर स्प्रे में होता तो. टाइम Unbelievable stuff. नहीं, from उनके Zeta पास in this इकोनॉमी round. अच्छा है. उन्होंने 3 guns down Just कर दिए absolutely and this was spectacular shooting. post I mean, bonus. this is तो फर्क नहीं पड़ने टाइम वाला. नहीं Yeah, बचा ऊपर से. वैसे look at that. डुएबल He राउंड just था starts moving अगर away टाइम and is होता able to तो. keep that aim वो stabilized सोवा enough. का He एक्सपेल gets होता और spotted and उसका Monet goes, Magnet goes for Oh, the he second one. spammed. Yep, the ping. Yeah, Magnet there, you know, went for the first one, figured he could transfer for the second, but Zeta's just too fast there. Zeta did express his displeasure with me during the break that I did not predict his team. Maybe he's a little bit angry. He was cool with me though. Yeah, he was fine with you. I got a fist bump. I know, I'm a little sad. I only got the look got of the stink eye. disapproval. Yeah, I got. Sorry. Short fault line at the ready here. मेरे हाथ में कोकोला की कैन भाई थी. मंचकिन बहुत अच्छा खेल रहा है आज कसम से. Counter swing, बहुत smoke अच्छा goes मारा out onto इसने. heaven. Fault line does connect. हाँ, पर्ल पे अच्छा खेला वो. Stuck behind, but I mean, Munchkin aggro pushing. Nice, Find Aaron. something is. I mean, now Oh, he Carver whipped. 18 HP gets finished one. off as he tries to re-swing out. Nice one, Finds some texture. kind of kill. साया ने मार दिया. Oh, he Oh. through smoke. Poor Monier. Aaron out can get the plant down, and there's nothing to disrupt this unless they want to commit to that Hunter's Fury, which they do not. They can use a Hunter's Fury now for that. Yeah, It you looks like they're could. gonna Securing the round. Yeah, I don't think it's worth it. They're not going to use a Hunter's Fury. Saya's got to get out of here at some point. I'm just gonna detain Obviously. Yeah, looks like it. उसको He'll अल्ट just back अल्ट पे away to a खेलना था safe तभी spot. उसने प्लांट लिया है. Time bought. ये बेट Because of डिटेन these है क्या? flanks that Aaron's been going Saving. on. Yep. You can see Zeta having to watch. T1 ने towards जब that हायर किया था C1 साया प्लेयर side. को, T1 ने नाम And चेंज किया था just इसका gonna have to स्पाइडर exit and he one was of the playing rifles 'cause controller. The economic situation for T1 is still not great. So गार्ड उसको winning वापस that लेके आया था ऑपर previous round, for the Widowmaker not he going to was. be able to string a second one together. So GE will find their कौन? Yeah, it's the Saya player. the thing that really The impressed me guard. most on their हाँ. list The was guard forcing में the guard में Zeta Jet खेल kind रहा of था. roaming around the map, So doing basically a good because job of Overwatch पे being entire absolute time ही खेला nuisance, Widowmaker. you know, finding really valuable And people picks. still say he's like secretively dangerous. See if T1 can find Yep. ways to किसकी बात adjust. कर रहे थे? साया This player time, T1 a का. little bit of Saya player was face of overconfidence on those Overwatch peaks. I mean, like Munchkin sniping. there tried to तो peek it too साया long, and, प्लेयर. you know, I think they knew they hit the stuns, but And very less people know about it. There are a lot of reinforcements. I mean, behind the Seekers in contact off a couple players there, T1 gets really aggressive out of there. And then they try to repeak again with Carpe, and he just gets shut down. So maybe just a little bit more patience from But T1. it's very difficult to पता है ऐसा मुझे लगता है to adjust to Valorant if you're an Overwatch This is a player. bit wanting, I feel. I mean, Nope. granted, yes, But the lockdown पता was नहीं used. मेरे You को don't ऐसा worry about trying to फील counteract आता है that, कि but कि everybody just shifts out of the थोड़ा lobby, सा now find themselves difficult on रहता है B. The क्योंकि stun goes across, movement Texture is pushes the very smoke. Munchkin's different dead, ना. and that's Nice taken away. Sandre. Aaron again on this lurk. Do they read it is the question. The turret's set कितना up in deep है window, he's got भाई. the nano कितना swarm. आगे तक आ Robert's gonna चुके हैं go वो लोग. forward, and it will spot him out. This looks familiar.
ये फंसा हुआ है एरन अभी। फंसा पर टेंशन है ना उसके पास, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ देख मेरे को यही था, उस पे प्रेशर बनाएंगे उसको क्लियर करने के लिए। नो तुम थोड़ा पीछे देख रही हो। आगे करो। टाइम ही नहीं उनके पास, इतना क्लियर करते या बट स्टिल ऑलमोस्ट विफ भी कर दिया। could have gone for 2. हर बार not really too huge of a deal. I just a really good एड्स readjust here देखने में पड़ेंगे क्या? from the side of GE. I mean, and again, now we're starting to see some of these coordinated plays come through where Batsy is really setting players up, particularly Texture. Him and, you would assume that these two have pretty good coordination, given that they're the two Koreans on this squad. And जी हथौड़ा निकालता थौर किया था। these plays, a flash into the back बकवास लगता है, सबसे बकवास क्या लगता है? and now here you're seeing the Trailblazer used to set him up as तुझे well. बकवास लगती है तो क्यों बोल रही है? किसी और को अच्छा लगता है। Only able to find one. Meanwhile, Texture picks up both. Okay. That ain't long. Carpe position अभी तुम backside. 123 पे हो ना? Dash forward. Flash Super goes out. timing. Carpe gets हाँ one tap. same है। But Texture will find a Texture third with kill. his aim. Nice Texture, let's go. 30 HP doesn't matter. हील नहीं हो रहे। Line of sight is blocking the healing, so he doesn't receive any. But now Ban finds himself in a 1v3. Two dangerously low HP players. As the alarm bot it triggered. He fired. अरे टूटा टूट ही नहीं रहा। अंबुजा से क्या बनाया भाई? Second one, however, not gonna suffer the same fate, and now the healing has come out, so Texture back up to damn near full HP. Yeah, he's gonna make a go of this, but this is Nice nasty. Texture, It is gonna be let's the ace go. for Ace Texture. लेगा लौंडा। What a round for him. Second ace of the Okay, day. that is such a morale First boost. one from Foxy9 in the final round of our first That is series. such a Now morale here in boost. round It will number help. 7. Texture looking to remind us. जी gonna take this match. अबे obviously इतना टाइम आउट होने के बाद ये सब के बाद थोड़ा रिलैक्स हो गए होंगे। Upstage him as the Korean Jet. He had to come in here and strut his stuff for sure. But जी को लेना था यार। हेवन उनका सही मैच है। I don't know why T1 took it. Need to pump the brakes and figure out what in the hell is going on. I mean हम लोग जी देख रहे हैं पुराना वाला। Themselves on their map pick under similar duress. मैं कोई भी स्टार्ट्स कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इवन का स्टार्ट्स निकाल सकता हूँ मैं। मतलब अभी तक गेम खत्म हो चुका होता, हम थर्ड मैप पे होते हैं। राइट, सो हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, लाइक पुराना वाला जी का स्टार्ट्स निकालने का फायदा नहीं है, इवन का स्टार्ट्स निकाल सकता हूँ, बट इट विल बी वन साइडेड टू कंपेयर। अनदर टाइम who is going to find this guy T1 in the India. offseason. Partner teams were announced. We were kind of wondering how this was all going to shake out. This guy was so good. Was he going to, try to stick with D+, try to make that run through the Ascension Gauntlet? No idea, no. Some phenomenal players, of course. Lakia and others. Lau, Exy. I mean, an incredible team there for D+. But he decided to make the jump here to GE, take a bit of a risk, take a bit of a gamble. And when this guy is on, he's got it all. देख लियो कल मैं वैसे भी बाहर रहूंगा, कबाल जाना है मेरे को, लैंड मैच मेरे सेक्टर 15 जाना है, मैच है, really well balanced player. सब होंगे वहाँ। Always really appreciated the way he approaches the game. Yeah. भाई Call is made. कसम से सोलो Decent commitment here in the round. Rifles abound. 2 bulldogs. Half armor on everyone. हैं? Yes lady, you were saying something. तेरे वहाँ आने में वो जहाँ पे वेन्यू है 1.5 घंटा लगा क्या भाई, थक गई मैं 2 दिन। कहाँ? अच्छा जा तुम गई हो? हाँ। हाँ तो फिर मुझे बोलती साथ चलते, मैं पिक कर लेता। तेरे को पता है ना कि मैं किधर से आ रही हूँ? जहाँ से भी आती मैं आ जाता, पिक कर लेता। अल्ट आने वाला है, they have nothing to break it. Spike getting planted. साइड छोड़ने वाले हैं लोग। Just waiting for everyone to get into position. Now goes ahead. Lets that ult go across, but Ronski oh, no. able to find one. They push forward. They find the lockdown. They manage to break it. Carpe watching for the lurk, but he doesn't win the fight. Brother, Ronski fucking goat. As he now just waiting. He had to do Flashes that. at the ready. आज गेम नहीं खेलोगे? कैसे खेलेंगे यार? अपनी नेशनल की टीम गई है वहाँ पे खेलने। Try to back away. They get the reveal out. Lol. That player gets on top of Texture, finds that kill. Monia answers back. No way, no, he will win. Yeah. Nice Aaron pushes out, finds one. Now Bat needs to try to get this clutch, but he's just nice not looking. Let's go. रिस्क तो है भाई, रिस्क क्या रिस्क? कुछ भी नहीं बोला, आपने नॉर्मली बोला जो मैं एक्चुअली हूँ वैसे ही बोला। The coffers are full
for Global Esports as they Jason find beat themselves with a Saito. 7th round win. Natural Can you bliss. guys explain me what this रिज riz मतलब is? स्मूथ, इन्होंने सिखाया मेरे को रिज, मैं भी पूछ रहा था रिज मतलब स्मूथ। आप कितने स्मूथ हो विद जेंडर? ये उसके लिए रिज बोल रहा है जो जिसके अंदर तुमने कहा ना तू कहाँ रहती है, तो मैंने कहा मैं पिक कर लूंगा चाहे कहीं भी रहती होगी, उस बेस पे बोल रही। ये पागल है, पूरा दिल्ली पागल है पार करके आएगा मेरे ओ को। मैडम, मैं कर लूंगा, ऐसे थोड़ा ना कि हर दिन करना होता है मेरे को। ये पागल है, ये कुछ भी बोल रहा है भी इसको पता नहीं है। कर लो, टेस्ट कर लो। करो। जब मैं मेरे को ड्राइव पसंद है और मैं खाना खाने के लिए गुड़गांव जा सकता हूँ, नॉर्थ दिल्ली जा सकता हूँ, तो कहीं भी आ सकता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं रोहिणी का हूँ, पहले से रोहिणी में रहता था पहले। बस पीतमपुरा, रोहिणी, फिर द्वारका और फिर फरीदाबाद। मैं एक बार रोहिणी गया था ब्रदर, वापस आने के लिए मैं बस के लिए वेट करता रहा, उस समय मैं 20 बना था रोहिणी का। वैसे मेरी यादें अच्छी नहीं रोहिणी से रिलेटेड। Texture just sat right along the stack. I don't think he did. I don't see any reinforcements coming here for side player. Does he watch the side? Oh, he saw it. Yeah, he spotted him. Oh, शुक्र है। वही साइड वाला डैश। Can't even put any damage out to give the rest of his squad an easy. I think sector veteran experience. 8 या 9 ही था। You know, having the wherewithal to पहले know की बात है ये। that players hide in that corner and being fast enough and on ball. No. They got again. Good read there. Would love to grab the weapon. Obviously getting zoned away. Rushes out. Try. Oh. Dude, are you kidding me, Manchu? My eyes. Anyway. Nice trades. Nice trades. Gonna be found, but once again. Oh, nice flash. Nice flash. Oh, bye. भाई बाजी क्या बचा है रे? 8-1 now as Global. नहीं, रॉसी अभी है ही नहीं। Absolutely running. यार कभी-कभी लगता है रॉसी का मैनेजर हूँ। I mean, you take a look back. Please don't leave this here, lucky They were only able to win 3 rounds on the attack. It wasn't until they shifted over. सी मैंने भी तो सेम ही कहा था हिंदी में। From very far away. The defensive holds from the side. Making myself something great. Just too great on that map. Right now, they are looking lost in how to play this map. Yeah, I mean they're getting completely तेरा match है दस। just roped around this map. They're getting led by a leash right now by Global अभी? Esports. And on top of that, आज है 10 Textures बजे पता नहीं on कौन one. सा And match है। Batsy, by the way, playing really, Sorry really to well बोल right रहा now in भाई। this guy. Setting up Batsy, Texture well, like setting pizza. up himself Batsy. well, getting valuable information. We call it Az, sending out Baz, fake information, Az, things like Baz. that. All Sorry the क्या things था you would इसमें? expect this guy to do, he is doing. ये बॉयज टॉक है। Yeah. I mean, worth mentioning. I mean, this is, you know, Bazzi versus Munchkin, 2 former teammates. That's true squaring too. off against each The other. crazy raccoon battle, yeah. Saya able to find one, but okay, Okay, Bazzi. I told you he's just. Better trades. I mean, Better Bazzi trades. he just Oh, killed- that just shocked glanced that through. अरे It will still be an Oh no absolutely no. Oh no. No, I think they will get it. they कर लेंगे ये लोग। Suddenly, somehow, we find ourselves at a 2v2. Zeta के पास And while stinger है। that's good here from the side of T1. Oh no. I mean that's not an issue अगर वो मार सके तो। If we get one kill at a shot, then you can TP. But I don't think so he will. Could be huge for Zeta to potentially be able to win this out. He needs to at least get one. What? Gets them both. Oh my god! Oh no. मेरे सांसें अटक गई थी भाई He's in with a उधर। shout. इसको फ्रेंजी के 2 बुलेट चाहिए। Aaron making the call. He has All to the way play across the very, map, you moving know, over towards Like a Kyra. rat. Munchkin had the read. If No, he popped like this a nano rat. right now, he'd be able to get the kill. Unexpected खेलना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ही। He's got one set up for the plant, Oh. but it's just out of range. Yep. 10 seconds left. Didn't hear it. No. Bad part is he's low. He's got a big health I advantage. like this so far. Oh my One phantom bullet. Now he knows CT is clear, so either he's coming long or garage, and he's going garage and he's cleared all the angles, so garage it is, and GG. Nice timing. That was their best chance, and it does not work out. First timing का था। You know the thing is, उसको CT से garage जाना ही पड़ता क्योंकि प्लांट उसने उधर का दिया था, CT प्लांट नहीं था। What do you do from here? बाजी हिंदी वर्ड थोड़ी ना है। बाजी उर्दू है लेकिन। अरे प्रीम को नहीं सुना जब बोलता है बाजी याजी हाफिज।
वैसी नहीं बाजी उर्दू वर्ड है। स्क्रीम का या फिर दोस्त वो का है नाम भी बाजी है तो ऐसे ही बोलता है फर्जी बाजी God, they're loud. I love फारसी it. I सॉरी absolutely फर्जी love बोल it. रहे हो, फारसी Racers फारसी fired. फारसी या फिर वो वैसा वर्ड है। Ah, Saya. Running away. Suppression now comes out from that null command. वो बाजी है, बाजी नहीं है, this is बाजी। One down. Saya will be able to peek out. Oi! Oh no! One. In the back, Oh. will end up getting taken down, but I mean it's just using awful mess. Okay, nice texture. Narrowly spotting texture does get that headshot off the updraft. Okay, that's side of it. An instant 2 kills coming in. बाजीगर कोई बात नहीं 10-2 करेंगे, कोई बात नहीं। 6 rounds separated from their last. मनोबल बनाए रखे, डरने And की in a कोई बात round नहीं है। where T1 dials up some pretty heavy aggression early, बाजीगरो बाजीगर it's kind of the protocols. I'm eating chole chow. One that wins them the round. They're just decently ready for this. They're in, a pretty good position potentially to help deal with this. Carpe there, some good patience. किसी पे कौन है आके भाई कायरा है चोला एम्पायर वाज स्टिल इंडोनेशिया, ठीक है। लाइक कभी ये नहीं पूछो कि जब क्रैक होता है कि वीसी पे कौन है, लेकिन देखी नहीं बीजीसी पे कौन है। बड़े सुबह से पूछ रहे हैं साथ में कौन बोल रहा है। हाँ नहीं पूछ रहे थे, ठीक है भाई। मैं तो नहीं सुना कोई भी ये बोलो डीसी पे कौन है फिर आपके साथ कौन है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने लिखा इसलिए। Can you train me? No. You're already trained. I'm Yeah, not well, ready. the ones that are real, unlike the 9-3. It's like we believe in aliens, but we don't believe in Bigfoot. भाई पार्थ भाई ये यूट्यूब पे चैट में मैन विल बी मैन। Lock this monster. No. But aliens. डीसी पे लड़का कौन है? यथार्थ है, दास है, अभी कौन आया? मोहित है। और तुम्हें सबको पता मोहित क्यों आया? Last round across the finish line. कार का VCT अलग चल रहा है। Feels like everything is hinging on that. Even with this map being म्यूट हो गया भाई। Oh no. Really leaving C open. क्या हुआ? इमेजिन अगर वो देख लेता है एंगल। 100% expecting an A or a B hit. Oh, he saw it. बच गया। Narrowly misses the timing. भाई कॉर्नर की आवाज में मेरी ऐसे। Finds that kill. Oh, the lockdown will get destroyed. It's all a fake. Nice fake. 4 जने ए पे हैं। मरना नहीं था रे, एरन का मरना नहीं था। हाँ किसी को भी नहीं मरना था, वो तो सामने वाले जानबूझ के मार दिए। नहीं मरना नहीं था क्योंकि उसको वहाँ पे कंट्रोल ले लेता ना बहुत। हाँ तो वो आगे कंट्रोल लेने ही गया था, उसको फ्लैश किया, वो पीछे आया, तब तक वो आ गया पुश कर। 3v3. Oh, pushes into the back. He gets the shot on the Carpe. What more can he do? मैं होता तो कर देता। That hit there on the ban. One going to be taken down now. It's all on Bazzi. He's been working this entire time. He finds one. He's going for the spray through. The whole Bazzi will get the headshot. You did it, man. अबे हो गया। हो गया लास्ट। Totally luck. देखा मैंने बोला था ना 10-2 होएगा। That was good luck. Please continue. Well as Aaron, I think having a really vital Please half in continue. terms of causing disruption. There in that last round, he caused some disruption in a way that we मतलब अगर जी जीत गई तो कायरा नेक्स्ट में भी बैठेगी। kind of lurking, trying to mess with the post-plant setups that पहला स्कोर कैसा? पहला स्कोर का मैच क्या था? 13-8। पहला कितना हारे? 13-8। कौन जीता? T1 wanted to play that T1 round because T1 फिर आधा या 1 घंटे का टाइम आउट, टेक पॉज, फिर आए ये लोग खेलने। that Aaron has, but he read that round perfectly and called a beautiful one. Well, हाँ जब भी तो सोचूं 8:30 बज गए भाई सेकंड हाफ। अबे वो लड़ाई हो गई थी वॉशरूम के लिए, सारे भिड़ गए। First map warm up. Now we find कि them. तू 5 साल वाले क्रोनोलॉजी कहाँ से उठा के लेके आया वॉशरूम वाले? वो गेम ऑफ थ्रोन देख रहा था। क्योंकि वो 5 साल का है, क्योंकि वो 5 साल का है। मोहित जब हम तब से बैठे थे तब तो तुम यहाँ आया, जैसी कायरा है तभी आ गया। हाँ अबे भाई मैं बाहर गया हुआ था, फिर देबू ने बोला कि वीसी आ जाए इसलिए आया हूँ। Yeah, and unfortunately, I mean, for the side of T1, they want to be able to have that timeout for the second half, so they don't call it. Right? They don't burn the second one in that initial half, but now they find themselves. Eternal good luck यार, पढ़ ले यार। कौन मुझे even with the map balance, attack and defend this. Bro तुम लोगों ने अभी देखा ही गया है। I'm not even flirting. Certainly going to a map 3. मेरे को फ्लर्ट करना आता ही नहीं है। तेरी फ्लर्टिंग मैंने। भाई मेरे को आता ही नहीं।
अगर ये तो वही तो बोल रहा हूँ, flirting, देख के अगर आया। इसको फ्लर्टिंग बोलते हैं ना तो खत्म। वही ना, मैं फ्लर्ट करता ही नहीं। आती ही नहीं करता, तो आती नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं आती मेरे को। मनन डीएम देख बस मैं तो सच ही बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं देख रहा यार, ऑनलाइन दिख जाएगा। फिर डीएम क्या खेल रहे हो भाई दोनों? मैं नहीं देख रहा। तूने कंटेंट भेजा है देख। नहीं तूने उस व्हाट्सएप वीडियो में कर। मेरे को उस वीडियो में मेरे को टैग किया था वैसे, किस वीडियो में? वो व्लॉग वाले में। ट्राई किया था, वो उसने मना कर दिया। अच्छा समझ, उसने मना कर दिया। टाइटल में लिखते हैं ना, तो वो आ गया कि अनएबल टू डू, ऐसे कुछ आ रहा था। तो मैं सोच रहा था डिस्क्रिप्शन पे डाल दूं, बट फिर सोचा कि अगर डाल दिया तो तुम कभी मिलोगी नहीं दोबारा। मनन देखना डीएम। अरे काफी लेट डाला आया था ना। You know, we've heard the coaches talk about it. I've heard the players, and you know, they stream together. They're having a lot of fun together. Like everybody, you know, Aaron and Texture, you know, whoever it may be. ये तो भाई ये क्रैक, ये रुक जा मैं देखता हूँ। हाँ स्ट्रीम पे दिखा। अबे यार तूने पता नहीं क्या क्या डीएम डाला होगा। मोहित का तो मुझे पता है। ब्रदर ओए साले मेरी मत खोल दियो, मेरा मत खोलू तेरी क्या सबके सामने। बोलड़ी के मेरी मत खोल Having a good देना। time. They're still fired up. They're still loud. I mean, that's a really good sign for global esports. And ब्रदर मेरा कोई सांस कंटेंट नहीं, कोई सांस हाँ मैं आदर्श क्या है ये? अरे पूरा स्टेज है। ये स्टेज है। ये दिखा नहीं रहा, वो ये जो पार्ट दिखने रहा है वो है। वो देखो हाँ कास्टर्स खड़े हुए कोने में, देखिए। हाँ सब दिख गया। मुझे ऑडियंस देखने, आदर्श ऑडियंस का है कैमरा, देखना है कौन कौन। I mean, किसी बंदे का प्रोफाइल देखना पड़ेगा। गाइस तुम लोग आ रहे हो ना? बस बुक कर ली है तो नेक्स्ट मंथ सारे जितने भी हैं आएंगे, चलेंगे कहीं बाहर नॉर्थ साइड पहाड़ पे। पहाड़ों पे मैं आ रहा हूँ। पहाड़ों पे क्या करेंगे? घूमेंगे क्या सोचता है? पहाड़ पे जाएंगे, बॉनफायर करेंगे, बातें करेंगे। I'm not sure he had enough time. He was just spraying with that ghost. बट जाएंगे सिर्फ लड़के, कोई लड़कियां नहीं। And managed to find a connection. ठीक है। Through the garage. ब्राउनी? Bot is no longer नहीं सिर्फ लड़के। alive due to its deceased owner. ठीक है। मतलब ये तो फेयर नेक्स्ट वाले में लड़कियां जाएंगे। Of T1. क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे मतलब एक बस बुक करी है उस सोलो कैंपिंग वाला करके, कैंपिंग और वहाँ पे मतलब कैंपिंग के लिए कहाँ जा रहे हो? कहीं पहाड़ पे जाएंगे, लाइक जैसे उत्तराखंड हो गया या फिर कोई से मेबी भी। हाँ हिमाचल ऐसे सोलो कहीं पे। स्पॉन्सर कर रहे हैं ये सब। स्पॉन्सर नहीं कर रहा मैं। नहीं लड़कियां इसलिए नहीं, क्योंकि अगर 2-3 आएंगे तो फिर वर्टेड नहीं है। या तो हर एक लड़का लड़की लाएगा तो फिर वर्टेड है, वरना तुम होस्ट कर लो। It's even Stevens. That's fair. क्या कर लो? So GE maybe मतलब जो लड़की नहीं लेके आएगा वो होस्ट करेगा। Still not yet. अच्छा तभी मैं होस्ट तो फिर तू ही करेगा होस्ट। हाँ। That's important. I mean, they still make this pretty close. And if it isn't just kind of आदर्श भी करेगा फिर, मैं भी करूँगा, देवो भी करेगा। अबे सारी होस्ट कर लो। हाँ तू करेगा मोहित? मैं क्यों करूँगा होस्ट? मुझे कुछ याद आ रहा। अबे देवो बताऊंगा। गाइस फोकस कभी कैंपिंग पे गए हो वैसे के कभी नहीं गए? हाँ गया हो ना मैं। भाई ये क्या है पूरा स्टैक? वो लोग ये ले लेंगे उधर। हाँ कॉज उनको इन्फो तो आगे होगी ना, 3 बंदे तो है ही एटलीस्ट। ओए एक मार दिया। वन ही हुआ। Four players all turning a flash in unison. That's a synchronized swimming right there. I mean, they full 5-man gamble stacked the seaside. It just एक खाली पड़ा हुआ है, पे जाएंगे मस्त। I think they kind of suspected that 𝙤𝙤 player might be going for a हर कोई अपना खुद का चिप्स पैकेट लेके आएगा प्लीज। likely to do so, as we saw even in the first half, right? They lost. हाँ यार दूसरों से खाओगे। मैं तो भाई खुद का ही लेके You're आऊंगा। basically gambling. All मोहित right. चिप्स पैकेट। मोहित चिप्स पैकेट उस पे नाम लिख दिया। मैं फर्स्ट एड्स रख लूंगा। आलू लेके क्या बनाएंगे क्या अपन वहाँ पे?
तो पर क्या तुम लोगों ने कैंपिंग करी है तो ऐसा ट्रैकिंग वेकिंग किया है क्या कभी के बस ऐसी हाँ कहीं भी ट्रैकिंग बाहर भी ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग ट्रैकिंग हाँ ट्रैकिंग ही बोल रहा हूँ लॉल ट्रैकिंग आर यू गलत किडिंग मी हाँ ओए he's sitting it हो सकता है भाई मेरे नहीं को होगा डिले है भाई मेरे को लेट दिख रहा है भाई ऐसे रिएक्शन मत दो दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। 3 घंटा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। रुड़की में पढ़ाई वो की तुमने चढ़ाई की थी no I think they just need texture on operator and then मैं it's पचमढ़ी easy गया था I think we would just have to leave. Yeah, I just take the headset off. भाई यथार्थ क्यों स्ट्रीम कर रहा है वाले Have a good night, everybody. But okay. रुड़की में गया था ना, रुड़की में लोग वो खस बेच रहे थे, खस का रस ये रास्ते पे वो लिया था हम लोगों ने, बहुत मीठा था। मैं ओके खस हूँ क्या होता है? अपन साइड बेसिकली इट्स लाइक तेरी तो उत्तराखंड में रह रही है प्लांट है। ग्रीन कलर का रूह अफ़ज़ा। हाँ नाइस वन ब्रदर, दैट मेक्स सेंस एक्चुअली, यस बहुत मीठा होता है, दैट्स वेरी नाइस रिफ्रेशिंग। कम ऑन GE I think he's just curious to see if anybody's going to try to cut They're through the playing smoke. Maybe slow. catch him off guard there. अच्छा हुआ बता दिया Instead, he's going to back behind the box. जी थोड़ा स्लो खेल रही है, T1 खेल रही है स्लो। Dash. Maybe I thought a flash and जी dash को there. एक्टिव खेलना पड़ेगा They're not going to bait. They're not going to fall for क्योंकि it. वो स्लो खेल रही है। Flash over the top. Texture does get clipped there. वो पिक्स के लिए खेल रहे हैं अभी। हाँ T1 अरे लेफ्ट गियर कर ओए वेब ओवरवॉच नहीं है ब्रो ये Oh, it's so good. भाई वो खेल चुका है, वो ऑप्टिक को हरा चुका है। Blocked out by the smoke. Aaron trying to drift down, trying to get this timing. oh another he's slow Nearly. हाँ वे वन Flame Zeta as well. Nice. Bazzi will be there in Nice position. Oh my one, God. guys. That's good timing Needed to be कह रहा clean. था It वो was कॉल neither. बहुत Play that to बहुत absolute प्यारी perfection. टाइमिंग Able दी timing. यार एरन को ड्रॉप की। हाँ मैंने अभी नोटिस किया ऐसा इसलिए Yeah, he's क्योंकि looked भी ऐसा phenomenal आदत हो गया on ना this जब map. से Mavs तुमको has a lot जब of तुम global खेलते हो ना skills. They're उसमें up, you know, 11 क्या to कहते हैं 4. टीम plan में पे and all Like जी this. हाँ तो you have to call out Aaron is the just screaming. HP the util मजा तो कल आएगा Another thing I really want to give a lot of credit to GE for here is the way they played that long But range that's scenario where they had Texas tucked जब तुम behind the ऐसा box, 5 checking the मैन smoke. बैठ के ऐसा खेलते हो ना तो उसके बाद जब तुम मुंबई ऐसा सोलो लो खेलते हो ना मजा नहीं And so आता they didn't get much contact. Now they got the flash. क्योंकि at the एक्चुअल top. कॉम्प तब तुम्हें समझ में आता है कि जब तुम टीम क्योंकि के साथ 5 मैन खेलते हो। लेडी 5 मैन इजी होता है as compared to solo Eventually, they're able to sneak Batsy down into sewers. वो He's able to use the वो trailblazer तो to मैं spot बोल out रही तभी तो Sia, बोल रही who's हूँ trying उसमें to ज्यादा counter मजा this आता है play. तो ऑब्वियसली ना जब आप आज तुम्हारे अगर आप मैं इजी ऐसा वाला नहीं खेल बोल रहे हो रही, तो मैं हार्ड ऐसा वाला नहीं तो बोल आपको रही और हार्ड कि- लगेगा ना। अगर आप हार्ड शुरू से खेल रहे हो तो जो इजी है वो इजी है और लग जाएगा ऐसे हो। नाइस Shuts down Saya. Coming out, getting some damage. Texture gets a headshot. Dashes away. He goes for the reset. For the reload. And Ronsky ये देख is there to follow up. Munchkin now Oh, going to oh, get what? down. Just a singular kill here with the sheriff in hand, but he will fall ये shortly तो बहुत thereafter. आसान हो गया। And Global That is are it, now guys. just one round away from taking ऐसी us थोड़ा ना to a लोग third रीड and इन पे final सोलो map क्यों of the देखते हैं। evening. That looks like we may be getting it. नहीं हम हमारा दर्द देखते हैं बस just to be clear। Win in VCT Pacific history, and take us to a रेड इन से third नीचे आता map. तो मारता ही हूँ मैं इमॉर्टल 3 One में। time out here, Yeah, quick. तू मारता है Might बस as बहुत well, गंदा है, एक गेम तो might जीता as नहीं well मेरे use साथ it, कभी। you know, use it or जैसा lose it. जीता नहीं एक गेम साले Look at this. इतना हो गया कर तो दिया और कितना करूँ। दिग्गज we don't talk about it, okay? Nigh impossible. We don't talk And we are going anymore. to Lotus at the end of this all. यार तुम मत कर यार Like तो अभी मैंने कहा था देख ले ऐसे बात करेगी ना तो और मन करता है। I'm क्या keen to have the क्या मैं गाना गा रहा हूँ इसलिए क्या मन करता है पागल है If तू they pull नहीं it, I don't अच्छा know, गा रही है find out इसलिए। the spiciest hot sauce बराबर that I can मेरी get. आवाज अच्छी है गाइस Drink it. सीरियसली ये हाँ, पागल हो रखा है। That's What? scary. I was telling you the other day that No, I no, tried that's a few kind of really, true, really but spicy ठीक hot है। sauces. Right. ज़्यादा और पागल लेट हूँ। गाइस One of मैं them जा रहा definitely. हूँ मैं जा rहा हूँ। Woo. Yes. One of them was. It made me cry. I'm man enough to admit that hot sauce made me cry. Well, Like one of those million level Scoville ones. sure. Well, maybe that's what I'll have to go for. फिर देखो टाइम क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं Yeah, don't do that. Let's say a significant What are you whispering? एस्केरोसी खेल रहा है तुम फिगर आउट करो इनमें से कौन है एस्केरोसी। But we'll see if this timeout can work any kind of magic for T1.
अबे कहाँ फ्लर्ट कर रहा हो भाई? जस्ट यूट्यूब चैट देख के आया, अलग ही टॉक्सिक चल रहा है उधर है। थैंक गॉड। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं जाके पता, कोई भाई फायदा मैं नहीं। इतनी देर से म्यूट था, मैं बोल रहा था। गुड जॉब मोहित, सो प्राउड ऑफ यू सन, सो प्राउड ऑफ यू। और तुझे लगा हम तुझे इग्नोर करते हैं? मेरे को फर्क नहीं। इनका इको बाय है, इनका इको बाय है। जी है भाई, जी। नहीं जी, अगर ओवर वो कर ली ना, ओवर क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस का। केजे का नाम क्या है मनन T1 में? क्या? केजे का क्या नाम है? मंचकिन। खत्म है। जी। और काटने जा रहा हूँ। मर गया। ओ भाई, इसने बाजी को मार दिया। ऑब्वियसली इतना क्लोज आ गया ना वो। अरे वो तो मारेगा ही, मेरे को नाइफ करने आ रहा था। हाँ तो चलता तो है पर अभी एक और मैप होगा। ये कायरा फिर बैठेगी। मेरे डिले में चल रहा है यार। भाई मैं FSL में VCT गेम चेंजर था ना, फर्स्ट प्लेऑफ्स थे, तो मैं उसमें साइड को नाइफ करने जा रहे थे। पूरे रुक जा नाइफ कर रहे, साइड ने मार दिया, कहते अलाउड नहीं है नाइफ। किसने बोला तेरे को कि अलाउड नहीं है? नाइफ भी वेपन है, कैसे अलाउड? कहते नाइफिंग अलाउड। मैंने क्या बात कर रही है? जब अगर बुलेट इतना लंबे टाइम आउट नहीं जाएगी ना, बाद इतना जल्दी गेम खत्म। एसीएस कितना था टेक्सचर का? अभी दिखाएंगे। खुश हो गया भाई, कोच खुश हो गया। आज मोमोज पार्टी करेंगे ये लोग। बाजे भी अच्छा भाई। DRX वर्सेस जी देखना मुझे, तो क्या होगा? मेरे को लगता नहीं मेरे को नहीं लगता है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है DRX वर्सेस में तो आराम से DRX जीतेगी। DRX की स्ट्रैट तुम लोग को समझेगा नहीं कि मेरे को कल कितना बीटी हुआ, क्योंकि ना मैं नहीं था। ऐसा 3-4 बार हो चुके कि मतलब मैं जब भी जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे ना, वो हार जाती है, ठीक है? तो मेरे को ना कल सुनो हाँ सुन तुसी, तो कल मेरे को पहले मेरे 2 दोस्तों ने बोला, फिर कल ना निकलते मम्मी ने बोला कि भाई पता चले तू आज जिसको ऐसा सपोर्ट करे वो हार गई, तो ऐसा था मतलब ऐसा उल्टा सीधा मत सोच। तो पहले ना फर्स्ट हाफ में RG wasn't winning। भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा था उस टाइम कि भाई पनौती तो नहीं हो, पर जब RG जीती ना, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक सो हैप्पी कि नहीं चलो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ आरती है फाइनली। वो बस दिन होता है। वैसे कोई मानते भी है लोग। I don't know, but you know how मैं नहीं मानती, पर जब मैंने ऐसा 5-6 बार ऐसा हुआ ना, मैं मानता हूँ। आई थिंक कायरा को अभी यहीं पे रहना चाहिए, नहीं तो जी हार जाएगी और फिर मैं तो ट्विटर पे डाल दूंगा। थर्ड मैप कौन सा है? थर्ड मैप हेवन हो गया, लोटस। ओ भाई लोटस है। I think G played really good this map. They got the attacking part, they really got a hold. उनको कैसा you know तुमने होल बोला ना? A hold. होल अच्छा। बदल क्या आदर्श क्या? वो कायरा की वजह से चला गया आई थिंक। गया यथार्थ गया नू। नहीं यथार्थ आदर गया। टूटा हुआ साज। ये क्या कह रहे लोग देखें। Our team isn't even India। क्या लिखा? वो तूने देखा? ओए मनन तेरे उस पे जा 2 मिनट, स्ट्रीम पे जा। हाँ? तेरे को बीटा मिला है कि नहीं मैं देखने को। अबे ऐसे थोड़ा मिलता है। स्ट्रीम पे जा तेरे को ऐसे थोड़ा मिलता है। CS2 का बेटा। अरे वो रैंडमली मिल रहा है यार, धीरे-धीरे लोगों को मिल रहा है वो रैंडमली। एक बार चेक तो कर।
अबे ऐसे थोड़ा होता है, यूं मिल जाएगा। पे राइट क्लिक करके उसका वो रैंडमली। एनीवे गाइस किसी को पता है कितना टाइम लगने वाला है? 15-20 मिनट। ना ना ना, काउंटर स्ट्राइक पे राइट क्लिक कर और उसमें अबे दोस्त अगर एक्सेस मिला तो दो ऑप्शन आएंगे, एक काउंटर स्ट्राइक गो और एक काउंटर स्ट्राइक 2। कहाँ पे? नहीं आ रहा तेरे पे। कहाँ पे आएगा ये बता दे बस। नहीं इसी के नीचे यहीं आएगा, यहीं आएगा, यहीं आएगा। उसके पहले गेम में दिखाएगा। मोबाइल डिवाइस मोबाइल क्यों दे रहा भाई? ये कौन है? Who is this? I'm kind of sad भाई that यथार्थ क्या it's कर रहा है? आ रहा है यार। स्ट्रीम नहीं कर रहा तू यथार्थ? रेगुलर स्ट्रीमर, घंटे का रेगुलर स्ट्रीमर, 2 दिन स्ट्रीम करके फिर कहता है अरे कल कितने बजे आओगे? अरे कल मैं 1 बजे गया। भाई मैंने कर रखा है, क्या बात कर रहे हैं? इसने कायरा ने सब्सक्राइब हूं मैं तेरे। चुप करना तू। देखा देखा रुको रुको। कायरा तुम तो राका से भी मिली होगी उस दिन। व्लॉग में भी तो थी काय राका के। फ्लेक्स क्या कर रही है इसमें? मेरे को तुम बताओ किसमें क्या फ्लेक्स है। तुम बोलो ना फ्लेक्स कर रही है, तुम बता जरा क्या फ्लेक्स है। राका इज लिटरली वो कैसा बोल सकते होमी टाइप, बिकॉज़ वो भी यहीं पे रहता था जब मैं रहती हूँ सेम घर में। और मैं सेम एरिया। घर में। Welcome back. We just saw the end of map 2 on Even. I don't know what's going on with global esports, but Oh my god, यार just woken up. ब्रेन डैमेज्ड है भाई जान। मैं भी तो होमी जैसे ही हूँ। तू होमी राइडिंग में होम दूसरे क्या कहते हैं दिल्ली के दूसरी साइड रहता है और मेरे को बोल रहे हैं मैं होमी हूँ। तो जब हम मिलते हैं तो तुझे क्या लगता है? राइडिंग में होम हम कंफर्टेबल तो हो जाते हैं। तो होमीज कंफर्टेबल ही तो होते हैं। नहीं खेल रहा है भाई एसके रॉसी। वेंडर्स पाकिस्तान की कितना टाइम है मैच चालू होने में? I hate when people ignore नहीं जितना ज्यादा वो हुआ था ना अभी टाइम आउट हुआ था कम से कम 2-3 घंटे। When did she poor Pakistan people they guys अभी ये लोग पाकिस्तान पे कहाँ आ रहे हैं? एटलीस्ट इंडियन और इज विद क्या हो रहा है ये भाई? अब लोग लड़ क्यों रहे हैं? साउथ एशिया वाली बीसीएल का आ रहा है वो भाई गई वो सबसे मन कर रहा था कौन क्या बॉयज टॉक करने का। वीसीएल का अलर्ट पता ही होगा तुझे। पाकिस्तान वालों को साउथ एशिया में रखा हुआ है। मैं भाई पानी भर के ला रहा हूँ। ओ भाई पास भाई अच्छा खेल गए वैसे। अब जीतने की 2 मिनट में आ रहा हूँ, कॉल आ रहा है। पाकिस्तान वालों को तो और एंट्री तक नहीं है, इनका तो और सैड है। Yeah, if we could actually pull a highlight up that we wanted to talk about from the earlier part of the match, we really saw Texture take his form here. I mean, he did a complete ace coming into this. And then from this ace, it was like he had so many incredible moments to just exhibit how great he was. So we come in here, we see Sayaplaya getting ready to try to get that takedown. Completely gunned down by Texture. Texture begins to then move in over here with a couple more sweeps. And this is where Texture, one by one, just managed to execution after execution, take out each player, ultimately finding that last player ban over here just around the corner, setting up this little area which is always impossible to kind of deal with. Looks like we're going to get to this final kill in a second here, but I mean, Artist next map, brother, this is Lotus. There it is. He gets the closer. And I'll tell you, like Texture, if he can keep riding this momentum, I don't know if they're going to be able to. भाई कायरा गई guys, तो आप जी के हारने के chances भी। Your wish is coming true, Will. We're going to go into the next map. I don't know how your math, but cool. नहीं वो थी इसलिए हम जीत रहे थे, मतलब एक तरह से इनको लग आ गया मैं। तू क्यों आ गया?
first half they had some तू भी आ जाना really good VC set क्या plays, कर but रहा है? of course on the defense as well. You see here किससे because बात of कर the रहे हैं? aggressive smoke that T1 had, Yeah. they knew that they प्रियांक were से बोल controlling रहा it. So they send the Trailblazer to just scout it out. प्रियंका को कल Honestly, जल्दी उठ it's के a kill. जाना Even है। if he doesn't though, that forces T1 प्रियंका to को have to rotate to प्रियंक C. हीरो So Aaron's already ready for this. He uses the आजा Ace. मनन 1v1 आ जा This is just easy. क्या होता है 1v1? We heard it भाई sheer अतार से throughout 1v this कर whole ले segment. But that 1v1 अबे घूम भाई आया हार चैट जाएगा फिर कल के मैच ना भाई में ना रो ना देगा। मैं नहीं करता in garage and perhaps already ये on सब site मैं नहीं on C. करता भाई And so ये the सब way they गलत were बात pushing होती and है pulling throughout the map, the macro usage of their utility and how they were utilizing मैं the हार intel जाऊंगा फिर against मैं their रोऊंगा enemies was really good, and it only helps to have a player like Texture who will actually frag out अबे and give भाई you intel. ये चम्मच है। देबू से कर हमारा देबू करेगा 1v1 तुझसे हरा कोई देगा फायदा तुझे नहीं भाई, कोई फायदा नहीं। देबू जा देबू जा देबू जा ना नहीं भाई यथार्थ सब डरते हैं भाई 1v1 के लिए भी लेवल तो होना चाहिए। आजा 241 लेवल है। 241 मेरा भाई 400 प्लस है, अभी वहां तक आ तब करेंगे। ओह भाई तेरे को सही मजा आता है घास छू के आने की थोड़ी। घास तो छूना पड़ेगा। मेरे को शौक नहीं घास छूने का। घास नहीं है तेरे पास? अरे ये PRX समथिंग हो गया, ये वाले कुछ और नहीं था। वो था SG था संगोकू में था संगोकू में। PRX हाँ में हो SG गया। हाँ सच में ACS क्या होता है ये आपको आदर्श बताएगा। एवरेज कॉम्बैट स्कोर ये आपको कॉम्बैट स्कोर हटा के एवरेज कॉम्बैट स्कोर यू हैव लाइक फर्स्ट पिक और कंटीन्यूअस कितने पिक्स ले चुके हैं और तुम्हारा पिक का इंपॉर्टेंस कितने हैं सबसे पॉइंट मिलता है। दैट इज योर कॉम्बैट स्कोर। यस यही बोल रहा है उसका जो कब आदर्श से बोल रहा है कल का मैच अब बोल दे कल कौन सा मैच है तेरा। अरे कल लैन है मेरे यहाँ पे मेरे गेमिंग कैफे में लैन है, वहाँ पे हम लोग ऐसी मजे के लिए खेलने जा रहे हैं। द गुड पार्ट इज मेरा भाई अलग टीम में खेल रहा है, दूसरा एक मेरा दोस्त जो ये बकेट हेड है वो अलग टीम में खेल रहा है और बाकी हम लोग मैं गनशॉट हथौड़ा यथार्थ अर्जुन एक टीम में खेल रहे हैं, तो वो फन होने वाला है। और मैंने पहले ही बोल दिया मैं वहाँ बहुत चलाने वाला हूँ जब लाइक खेलूंगा। तो भाई ये तो इजी टीम हो गई भाई तुम्हारी, ये क्या बात होती है भाई? और भी अच्छी टीम्स आ रही होंगी भाई, जरूरी तो नहीं भाई तुम में हथौड़ा है भाई रेना में तुम तो ऐसी जीत गए। मैं नहीं हूँ। अच्छा तेरा कौन को देखना है भाई? अगर हथौड़ा मारेगा मैं थ्रो करूंगा। अरे CSGO की टूर्नामेंट की तरह है ये। भाई एक सेकंड, ये तो पूछा ही नहीं CSGO का है या वैलोरेंट का हो रहा है? नहीं उसकी तरह टीम से नहीं ऑब्वियसली वैलोरेंट। अबे वहाँ कोई ना कोई मिल अबे बर्नॉइड को मिला है ना, क्या बोलते CS2 का सोर वो बीटा लेना है तो इसको बर्नॉइड अपना मॉड उसको मिला है भाई। तो वो स्ट्रीम नहीं कर रहा? बोल रहा था अबे वो चैट में आके बोल रहा था परसों के दिन, तूने इग्नोर मार दिया उसे। तो स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहा? मेरे को क्या पता भाई, दे हम कर देंगे स्ट्रीम। तू क्या करेगा यथार्थ करेगा रेगुलर स्ट्रीमर कुछ करेगा एक दिन स्ट्रीम करेगा अगले 4 दिन के बाद कहेगा गाइस ये हो गया तब मैं अब रेगुलर करूंगा। गाइस पैर में दर्द हो रहा था खेल नहीं पा रहा था इसलिए कल से स्ट्रीम। क्या पैर में दर्द हो रहा था? किधर है कबाल? सेक्टर 15 मार्केट फरीदाबाद। प्रियांक आना वैसे वो समनर वॉर्स में ग्राइंड कर रहा है या फिर एल्डर स्क्रॉल। If anything, it might actually be a really interesting time for global esports too. That experiment with this gecko. I mean, take advantage of the timing and everything, and just see what happens. Yeah, throw the curveball just a little bit, right? I really throw some chaos into map right here against T1. My other big question, I guess, is T1, do they go back to intro, right? I'm not going to say that overall it just seemed like global esports was on a different level coming into map 2, but I am curious what combination did they practice with? Because surely after they realize teams are going to start picking Lotus and they haven't prepped this up. Well, we've already seen this a little bit today, and we're going to be seeing a lot more of it throughout this
this entire tournament. But when कौन you कर रहा have था a ये? 6-man कौन करना? setup, who do you rotate in, and when is it a good idea to try that मेरे को हाथ out? देखने And yeah, intro, was he going to come back? Maybe. Maybe. अबे क्या सोच रहे हो? I don't know. I don't make the choices. इसके हाथ देखना तुम लोग? I know the casters were also talking about it briefly, but of course, Lotus also being, you know, a three-site map. छोटा नहीं है तेरे हाथ It's निकल गया very भाई similar to Haven. I do think it's actually somewhat more attackers side, ठीक है and so you have to commit to one side or the other a अभी little bit क्यों कर earlier. रखा है? And on that note, if you're playing Camera defense, sometimes disabled. it is better to just kind of give up a site early and just work on the retake, right? And that means you have to have your set plays ready once again. देखो So मैं आया तो going मोहित towards a चला T1, गया who's कैसे had more इंसान है reps on this map is really what it's going to come down to. Definitely. Lotus is a very dynamic map, so I think we should be prepared for surprises either way. With that, we are going to go over to the stage for agency. लोगों ने अब G में ज़्यादा लगा दिया. अगर मैं 1000 लगाऊंगा तो कितने पॉइंट जीतूंगा? Again, Gecko maybe. रेशियो क्या है तेरा? 65. डिपेंड कर Maybe, positively, absolutely not. These are all the possibilities of this agent being selected. Yeah, Doctor Strange has really gone through all the possibilities, and Gecko was not in any of them. We're going to go through all the possible multiverses that Gecko is used here. But it looks like Ban's staying on stage, so going with the core that Team 1 had, starting with Lock-In, देखिए 100 लगा. continuing with that lineup, and we'll see what the actual picks end up being. Now again, at Lock-In, we saw many different iterations. We have seen double duelists, you know, we've seen a lot of Harbor. We've seen teams sometimes work with just the Omen, and it looks like Meunier, he wants to use that paranoia, the breach and the Omen. Much more of a traditional understanding and interpretation of the map that everyone expected when Lotus first came out, whereas Harbor and Viper going for a bit more of an evolution that we saw throughout Lock-In, of really cutting up the map and taking position one by one, whereas Breach and Omen, they're going to push far forward, even on defense, by setting up their double and Rodsky and Texture. Yeah, it does look like the esports is going to be going for a lot more, trying to pop into areas and get picks. मैंने नहीं देखा था आदत फिर से. Obfuscate the map a lot, you know, with the double क्या? controller coming there. बस मेरे हाथ खुल मतलब वो खुल. The Jet, right? So he's back to his comfort zone, and then Texture's going to play that Raze as well. So not only do they have utility usage to really take control of areas by doing things like the fault line or the barrier on top of the mid shells, but then you have another duelist who can still take control of the other side of the map with something नहीं like तो an क्या operator दिखाना चाह रहे हो इसके हाथ में ऐसा क्या है? ओए गेम पे ध्यान दे दो तुम सारे लड़के. I'm so excited to be going into this game. I just wonder, you know, is भाई यही तो होता है बॉयज figure टॉक. out what they're doing wrong. We saw बॉयज टॉक है भाई. early on, they were very much here. गेम की बात करनी थी तो एनालिस्ट बोला भाई. But they want to try to tighten up what they've been doing. Yeah, Anal. They said as well they calm down. भाई तुम पागल हो गया यार. Calm down. टीम चल रही है. यार चिल भाई. बस मजे करवा लो तुम लड़कों से खेलना आता नहीं है बिल्कुल भी. यही तो किसको बोल रहा है भाई? मैं जीता था ठीक है शानदार जेट लेके. मोहित तू तो तो भाई जेट पे है भाई अब आएगा मजा और देखने में. 1-1 score right now. कौन है जेट पे? Last game was a strong play by Global और टेक्सचर duelist. Let's see how they fare Raze. on map 3 and let's see what the casters think. How are you guys doing over there? Achilles and Paper Thin. ओ भाई ब्रोस्की. कोर्स क्या है? ब्रोस्की है क्या है? Wonsky. Don't tell me time out हो रहा. Now on the horizon. Isn't it past your bedtime? Yes. I mean, I might be younger than you, but I don't have bedtimes. कोरिया में क्या टाइम हो रहा है? Bedtime than I am. Yeah. The nurse is कोरिया में क्या टाइम हो रहा है? That's right. I need tuck you in. my back. बताएगा आधा 2 सेकंड. Scrub you down. अपडेट करेगा. Wow. Lotus. Our final map. As we see who is going to be able to take Korea this, time. our second series in Come on. Pacific. As we jump into it. Global again. We have seen them on the 12:30 map before. रात के. Obviously, that was with Rossi in the lineup. Now we see Rossi अबे AM going रहा over हाँ रात onto the के. jet here for the double duelist. Actually back onto the race, something that he is 12:26 AM. plenty of from him. Which is what kind of impact does he have? Rossi starts things off beautifully. Finds the opening kill. Smokes comes down. Side player in a rough spot. They're not going to find the kill. Bazzi will instead, but Munchkin तो will become T1 का Munchkin 2 मार दिया. and then a 3v3. Texture tag down to 47 HP. And that's Lonsky Jet. भाई वो डबल ड्यूलिस्ट खेल रहे हैं. That's more scaring. और डबल duelist खेल रहे हैं. Texture is. I mean, if you have like 5 duelist players, you just doing a great job kind of reading the position. You can do that anything. Aaron was liking to kind of
scoop his way through. More about the composer they are trained with. Can do anything here and one nope. Texture Just gonna at least be take one. भी है PRX में भी हाँ में भी अब टीम डुएलिस्ट है right yep but वो लोग flex खेलेंगे ना उनका वो लोग aimers को है ओ भाई what is stun में मार दिया ओ भाई मंचकिन क्या मारा है breach stun is a fucking joke you can crouch you can pick up your gun pew yeah it's so one bullet at a time one bullet at a time yes such a और एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती भाई 1 बुलेट एट अ टाइम वही तो टाइम तुम्हारे ब्रेन को टाइम मिल रहा है शूट करने के लिए ओह डूड दैट्स हाउ ही गॉट इट यार लाइन अप हो गए दोबारा लकी भाई लकी मंचकिन लकी था steals the round away. Beautifully done there from ओए मंचकिन पहले कौन सी टीम में था आदर्श नाम सुना था हां क्रेजी रखूं smart stuff. I'm really oh boy you're right it is the force going for it oh boy dash forward कभी-कभी सोचता हूं अच्छा हुआ मैं गेला फोर्स किया है so very low eating that yes lotus में force करना was very common still going to be coming through munchkin waiting does have the shorty oh what a flick no lotus ही हारे थे ना पर लास्ट shotgun that was nasty that was a good shot dude push coming through and he won't be able to find anything else in the follow up all righty even with the jet down to 16 HP ओ भाई रोज की आरएनजी कर दिया भाई पूरा whipping a bit Monier trades it back Zeta going to be able to get 3 one ये राउंड आ सकता है आ सकता है नहीं अब नहीं आएगा bloodbath is the stinger trying to steady it let him cook आ सकता है क्या let him cook गैस भी तो लगानी पड़ती है भाई 35 HP आ सकता था नहीं आ सकता भाई आ सकता था क्लोज था नहीं आ सकता था not a bad idea not a मान ले भाई आदर्श एक और रैंडम बुलेट लगता 36 का इमेजिन नहीं लगता अरे रहने देना चला गया वो मानेगा नहीं NIC का आइसक्रीम है तेरे पास मनन क्या NIC का आइसक्रीम है हाँ discipline retake from T1 where they're coming from a bunch of क्यों? different angles आइसक्रीम तो मेरे को भी making खाना sure they're all kind of pushing together ये लग्जरी आइसक्रीम है हम लोग सुधा का आइसक्रीम खाते थे घर पे सुधा इज लोकल डेयरी नहीं बहन बता रही थी कि ये क्या कहते हैं ये आइसक्रीम मंगवाई थी 115 रुपए का है वो नहीं बहन तो छोटा सा 115 रुपए का चल देख दाम प्राइस देख ले मुझे 80 का है 80 नीचे होगा या फिर हाँ 80 ऐसे कहते हैं यहाँ सस्ता यहाँ महंगा एनीवे इसमें लेट एक्सपेंसिव वो हम लोग बट हाँ फिर भी 80 रुपीस की आइसक्रीम इतनी छोटी है 80 में तो मैं 10 वो ले लूं अच्छी है मगर वो आइसक्रीम मैंने भी खाई है बेकार लगी ले guaranteed to have it into the next round. 80 में मतलब 10 चोकोबार ले लूं मैं। खा रहा है मनन तू वैसे शुगर फ्री नहीं है। बेबी चोकोबार महंगी हो गई भाई चोकोबार बेबी वाला। नहीं 10 में बेचते बेबी वाला बेबी वाला। चोकोबार महंगी हो गई। लो बेबी वाला 20 रुपए में। नॉर्मल वाला तो 20 का है। यहाँ कुछ महंगा नहीं हुआ। मिनिमम 20 मिनिमम 20 हाँ मिनिमम 20 है ना। भाई अब हो गया। भाई तू ये रिएक्शन मत दे यार मनन भाई मेरा पीछे चल रहा है। अबे मेरा आइसक्रीम मेरी टी-शर्ट पे गिर गया था उसका रिएक्शन दिया था चूतिए। अच्छा बिल्कुल भाई तू कभी भी कुछ the first one to fall. क्यों किया इन्होंने सेकंड बाइक किया था सेकंड वन बाइक किया था and they were very close to finishing it. That's why इन्होंने सेव किया. Last one alive. Gets over to the side, but I don't think he realized that he was just spotted. Aaron swing on the corner, takes down Zeta. Oh भाई timing हो गई बीच के साथ. Only find the singular kill as the defuse will come in. NTR T1 will move up 3-0. Yeah, I think he's trying to get underneath Saya players. Let them get guns. Okay, I want to see how they play with guns. बहुत ज़्यादा अटैक साइड पे मैप अगर ये लोग अटैक साइड में नहीं कर पाए तो मेरे को नहीं लग रहा है कर पाएंगे और इनके पास ड्यूलिस्ट भी 2 है तो इनका अटैक अच्छा होना चाहिए हाँ इस मैप का 67% क्या है बता कितनी टीम है हमारा 8 टीम्स है हमारा मैच 12 बजे है और हम साहिल की टीम के साथ सिर्फ तब खेल सकते हैं अगर वो भी फाइनल में पहुंचे और हम भी फाइनल में पहुंचे लॉल उसका ब्रैकेट अलग है
फाइनल्स में खेल सकते हो ना तो सिर्फ फाइनल्स में ही खेल सकते हैं। It's not bad, but it's not. कोई लूजर तो बस फाइनल्स आ भी सकते डिपेंडिंग ऑन द अदर टीम्स। Exactly. अब एक गंदा सा नाम रखा है अर्जुन ने हमारी टीम का। He hasn't so far. मेरे पे रखा होगा। रिजलर्स हाँ लग ही रहा था। That's the thing that really. रिजलर्स मेरे पे रखा है। उनकी टीम का नाम है इजी To बॉट्स। his repertoire, he would hands down be. अच्छा वो लोग इजी है क्या? इजी बॉट्स तो टीम और दैट्स गुड। सिर्फ वाइपर को हर्ट हुआ। लेकार तू ड्यूलिस्ट खेलना ठीक है, मेरे को तेरा ड्यूलिस्ट देख। लाइव तो स्ट्रीम होगा मैच? बान को पता नहीं। देखो। Cheeky little lurk around the side. Lockdown now going to be infested. Not going to be able to To clear this. left. The wraparound is coming through. Oh no, Kind of getting a Mansi is sense going to of get this. them. Needs to find the kill, but he cannot. Texture will take him Mansi down. को पकड़ लेगा। चेंज ओए प्रियांक बोल के चेंज करा देना। क्या पागल है क्या? भाई टेक्सचर में साथ में करा देते हैं। अपना इजी बॉट्स सबसे पहले ही मैच करा देते हैं। ना Tears सही apart नहीं two है। players. खत्म कर दे जी Get नाइस। themselves on the तो board. 12 बजे में पहुंच There's 12 some भाई confidence from Wrongski. जी ओके You were तो saying, उन्होंने put them देखा back कि on the किलजॉय jet. अल्ट आने वाला है, तो उनका प्लेसमेंट बहुत एक यूनिक काम करना रुक। Players up T1, but again, coming from a lot of उतना different deep angles. plan मैं प्रियांक को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर लो। And space आई लाइक द प्ले, आई लाइक द प्ले। that T1's able to create I love the for play. themselves with this lockdown. Texture gets a ये huge तो बैठा kill हुआ है तो backside of प्रणव this as प्रियांक। well. Wrongski, हाँ ग्रुप पे ऐड किया ना। fantastic control of that Vandal. Yeah. Very, very clean and a much needed round. Allowing T1 to string a fourth together. साहिल की टीम में मैजिकिन है और साहिल है और कौन? Further disrupted the economy. You have a buy for भाई themselves, दो much लोग ही however, पता है तो only operating with a frenzy. भाई But I But then really लोगों को like पीटना है ना। T1's comp for the control that it's giving them. They can play it kind of like Pearl, where they're able to क्या हो really रहा है? cut off the map, you know, sneak players around, push and pull things a lot. So this is kind of getting into the comp that I've been नहीं wanting मैं to try to रूममेट delve into and Sion. Oh. So good. भाई यार कायरा को बुला लो, हार रहे हम लोग। It's actually down. All कर ले। Earlier, I suppose. Manan, Either way, it's a 1-for-1. चेस 1v1 करेगा? For a jet. हाँ रहने दे, हार Force जाएगा। Carpe off the चेस angle. में हार जाएगा तू। Just barely spotting Monnier right भाई, before that क्या? smoke bloomed. He's managed to ये find सार the तू kill. करेगा Flash 2 right मिनट ये now, मैच Carpe में। not seeing anything other than the alarm bot will clear it out. 1200 हो गया। Will shortly fall thereafter. क्या है तेरी 1200? Thereafter. 1200 Wall. Push onto the corner. got फिर it. रहने देते हैं Nice. और Double swing. पोस्टपोन करते हैं। Bazzi. One Find one. Nice David one. comes in off 3-2. that unexpected Let's go. angle. Up and कायरा का down the नाम rope. लेते ही जीत रहे, देख लो। Global find their second round in a row. Now one away from अबे tying this ओ up. सिम पहले भी जीत रहे थे। Even though they went for the force buy, it didn't work out. Quickly, GE is stabilizing here. लिहाजा Two concept rounds in a row, same and है now the economy कि for अब T1 गन से उनके पास is एडवांटेज not quite good enough. उससे पहले इट वाज लाइक together a buy. See what they want to go for. Good start here for भाई Sia, बाजी but then अच्छा he's all खेल over रहा the है place. Think he might have got flash in that. बाजी अच्छा And, खेलता है बेटा वो trying अच्छा to खेल रहा है help. इसलिए टीम हाँ पे मगर You've been starting to hear some कौन आया है? chance, I think. ओ Is that what I'm भाई hearing out साहिल loud? आया है हाँ भाई और साहिल साहिल देख रहे हैं ये था तेरी तो टीम में कौन-कौन है? कह रहा है मैजिकिन और कौन है? Fans here in the साहिल arena. ये था कह रहा है कि यार एक काम कर चेंज करवा दे और साहिल की टीम के साथ ही कर दे, फाइनल में तो दोनों ही टीम नहीं आएंगी तो छोड़ दे, हम सीधा फाइनल अभी कर लेते पहले, ऐसे बोल रहा है। Passionate bunch, that's for damn भाई sure. फाइनल से मिलेंगे नहीं मत लो। They do अबे not lack any वो passion. नहीं, इसका मतलब ये है कि साहिल की इसको टीम में अभी कौन-कौन खेलना है है? तेरे साथ, फिर चाहे हार जा चलेगा साला। Super welcoming. ना फाइनल्स में खेलेंगे भाई, तो मजा आएंगे फाइनल्स में भी तो। फाइनल तक पहुंचे, टीम भी तो अच्छी होनी चाहिए। Noted, still पहुंच pushing जाएंगे भाई, forward. हम तो पहुंच ओए Both of them. Fantastic timing. हम तो पहुंच जाएंगे भाई playing फाइनल्स just में। ahead. हाँ कौन कौन तुझे है? बताइए किसकी कौन, टीम में तेरे को साहिल? पता भी है कि सामने कौन होंगी टीम्स ये सब। Quick एक तो pick, जो just देख find जो one. पॉलिटिक्स Push on the है corner. अरे शी लग दिया। जो जेनस उसकी टीम है। ये टेक्सचर क्या कर रहा था ऊपर You सिर्फ crouch किया। And a chance, and now Shot suddenly we are bombing तो tied up भाई। at 3. मतलब कोई टफ टीम है, टफ टीम भी तो होगी कोई। सुन सुन, जो पॉलिटिक्स है वो जेन की टीम है, ठीक है, उनको उनसे जो लास्ट लाइन जीत के आए थे अभी, हाँ ठीक है, पिछली बार क्या वो मुझे पता कौन है उस टीम में, उसको जीत जाएंगे अच्छा उससे। तुम पिछली बार हार गए तो इस बार जीत जाओगे। मैं भाई पिछली बार टीम बहुत दिखाई थी, जो गई थी मैच होगा, इस बार टीम अच्छी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना होइस मैच, ये शायद बकेट की टीम है। हाँ एक बकेट की टीम। See that knife हाँ एक बकेट की टीम है। right past the head. कहीं भाई फाइनल से मिलेंगे बताते हो।
चलो देखते हैं। डबल ड्यूलिस्ट कॉम्बो, हाँ उसने 2 मारे, फिर वो मर के उसने 2 मार दिए, 4 हो गए ड्यूलिस्ट के। Oh lol! Dude, they just going on in. फिर तू इतना रिएक्शन दे रहा है भाई, मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुझे वैसे ही नहीं पता चलेगा भाई, लोअर रैंक तो। Oh no, oh no, oh no, ये गया राउंड। ये क्या हो गया? अरे भाई जेटा खेल गया। क्या हुआ? जेटा कौन सी टीम में था पहले आदर्श? Cloud9। It was weird because so far अच्छा ये वही जेटा है। hasn't really gotten ये वही aggressive जेटा है, off of एनए the में खेलता harbor था। utility. T1 भी एनए में थी ना, A lot of the utilities तो वहाँ से ट्रांसफर हुआ था जेटा और तब by the side of T1 to cut off the entrances either at C-Long or A. Right? They're trying to keep things in front of them. They're trying to take as much space in these early rounds, get it? भाई मेरे को कॉम सुनाई थी, कह रहा है बेबी काम डाउन। And until now, G had been kind of just waiting for the utility to expire, not really doing too much with it. This time they get aggressive on the back of it. So तो भाई okay, कोई भी बोले ult wasted except until you are whipping like a duelist ult। लॉल लॉल उसको लो कर दिया, अबे फिर अल्ट कर दिया, क्या कर क्या रहे ये लोग? कॉल क्यों आ रहा है भाई? Getting it man। Here still 4T1. The B site will be occupied. Global, move forward. Spike planted. And they play this out to find the win. That's a great start, but nice traded back. Door reopened. Nope. The lead with the Trailblazer. Want to clear things out. Zeta now moving into the back end of that. Aaron timing. narrowly misses the timing. Ban arriving right as he pivots Alright, back. Monier, this is the play of your career. Monier. कौन सा सर्वर VCT? We are on my solo world. Okay. Drags Global across the line with the clutch. भाई यार अभी बस मुझे ये डर लग रहा है, अटैक में तो डबल ड्यूलिस्ट हो गया, डिफेंस में कैसे करेंगे? There we go. ना आई थिंक अपने जी का ना थोड़ा वार्म अप ऐसा ही होता है, जैसे फर्स्ट मैप ये हगते हैं, सेकंड और थर्ड मैप मारते हैं। फर्स्ट हाफ भी नहीं खत्म हुआ। That's pretty good. 2-3 राउंड रह गए। I mean, maybe I feel like Munchkin didn't get the ult off that previous orb play. I think he got it off death. I'm not sure. Either way, he's got it now. Looking to see that utilized. It's going to be half armors across the board. We do have an operator here in the hands of the Xayah player. Yeah, really aggressively far up. Chief, I think. They've dropped an alarm bot there too, so worried about lurks. Use the I don't know about that one. They can still take the entire map. Try to thwart this It is approaching getting more G control force, than which this is thing. right now pinging it out. Let's see how they want to deal with this. How they want to try to clear out. Still got a boom bot. Still got a few pieces of utility that you can use potentially to try to deal with this Viper's Pit. But being very far back in it is Bond. Right now, it looks like it is going to be a rotate. It looks like it is going to be Aaron. Yep. Protection gets wiped out. A kill and just get out. 4v5. Viper's Pit helping to go ahead and flush at least one player over towards Xayah. Flash does connect. Cloudburst going to be invested as well. Zeta takes a nasty chunk of damage. Timing. Shock the zone and back, and Ronski's just going to rush on the back What? end. Will profit with a kill. Ronski? No, but that's good. क्योंकि उसने लो वाले को नहीं लिया, उसने हेवी वाले को लिया। अब एक लो ऑलरेडी है। बस ये But it's 3v4. नहीं घूमेगा, लास्ट टाइम उधर से ही मारा था। Drops the pit, and that's likely going to maybe lead Aaron to believe that the Viper has relocated. Looking for the pinch, and अब 2 जने लो हैं। quite a bit of damage down on the carpet. He cannot get the kill. Monia again put into a position where he needs to try to clutch this, but this time not to be. As we will just go ahead back and forth, round for round. T1 taking the lead once again. Yeah, the time double peak there at the end to make sure that Monier isn't allowed to do anything out of the ordinary there. भाई मैं Of course, an extra player आता हूँ, मैं जाता हूँ। as well. But yeah, it's good adjustments here. आता क्यों है? I mean, sensing the pressure onto A, waiting for that moment to drop the Viper's Pit. I was watching the map a little bit, and Aaron was flirting around the southern edge, you could say, of the Viper's Pit there, the attacker-sided edge, trying to see if he could sniff out Bond, catch him on the backside. भाई क्या there
never felt like you said once he dropped ओ भाई क्या कल भी स्ट्रीम नहीं की तूने? they kind of had a good read on maybe हाँ भाई where कर ले positioning would be भाई ये था भाई ये even though they won out भाई ऐसे कैसे चलेगा? साहिल ने की थी स्ट्रीम कल। and a good हाँ मैंने कही थी। flash as well from Carpe in there हाँ to हाँ confirm मैं आई थी abilities on the B देखी side. थी। मैंने बीच में से एक दिन नहीं की थी। बाकी साहिल है भाई They रेगुलर can push in स्ट्रीमर। there and start pushing flanks. भाई ट्राई कर साहिल भाई। रेगुलर। That GE might be मैंने ओए कल साहिल की कर स्ट्रीम पे लिया, तो तब मजा आता जब ये इमॉर्टल 3 पे खेल for रहा the side of T1. Good time for a आ timeout. जाऊंगा भाई जल्दी आऊंगा नहीं। ये तो तू 2 साल से कह रहा मनन की स्ट्रीम पे भी नहीं जब भाई। मजा आएगा जब ही स्पोर्ट्स खेलेगा। है। अच्छा साले रेडियन में हूँ इसलिए नहीं बोला रेडियन हो जाएगा। भाई टॉप 100 रेडी टॉप 100 अरे थाली सिम्बा तो ले वो कहेगा। हाँ तो देखा IQ वैल्यू देखो जैसे आता ही नहीं है स्ट्रीम करने। आ जाता है। भाई इतना वैल्यू मत कर, पता चले जब तू आए तब तक कह दे भाई आता तो है नहीं, छोड़ो। नहीं वो बोले भैया आपको तेरा माइक बहुत वो हो गया, तेरा माइक पूछ रहा है आपको। ओ सॉरी बहुत लाउड था। आवाज आते हो गया था, ज्यादा क्लोज हो गया था। लगता है भावनाओं में ज्यादा ही खो गया। भावना कौन है? भावना कौन है? We'll see. I know this was coming. I know this was इसी coming. बात में समझवा दो यार। I think T1's भावना हमारी XT हमारी मैं आपसे ये था की हमारी अब वो था थोड़ा सा यूपी से ना तो हम हाँ बिहारी ब्लड आ रहा है थोड़ा सा यूपी में कैसा होता है भाई हम पता है ये था, बंदी अच्छी थी नो डाउट, बट तुम दोनों गलत टाइम पे मिले बस। हाँ कोविड आ गया कोई बात नहीं। टाइमिंग हमेशा गलत हुई है, बंदी अच्छी मिली इसको। नहीं तू अपनी तो बात ही मत कर, सबको मूव ऑन की ट्रिक्स देता है, खुद तो भाई मुंह मत खिलवा। मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो बस सिंगल फॉरएवर। भाई यही बोल देते हैं भाई कुछ भी। भाई जी वालों को स्मोक से नफरत है सही में। वो लोग स्मोक बोलते भैया घुसो। Oh lol. 6-4 रीड भी अच्छा हो रहा है, मोमेंटम भी हो गया। हाँ भाई ठीक है। अब ऐसा लग रहा है ये गेम वो साइड आ रहा है, होना नहीं चाहिए, स्विच होते ही गेम आ जाना चाहिए। अब पता है क्या मैं होता तो जीत। द प्रॉब्लम इज कि जब ये डिफेंस खेलेंगे उनको पता है ये ए पे ज्यादा तेज कंट्रोल करेंगे, सी और बी ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो एक जना लर्क करेगा, कुछ तो प्ले बनेंगे। वो जेटा वाला जो राउंड आया है ना उसके बाद से मोमेंटम चेंज हो गया। करेगा कोई चेस स्ट्रीम कर ले, स्ट्रीम करेगा। अब यथार्थ खेलूंगा ऑन स्ट्रीम मोहित बस स्टार्ट ऐसे नहीं हो गया। मैं जो फिर कॉल आ रहा ना रेटिंग 400 वर्सेस 1200। क्या काम है? प्रोजेक्ट सबमिट करना है 12 बजे लास्ट। एडिटिंग का? अरे प्रोजेक्ट भाई। अच्छा प्रोजेक्ट ओ पढ़ाई भी कर रहा हूँ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मैं भूल गया था। 3 दिन से लगा पड़ा हूँ प्रोजेक्ट में, सारा खत्म नहीं होके दे रहा हूँ। इतनी रिसर्च करने पड़ी है इसके लिए। इतने न्यूज़पेपर तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं पढ़े हुए थे, पिछले 3 दिन में पढ़ लिए। ब्रदर यूपीएससी वाला तैयारी जो करते हैं ना उनके पास वो होता है। क्या टाइमिंग है ये जी वाले के हमेशा जैसे मिलते ब्रदर आई विल टेल यू, जो लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी का ना, दे हैव लाइक एंटायर फकिंग बुक सेल्स ऑफ जस्ट फतेहता लास्ट 50 एडवाइस चाहिए पूछ तो सही चाहिए मैन। पूछ रुक जा 2 मिनट दे। नहीं अगर ढूंढना होगा मिल गया तो नहीं चाहिए होगी। ये भी सही है, जल्दी बता नहाने आना है मेरे को। मैं समझ ढूंढना बेटा नहीं वो नीचे आ। कहते पूछ हो रहा था। For the side of T1, having a bit of fun with it here. Gonna put one in Munchkin's hand. 𝙤𝙤, the headshot. Very nicely done. Ronski, however, gonna be able to answer back. Bro, average Saya Operator out of the equation. Rolling Thunder going. ओ भाई उसे स्टैंड एक्स्ट्रा और दिया। On to Munchkin. वो व्हाट उसको रीलोड साउंड पे मारा उसने।
quickly traded back by Monyet. Every time he's surprising. Every single map he's surprising me. It's not French, so that's my bad. Either way. और ये पूरा गेम चेंज कर देता है यार. Identify where the Omen is as well. Push it. बताना पड़ेगा. बाजू Fantastic बताना. headshot. Helps to keep them in this, but he does get chunked down to 16. ज़ेटा का पोजीशनिंग बहुत डेंजरस है हमेशा की तरह. अरे यार टाइमिंग लुकिंग एट दैट एंगल डू तेरे दो दोस्त देख लेंगे एंगल. ये दे इसको दे ये इसको दे. मार चुके हैं से. Get one of them that gives him a lockdown. He can get the plant across. Gives him a lockdown. He drops out. Doesn't find the connection. How do you pilot this now? 35 seconds. Ticking down. It's done. Tugging along the wall. Fan just moves forward, finds the shot, and T1 end up making this an 8-4 half as they get ready to go on the attack. भाई नहीं वहाँ पे वो उस शॉट भी प्यारा मारा यार. ज़ेटा ने लास्ट बार ही मारा था प्यारा शॉट. बात वही है ना. नहीं दिक्कत हो रही स्मोकिंग की ना. उनका स्मोक नहीं है. उन्होंने अज्यूम किया कि वहाँ पे कोई नहीं होगा. उन्होंने अज्यूम पे सारा प्रेशर आएगा अर्लिंग से. इसलिए उन्होंने छोड़ दिया. पता है कितने 2 4 3 2 घंटे 5 घंटे था ये. 8 घंटे हो गए हमें स्ट्रीम. मतलब 5 घंटे का ये सब खत्म रफा सफर हो जाता क्योंकि दो मैचेस हैं. 3 मैचेस में 9 घंटे 8 घंटे लगते हैं. Swarm the map, come from so many different angles to make things so tricky. Great reads on timings and information, and again, I think a lot of this does come down to their double controller. I really sure. I think it really makes it really hard for GE with so little information to work with, and not just feel like you aren't forced to just take whatever space is given to you and try to make it work. And obviously, even though this isn't a double duelist, it still lends itself very well to the attack when it comes down to having those codes, having those high ties to be able to cut off. पता नहीं भाई. That's बड़ा देख के. छोटे शहर का समझ के पता नहीं क्या करते हैं वो समझते हैं. Of GE in this timeout need to be valuable. छोटे शहर काम भी यूपी से ही है. Needs to be keeping them in this game. अरे इसमें Giving them something to work with, some ideas of how to approach as we get ready to go into this pistol. I mean, you're kind of mentioning it after T1 are able to claim the first. पूछोगे नहीं किसमें. They have the lead. This is GE's chance to tie it up. छोटे वालों के उसमें. One step closer. No, air pollution index में. Yeah, look, this is not over by. देख तो डिस्कॉर्ड को भेजो. ये भी सही देख. भेज. दिल्ली वाले ऐसे नहीं. हम लोग नंबर 6 पे. दिल्ली वाले 2 जगह पे उस लिस्ट में. दिल्ली. Let's go. दिल्ली वाले हर जगह आते हैं. ओए भाई अब शांत हो. बिल्कुल पूरा फोकस दे दो भाई. जीतनी चाहिए. मुश्किल है जीतना क्योंकि 9. तुम निकल यहाँ से. कायरो को भेजो. अरे भेजते भाई क्या भेज दिया. हाँ मतलब जा रहे क्या. जी टेक माय एनर्जी. नहीं वो वाला बेटर है. ठीक है. भाई डब्ल्यू लिखना भूल गया स्कॉर्प. तू पूरा अकेले ए पे रीटेक खेल रहा है. They know कि जी में like 5 like उनको पता ड्यूलिस्ट वाले तो पुश करेंगे. I was just so thrilled with the way that आगे ओमेन सब यूज कर दिया. ओमन नहीं. और अब वाइपर ने बहुत अच्छा कंट्रोल ले लिया. द प्रॉब्लम इज पीछे देख रहे हो. तुम लोग बहुत पीछे देख रहे हो. अच्छा सॉरी मैं तो इस मान की स्ट्रीम. Okay, they got the control. ये पूरा मिल गया उनको. पर ठीक है 5v5 रीटेक करेंगे हो जाएगा. Oh no one. Full trade game हो गया. Nice Ronski Shansky. Got it. ट्रेड तो अच्छा था. टीम वर्क भी सही था. सब परफेक्टली हो गया. बढ़िया हुआ भाई. बस अब ऐसी 3 राउंड और फिर 2 थ्रो और फिर 4 राउंड. ये बता रही कि कल कैसे खेलेगा साहिल. याद रखिए इसका. अरे प्रियंक वैसे तुझे पता है ना तो हमारे पूल में कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है. मेरे को सारे नाम ही नहीं दिए. मुझे तो ये नहीं पता तुम पिक्चर कहाँ से देख रहे हो. मैं भेजता हूँ जा. ग्रुप पे आया होगा ना. भेजा ये स्मोक क्यों किया लॉल.
मैं कुछ यार व्हाट्सएप देख देख, अगर यही समनर्स वॉर होती ना तो मैं एक पल को क्या भी दे देता, ठीक है, उसमें कोच बन जाऊंगा। यार व्हाट्सएप देख ले। मैडोस उसकी है। वेट, ये गलत उसने नहीं किया, क्या कहते हैं, स्मोक। हाँ, रेंज के बाहर था। तो टाइमिंग ली। ओह नो, नो वे। उसका भी बुलेट खत्म है, उसका भी बुलेट खत्म है। इसमें क्या प्लेयर्स का नाम नहीं है कहीं? नहीं, अबे साले प्लेयर्स के नाम होते हमें नहीं पता चल जाता, मैं ही बोल देता। नहीं वैसे नहीं, नॉर्मली वैल्यू वाले नाम। पॉलिटिक्स तो आएगा। इनके डिस्कॉर्ड पे रजिस्टर्ड होगा ना? लास्ट विनर वो है। तूने रजिस्टर कैसे किया साहिल? डिस्कॉर्ड उससे कहते हैं, हाँ डिस्कॉर्ड पे फॉर्म रहता, गूगल फॉर्म। हाँ तो अच्छा फॉर्म उस पे नहीं है नाम। हाँ भाई देख, मेरे को जो पता है टीम पॉलिटिक्स जो नाम रखती है वो एक मनोजना के बच्चों की एक टीम नहीं 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 वो नहीं है। ये मेरे दोस्त इनसे तो लास्ट खेलने आया था वो कैंपस लच। हाँ, उसमें से 2 बंदे हैं यूरोप की टीम है जो लास्ट लैंड जीती थी, वो है लॉल लास्ट लैंड के विनर्स। ठीक है, नहीं वो मैं समझ गया। उसमें एक्चुअली एक बच्चा है आई गेस उसका नाम लक्ष्य है, तो वो मनोजना की है। अच्छा करता है, मैं भी मैच देखने वाले करने वाला। ओह शॉट ड्यूड, भाई सब जेट प्लेयर्स है टीम में। सबने आई थिंक टैप्स ही मारे हैं। बाकी तो पहली बार ही देख रहा हूं। मैंने आयरन कोट ये रेस खेलते हुए देखा। मैं तो सब बकेट की है जो लास्ट टीम है ना। हाँ वो गलत पोजीशन थी, बट आई थिंक ही वाज ट्राइंग फॉर वन मोर किल। अगर उसको एक और किल मिल जाता इजी हो जाता टीम के लिए। जैसा मैं देख सका पहले, इट इज वर्किंग, दैट्स द फैक्ट। टाइमिंग इज रॉन्ग। ओह नो, नो वे। ओ देख लिया, ओ देख लिया, उसने देख सबने देख लिया। Cuts him down to the arrival through waterfall. ले गया। ये तो भाग लिया। On the C site, they will be able to get चला गया। keep things evened up just a little bit more. They have the gun advantage. Trying to break the cove. They are able to do it. He moves up to try to offer some covering fire. कौन नहीं अभी तक कोई? Going to be invested into this round because they absolutely know that they need to win this. It's really good stuff here from GE. The good They have communication to get Texture That's the over. only thing I can say. To bail Munyet out. उसके बाद तो गन फाइट है पूरा। What they can do. Here's the spike. वो गन उस पे है, इस एडवांटेज पे। They have something here. Trying to inch forward, get onto this. Munyet will find one. Yeah, the setup is just nasty. They have the lineups here. स्मोक हट यार। Again onto it. बता उसको करना नहीं था, उसको वेट करना चाहिए था। अगर स्मोक भी नहीं आता। 3 गन डाउन किया भाई, 3 गन डाउन कर दिया भाई लोगों ने। They pick up this round. अच्छा बोनस था। Lead again by 3. Gonna have to be half buys. It's tooth and nail. Half shield see how bad both of these teams want half this. armor buys it. No, I will say Harbor is better. Again, yeah, there's good communication here for GE to at least, again, it was a bonus round for them, right? So every kill they get is great. और उसका स्मोक रिचार्ज नहीं होता ना। Decent amount here. Finally. हार्वर्ड का स्मोक इट्स लाइक वाइपर From the side of T1. It's like Viper मोर कर्वी। Yeah. सोच लीड के डिफ्यूज करना अलाउड हो जाए। Kind of shift into a back position and immediately Texture was अब on लेट है यहाँ, क्राउच क्राउच की जगह लेट सकते हो आप। एक प्ले देखा था मैंने, 2 बंदे, एक बंदा डिफ्यूज करा स्पाइक पे, एक बंदा साइड में सेज वॉल का आइस बॉक्स था, आइस बॉक्स बी साइड, सेज वॉल टूटा हुआ है, तो एक बंदा क्राउच करके बैठ गया, एक बंदा डिफ्यूज कर रहा है। अटैकर ने उस क्राउच करने वाले बंदे को मार दिया, दूसरा बंदा दिखा भी नहीं उसको। Still somehow gets that munchkin. Getting whipped right when he absolutely cannot afford to. That was some play. They're getting the first peak, but oh, It's need a brutal way to miss out on what otherwise looked like a very free kill. Cartman will grab the orb, pop the Seekers immediately. they know 2A. Catch much of anything though. Seekers do help. He's from field of position here of Texture, but he's still gonna find one. ट्रेड ओवर, ट्रेड गेम Nice. कर रहा है पूरा। ट्रेड गेम में फेवर में हम लोग ना, हम लोग का बस पहला पिक था, फेवर में हम लोग। Might think the
drop is clear. This bite doesn't cover everything. Nice. Fazi gonna swing out, looks to break the Oh, cope, and wow. answers back. Firing to the box, Nice, finds the kill. 2v1. Now it's all on 𝙬𝙤. Now they know where he. Sends out the wall. Push. The tap onto the spike. Finds one. Does he suspect? Yeah, Well, now he knows. Another बहुत tap. गलत है. And neither player He knows very well. Oh, and Yeah. Moniyet plays it perfectly. Nice He gets one, the read. Op भी मिल गई. 𝙬𝙤 tries to go for the wraparound. The defuse will come through. Global will Basic keep this concept one trade game damn का यही है. close. पहला pick लो The और trigger trade होते discipline रहो. there from 𝙬𝙤 on the after he got the first kill on the spike, when और he ये हो गया. went to That recheck worked. it, he did like a little circle, like he's like. अब ये जा रहा है close as compared to बाकी दो map. Impressive. I thought I would have just sprayed at it. I mean, So, anything better can safe than happen. sorry, but that still didn't allow him to get through and get the win. He really tried to kind of keep things quiet, tried to keep Moniyet guessing, but Moniyet just outguessed him there at the end. Hi, Mike. Jeez, they're loud. I mean, yeah, you can hear them just Oh, Eraser. breaking the microphones. I like it. So completely jazzed up. I mean, yeah, it's good to see that the player is very much alive and well considering how long we've been here at the studio. Ronsko is looking for a blind timing shot through the smokes. He's managed to exit back to safety, and granted, there's under an immense amount of threat given the weaponry here. Texture alt पे खेल रहा We're है. gonna need more than 2 duelists to bail these 2 out. There, finally, the reinforcements are coming. Oh, he missed it. It's on the whip. And there you go. Rosa ult Denies also. the ult away from Texture. Both the duelists couldn't make it, and now we can be lose this. Playing out of stairs. It's being watched. Again, the reckoning available. Round secure करने के लिए ult भी कर दी उससे. Huge in the clutch last time. Pull it off once more. Are you 3v3? Break the spirits of T1. Hear the footsteps. They know where he's at. And Oh, Moniyet, nice. he gets that kill Spectre थी again. ना? Same position as he bad. did in the last round, but this time he will not survive. It's going to be 𝙬𝙤 with yet another 4K Okay, on this harbor. निकाल गया पूरा. अब उनको 6 राउंड चाहिए, इनको 3. He's continued to desperately That is want that scary, brother. That is playing 3-round scary, lead. brother. What a round from 𝙬𝙤. The Bulldog at the beginning of this. I think he stopped Texture with the showstopper in hand, didn't he? Yeah, he had just pulled it. You hear it right there. तुम लोग को पता है ये लोग अमेरिका में Also क्यों थे? gets the कार्ड पे और destroy ये on सब. that boombot, कार्ड पे फायर any पे और extra डाटा. damage that he needed to. Unbelievable. See him falling down तो to बड़ा 21 HP. And I mean, उन्होंने again, साढ़े we were कोडिंग talking about प्लेयर्स को this before. अमेरिका भेज दिया था अच्छे वाले This को. is such a क्योंकि पैसा मिल रहा था staggeringly अमेरिका में. different look for 𝙬𝙤 compared to what we saw at Lock-In. This is 𝙬𝙤 from Cloud9 at their peak. भाई eliminating फायर प्लेयर के DRX इतने बड़े फैंस थे Champions 2021. और This is that level of लिटरली 𝙬𝙤 that उनके we're घर seeing में right now. बड़ी बड़ी क्या And कहते man, हैं if it isn't वीडियो good मेकर की to see it पोस्टर्स back उस पर लिखा हुआ because है it's delivering us और this पूजा कर रहे हैं उसको. extremely close series. Yeah, I mean, he's always been one of my favorite players. Obviously, because he's from Korea, we kept our eyes on him maybe a little closer than some others. But he was so consistent too, especially on his Sova, but on a lot of the other, agents. ऐसा लग रहा है ये लोग बात कर रहे हैं. Numbers. It seemed like every time I looked at his score. देबू, calm down. अबे नहीं कर रहा I'm a हूँ. little bit surprised that 𝙬𝙤 didn't perform a little bit better, but maybe he just had an off day, and it happens to the best of us. And you're absolutely right. I mean, at that event, it happened to everybody on T1. Yes. Other than Carpet. Yes. But he looked great today. I mean, making great decisions. I mean, again, even the little things like that trigger discipline on that spike. Even though the round didn't go his way, it's still smart. It's still tough to do that. सब शांत क्यों हो गए भाई? अरे guys, attendance दे दो थोड़ा सा. So heady. I mean. नहीं रुक जा. क्लोज आ गया इसलिए फोकस. जी फाइटिंग लिखो सब जी फाइटिंग लिखो. 21 and 17 rounds. It absolutely. ये राउंड इम्पोर्टेंट है भाई, सही में जी के लिए तो काफी ज्यादा. Having a ton of impact with his utility. He's making this match G would be a bad to girlfriend. navigate. अगर ये इको राउंड आ गया तो ये जीत गए, पूरा गेम जीत गया. आई एम टेलिंग यू, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. या द थिंग इज, इनका स्टैक है, इनका यही स्टैक हो रहा है, वो वहीं आ रहे हैं इसलिए. अरे यार नहीं, वो डॉग यार, वो डॉग. आयरन जिंदा, आयरन ऑफ क्लासिक जिंदा, डोंट वरी. अच्छा ब्रदर साले उनके 4 जने हैं हाली दिखते. ये अगर इसे क्लच कर दिया ना, मैं तुझे हर एक चैट में हर एक बंदे को बंडल दिला दूंगा. I mean, क्लच नहीं करने वाला. I'm just saying कि he is very. लोन लूंगा कितना, Small gun. 15-30 लाख का लोन लेके सबको बंडल दिलाऊंगा अगर ये क्लच कर. I like the idea here from GE. They, threw a lot of utility.
ये देख इसका देख ये किया देख क्या हुआ? मेरा बंडल हमारा बंडल इसके हाथ में है। भाई क्लासिक है उसके हाथ में, क्लच जिंदगी में कभी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। मैं होता भाई अगर उसके पास पता है हैक्स भी हो ना तब भी नहीं क्लच होता। ना ना ये ज्यादा हो गया, हैक्स होते अबे नहीं होता, क्लासिक से तुझे 2 हेड तो देने ही पड़ेंगे ना फिर भी। तो 2 हेड देगा। वो देख कार्टून। आरती का से मरा। I wanna see his reaction, bro. I wanna see his reaction. किसका? कार पे का कि जब मरा। अच्छा। Wait, क्या उसका फर्स्ट टाइम है क्या कार पे का? बस Either way, the buy is still there. The alt economy it has like strong. 3 bullets left. Nearly matched. क्लासिक में बर्स्ट भी होता है भाई, बर्स्ट से तीनों थोड़ा लगेंगे। तू वॉल एम बोर्ड लगा के सारे हेड थोड़ा मार लेगा। बर्स्ट से 3 बुलेट्स अलग अलग एमबॉट से निकलते तो और हैं। नहीं होगा, एमबॉट से तो और नहीं होगा। एमबॉट से होगा ही नहीं। हाँ एमबॉट वो स्प्रेड गन है, वो स्प्रेड करता है ना एमबॉट। वो कुकी कटर बन जाएगा पूरा। वो तो एकदम मनन गेम जैसा हो जाएगा। साया प्लेयर ऑफ कर सकते हैं। क्या लगता है कमबैक होगा मनन? ये राउंड ही बता देगा। मुझे तो अभी भी उम्मीद है क्योंकि बाजी के पास क्योंकि ब्रीच का अल्ट और ओमन का अल्ट है, बट ब्रीच का अल्ट करके वो रीटेक भी ओमन से बैक स्टेप कर सकता है। नहीं भाई मैंने आज 3 बार दिया भाई, वो ब्रीच के स्कैन में उन लोगों ने मार चुका है भाई। कर दे भाई, अल्ट कर दे, अल्ट कर दे। The lockdown goes across and Bazzi narrowly makes it out alive. Fuck यार। बट उन्होंने ले लिया ना और अल्ट भी गया। I love the counter flashes from Carpe. वो अल्ट भी गया। टाइमिंग में डिले कर सकते हो यार। He's good. Oh, it just helps. Forces him out. You know, catches Bazzi. क्या भाई टेक्सचर मॉली में खड़े होके भाई ट्रेक कर रहा है। They cannot interrupt it. Spike plant हो गया and they don't have the number. Just spam through, find something, but it's going to be Cypler answering back to spam zone to find the kill. And now at this point, given the economy, भाई हो गया 2 you can save 2 rifles. सेव ही कर सकते हो। On yet. और ये लोग सेव करने का ट्राई देंगे नहीं शायद। मैं स्ट्रीम नहीं दे देंगे करने वाला था इसके बाद। They will be taking this to map point. Very long. Match point. I mean, it's not a GG. Ross is not in Korea right now. He's traveling to Korea. That's why he couldn't play. लोअर ब्रैकेट भी है ना, लूजर्स ब्रैकेट भी तो है। अभी तो लीग है ये। अभी सब सारी टीम के 9 मैचेस होंगे सारी टीम के साथ, एक दूसरी टीम के साथ। उसमें से जो लीडर बोर्ड बैच था टॉप पे होगा उनको आगे में लेगा, फिर आगे मैचेस होंगे। अभी तो बहुत मैचेस हैं भाई लीग। हाँ दोस्त है ना, अभी तो बहुत मैचेस हैं। ठीक है चलेगा भाई, एक मैच हारे तो क्या हुआ। मेरे हिसाब से उसको अल्ट करना नहीं चाहिए था। लाइक जब जेट मरा ना तो उसके साथ कोई था नहीं, उसने अल्ट किया और कुछ नहीं कर सकता वो फिर उसके बाद। भाई इसमें तो जेटा पॉप अप हो गया इसलिए लोग मार रहे हैं पॉप अप। जेटा क्या मार रहा है। लास्ट राउंड जो उसने बुलडॉग से 4 के लिया था लास्ट। Look, they're trying to up the pace here. यहाँ बैठ कर जज करना आसान है, वहाँ इतने प्रेशर में खेलते थे कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। क्या भाई ये मनन को क्यों भाई ट्रोल क्यों कर रहा है? तुझे कह रहा हूँ। What a shot! भाई लोग क्या आदर से क्या आवाज spotting the blast pack flying. नहीं वो बहुत अच्छा शॉट था यार। भाई ये क्या था? Could this be it? It absolutely looks like it. Moniet would have to go absolutely crazy. GG He भाई finds one, but he can't get any more. GG. And 13-7. GG.
That will be T1 taking down Global in their opening series. All the way. भाई फर्स्ट मैच क्या होता है यार? They managed to persevere. अरे ये टीम 4 महीने से चल रही है साथ में। जज करना आसान होता है, वहाँ पे खेल के लिए। ये पता है GS ना, ये ऐसी टीम है कि मतलब पता है क्या, एक होती है ना कि तुम एक लड़की है जिसको तुम हेट भी नहीं कर सकते और वो प्यार करने नहीं दे रही, यू नो वैसा सिनेरियो है इनका सही में। सारा शुरू के गेम में बेकार खेलती है, सडनली फिर ऐसा खेलती है कि उम्मीद जगा देती है और फिर वापस दिला देती है डाउन कि भाई नहीं, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो, मुझसे ज्यादा ये थोड़ा तंग कर रहा है ऐसे। नहीं उन्होंने जो बोला ना लड़की है, रिलेट नहीं कर पा रहा था। क्या है यार? हाँ भाई अब पता है क्या, अब देख नेक्स्ट मैच इनका होगा सीधा अप्रैल 3 को DRX वर्सेस GE, और वहां पे मेरे को तो कोई चांस नहीं दिखता कि DRX हार जाएगी। भाई रॉसी मारेगा। बट भाई DRX पूरी नंबर 1 टीम है एशिया की, तो वो चांस नहीं है। चलिए दो मैप हार गए, 2 गेम हार जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। 2 क्या गेम, अभी एक उसके पहले भी है। नहीं DRX से भी, उससे भी पहले नहीं, DRX से नहीं है, देख ले, ये देख ले, अभी मैं स्ट्रीम पे दिखा रहा हूँ। अप्रैल 3 ठीक है, इस दिन मैच है, वो एक ही मैच है, फिर इनका मैच आएगा जेटा के साथ। जेटा DRX जेटा के साथ ये जीत जाए, फिर इनको टाइलून के साथ भी जीतना है, पेपर एक्स के साथ जीते, और Gen.G है वो, जीत सकते RRQ के साथ जीत जाएगी ये। अबे Gen.G है वो। अरे यहाँ पे लिखा है यार Gen.G लिखा, मैं क्या बोलूं? अबे तो Gen.G भाई इनका लास्ट गेम पता है किसके साथ है? टीम सीक्रेट। Going to Lotus as that third map, winning on their opponent's map pick. Let's fucking go. Quite being able to clutch it out at the very end. You keep telling me time's a flat circle, and as a guy with a भाई फोटोग्राफ वाला तो मैं भी, फोटोग्राफ वाला मैं भी काम कर सकता हूँ, मतलब मैं भी प्रोडक्शन में जा सकता हूँ, मेरे को आता है, फोटोग्राफर हूँ मैं। फोटो खींचना आना चाहिए उसके लिए। तूने मेरी सेल्फियां नहीं देखी? कैमरा ब्रदर, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ अ कैमरा? भाई आदत क्या पूछ रहा है तू ये? व्हाट इज अपर्चर? बता रहा भाई मैंने। भाई मेरे को क्लिक करना आता है, चलिए बस। बता दो मैंने। एक्सपोजर क्या होता है? तो क्लिक करने में थोड़ी होता है। हम डब्ल्यू भी वाइट बैलेंस पे एडजस्ट करते हैं भाई मेरे उसमें फोटोग्राफ का वो था, क्या कहते हैं, कोर्स था, हाँ जर्नलिज्म में मैंने किया हुआ है। मैं अभी नहीं, जब मैं करियर पे ध्यान दूंगा तब सोच लूंगा। पता है ये क्वेश्चन मैंने किससे पूछा था? मैं अपने शॉप पे था, एक बंदा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, घर आया हुआ था, तो लाइक कोविड का टाइम था, बोला 10,000 दोगे, फाइन जस्ट शॉप पे रक लो। उसने रेज्यूमे दिया, रेज्यूमे फोटोग्राफर था। पता है आज जी के लिए गाना बनता है, तुझे कितना चाहने लगे हम, अब क्या करेगा मनन? इस जगह गई अब ये मेरी खुशी, तुम भी बेजार हो, बर्बाद है ना हम, तो जाने किस रास्ते ले जाएंगे ये। हाँ मैन इट्स इजी। मैं सोच रहा हूँ अब बंद करूँ और वी प्ले गेम। I wanna play। खेल ले CS:GO खेल ले। ना वैलो ही खेलूंगा, बट खेलने का मन नहीं है। सोर्स तू खेलेगा? नहीं भाई क्या मस्त है भाई, मस्त लगा, मैंने कल देखा। राका खेल रहा था। हाँ अच्छा है। खेला तूने साहिल? नहीं देखा है ना बस। टोटल 9 मैचेस में से वेट अच्छा कोई एक चीज बताओ, अगर CS:GO में मुझे 55 FPS मिलता है तो CS2 में कितने मिलेंगे? 5। No. CS2 is not bad. Okay. So in modern, let's say 8-core processor, you're still getting 600 FPS. एक मुझे 55 मिलता 2 3
4 5 6 7 तेरे को वैल्यू में कितने 8 लगते हैं? 9 90 सो बेसिकली 9 मैचेस टोटल, 9 में से ये 2 तो मुझे पता है हार गए। तो DRX वाला भी, कौन सा DRX वाला मेरे को पता है कि हार जाएगी, वो तो कोई बात नहीं। DRX वाला भी बोल रहा हूँ। क्या DRX वाला? PRX वाला नहीं जरूरी तो ना है। हार जाएंगे भाई। नहीं PRX वाला जरूरी नहीं है। एम पे खेल लेंगे भाई वो लोग। कुछ भी हो सकता है। हाँ तो कुछ भी हो सकता है भाई। PRX वाला मैं नहीं कहूँगा, DRX वाला टॉप 1 है इसलिए, और टीम सीक्रेट का क्योंकि उनका भी एम है। टीम सीक्रेट बहुत लंबे टाइम से अच्छा PRX का एम नहीं है मगर टीम सीक्रेट का एम भाई। टीम सीक्रेट और DRX दोनों टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हाँ चल ठीक है, पेपर एक्स का भी जब एक गेम देखेंगे तब पता चलेगा। So basically 9 गेम में से वो 2 गेम तो हारेंगे। चल तूने 3 ले लिए, बट उनको 5 गेम तो जीतनी है ना। हाँ 9 में से अगर वो 5 भी जीत गए तो हाँ हो सकता है भाई, आराम से हो सकता है। और DRX आई थिंक सबसे जीत जाएगी मेरे हिसाब से, तो मुझे ये लगता है। ब्रो ना DRX के लिए वेट ओके लेट PRX का मैच था, देखने लायक होगा। नहीं तुम देख चुके हो पास्ट में, जस्ट रिमाइंडिंग। DRX PRX का निकाल लेती है पूरा, उनको पता है कैसे काउंटर करना है। हाँ। एग्रेसिवनेस पूरा हवा निकल जाता है PRX का DRX सामने। दे आर ट्राइंग भाई टू डू कुछ तो एंटी स्टार्ट किया होगा भाई, कुछ तो करा होगा। तो DRX वाले पागल वाला एंटी स्टार्ट करते तुझे, उनके पास सेट प्लेस है, दे हैव एंटी स्टार्ट। देखते हैं ना क्या होता है अब जो भी है। नो वन टॉक अबाउट जी। हाँ वो भी टीम अच्छी है भाई, बट अभी कुछ कह नहीं सकते ना कोई भी टीम। सिर्फ अभी देख अभी DRX को देख लिया इसलिए बोल दिया। लगता है RRQ जीतेगी। क्या? पावर ऑफ फ्रेंड्स RRQ बेस्ट टीम ट्रोल कर रहा है। RRQ is the best team guys। Hey Mr. Rao, हंस लो अभी, सब हंसोगे। Gen G is basically the entire team is ONG, right? तो yeah of course King Meteor yes yeah, so ONG का कोड यूज कर रहे हैं वो लोग। It is exciting, but just a reminder DRX ने क्या हाल किया था ONG का, just a reminder। कौन आया? आयुष आया। अबे दास, ये जो तूने भेजा ये तो अपने वो चैट पे आ रखी है ना? हाँ नहीं देखना था। ये वही है? यस मेरे को भेजना दास। तो क्यों भाई मेरे को नहीं भेजना, मतलब भेज देना। मत भेज, इसको मत भेज, फिर अगले 4 दिन गायब रहेगा, ये आएगा ही नहीं। ओ भाई मीदो स्वीप करती है जब भी मैं आता हूँ, ऐसे मत बोल भाई। वो बात अलग है, गेम प्ले देख रॉसी प्ले अगेन सेम थिंग, सेम सिनेरियो। रॉसी खेलता तो हो जाता है ये सब, बट भाई अगेन आई वुड से रॉसी अभी था नहीं, बट मे बी नेक्स्ट में आया, पता चले। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं यार, बट आई स्टिल डोंट नो मैन। आई जस्ट वांट देम टू विन समहाउ। और अगर DRX से जीत गई तो डेफिनेटली दे गोना विन ऑल द अदर गेम्स। ये T1 लकीली जीत गई फिर। सो लेट्स सी, जो भी होगा यार, बहुत मजे आने वाले हैं। ब्रदर व्हाटएवर फ्लोट्स योर कोपीएम। अबे क्यों भाई, सही तो है, रॉसी से उम्मीद आने दे, क्या हो गया? वही तो मैं बोला, व्हाटएवर फ्लोट्स योर कोपीएम, जो हेल्प करे तुझे। इफ इट इज गुड, इट इज गुड, दैट्स अ फैक्ट। क्या भेज रहा है भाई तू? मुझे भी भेज। नहीं भेज रहा। टॉक्स पे भेजना, टॉक्स पे भेजना। हिम्मत है तो टॉक्स पे भेज। ट्रोल करना था। अच्छा हिम्मत की तो बात ही मत। चलो अभी मैं या तो अब हो गया, बंद ही कर देता हूँ। 8 घंटे हो गए, कल मैच भी है तो थोड़ा रेस्ट भी ले लेता हूँ। अबे भाई रेस्ट ही लूंगा, कम टाइम लेंगे तो आराम से रेस्ट लूंगा, क्योंकि फिर कल जाना है ना, कल 12 बजे जाना है। कल आई थिंक मैं कुछ स्ट्रीम भी नहीं करूँगा। मैच खत्म हो जाता है ये कल रात को करूँ। अगर वहां से बोले वहां से कर लियो। हाँ शायद कबाल से अगर करे तो कर लो। मैं आता हूँ।
बाय या इंडिया इज राइजिंग या दैट्स चलो गाइस ओए सारे चिल देख ले अबे यार लास्ट हेलो लोगों को दिखाओ थर्ड मैप दिखा क्या था 13 6 था ना उसके बाद सो गया था 37 था मैं कुछ काम कर रहा था ये है क्या 2 मिनट इसमें 2 मिनट दे काम कर रहा है पावर ऑफ फ्रेंडशिप समझा नहीं मैं आरआरक्यू का बेसिकली वो लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग गेम खेलने वाले तो हेल्प अप विद पावर ऑफ फ्रेंड्स दैट्स ऑल कि वो ऐसे गेम खेलेंगे बाकी टीम स्टार्ट कर रही है एंटी स्टार्ट कर रही है सब कुछ कर रही है आरआरक्यू इज लाइक दे विल जस्ट गो इन विल किल एवरीवन विद द पावर ऑफ फ्रेंड्स आदर्श भाई थक गया हूं भाई कितना देर वेट करवाया वैलोरेंट वालों ने सही में कितना भाई देर वेट कल की टाइमिंग वही 2:30 है बट मैं शायद नहीं करूँगा क्योंकि मेरा लैन है और कल मैं फिर शायद से रात में स्ट्रीम करूँगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इफ़ यू कीप विनिंग देन तो कंप्यूटर ऑन करके चल जाना मैं कर लूंगा हाँ बिल्कुल ज़रूर साले मुझे बैन मार देंगे वो लोग कैसे मारेंगे क्यों मारेंगे अलाउड नहीं होता कैसे मारेंगे कि किसी को परमिशन मिले उसके चैनल पे कोई और स्ट्रीम ऐसे करे अलाउड नहीं करते लाइक प्रोफेशनलिज्म भी बहुत डाउन होता है तेरा फोटो लगा देंगे तेरा फोटो लगा रिएक्ट करते हुए अरे मैं लैन का पूछ रहा हूँ लैन ही मैं कह रहा हूँ अराउंड 1-2 बजे स्टार्ट होगा या क्या है पता नहीं और रात तक चलेगा 6-7 बजे तक और फिर देखते हैं उसके बाद मैं आके शायद स्ट्रीम करूँ कल ही फाइनल कॉलेज आया था ना फोटो क्लिक करी थी सब कल ही रहेगा टीम्स का मैच तो मतलब कल ही फाइनल सेमीफाइनल सब एक ही याद है मैच होगा ना हाँ एक टीम मैच होगा एक अच्छा क्वालिफायर फिर ठीक है फिर सेमी और फिर फाइनल इसी ने क्या और फाइनल्स क्या एक मैच होगा टू गो इनटू सेमीफाइनल्स उसके बाद डायरेक्ट फाइनल्स होगा तो कल शायद से वो वैसे स्ट्रीम नहीं करेंगे बट अगर मतलब मान लो हम में से सेपरेट उनका स्ट्रीम होगा कबाल चैनल पे होगा तो कबाल के चैनल पे स्ट्रीम होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे लिंक दे दूंगा नहीं तो अगर हमें बोला तो अगर हमारे को सब कुछ कंफर्टेबल रहा तो करेंगे नहीं यार अब वैलो नहीं खेला हम गोइंग मिलते कल देखते चलो गाइस मैं बंद कर रहा हूँ चिल सारे चिल पे आ जाओ आदर्श बस टीम पे आएगा यहाँ से हट के चिल पे आ जाना मैं जा रहा हूँ हाँ आदर्श चलो गाइस कीप शेयरिंग कीप लविंग कीप स्माइलिंग टेक केयर सी यू गाइस आफ्टर टुमारो नाइट और परसों मिलते हैं भाई कल टूर्नामेंट में तू आ रहा है बढ़िया फिर बंद घर से खेल सकता है क्या नहीं घर से नहीं खेल सकते लैन है ना भाई चलो बाय गाइस आदियोस टेक केयर एंड गुड नाइट